ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हेलो सलाम नमस्ते, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं ग्रैंड फिनाले ऑफ द ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2021 प्रेजेंटेड बाय जोश। और एक चीज मैं कह सकता हूं, आज के दिन पे जनता आप सभी लोग होश खोने वाले हो, क्योंकि ये जो ग्रैंड फिनाले है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। बहुत ओपी मोमेंट्स एंड बूम बाम आपको देखने को मिलने ही वाला है। मेरा नाम है मसब समा एके ब्लैक बियर टू ओपी, और आज के दिन पे मेरी को होस्ट है यहाँ पे आयुषी। लेकिन यस, एक और चीज है, ये टूर्नामेंट ईयर लॉन्ग है, बहुत ज्यादा दिनों से चल रहा है, एंड द प्राइज पूल इट्स मैसिव गाइस, 40 लाख का प्राइस पूल है। एंड इस पे क्या कहना चाहती हो तुम आयुषी? That's right, man. Esports Premier Series was born from the idea of bringing a tournament for everyone, whether a participant looking for a platform to showcase his or her skills in esports or a casual spectator who enjoys watching the games. Now, the competition covered the entire spectrum of esports, from mobile to PC and even consoles, man, with FreeFire, FIFA 21 and Valorant encapsulating the event. Wow. यार आयुषी, एक मेन बात है, चाहे वो फीफा की बात करें, चाहे वैलोरेंट की बात करें, या उसके अलावा फ्री फायर का, हर जगह ओपन क्वालिफायर्स आया है एंड बहुत ज्यादा अंडरडॉग्स को मौका मिला। एंड सबसे मेन चीज है कि अंडरडॉग्स को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि वो अपने स्किल्स को यहाँ पे शोकेस करें। सो कुडूस टू द टीम ऑफ ई स्पोर्ट्स जिन्होंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया। बट उसके अलावा जो इतना मैसिव प्राइस पूल है और इतने सारे सरप्राइजेस है, वो हम बाद में बताएंगे जनता को। बट उसके अलावा यहाँ पे कॉस्प्ले का कॉम्पिटिशन एंड उसका प्राइस पूल इज 5 लाख। सो एक नई चीज मैं कहता हूं हमारी ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में मैं देख सकता हूं कि ये कॉस्प्ले एंड जो कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जिस तरीके से होने वाला है, आई एम लाइक रियली इंट्रिग्ड बाय दिस न्यू थिंग। Definitely, man, and I am totally looking forward to cosplay. मतलब ये कुछ अलग ही होने वाला है हमारे लिए. Not only does it boast one of India's biggest prize pools, but also India's first purely online cosplay competition. Right from competing to judging the cosplayers. Man, how excited are you for this? देखो यार, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा, और अभी तो शो स्टार्ट हुआ है, डोंट आस्क मी दिस। अभी मजा आने वाला है, बिकॉज़ हल्के हल्के मुझे लगता है कि जिस तरीके से गेम्स होंगे मजा जरूर से बढ़ेगा। बट हाँ, एक चीज है कि कॉस्प्ले के जो रूल्स हैं उसको इंश्योर किया गया जिस तरीके से रियलिटी में जब फिजिकली होता है, बिकॉज़ ये ऑनलाइन होने वाला है। सो सारी चीजें, उसके अलावा जितने भी कॉस्प्लेयर्स हैं उनको एक प्रॉपर मैनुअल दिया गया है, सो दैट कि वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और इस कॉस्प्ले इवेंट को और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। तो यस, ओवरऑल आई एम रियली एक्साइटेड, वन ऑफ अ काइंड, एक न्यू थिंग। सो यस, लेट्स सी कि कौन जीता है कॉस्प्ले को। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है इसका? It has over 50,000 INR that has been reserved from the prize pool for the amateur category, man. इससे बडिंग cosplayers को जो अभी भी स्कूल एंड कॉलेजेस में हैं, उनको काफी एनकरेजमेंट मिलेगा टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर। यार मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज है एंड जो अभी के लोग उन्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, एब्सोल्युटली। बट एक थोड़ा रिकैप करते हैं यार, इस टाइम पे चलते हैं ऑडियंस को देखते हैं, जो क्योंकि ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज एक ईयर लॉन्ग टूर्नामेंट है, बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले। कुछ टीमों की हमने बात की कि कुछ टीम ऑलमोस्ट हारते हारते ऊपर चढ़ गए। सो ओवरऑल बहुत ज्यादा मजा आया। अलग अलग जगहों से अगर मैं बात करूं, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स, एंड सबसे मेन बात है बिकॉज़ ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में कंसोल गेमिंग है, पीसी गेमिंग एंड सबसे मेन है मोबाइल गेमिंग है, तो हर तरीके के लोगों को हमने देखा है। सो वन ऑफ अ काइंड टूर्नामेंट एंड या ओवरऑल मजा आ गया। लेट्स सी क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज और देखी थी कि कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था एज होता है ना, कुछ दोस्त बस स्टार्ट कर देते हैं खेलना, एंड देन दे सडनली स्टार्टेड टू विन। एंड अभी फाइनली ओपन क्वालिफायर्स था, तो उसमें भी बहुत चीजें हमें देखने को मिली। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और बात करें हम ओपन क्वालिफायर्स की एज वेल, फ्री फायर के क्वालिफायर्स में टीएसएम और निग्मा गैलेक्सी जैसे फेवरेट्स ने अपना सिक्का जमाया, मैन। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, साथ ही साथ टीएसडी आर्मी और केमिन ई स्पोर्ट्स जैसी टीम्स ने भी फाइनल 12 में अपनी जगह बनाई, जबकि टोटल गेमिंग के साथ साथ 3 और टीम्स ने वाइल्ड कार्ड के थ्रू अपना स्लॉट बुक किया। Valorant की बात करें तो we saw the best of the best in every qualifier, man. Like, और यही नहीं, मतलब हमने काफी रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। ये कहाँ देखने मिलता है यार? On the 30th of July, F1 Ellis and Enigma Gaming competed in the consolation match of qualifier 4 of the Esports Premier Series Valorant. Now, the best of 3 was contested on maps of Bind Heaven and Breeze. Now, F1 Ellis made a strong start to the series by comfortably winning their map pick of Bind with 13-6. Dude, that's a lot. Yeah. Heading into Heaven, the map turned out to be the one of the longest map ever seen in the Indian Valorant competitive space. Now, both teams
They were neck to neck, man. They were neck to neck from the start, eventually fighting it out in overtime. Yeah. The score remained tied at 24-24, ultimately crashing the room due to the regulation, the custom games that are limited to only 90 minutes. The lobby was rebuilt and EG finally defeated F1LS with a score of 26-24, equaling the series to 1-1 and necessitating a map 3 finale, man. बिल्कुल सही क्योंकि इस तरीके के यार वैलोरेंट में मैंने देखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी बाद में रिकॉर्ड टूटे बट एक अलग ही गेम बना बट हाँ मैं एक चीज कहूंगा फिनाले में हमें मे बी वैल क्लासिको देखने को मिल सकता है जो कि हमारी दो टीम्स है VLT एंड जी मे बी बिकॉज अभी हमारे पास सेमीफाइनल आज सेमीफाइनल 1 होगा कल के दिन पे 2 होगा एंड देन वहां से जब दो एक टीम्स निकलेंगी तो हमें फाइनल बेस्ट ऑफ 5 का देखने को मिलेगा बट हाँ अगर हम गॉड लाइक की बात करें सो गॉड लाइक डिसबैंड हो गई एक्सो हमें देखने को मिलेगी सो लेट्स सी क्या होने वाला है क्योंकि टीम्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जब आप सोचिए ओपन क्वालिफायर्स में तो नेक टू नेक मैच चल सकता है सो तुम इमेजिन नहीं कर सकते सेमीज एंड फाइनल्स में क्या मुकाबला देखने को हमें मिलेगा सही है बीबी एंड इवन लाइक एनिग्मा गेमिंग फेल्ड टू विन एनी ऑफ द 4 क्वालिफायर्स बट हमें उनकी तरफ से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला एनिग्मा फिनिश सेकंड इन 2 of the 4 open for all qualifiers, missing the grand finale by just this much. With godlike Esportz disbanding, Enigma Gaming have been promoted into the grand finale quarters, man. Qualifiers में बहुत सारी underrated teams ने अपनी performances सबको ही surprise कर दिया है. With teams like Purpose Esportz, Fufu Esportz, Jammers Esportz and even ROG Academy putting up a valiant display for the fans made possible thanks to the open for all qualification format. बिल्कुल सही आयुषी यार जिस तरीके से वैलोरेंट हुआ था फू पर्पस सबने बहुत अच्छा दिया बट मैं हमेशा एक बात कहता हूं और ये हम सबको पता है कि आप जब किसी कंपटीशन में आते हैं कोई जीतता है कोई हारता है हमेशा हर कोई नहीं जीत सकता बट आप सीखते हैं बट हाँ वैलोरेंट के अलावा भी अगर हम बात करें तो हमारे पास फीफा और ये गेम मेरे दिल से बहुत ज्यादा करीब है बिकॉज इस गेम को ऑलमोस्ट मैं 12-13 साल से खेल रहा हूं बट अगर हम फीफा ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज की बात करें तो वहां पे चरणजोत एंड सारांश 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में अपने स्पॉट को बुक किया उसके बाद सागनिक एंड आदित्य चड्डा ने बाकी के 2 स्लॉट्स को बुक किया एंड अब ये लोग स्टार लाइनअप एक तरह से मैं कहूंगा सीधा ग्रैंड फिनाले में हमें खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं तो मजा 4 चांद क्योंकि ये प्लेयर्स फीफा के इंडिया के प्रो प्लेयर्स एंड आई नो दैट कि हमें एक नेक्स्ट लेवल और बहुत ज्यादा टैक्टिकल गेम देखने को मिलेगा फीफा का That's right BB what an explosive series of qualifiers we have had with non-stop action every month चलिए जरा नजर डालते हैं पूरे स्टोरी पे so far बिल्कुल अगर चाहोगे तो ऊपर नहीं आ पाओगे जो हाइट का जो होता है ना प्लस पॉइंट जो हाइट का एडवांटेज होता है अगर किसी का टाइम पास है उनको पता था कि वो खुद क्वालिफाई नहीं करेंगे दे विल लाइक कि हम तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे तुमको भी हम नहीं जाने देंगे Oh my God, क्या ही वीडियो था यहाँ पे यार आयुषी जिस तरीके से सारा जर्नी था एक टू बी ऑनेस्ट आई से दैट कि एक रोलर कोस्टर राइड था इमोशंस का क्योंकि ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज हम बहुत बार मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी ईयर लॉन्ग एक पूरा ये टूर्नामेंट का इसका स्ट्रक्चर था ना ऑब्वियसली अगर हम इस टाइम पे डाउन द मेमोरी लेन देखें तो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हो गया क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था बहुत सारी चीजें हुई है बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी हुआ है उसके अलावा कुछ गर्म मोमेंट्स भी हुए थे बिटवीन द टीम्स बट अच्छी बात है वो गेम ही तक रहता है बट हमने ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में एक चीज तो देख लिया और जनता ने भी अभी इस वीडियो में देख लिया कि एक ट्रू एसेंस एंड एक पूरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें देखने को मिला सो या वन ऑफ अ काइंड टूर्नामेंट जैसा कि मैं 2 बार कह चुका हूं बार यही कहता रहूंगा That's right BB and I think जिस चीज के लिए अभी जनता यहाँ आई है वो चालू करवा ही देते हैं यार To start the Esports Premier Series Grand Finale Day 1, we bring you a performance from someone the gaming industry really adores. So here we are. It's day 1 of the Esports Premier Series Grand Finale. Trust me guys,
we couldn't have asked for anyone better than him to kickstart our event. What do you think, BB? बिल्कुल सही यहाँ पे जस्टिन हो एंड उनकी मैं कितनी भी तारीफ करूँ कम है. बहुत लोग यहाँ पे जानते हैं उनको क्योंकि जितने भी आपके म्यूजिक वाले सॉन्ग्स होते हैं वी गेमर्स लाइक हाँ चिल गेम खेलते हुए थोड़ा वाइब करने के लिए म्यूजिक चाहिए होता है. जस्टिन को सब जानते हैं, साउथ कोरिया के मैं कहता हूँ फास्टेस्ट राइजिंग टैलेंट रहे और खास के उनके ईडीएम्स. ओ माय गॉड मजा आ जाता है अगर आप कोई भी गेम खेलो और बैकग्राउंड में वो चल रहा है तो मजा है. लेकिन हाँ उनके अगर मैं मेन सिंगल्स की बात करूँ एक वेट फॉर यू है जो कि पॉल ओकेनफोल्ड्स के मिक्स एल्बम में शो के मतलब आया था एंड उसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा ज्यादा उनका मिक्स है नेवर माइंड द बुलक्स करके. सो वो भी 2011 के मतलब फीचर किया गया था बेस्ट ऑफ 2011 में. सो यस जस्टिन मजेदार इंसान जिस तरीके का उनका काम है. बट हाँ और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस. सो मुझे लगता है कि जल्दी से शो को स्टार्ट किया जाए क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा. मुझे एक बात और पता है हमारी जनता उन्हें भी इंतजार करना बिल्कुल आयुषी पसंद नहीं है. So let's get this show on the road. Welcome to the city of Oz. We hope you enjoy your stay. I think we're online. Join the movement. We are the underground. No, not that one. The one from Justin. Right, okay. 1 second. Hello, this is Justin L. I don't know if you can hear me or if you're listening. Don't lose hope. Remember this. Remember this. Remember this. What's wrong? We lost connection. I can't get the frequency down. Keep trying. Welcome to the city of Oz. We hope you enjoy your stay. Welcome to the city of Oz. We hope you enjoy. Wait. There's another signal trying to break in. It's him. He's back. For your fucking life.
If I can, if I could build you up, don't bring me down, bring me down. If I fall, then would you lift me up? Would you lift me up or bring me down?
to make you feel right, make you feel alright. And everything you wanna know, I'm telling you, I'm telling you. Spreading for so long, spreading for so long. Do you feel right? Do you feel right? This is all I wanna know. Are you telling me that you'll be by my side when I wake up at night? Oh, and everything you wanna know, I'm telling you, I'm telling you. I love the city lights when you never look so bright. Oh, this is all I wanna know. Tell me you feel alright.
simple creature. An amalgam of her shades. We say that you made us. It's just bits and pieces. Our cook best is the ones before us. It's too Wow, that was definitely a crazy performance by Justin O. And equally as electric is our next reveal. Something all the teams are fighting for. This dark,
stunning and absolutely gorgeous Esportz Premier Series trophy. या मैं अभी ट्रॉफी आने वाला है, इतने ज्यादा सरप्राइजेस। अभी एक चीज मैं कहूंगा कि प्राइस पूल मैसिव है Esportz प्रीमियर सीरीज का, बट ये जो ट्रॉफी और इतनी शानदार ट्रॉफी है, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। एंड दिल तो कर रहा है कि घर लेके चला जाऊं। एंड मुझे ऐसा लगता है जितने लोग इस टाइम पे देख रहे होंगे इस अलग ही ओपी से भी ओपी ट्रॉफी को, मुझे लगता है जितनी जनता बैठी होगी सबका दिल यही करोगा काश हम लेके जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली वो नहीं लेके जा सकते क्योंकि इस ट्रॉफी के लिए मेहनत बहुत ज्यादा किया है, चाहे वो फीफा के प्लेयर्स हो, चाहे वो फ्री फायर के प्लेयर्स हो, एंड सब यहां तक पहुंचे हैं वैलोरेंट के प्लेयर्स। एंड ऑब्वियसली मैं एक चीज कहूंगा, मनी कैन बी अ मोटिवेटर, यस ऑब्वियसली, बट जो ये ट्रॉफी है एंड जो फेम और जो प्राइड है वो एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेटर का काम करता है। तो मुझे लगता है, क्या आयुषी तुम इस ट्रॉफी को घर ले जाना चाहती हो? यार सैडली हम तो ये नहीं लेके जा सकते ट्रॉफी, बट देखने में थोड़ी पैसे लगते हैं यार। It's time for the viewers to see what all the teams are fighting for. So production, can we please have a closer look at it? ओ भाई, अलग ही शानदार ट्रॉफी। और मुझे पता है जितनी भी जनता है वो ये जो हमने हाइप क्रिएट की थी ट्रॉफी रिवील से पहले, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ट्रॉफी और इतनी शानदार ट्रॉफी देख के उनके दिल में भी एक सेकंड को लगा जरूर से होगा कि काश ये हम हासिल कर पाते, बट हासिल तो उन्हें नहीं होने वाली यहाँ पे आयुषी। आई अग्री बीबी, ये ट्रॉफी है ही इतनी कमाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज है डे 1 ऑफ द ग्रैंड फिनाले ऑफ Esportz प्रीमियर सीरीज और ऐसी कमाल की टीम्स हमें देखने को मिलेंगी। टॉप टीम्स होंगी आमने सामने और करेंगी एक दूसरे पे फुल जोश से अपने स्किल्स से स्लेज हैमर से वार। ट्रस्ट मी गाइस, just today, but this is entire grand finale is going to be one action-packed event for sure, man. बिल्कुल सही। एंड जिस तरीके से स्लेज हैमर के मुझे लगा तो मुझे ना इस एक्साइटमेंट में बात है, बट हाँ एक चीज मैं जरूर से कहूंगा, यहाँ पे हारने की बात नहीं, खेलने की बात है। और मैं हमेशा ये बात कहता भी हूँ कि आप चाहे जीते या हारे, आप हमेशा सीखते हो और वह एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप आगे खेलने जाते हो। बट हाँ, फिनाले पे तो सबकी नजरें हैं, ट्रॉफी पे सबकी नजरें हैं। एंड मुझे लगता है ट्रॉफी के साथ साथ जो इतना बड़ा मैसिव प्राइस पूल है, कोई भी यहाँ पे लेस लेके तो सेटल नहीं करने वाला ऑब्वियसली। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा इन सारी टीमों से, क्योंकि अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, पहले ही कह देता हूं कि एक्शन बहुत ही ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा और हमें भी देखने को मिलेगा, हमारी जनता को भी। एंड एक बात है कि जोश यहाँ पे स्पॉन्सर है, ऑब्वियसली मेरे अंदर जोश आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ऑब्वियसली यू आर हाइप्ड अप और नॉट? I am super hyped up, man. Let's directly go and see what's in store for us on day 1 of this spectacle. All right. The action kicks off with the first semi-final of Valorant, wherein one team will move into the final on day 3. Moving on, we will have the first FIFA semi-final, which will be followed by FreeFire, where you have some of the best top names in the Indian scene fighting it out to gain early bragging rights in the grand finale. बिल्कुल सही। यहाँ पे उसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या क्या आने वाला है खास की जनता के लिए, व्यूअर्स के लिए, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तो एक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है, थम के बैठे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पॉपकॉर्न लेके रेडी रहे क्योंकि फिनाले आज डे 1 है, स्टार्ट होगा। हम लोग सेमीफाइनल्स के मैचेस देखेंगे। यहाँ पे वैलोरेंट का मैच होगा बिटवीन एक्सो एंड वेलोसिटी। एंड एक मैं ये कहता हूँ, दोनों टीमें वैलोरेंट के सिनेरियो में इस टाइम पे इंडिया की फाइनेस्ट हैं। सो मजा आएगा। धुरंधर कह लीजिए ना, महाबली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक चीज पक्की है कि ये जो मैच होने वाला है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होगा, जहां पे हमें बहुत अच्छे फ्लिक शॉट्स देखने को मिलने वाले हैं एंड सारी चीजें। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी अभी जो क्वालिफायर से जीत कर आया, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा कोई मार्जिन और डोमिनेशन से नहीं आया, 3-2 से उन्होंने ट्रू रिपर्स को हराया था। एंड ट्रू रिपर्स एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है आयुषी, बट स्टिल वीएलटी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। That is correct. और डेथ मेकर के एडिशन के बाद ये टीम अभी और भी अनबीटेबल सी लगने लगी है यार। इंटरेस्टिंगली एक्सो जब वो समुराई Esportz के बैनर के अंडर थी, उससे क्वालिफायर 3 जीता था after beating Velocity Gaming by 3-1 in the semi-finals. Man, I can't wait to see both these teams in action. Can EXO pull off an upset once again,
और will velocity assert their dominance? क्या लगता है? यार मुझे लगता है, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, हमें एक कड़ा मुकाबला, एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल मैच देखने को मिलेगा। बिकॉज दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, दोनों स्ट्रांग है अपने उनके एजेंट सिलेक्शन में, उनके मैप सिलेक्शन में। सो आई नो फॉर अ फैक्ट ये बेस्ट ऑफ 3 होगा, तो कोई भी इतने आसानी से तो आगे अपोनेंट को बढ़ने नहीं देने वाला। जनता को क्या चाहिए? एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले, ताकि उनको वो एंटरटेन्ड हो, वो सीख सके। सो मुझे लगता है अब कास्टर्स को भी बुलाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि वही मेन सारी चीजें बताने वाले कि कौन क्या कर रहा है। Yes, please welcome our casters for the match, CCV and Han. CCV has been an esports commentator for well over a year and a half now, और वो हमारे साथ Valorant के 3rd qualifier से जुड़े हुए हैं। वो स्पेशलाइज करते हैं रेनबो सिक्स सीज एंड वैलोरेंट में, और एशिया के अलावा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के इवेंट्स के लिए भी कास्ट कर चुके हैं। We have had a great run with him so far, and here's to hoping to many more. सो आयुषी, तुमने अभी यार सीसीवी को इतना अच्छा स्पॉटलाइट दिया, बट अब चलते हैं हमारे दूसरे कास्टर के ऊपर, जो कि अर्जुन सिंह एके हान है। वो ऑब्वियसली एक गेमर है, एंड उसके अलावा अगर मैं बोलूं गेमर, एंड जिस तरीके से उसने सारे गेम्स को स्टडी किया बहुत अच्छे तरीके से, एंड जो उसका मैं कहता हूं जो कलर कास्टिंग, इट्स रियली गुड। तो जितनी भी जनता है बहुत ज्यादा वो एंजॉय करने वाली है। उसके अलावा एक अर्ली एज से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कास्टिंग करना, एंड उसके बाद फिर देखिए एक कास्टर स्टार्ट करता है एज नॉट एज अ प्रोफेशन, कैजुअल, एंड नाउ वो प्रोफेशनली कास्ट कर रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, एंड पेयर्ड विथ हिज डिबेटरी, ऑब्वियसली वो डिबेट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो वो सारी चीजें, वो सारा स्किल सेट अब वो ला रहे हैं, जहां पे उन्होंने अपने गेम नॉलेज को अपने ओरेटिंग स्किल से जोड़ दिया। नाउ आई कैन से दैट यस, हान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टर इन वैलोरेंट, एंड इवन वो वैलोरेंट अब शिफ्ट हुआ है। मैं जनता को बताना चाहूंगा, पहले वो डोटा 2 खेलते थे अपने स्क्वाड के साथ, बट अब यहाँ पे वैलोरेंट वो कास्ट करते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। That's right. And casters पे switch तो हम definitely करेंगे, but before that, let's look at a video जहाँ पे Velocity Gaming के players हुए candid. ये इंडिया की top teams में से एक है. To all you Valorant fans and especially Velocity fans are definitely going to enjoy this. Definitely. Right to it. Hey guys, my name is Tejas Sawan. People know me as Right to Ace, and I play for Velocity Gaming. Hi, my name is Shagnik, also known as LF, and I am the controller main for the team. My name is Devan Jindas, also known as Deathmaker, and I am the duelist main of the team. Hi, my name is Agnya Kaushik, and I go by the in-game nickname of Mazel, and I play sometimes duelist, sometimes sentinel for my team. So, hello guys, this is Adarsh Singh. I also go by the nick Euphoria. I manage Velocity Gaming. My main agents are all the initiators like Sky, Sova and Breach. Whenever the team needs, I play those agents. I play Astra, Viper and Cypher in 3 different maps, and I really like to play Jet. You know Jet for LF. मैंने जैसे कि बोला I am the duelist main of the team, but अभी टीम को जो duelist का ज़रूरत है वो है Jet. तो मैं actually अभी सिर्फ वही खेल रहा हूँ, और उस पे ही मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ अभी मैं. So I play like different agents on different maps. I play a Viper on like 3 or 4 maps. I play Toa on Haven, as you guys have seen recently. So yeah, I play like different agents on different maps. My mains for now are basically, it's very map dependent, ki what map I play what. It's very varied. So I play Sky, I play Cypher, I play Killjoy, I play Raze, I play Reyna, I play Kaio. Out of the 16-17 agents, I think I play like around 7-8 of them on different maps for different times or for different reasons. The current meta is basically, I feel Jet should be nerfed because she is the only agent which is viable with operator. So I'm excited for Chamber actually, because new Sentinel has been launched in the game, and it's like a Sentinel come duelist. So let's see how it goes. For now, I think the meta is no matter what composition you have, a Jet is necessary in the team. So a team is always going to have a Jet, which I am not a big fan of. I'm not a fan of having one agent on every comp. I need
it's nice to see a little variation and some maps or some games without a jet being played. I think they should nerf her more. The current patch, I think, with Chamber coming in, I think Chamber has like changed the meta completely because it's like a duelist sentinel. You can do a lot of different things with Chamber. So yeah. Everybody asks for what the shortcut is or what the roadmap is to become a professional. There is no shortcut, there is no roadmap as such. You can pave your own way. You have to work really hard to get where you want to be. You have to keep watching. You have to keep watching other pros play and watch demos and yeah, just keep playing the game, grind the game a lot. They listen to my call, so whatever I say, like I feel like a king. So that's the pros. The cons are if I get tilted or I can't think properly, it affects the whole team. So performance of the team falls down. Or usually during the match I drink a lot of black coffee while playing. तो honestly बताओ तो सब like कोई भी प्लेयर अंडर प्रेशर पे नहीं आता है, सभी रहते हैं काम. बट मैं एज ए जेट मैं कभी कभी आ जाता हूँ प्रेशर पे, क्योंकि जेट का जो इन गेम जो रोल रहता है वो रोल रहता है कि पिक्स मैं कैसे जाके एक पिक लाके दूँ टीम को, तो हल्का सा मैं हो जाता हूँ अंडर प्रेशर. Velocity gaming not being subtle at all. We just thought that. I mean, that was quite an introduction, but before that, what an amazing opening ceremony. Thank you to Blackbeard and Ayushi. I mean, great introduction to the entire Esports Premier Series. Like they mentioned, it is a year-long event, and absolutely everything takes place under here. You have console games, you've got mobile games, and obviously you've got Valorant for PC. Not only that, for this year, next year onwards, we'll have far more titles. So make sure you keep on following Esports Premier Series on all sorts of social media. If you're watching this on YouTube right now, which, I mean, if you can hear me, you probably are, make sure you're subscribed, make sure you turn on the notification bell, as you surely don't want to miss out any esports titles that will be coming up in the following days and today. Because like Vibhor said in that pre-game interview from Velocity are like, we'll see you guys in the finals. They are confident they're going into the grand finals. They are confident they'll be playing in the grand finals as well day after tomorrow. But for now, they have the semi-finals against Excel. Before that, CCV. Yeah. I'm Han, this is CCV, and we'll be your casters. I mean, we are coming here courtesy of Esportz, and they've been scouting the entire Indian subcontinent, looking for the best players in Valorant. Now, Valorant's come up a lot, and it's got potential to be a major esport and go through the years. But yeah, you gotta find the best players, and we have that. Boy, do we have that on day one of the semifinals of the Esports Premier Series. We have got the top 10 players in the entire country for you, and they're gonna go up against each other like you just saw. That's gonna happen again tomorrow, and then we're gonna be left with the top 10 of those players battling it out for the top 5 spot. And of course, none of this would be possible without Josh, right? You want to be a Valorant player? You didn't make it to the top 20, right? But you still got those plays. You still want to show the entire world your talent. You want to show them your plays. You want to make those videos. And there's no other way, no better way to do that than the Josh app. Get on the Josh app. Show your friends that it doesn't matter if you're the top 20. You have the plays that are going to be entertaining. The same plays we're hoping to see today. I mean, we're definitely going to see it, right? CCV, the best. Like CCV was just telling me that this is going to be an insane match with Blackbeard, right? Every single player out of all 10 players, every single player has had absolutely stunning performances, irrespective of the agent type that they play, irrespective of what they play. And that's the thing about Valorant, that not only are there specific agent types and you have to play using your utility, but you absolutely have a chance to showcase your skill and all of your mechanical ability all on sorts of all maps that you're playing in, all of the games that you're playing as well. And that's the great thing about Esports Premier Series. It's an open tournament. All throughout the year, we saw the qualifiers, hundreds and hundreds of teams of all sorts of calibers, of all sorts of tiers signed up, played. We watched them on stream. We broadcasted their matches. They were absolutely great highlights there. A lot of clips that I'm sure the players will be proud of watching again and again on repeat. And wahi. And anybody was welcome. आपके 4 दोस्त और हैं, 5 बंदों की टीम बनाओ and get in the qualifiers, guys. If you think you're good enough, I mean, we all have had those moments, right? Esports
इतना पुराना चल रहा है अभी, अब तो लाइमलाइट में आ गया, राइट? बट आई थिंक द गेमर्स, द ट्रू गेमर्स नो द स्ट्रगल. हम कितने टाइम से बैठे हैं वेटिंग फॉर दीज चांसेस, राइट? नाउ द रिकग्निशन इज देयर. नाउ इज द टाइम. अगर 10 साल से बैठ के आप गेम खेल रहे हो एंड फाइनली यू फाउंड योर ग्रूव, यू फाउंड योर स्क्वाड, 5 बंदे लेके बैठे हो और वैलोरेंट खेल रहे हो, we are making it possible. Esports is making it possible with gig work, right? We're gonna have more of these tournaments, and it's gonna be the same thing. Open qualifiers, get your 5 people, and show the country if you think that you are the best. Come on here and prove it. Everybody wants to see flashy plays like we just saw, right? But we're not here to see the old flashy plays. We're here to see what you make of it. We're here to see what you're gonna create, right? Because Valorant is a new game. Brand new sort of game in the bigger scope of things, right? पुरानी गेम्स है 20 साल पुरानी है, उन सब का गेम प्ले जो है, उनकी स्ट्रेटजीज वो सारी सोलिडिफाई हो चुकी है. There's a certain way you do things in those games, right? वो सब कुछ सेट हो चुका है, एंड उनमें बस यही है that you can get better and better at a certain thing that's already been done, right? CCV. But Valorant, I would have to say, अभी तो पूरा स्ट्रेटजी क्रिएट हो रहा है, मेटा क्रिएट हो रहा है एज वी स्पीक. वी सिटिंग हियर राइट नाउ, द प्लेयर्स आर सिटिंग इन देयर बूट कैंप्स एंड दे आर वंडरिंग व्हाट दे हैव सेव्ड. दे आर सिटिंग देयर थिंकिंग ये सेव करके रखा है. एंड आई से वेलोसिटी की कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कुछ तो देखने को मिलने वाला है आज. हो सकता है. I mean, against EXO हमने काफी बार देखा, you know, in the previous 3 months as well, you know, we have seen velocity against EXO a couple of times, and बहुत बार हुआ है. Like, you know, Ayushi and Blackbeard were talking about, you know, in their introductory segment. First of all, yes. But yeah, she did mention that EXO did beat Velocity 3-1. So, what do you think is going to happen this time? Look, it's revenge. It's oh man, everybody loves the revenge stories. Badla fuels. Gaming में तो badla is like one of the top 5 emotions, right? I mean, badla can obviously energize you, but there are other things as well. But that's the thing. You gotta stay energized, but you have to. Even the players and all the viewers as well. It's gonna be a pretty long broadcast. I'm sure nobody wants to miss a single esports title, a single match. You're assuming it's gonna be a best of 3. I mean, you're assuming that we're gonna definitely look at the players. Look at the players in front of us. Look at Velocity. Look at EXO. They are ready, and they have showcased their skills time and again. A lot of familiar faces as well. They are. I mean, these players are experienced in esports all over South Asia and in India. Multiple titles, multiple teams, games, and well, many years, far more years than people have lived, including me. Some of these guys have been playing longer than I've been alive. You said something that just struck me right now. Some of these players have been playing these games longer than some players have been alive. That showcases the depth of esports. That showcases how long people have been competing. एक दूसरे के अगेंस्ट लगे हुए हैं प्रूव करने कि वो बेस्ट है, पर प्रूव कितना कर लोगे और कब तक कर लोगे. बिकॉज जब तुमने एक बार प्रूव कर लिया, अगले दिन एक नया गेम आ जाएगा for you to prove yourself once again. And looking at these faces, right, such familiar faces in the Indian scene as well. Right off the top of my head, I'm looking at Team EXO, right? Yes. That's Sai right there. That's Sai. Right in front. And I think looking at Velocity, everybody would say that they're very confident, right? But I know Sai as a professional CSGO player. Now, this brings me back. Valorant jo game hai. It's like, I'm going to explain to you for the newer viewers who haven't played that much of the game, here for the flashy plays, right? Valorant is a game, as explained to me by my friends who tried to convince me to play it. It's a mixture of something like a slow-paced FPS lineup, where it takes a little bit of time, and a faster strategic lineup because of the abilities of the new heroes, right? Agents. And somebody who's a professional CSGO player would be able to pair that with a newer squad. But moving on to the maps, CCV. Very interesting. Again, you know, the first two semi-finals. Today we've got EXO up against Velocity, and tomorrow we have Enigma against Global Esports. Both of the semi-finals are going to be a best of 3, and then on Friday, well, we have the grand finals BO5 as well. For now, in the best of 3, we can see Breeze has been banned, and most likely it has been banned by EXO. I mean, there's no denying that. Velocity, they adore this map. They have an insanely high win rate on the map of Breeze. So do we make sense for EXO to be like, nahi, ye wala map nahi khelna hame. We don't want to go on Breeze. Yahan pe Velocity ka bahut zyada, you know, taakat hai unki. It's the best of 3. You want to secure that first win. It's really important.
Exactly. उसके बाद Ascend में भी Velocity, they're like they said, like they are confident in the map, but they don't play it as much. And they'll be like, EXO may have a stronger hold or stronger grip than us on Ascend. तो Ascend को भी ban कर दिया गया. फिर आया हमारा पहला selection EXO की तरफ से. And यहाँ पे उन्होंने choose किया Split, which is very interesting. जब हमने प्रीवियस esports premier series के qualifier 3 में देखा था EXO versus Velocity, EXO ने हरा दिया था Velocity को इस मैप के split पे. So it makes sense why they have chosen for it. Recently बाकी जो भी tournaments हो रहे हैं उसमें भी these teams have gone back and forth, but split is a pretty equal map when you look at it from a historical point of view, looking at the statistics and all. इस मैप पे इन दोनों के काफी they're pretty equal. But wouldn't you say it would stand to reason that the second Velocity lost to EXO, हाँ. वो अपने boot camp गए, उन्होंने ये मैप खोला and they're like इस मैप पे हारा थे, ये मैप जीत के रहेंगे, ये मैप practice करेंगे. And that's the thing, right? Strategy की ये भी एक aspect है where you don't know कि वो अपने boot camp में क्या कर रहे हैं. Whether they're just sitting and watching some cartoons or they're actually practicing night and day, 24 hours. You don't know what's going on, right? So EXO might have selected this map ये सोच के कि उन्होंने already हरा चुके हैं, so they can pull another one out of the hat. But we don't know what Velocity's been doing. That confidence. You say you don't know for Split, just for Velocity. Bind पे, we're not sure about either one of these teams how they're going to perform against each other. Bind के बारे में ये है, जो Velocity ने map number 2 choose किया है. We have not seen these teams played against each other in a long time. It's been months and months. जब वे पिछली बार esports premier series में भी मिले थे, तब भी नहीं खेला था इन लोगों ने Bind. Bind was banned, and that's the thing. कि Bind of Velocity ने choose किया है. I'm more inclined to think more about Bind की Velocity यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ plan करके आए हैं. And Split they are like यार जो भी होगा, जैसा भी हम खेलते हैं वैसा खेल लेंगे, जीते जीते हारे हारे, doesn't matter. Bind हम खेलेंगे, and उसके बाद हम जाएंगे decider map पे Haven, where Velocity really have a strong hold. For the past 3-4 instances where EXO have gone up against Velocity, Velocity have won all of the Haven matches, all of the Haven maps, sorry. Haven पे EXO ने अभी तक हराया नहीं है Velocity को, and इसलिए decider में advantage हो सकता है. So EXO Split उन्हें जीतना है. Split उन्होंने pick किया है. I'm going to be honest, I'm fairly confident they can win it, and they may just win it for themselves as well. EXO अपने लिए early lead खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद what happens on Bind, what happens on Haven, that's the intrigue right there. What exactly have Velocity up their sleeves, or have they completely rolled up their sleeves like me, and they're just going to go all out flash? That's the beauty of it. That's pretty interesting argument to make, is that Split can favor EXO, but later, who knows? Decider match will be on Right. Yes. But that is considering that there is a decider match. Again, you're looking at Split, EXO, lag raha hai they're really going to lock it down, right? But like you said, Bind is unproven grounds, right? So nobody knows what's happening on Bind. So maybe Split knows that Split is in the bag, and maybe they're going to just 2-0 it in Bind. They're hoping for a 2-0 in Bind. So, wait. It is already in the map. We're already starting, and selection has happened. This is pretty interesting right here. We can see Velocity, जो हमारे left side पे हैं, उन्होंने they have gone for Astra Viper double controller, which is quite common. And considering Velocity पहले defense पे है, this is a very defense oriented, composition. Right. Obviously, you've got Vibhor on currently on the Viper, and then you've got help on the Astra. ये तो बहुत clear है. And on EXO as well, things are looking pretty interesting with their own comp. But given that they were so confident, and this is the first ever round of the semi-finals, stands to reason, kya pata wo kuch karne, like they might want to show that they're defending and might go for the attack. I mean, it's the first. People are known to pull crazy things in the first round, right? You can never say what's gonna happen. They might pretend like they're defending, but who knows? We're only gonna see, and the match is gonna start. We're in the bye phase right now, and positions le li gayi hain. I think focusing on B more or less. Velocity, yeah, their setup is going to be equal. मेरे को एक बार EXO के composition के बारे में बात करनी है, because a lot of people are going to be very interesting looking and very interested and intrigued looking at this composition. यहाँ पे EXO गए हैं एक double sentinel composition के लिए, and वो बात है defense में काफी strong है double sentinel, because sentinels everyone knows their job is to have lock down the bomb site irrespective of आप कौन सी bomb site पे हो. But on attack, how many rounds can they secure against Velocity जब उनके पास initiator के नाम पे KO है,
which, well, obviously KO is absolutely a great initiator, but he is not often a split when compared to Sky, Sova, or even Breach. Breach on the map of split. We don't have a Breach. Oh, that is very interesting to see. So EXO right now, they're pushing up mid, and let's see how the first round plays out. And the first round comes up. Skirmish happening. Nobody has gone out right now. Skills being completely destroyed before they even have a chance to get activated. Yeah. And first blood has still not been drawn. Abhi tak dono teams extra defensive. It looks like there is going to be a push now. Ooh, gets wall banged. That is true. And okay, EXO have a pretty strong hold of the bomb side. Here pe EXO they completely locked out Velocity using a Sage wall. They split the defenders in half. Unko defender spawn mein rakha. ये Velocity के दो लोग मर गए. They in retaliation they get one kill. That's the second kill, and now we're back on equal numbers. So Velocity are on for the retake. But the thing is, they're running out of time. And as we all know, in the pistol round, utility बहुत कम है. तो Velocity को यहाँ पे time ज़ाया नहीं करना होगा. They're already pushing. They've got to go for kills. Blackhawk, he goes to the corner. There's right twist with another kill. Both the attackers have been cornered off. यहाँ पे flash आता है. Velocity has half defused. एक kill मिलेगा EXO को. Right twist is the only person alive. He's got to get this 1 versus 1. 7 HP and all the pain shells get to him first. Team EXO with this execution, they make sure उनके सारे players मर गए, लेकिन their spirits are far more better in condition than the health of their players after round number 1 because they got the pistol. 1v1 पे आ गया था. Unfortunate for right twist, he couldn't clutch it out. The pain shells got to him, and yeah, half defuse सही था health की तरफ से. इतना explosive first round देखने को मिला हमारे को, and this is just foreshadowing पूरा tournament. Hopefully ऐसा होने वाला है. And first round, so important. Economy swings towards EXO, and Velocity game licking its wounds right now. अभी बैठने वाले हैं इनको. They need to get this defense. They did try. I mean, yeah, they weren't going to attack, but defense needs to be stronger than this, right? EXO has broken through on their map. We can see why EXO picked this map. They're feeling really confident, and feels like this is their game to lose now. It could be. And right now, anti-eco Velocity, they've barely got anything to buy. They've got Frenzy's upgraded pistols. उन्होंने ज़्यादा पैसे ज़ाया नहीं किए हैं. They've got a few credits here and there. EXO, on the other hand, they've gone for the proper anti-eco setup. Spectres, and they've got SMGs, they've got full armor. And we can cleaning up. It's just a cleanup crew right now. EXO. This is where things get interesting. Velocity और eco में जाके there is one objective, as we all know about the eco rounds. अब वो सारी rifles खरीदेंगे, they're gonna get full armor, they're gonna buy utility, and now they'll be looking forward to pushing through and holding an actual defensive. The momentum on EXO is getting heavier and heavier. I mean, it's a 2-0. The economy swung, as you're saying. Velocity needs to be putting up. I think they need to put all their eggs in one basket. Maybe I think stop one push because the split up thing is not really working out. No, if they let EXO get map control, I think Velocity should have realized this after the pistol round. If they let EXO get map control, they're gonna shut them down. But here is Wibho already watching for Raze, and he was pushing through. He was going for the place. Satchel tha, he was in the air, but he just couldn't capitalize off that kill. And now everyone from EXO is pushing. ये बहुत अच्छा kill मिलता है Ghost को. That removes one of the rifles. Oh, he deserved that. Sida blindly walking into the fire and going through for that kill. Deserved that kill. Yeah. They don't want EXO to take map control. This is Velocity's plan right now. But look at Sai. He's pushing off. He's holding towards sewers. Nobody from Velocity is here. सारे Velocity के players defenders spawn पे हैं. Making and वो अभी भी A पे आना चाहते हैं. Making sure his team makes enough noise to cover his tracks. आराम से चुपचाप जाने वाला trigger discipline. Gonna be seen pretty soon. Oh no, he's actually aiming. He needs to get that kill on the side. He's gonna see it. Oh, what a shot! That was almost a flick. Almost a flick. But he gets the retrap. Blackhawk is still peeking, though he's got the Spectre against rifles. Not the best of gunfights. He gets the ding, close for a gunfight, and he wins it again. Blackhawk is dealing insane amounts of damage, and that allows EXO to change strategies in the middle of the round. B पे जाएंगे, but there is already a person from Velocity on the B bomb side. They will be holding. I mean, he by himself has to hold down this entire push. Marzel को यहाँ पे सब कुछ रोकना पड़ेगा. He has to be sneaky. He tried to be sneaky, but Blackhawk gets his third kill, the third frag of this round, and that leaves Webhor all by himself. He nearly had that. Nearly had that. मेरे को लगा नहीं कि उन्होंने उसको देखा है, but his teammates did cover his back and check the sides in the back to see if the spike plant was going to be secure. Velocity Gaming, one left.
bomb, I mean, spike has to, pardon me, spike has to still be diffused on Mercer 3, I think, at this point. I would save, but what is there to save? What do you have that you want to save? A pistol, probably? Maybe not give more credits to the enemy team? I mean, he can say the rifle एक और बार अगले round में, looking at Vivo, Yeah. he will be the only person with the advantage. He's got armor as well. Sometimes better to just give the round. At this point, you don't want to, yeah, you can't, there's nothing. I mean, sure, try to make a play. We would love to see that. We would love to cast that. The viewers would love to see that. But कितना कर लोगे अकेले? I mean, इस point पे तो बैठ जाओ अगले round पे try it again. I mean, this was gonna be Exo's match. They were confident, right? The thing is, EXO का ये जो setup है, this is a agent composition. As we all know in Valorant, agent composition आपके कभी change नहीं हो सकते. The agent you have picked, you have to stick with them for the entirety of the map. Yeah. Once the map changes, then you can change. So EXO का ये जो composition है, this is a very extremely defender-sided one. लेकिन बात है, attack में they are winning all these rounds. They have a 3-round lead at the moment on attack. तो defense में जाके उनका जो strategy होता है, उनका जो stronghold होगा, that's Might going to fall increase through. twofold. Yeah, it's going to get even better. But okay, better, yeah. So basically, they've picked a draft that shouldn't be performing as well as it is right now. Velocity should be denying that. Exactly. So somehow they're winning at this point, trying a wall bang, of course. But yeah, Team Exo still looking strong. Velocity's already lost one. Now 4v5 ho chuka hai. Yeah. But again, it's the defenders that need to run down the clock. So Team Exo needs to push through and side. Oh, that's a double. That is very good from Marzel because after that gives them so much information, and the two sheriffs means two rifles for the Velocity members. Team EXO यहाँ पे man disadvantage में है, वापस से B में जाएंगे, लेकिन इस बार B में उन्हें सिर्फ Marzel नहीं मिलेंगे, बल्कि दो players मिलेंगे Velocity के. Utility throw हो रही है. That's going to be the Nano Storm. That's going to be burst open. Deathmaker still in the bomb site. He's got the pistol in hand. तो EXO का यहाँ पर अब क्या plan है? What exactly are they looking for? क्या ये switch है? Is this the end? Is this the end? लेकिन पीछे on the right side. There it is. Oh, it's a crossfire being maintained. Marzel gets his third. Ghost is not checking that. Marzel with the fourth. He doesn't even need anyone to help him. At this point, just go for the ace. Oh, could have been. This has major complications for, major complications for EXO. उनकी economy थोड़ी सी damage होगी, but look at Velocity's economy. Because they won this thrifty round, उनके पास pistols थी, barely अच्छी guns थी. They were against rifles full armor, लेकिन फिर भी Velocity जीत गई. And अब वो खरीद सकते हैं Phantoms. But CCV, we're looking at Sai with an operator. This is where it gets interesting. This is यहाँ पे तो एक shot होने वाले लोग. यहाँ पे interesting होने वाला है, and Sai, of course. Yeah. Very interesting. And playing as the attackers with an op. Yeah. Let's see how this works out for him. That's interesting. He's hoping for them to actually rush in. Not really happening. Maybe he will have to rush with the op. Maybe. Yeah, that's the thing. Sai is playing this role unless and until execute आता है. Because as an But initiator. all of his abilities are off cooldown, so he can. Yeah. He can use all of them. लेकिन जब तक execute नहीं आता तब तक he's going to watch his back. हमने पिछले कुछ round पहले हमने देखा, on like when he was in sewers and he was holding the backstab. He was watching for that. So that's his job at the moment. As soon as he knows other members of his team are getting a stronghold over in garage, अब execute आएगा. And here is the execute. He's going to use his ultimate, suppress away Marzel. He can't use his guns. There's the first frag. Right way goes. The showstopper is going to be utilized as well, but it won't get any kills as Marzel backed off just in the nick of time. So EXO, they're going to plant the spike, and now Velocity have to play for the retake, but look at the utility down. EXO are not letting Velocity into B-bomb side. EXO के सारे members B पे आ गए हैं. Marzel अकेले और defender spawn से आएंगे. Trades are happening left, right, and center. Sai also dies. The operator falls. The sage wall is protecting the attackers in rotating over to garage and over to the bomb site if they want. But Vibho, he was trying to cross from the bridge, but even he falls. Velocity are down to two members. Hellfighter and Marzel. They've got to do a lot. They have a lot of angles to check. Crossfires होंगे. Information is being provided, but look at the amount of angles they have to see. Hellfighter, he gets one. That's the second for Hell, and he'll be looking to reduce his fight. Marzel has to provide cover. Can he do that? Yes, he can. And that's going to be round number 2 for Velocity. A great retake, and that's an operator retrieve. That is such a swing. Itna bada swing. I did not expect
Velocity to take that one. Exo ने क्या maintain की थी वो ball fight? I mean, if Velocity had played even 1% lesser than what they just did, it's just pure skill at this point. ऐसा gameplay. This is यहाँ पे सारे यही देखने आए हैं. क्या gameplay था यहाँ पे? Exo ने ऐसा secure करके रखा था bomb site. But that Spike needs to be defended. Spike बहुत helpless होता है guys. तो उसके लिए 3 लोग साथ में खड़े थे. Not enough that 2 people standing in the same place. Maybe not the best idea. But what do I know? These guys are the pro players. I'm not going to question their motives. But 2-3 is the score now, and Velocity slowly coming back into the game. No, slowly more. I think this round is gonna go to Velocity. क्योंकि अब हम Exo को देखें. Let's look at Excalibur for example. What's the gun he's holding in his hand with that beautiful skin that I don't know the name of? Well, that is the Sheriff. And again, that's an upgraded pistol right there. Exo यहाँ पे semi eco के लिए गए हैं. SMGs लेके आए हैं, half armor कलियों पे upgraded pistol है. They're against Velocity जिन्होंने अभी साई की उठाई exactly. And they have rifles. So this round should go to VLT. Exo are going to push through everything they've got. They're using their ultimates. Killjoy lockdown का ज़ाया भी होगा. That's another ultimate gone. Velocity are also going to use their ults. This is going to let Exo push into the bomb site. वापस से विभोर भी यहाँ पे आते हैं. He gets 1-2 kills. And the lockdown will be one enemy remaining. Oh, that's going to be right away swinging wide and getting one more. Exo down to only the last member. That was Blackhawk. He got a single, but Team Exo 2 kills उन्हें मिले इस 30 राउंड में. काफी है. अब वो वापस अपने क्रेडिट सेव कर सकते हैं. And now they can push for like a full buy versus full buy. This is You will not kill my allies! You are divided! One less. Hiding. Last player standing. Spike retrieved. There. Bot coming back. Destroyed. 30 seconds left.
One enemy remaining. Spike down A. 10 seconds left. Flawless. Right there. I should probably place some stars in the astral plane. I should. Here. 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 Poison orb emitting. 30 seconds left. Last player standing. Another flawless from Velocity. So this is looking great. Score up finally. Velocity can lead now. This is the first time in this map we are seeing Velocity in the lead. So I'm sure the real team members will be happy. I can say certainly that all of the Velocity fans in the chat will be happy as well, seeing the team in lead on the map split. EXO पे pressure बढ़ते जा रहा है. But then again, EXO know कि जब उनका डिफेंस आएगा तब वो यहाँ पर चमक सकते हैं. Then it's their moment to shine. So अभी जितने rounds बटोर सकते हो बटोर लो. But after this, that's when you can have really a strong suit ready. And that's when you can really. सीसीवी मेरे को really लगा था कि कुछ ज़्यादा flashy नहीं try कर रहे. But like I said, first match में people do try. Astra just getting control. इतना confidence कि खड़े होके Astral form में पूरा का पूरा map navigate करना. At this point, it really says something, right? For Team EXO, Velocity. Yeah. Left with 2 now, EXO. This is such a swing. No team is able to maintain momentum. किसी का maintain नहीं हो रहा यहाँ पे. And it almost feels like they've forgotten about the spike. Oh, he loses the gunfight. Oh, this is big. I was like, Sai can kind of push up to heaven and be heaven. Lekin nahi. Mazil gets the kill that allows Hell to jump up here as well. Blackhawk is checking the angle because EXO know कि Velocity members नहीं होंगे. Oh, he goes into Astral form. That's the wrong time. Mazil gets the second and that's no. Blackhawk is trying to hold the angle, but no Velocity. From a 2v4, they managed to get it to a 2v0. This was great stuff. EXO, 1-2 problem here away. Sai unfortunately missed his shot. And then Blackhawk went into Astral form. At the wrong time. The worst time. It's almost like on cue. मैंने बोला है कि वो इतना safe feel कर रहा है कि वो Astral form में घूम रहा है. और जैसे किया, that was his downfall. Like it was almost on cue. And Spike also used in that round, right? We haven't seen that in a couple of rounds. But yeah, Velocity really picking up on a map that EXO thought they had. I think EXO still have it. I'm not gonna lie. We EXO fans, they like what's going on, but don't worry. I think second half is where a lot of it is at. A second half can be where EXO can be fine. I genuinely still believe that. Velocity, अभी जितने rounds मिल सकते हैं सारे ले लो. Honestly, Velocity should aim for an 8-4 split at the end of the first half. 6-4 है. Last के 2 rounds है. This is the penalty round of first half. Credit economy इतनी ज़्यादा matter नहीं करेगी. Ultimates matter करेंगे. Ultimates के बोलते ही showstopper आएगा. Speakers आ जाएंगे Sky के. And यहाँ पे initial 2 kills मिलती हैं. Again, it's a treat. This board is utility for the press. And he does this showstopper. Great kill from Excalibur right there.
another trade happening right Spike here. down A. And Team Exo now on man disadvantage. One enemy That remaining. reveals all of their locations. Marzel will reveals the location of the dead body of Exo. The ground will be buried. And well, 7 rounds is what Velocity have right now. We are going into the final round. Last round and in the Exo half. can push for a 7-5. Final member of this team, at that point, the 120 team once again, there's so many people on the enemy team. Right. You get pushed. There's nothing you can really do. This is, I mean, it was going pretty well for Exo, right? But Velocity's certainly taken it back, and that just goes to show. That's the first round, guys. First half, and we're going to be switching up. But like you said, the draft that Exo has picked really shines as defense. Defense. Yeah, absolutely. So Velocity Well, did but let's see how they do with the shoe on the other foot. Velocity should have been looking for 9-3 more, so they can only be 8-4 when you're against Exo. Look, Exo is also all 4 teams here at the grand finals are the best 4 teams in South Asia at the moment. That's why they are in the grand finals first of all. And oh, Hellfighter, he gets a double from the white bird spread. Right Race also follows through. Wimp is left by himself. Classics, they are there just playing around with him. And that's a flawless way to end the half. So एक flawless manner में half शुरू हुआ था. Switching sides. But in a flawless manner, Velocity ended it for themselves with an 8-4 lead. So they won't completely be satisfied with how this half went. उनके मन में अभी भी I think 9-3 ज़्यादा चल रहा होगा. लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. अगर Velocity यहाँ पे pistol जीते, everyone watching, focus on this pistol round. If Velocity win this, then they have a big, I mean, absolutely incredible, insurmountable advantage heading into the second half. लेकिन अगर एक्सो पिस्टल जीत गई तो कमबैक के काफी अच्छे चांसेस हैं. 8-8 हमें देखने को बहुत आसानी से मिलेगा अगर पिस्टल जिस भी टीम के फेवर में जाता है. वही बड़ी बात है. अभी मैं कह सकता हूं Velocity their attack pistol is a bit weaker on the map of split when you look at it statistically, and Exo का split is stronger because again it's a defender sided map usually, so शायद से Exo pistol जीते. But if Velocity upset for this round, it can be big. Right, we're just going to see how this plays out. Abhi, Velocity is on the other side now. Yeah. They have to be the ones to push, but like you said, it's going to be interesting to see. They have split up. पूरे के पूरे map में, they're not going for a single bomb site. Might be a tactic to divert the defenders, but हो सकता है. कुछ कह नहीं सकते इस time पे भी. They're still splitting up, not going to one exact bomb site. And the first blood, second blood dogs get drawn. Velocity loses 2 already. So now they have to retreat from A because well, there is nothing you can do. You know, you've lost your Jet, you've lost your Cypher. जो आप पे एक entry fragger है, एक लॉट और Deathmaker जो entry fragger है जिसको kills करने थे. Now that he is gone, all the pressure falls onto the shoulders of the support. Yeah, there was only 3 people left going 3 different ways. वो आपका scout attack की जगह scout बन गया. Instead of that, if you only have 1 person, so they're going to converge. All of them going to converge on the B side, but B side pretty well locked down from Team Exo. I mean, even the people from the A side are moving towards B. So 2 people, you know where they are. 30 seconds. You know where they are left. exactly. You know where the assault is coming from. You just gotta defend. So it should be significantly easier for the defenders. Again, it was going down with the 20 सेकंड बचे हैं. Velocity को push करना है ना. ये time pressure में आए हैं. They have to execute. They have no other option. That's another kill. Before from heaven is gone. दोनों बंदे अब garage से आएंगे. That's one great headshot. So there are 2 members of Exo right here. They have to plant the spike. Can they plant the spike? Can they get the kills? He's all by himself. एक और kill मिलता है. And he made this run out of time. Back to back fake plants. Oh, that was so close. He gets it. Oh my god. That was an insane round. Exo को round मिल गया. I don't think they care about the poke. I don't I know. think it's a great clip. Absolutely, it's gonna go on social media. It's a great clip if you remove the time, right? Exactly. Those fake plants. But this Those fake plants. the time because Exo को मिल गया around. And yet again, what did we witness in the first half? We saw won the pistol, Exo, yeah. and now they're going to the anti. And also we saw Exo getting run down by the clock, and exactly the same thing happened to Velocity. They got the kills, but it's the time that took them out, giving Exo the first round and the significant advantage in the economy. So abhi Exo, on a very strong note, strong defense, that's what you want. So, like you were saying, pistol round, everyone has to look at it. And Exo won it, that's what matters. Anti-eco में भी अब Exo बहुत strong लग रहे हैं. Velocity barely have anything to show for themselves in terms of the guns they have. एक पहला kill Exo को मिलता है. I think it'll be a near flawless round if I'm being honest. Just because of the guns. Players are capable, but when you have classics, well, you can make something out of those classics, just what Marzel does.
when he gets rid of Sai. It's a 4 versus 4, but I still believe that EXO can have this round. Velocity are going to try. Velocity का यहाँ पे objective है kills लेना, and वो kills ले रहे हैं. This is looking interesting. Yeah, slowly. Velocity may just go for the 50. Win is now the only person left in the bomb site at the moment on A. कोई भी reinforcement नहीं आए हैं, and Velocity के members अब पीछे जाने का सोच रहे हैं. उनको B पे execute करना है. 40 सेकंड अभी भी round में, so they've got plenty of time to work. They were pretty easily taking out A side, trying to open the way, but EXO said they weren't going to let that happen. EXO ने पूरा का पूरा घेरा डाल दिया A side पे with their strong defense, but that only leaves one person in B. अकेले B पे एक player, Ghost, just sitting. Wait, No, Ghost is on A. The Ghost is on A. Yeah. CZ on B. He's gonna get pinned down pretty soon. So look, through mid, two people through mid and one person on the side are gonna pin him down. Probably go to A, but again, the time is running down the clock. You need to plant that spike. Mazel, he's got the classic. सारे kills यहाँ पर EXO को मिल रहे हैं. Mazel left by himself, and except for all those kills on A, जैसे ही Velocity ने try किया execute करने का, well, what happened? Ghost was there, Blackhawk was there. There's so much pressure when you see that single digit running down, right? At that point, you're not checking corners, you're not doing anything, you're just running. साथ में कोई देखे ना देखे, कोई spike carrier needs to go through, and the second your spike carrier is killed, at that point you're like, okay, let's just go for frags at this point. I mean, people are gonna die, but that spike's probably not gonna get planted, and that's gonna be 2 rounds going towards EXO. Again, good start of the half. This is. हमने पिछले पहले हाफ में क्या देखा? We saw this. We saw this last time, right? Exactly. What happened? What happened with the 4? जबकि Velocity के पास यहाँ पर upgraded pistols, and he knows SMGs and they've got Spectres and all. So Velocity with rifles, they should win this round. पहले हाफ जैसा नहीं होना चाहिए, because अगर ये round EXO के हाथ गया, तो अगला वाला भी जा सकता है. 8-8 will be on the board. So Velocity, the entire round lead that they had, 8-4 का, एकदम से it will be just gone. It'll extinguish, it'll vanish, and they won't have anything to show for it. So we'll be on equal footing then 8-8, and EXO का जो stronger half है because of their composition, वो equal terms पे खेलेंगे. Not a good spot for Velocity. I mean, it already looks like it's causing a difference, but कह नहीं सकते कि पिछली बार भी उनका फोर्स नहीं था. But अभी Velocity को ये round जीतना है. They have to members on A, they have to on B. They're taking the gunfight, and EXO gets the first kill. So, and that's the second HP. Oh, Velocity, they're in a bit of trouble. ये सारी guns अभी हमने देखा XCali को. He retrieves that Vandal. He knows how valuable that is. What exactly is Velocity going to try now? Oh, the spike is still on B. Oh, that's not looking good. Spike अकेले B पे drop हुआ था. Mazel may be going to retrieve it, and that's going to take up a lot of time because Spike पे already defender है. But उसी time पे ऐसा लग रहा Velocity Spike doesn't check the corner. Oh, that's the whole thing. At this point, Velocity की team इतनी outnumbered है that they're just getting cornered. At this point, how are you going to do that when you're just getting cornered from every single side? कितने side check कर लोगे? He tries to rush in. Oh, tries to rush in, doesn't work out. Gives EXO a flawless victory, making the score go to a 8-7. Not looking good for Velocity. It's gonna go equal out. They had a 4-round lead, and EXO's just bringing it back, and they call a timeout. I mean, I think they need. I think it is a pretty. They do need a timeout at this point. It's a significant one. It's a necessary one. Should I use that term? Because यहाँ पर Velocity को सोचना पड़ेगा. And right away, he called the timeout. We saw in the interview, he's the IGL. He's got to make sure everyone's on the same page, and this is what you do. For all the viewers as well, irrespective of आप कौन से esports title में खेलते हो, whatever you play, except for FIFA, which is all alone. That's 1 versus 1. That's a duel against your opponent only. The true duel. But if you're playing in a team composition, or any esport title that has multiple players together, be anyone, FreeFire भी हमें देखने को मिलेगा. But like that, IGL has got to make sure everyone's on the same page mentally and strategically. EXO यहाँ पर they've got to think things through. वो यहाँ पर बहुत calmly खेल लेंगे. They won't have any major changes. Velocity on the other hand, वो यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि उन्होंने 3 राउंड दे दिए. पिछला राउंड जिसमें उन्होंने सारे गन्स खरीदे, सब कुछ खरीदा, वो पूरा का पूरा चला गया in a flawless round. They had no casualties in their opposing team whatsoever. Nothing. No kills. And that was the round they were primed to win. क्योंकि उनके पास guns थी, they had rifles, and they were against pistols and SMGs of Team EXO. And वो round flawless किया. That's going to put Velocity in many factors, economically, mentally, and even looking at the round as well. So इसलिए considering that Velocity को यहाँ पर they've got to go for a refresh. Hopefully the timeout was enough.
to restart their brains and now to push for the 30. उसके लिए try कर सकते हैं. L5 के thing, down on low HP, right race is there as well. Not a lot of armor on these guys. Velocity push करेंगे for this execute, but I don't know how likely it will be that they'll win this round. Yep, trying push into A, and looks like they're in there, but defenders are yet to react. They do. There we go. Velocity gets taken down. Their A push is completely decimated, but there's a second push coming. Will Team EXO expect this? उनको expect दो लोग तो मार चुके हो. So maybe Velocity would go for B. No, they are backtracking. They're going to go rush B through mid, and there's one person watching now. Again, checking corners. There we go. Oh, look at that flash! The worst time to reload. Side data also great. Again, just the flash. Again, a flawless round, CCV. What is going on? Velocity. They're going to go for the full. Okay. Let's bring it into the context of the first half. Velocity were down plenty of rounds, 3-0 down थे, लेकिन उन्होंने comeback किया. अभी EXO 4-8 down थे, उन्होंने comeback कर लिया. We're back on neutral terms. The round count has been neutralized. That's not the point. Again. So what you're saying is that we could not have asked for a more explosive first match. इससे सही 8 and 8. वही. And now the thing is, ये round जो भी team जीतेगी उन्हें lead मिलेगी. More so, economic damage बहुत ज़्यादा होगी. दोनों teams यहाँ बहुत expensive buys में गए हैं. They go to operator. यहाँ पे पहली kill मिलती है Excali को. Detonator is gone. Sai has his off. Excali is just pushing through mid, and he gets 2 kills near bottom lane. And एक और मिलता है. That's the triple for this match. One enemy remaining. Velocity के members towards से भी आएंगे, but Ghost is the player you can rely on. अगर आपका कोई भी teammate बहुत ज़्यादा trouble में है, जिससे पिछले round में Sai था heaven में. Ghost is gonna appear out of nowhere, well, pretty much like a ghost, and just take that final kill for you to win the round. Third flawless consecutively hand, full by Thaye, and Team EXO, 9 rounds now. 3 rounds flawless in a row. I felt that we were just getting alone when your entire team was gone. He's like, this isn't FIFA, this is Valorant. Where are the rest of my 4 guys? They're already gone because Team EXO is on a roll right now. Yeah. Completely destroying. As you said, CCV starting में, these guys, जो उन्होंने draft pick किया, it was supposed to be this way. It was supposed to be strong. So maybe the starting rounds that Velocity did win were the chink in the armor, and now that chink has been fixed, right? Because these switch sides, that draft is showing its colors, and they are colorful. They are colorful. Coming from India, the land with the peacock as the national bird, it's colorful as hell, and this draft is really showing up. Yeah. And it's gone from a 8-4 to a 9-8. Yeah. And Ecorva EXO still looking good. There goes Sai's utility. It suppresses playing your members. Right race gets the initial kill. This is big. Initial kill in any FPS title is a big factor. And यहाँ पर Velocity को initial kill मिलती है. So which is nice. They're still looking for kills. Deathmaker यहाँ पर, he's going to use his Blade Storm. पिछली बार जो हमने देखे थे, he got a 4K with them. But at least it won't be a flawless round this time, right? They've broken that barrier. Let's see if they can break the victory as well. So, I mean, Sai, with the off, is going to try and stop any kind of advantage to be. But ऐसा लग रहा है Velocity is also adamant. उनको भी ही जाना है. Yeah. तीन लोग push कर रहे हैं, and the rest are also moving towards B, leaving one person in A. ये बहुत expensive push है Velocity की तरफ से. They're using all of their ultimate. They're using all of their utility. अभी भी 25 सेकंड है. Side control नहीं मिला उन्हें. They still have to plant the spike. Sai will back off. He knows this is too hostile of an environment for him to survive in. However, Blackhawk can absolutely survive and thrive and kill. That's exactly what he does. Velocity, regardless, they still managed to get. Clock is running down, single digit. 10 seconds left. 10 seconds remaining. Has to be It has to be planted. It's gonna go to fight time. Velocity have to exit the bomb site. They have to go back. A lot of pressure on these two attackers right now. They cannot get the best. Or they do get detained, and those are kills. That spike left alone. A valiant effort from Velocity. क्या round था? I mean, इस round पे अगर वो break कर देते defense EXO का, तो बहुत worth it रहता. They would have earned that defense break. I mean, but नहीं हो पाया. But very well played. But you gotta understand, these are top tier teams. These are the top of the country. It's not gonna be that easy to break a lead like that. And finally, एक team पे clear momentum दिख रहा है. They have won 6 rounds consecutively. Even if it wasn't the flawless, right? 6 rounds is something to think Against about. arguably one of the best teams. I mean, all 4 of these teams are the best
you know, in the region right now. Well, like I've been saying, like everyone has been saying, all players, all teams, and all sorts of esports titles, if they are in the grand finals of the Esports Premier Series, they're there for a reason, and they're gonna prove it, as EXO are doing right now. So again, पिछला round बहुत expensive था in terms of the ultimate economy. अभी भी काफी ultimates हैं. VLT have used their Viper spit right now, and उसके जरिए, you know, Hellfighter, he may try and lodge up some angles. EXO as well, they've got 3 ultimates. They've got the Resurrection, which is big. Not only that, but the Cosmic Divide on Astra to split apart any attack that VLT may be planning. So अभी के लिए EXO, they are the first team to reach double digits. 10 round हो गए उनके. 2 more they get match point, 3 more and split is theirs. And right now, that's a great kill from Deathmaker to open up the round. However, he gets traded out instantly. Ghost वापस आए, but he won't live to see another day. Okay, this round will go. I mean, at the very least, the bomb set will go in Velocity's hands. लेकिन EXO के पास यहाँ पे और the manpower is depleting. Not just what will. The neural theft as well reveals the location of Excali. He tries a jumping shot. He fails, and now it's all left on Killjoy, which I don't think she'll be able to do much, considering it's a 1 versus 4. 30 seconds left. I mean, Velocity is certainly familiar with this situation where there's one person left, right? Yeah. But at this point, I feel like pura round pata kahan chala gaya. Wahan pe Astra was going to split the map in half and going to make it an impossible push for Velocity, but that Astra pickup opened up the entire bomb site, and they just rushed in. And I don't think EXO was expecting the Astra to get picked up that fast. Yeah. And without the Astra, how are you going to prevent Velocity from just bomb rushing the entire bomb site? There's 4 people, you get them in there, and once the defenders are cleared out, you're already down 1 man. Yeah. And it's going to be a tough one. I think Wimp shouldn't be trying anything crazy here. You got to get 3 people down. Again, the clock is going to run down for the attackers, right? But defenders के लिए भी same है once the spike has been planted. Or spike plant हो चुका है. Oh, so yeah. Wimp needs to just, I think, focus on staying alive at this point. Yeah, Wimp is still alive. Basically, you know, he has full armor, rifle hai, save all of that, and just, you know, Velocity, they aren't going to get any casualties. So other than that, yeah, pretty much round done and dusted. Finally And, breaks the 6 wins Yeah, streak. it finally does, and Velocity are still in the game. For all the VLT fans who are thinking, ये हाथ से निकल गया है. It's not. Velocity, all they have to do is win another round, and we're on to a 10-10, another equal half. So, another equal round score. And then things can get interesting. Overtime is still a highly likely possibility. Although, I'll be honest, अभी भी EXO थोड़े से advantage में लग रही है. If Velocity keep on mounting this pressure, and if they keep on putting the pressure on their opposing team, then they can build something, but they're still in the initial stages of doing so. But at the same time, CCV, I would like to remind you that this is the map that EXO picked up, right? They wanted this map, not Velocity, and the fact that Velocity is performing this well on a map that they didn't even choose. EXO chose this map. They've won against Velocity on this exact map. So this is their map to lose, and Velocity is doing surprisingly well. इतना अच्छा performance on a map that they didn't even choose. उनका map तो भी आना है. So I struggle to think क्या करने वाले हैं ये. खुद के map पे क्या करने वाले हैं ये लोग. Yeah. But saying that, EXO like पूरा का पूरा solidify कर रहे हैं कि भाई हमने map choose किया है ये for a reason. So we are going to defend this one. Okay, this is our draft. This is our map. Alright, so now round number 20. यहाँ पर okay, EXO वापस से kills मिल रहे हैं. Velocity are down a bit in the numbers, लेकिन फिर से reflags मिल रहे हैं. Deathmaker gets another kill at the moment, and we're back on a 3 versus 3. But the thing is that EXO right now, okay, they are pushing for it. They're trying to get rid of Deathmaker, but they can't because the operator is too lethal, and Deathmaker is too lethal with whatever gun he has in his hands, especially the 30 AWP, seconds and he makes work with that. 3 kills all for himself for now. 25 seconds. VLT are rotating over to the bomb site. पूरी की पूरी team and as a EXO यहाँ 3-man. पर एक ही बंदा है. That's only going to be Ghost on A routers, and side control VLT को बहुत But he doesn't have to kill all 3. All he has to do is create enough chaos that they are not able to fight the spike in time. But Oh my God! Oh, it was almost down, and that's what I said. The chaos is all they needed. And it goes to a 3-2 1. It's gonna be a frame for the defenders. Brilliant defense. A brilliant defense on Ghost. Exactly what I said. All he needed was to create the chaos. And that's exactly what that spike was almost planted. I mean, if it was, all they had to do was play time for the spike, right? Yeah. That spike, I feel like it was 0.1 seconds away This from round me. would have been Velocities had it not been for Ghost. Yeah. अगर वो वहाँ पे उनको Single-handedly it would have defend. been 10-10. I'm going to be honest. This round might have been the reason why, if EXO do win,
शायद से इस round This has to be the MVP of the match right now. Yeah. Ghost one Definitely won this round. flawless लगातार देखिए, लेकिन सबसे important था ये एक 1 versus 3. As you can see, he is top fragging for his team. For a reason. For a reason. I think that just put him on the top spot. That last round did put him on the top spot. As a battle siege, it did. So I mean, that just speaks volumes. And It all it takes is one man. एक आदमी पूरी की पूरी फौज को खत्म कर सकता है. 3 लोग आए थे, उनको लगा था कि इजी रहेगा, पर प्रूफ कर दिया इतना इजी नहीं रहेगा. 3 लोग लाओ, 5 लोग लाओ, जितने मर्जी लोग लाओ. डिफेंड कर रहा हूँ मैं एक साइड. एंड इफ यू ट्राई टू टेक मी फॉर ग्रांटेड, देख लेना क्या होने वाला है यहाँ पे. स्पाइक प्लांट करने लगे सीधा, विदाउट सिक्योरिंग द साइड, विदाउट चेकिंग every single point in that side. They started planting right. They thought कि वो, you know, they were feeling a little safer कि 3 लोग हैं, 2 people are defending. But the chaos element, they did not account for. Absolutely didn't. And now Velocity, they can still push for it. They have to. Ghost यहाँ पे, he spots, he gets visual confirmation that there are plenty of members on Heaven, and he goes back, and everyone from Velocity, well, they're there. XO aren't pushing through. Go back up for killing it. They're going to play passively. They're going to let Velocity do all the hard work. 30 seconds. Spend all of their time, and जब time सारा ज़ाया हो जाएगा, तब जब उनका execute आएगा, जो अब execute आने वाला है A पे, इसको अब XO deny करेंगे. Now can they deny it? After divide आएगा Health की तरफ से, and all of the utility is going to be tossed on the A bomb side. 15 seconds. It has to happen right now. Deathmaker's blinded. He gets stabbed. 12 seconds on the clock. Marzel has got to push through as well. The spike has to be planted. Everyone from VLD is falling through. 1 kill milta hai. Wimp is gone. That's the second for I2S. The spike has to be planted. Do they have enough time to plant the spike? Spike planted. They do. It's almost 10 milliseconds. As close as it gets. I think Velocity. Perfectly timed. They get information. Spike absolutely cornered off. That's the third for I2S. One initiator killing another. XO are down to 2. Ghost is present, the MVP of the previous round. Well, now he has a teammate and it's on the same bomb set. He's got to produce the same result. Otherwise, it's going to be a different result after how the round ends. Because Velocity are the driver's team and they will drive home to a round win. 10-11. VLT are not out of this just yet. Operator उन्हें मिल जाएगी. Vandal भी Marzel retrieve कर लेंगे. And there is still time for Velocity to save the day. However, XO a single round away from match point. Nearly flawless gameplay there. Not according to the first round, but yeah. Amazing. 0.10 seconds. 0.10 seconds with a spike and switching it up. Velocity becomes the defenders and XO is forced to be the attackers. Ghost performed so well in the last round as a defender, but at this point, again, it was sort of a 3v1. It didn't work out because you needed to get the spike. You're not preventing it from being planted. You have to diffuse it and. Okay, Sai. I think Velocity definitely earned that win. Absolutely. They fought for their butter and they got it. And now they have to do it again. So Sai, he was the one taking initial gunfights. काफी damage with it. 7 HP पे आ गए. No armor. He has been healed by Ghost again. The profit of having the Sage in your team. But then again, Velocity have right to his thing the sky. So it all evens out later. This is interesting. Again, Velocity वापस से close quarter gunfight खेलेंगे. ये एक area है split के map का, where close quarter is the king, and Excalibur with the judge, he shows why he's the true emperor with that judge. He gives the verdict, and well, Velocity are guilty of trying to take too much map control, and the verdict will be passed off. That shot could have killed somebody on the other side of the wall. At that point, इतना जोर से पड़ा. That was a complete destruction. I think अगले round तक गायब हो सकता है बंदा उस type पे. 4-5. And they're going to push in B side tak pahunch chuke, and they're definitely pushing in B side. And at this point, A pe bhi do log hain. They're not pushing back. I think they think that it's a fake push on B. And A pe possible push and it goes in. Blackhawk gets a kill down and tries to stop the push, but it's not going to stop the pushing into the side. Velocity getting into B side. But the spike is yet to be planted, and 16 seconds remaining. Again, the clock running down these players. He has no choice. He has to spawn. But they're going to go for the kills. They are. Two left. Split is there. Okay, one person alive. He's got to do. Okay, he has. I don't think he has enough time in this case. No, he doesn't. No, he doesn't. It was point. Ooh, run down by the clock is dead. The clock is turning out to be the most lethal object in this entire match. They're really getting run down. These players need to not be walking towards their objectives. They need to be running based on what's going on over here. Itna zyada time
just going away. कहाँ जा रहा है ये time? Okay, I'm sorry, I have to cut you off, but look at the scoreboard. Look at how consistent everyone is. 18 kills for Hell, right to 17. दूसरी तरफ देखें 100 पे 18 Excalibur. We're watching nearly the same team mirrored, right? Exactly, that's the thing. Look at the kills. Everyone's performing with their greatest abilities. And the thing is, this is only map number 1. इसके बाद दूसरा मैप तो पक्का देखने को नहीं मिलेगा. बाकी में तो हम जाएंगे ही जाएंगे. But we may also see Haven. So these players, can they keep up a performance such as this for 3 maps? You know, esports athletes, yeah, for longer periods of time, if you're playing at a competitive level such as this. 14 cans of Red Bull next to you, right? I mean, they have to. That's what you keep 14 cans of Red Bull, because you got to play back-to-back matches and you got to keep that performance. You have to stay in the game. Yes. अब उठ के जा नहीं सकते. You can't just be like, अच्छा कल खेलेंगे भाई. नहीं. वहीं पे बैठना पड़ेगा. 3 मैच लगातार back-to-back. कल का नहीं, लेकिन इनमें से एक टीम परसों जरूर खेलेगी in the grand finals. Whether it's going to be VLT, EXO, we still have to find out. As Right to Ace gets the opening kill of this round, so this is again pretty important because Raze is gone from EXO. Excali गए हैं, top fragger is out. So EXO, they've lost their spearhead. Still they're on defense. Spike अभी भी B पे है. This is I'm not really sure Velocity यहाँ क्या सोच रही है. 40 सेकंड है. Spike के साथ कुछ तो करना पड़ेगा. A पे उनका stronghold बन गया. The spike is yet to be retrieved. Okay, finally, Health is going to retrieve the spike. Oh, sorry, Vibho is going to retrieve Pretty the spike. unusual push from Vib, wouldn't you say? It is. They have side control. Spike plant करना एक और बार time इस बार जल्दी से लेके जाओ. Vibho just run. You don't need to walk, my man. They don't need Just to plant repeat. spike. पिछली बार जो हुआ था, they don't want to repeat that. They have A, but they're still अब उसके बाद skeptical. They time don't होगा. know that there's nobody at A. They need to get into the side, plant the spike, and then switch over to defending, right? Because at this point, EXO realizes what's going on. पूरा वो अपना shift करने वाले. They're going to get the remaining people. They're going to close in on A. So what they need to do is, and that's going to be. I was gonna say. complete You know, if they are planning on closing in, they have a huge mountain to climb and a huge path in front of them. But well, they're slowly closing down the distance by getting rid of the members of Velocity. अभी भी okay, I don't think EXO यहाँ पर push के लिए जा रही है. They're saving their guns. 3 versus 4 है. उन्हें पता है Velocity के पास पूरा side control है. So what are they planning? हम B bomb side पर रहते हैं. हमें safe रहना है. Let's not try and go for kills. You know, let's not risk our lives and our guns for a pointless round which we know we won't win. Velocity को 11 लेने दो. अभी जो आखिरी राउंड होगा, the final round of regulation. Either we are going into overtime hand, or it's going to be a 13-11 victory by the slightest, by the closest of margins in regulation possible in Valorant. Velocity के पास इस राउंड में एक भी ultimate नहीं है. No ultimates. EXO, they have 3 ultimates. गन्स की बात करने का फायदा नहीं है. सबके पास फुल आर्मर है, गन्स है. चलो ऑपरेटर भी है साई पे. That's going to be great. That's what you expect. Economy मैटर नहीं करती. Ultimate economy बहुत मैटर कर रही है. I genuinely think EXO have to use all 3 of their ults, which they can. एक यहाँ पर showstopper है, which can be extremely lethal. We've already seen kills from EXO with that showstopper. He's going to use it. Can he kills? The timer is running down. He's going to throw it. He needs to get the frag. He spots one. No, he dies. He dies. He doesn't get the kill. The showstopper is gone. Excalibur is gone. It's a 5 versus 4. Favoring Velocity. That was a little too ambitious. I mean, oh my it God. limits you again. They have a limit. इतना ज़्यादा limitation है. EXO getting a little too comfortable. उनको लगा था कि उनका 12 or 10 काफी ऊपर जा रहा है. And they gave a point away. I'm getting fired. But this one, they have to secure it. They're going to overtime if they do not secure this round. Yeah. They have to secure this round, and they're already down a player. And at that point, I think Velocity is, that is why they're switching off back to A side. And they think that A was working out for them पिछली बार. तो एक साइड वापस revisit करने जा रहे हैं, but ऐसा नहीं है कि EXO को नहीं पता कि क्या हो रहा है. इस बार EXO हैं. Heading back into वही EXO यहाँ से निकलने नहीं वाले. They're throwing the nano storm. They're going to slow down Velocity क्योंकि हमने देखा है time is the biggest, most invaluable factor right now for both of these teams. Side control, no one is checking for win. Velocity के पास हाँ side control तो है लेकिन A mean से कोई आ सकता है, मार सकता है. 4 versus 3. Velocity need this round. All everyone watching has their hands together and their eyes, well, I hope they're wide apart and I hope they're watching what's going to happen next, because in the next 45 seconds, history is going to be made. So, at the moment, EXO are ready for the retake. Nothing, everything to play for, nothing to lose right now. Hare jeete, well, that's the map. Deathmaker holding the angle, close one, that's the resurrection, but that's another kill from Right to Ace. Flash भी करेंगे, दूसरा flash भी जाएगा. Health gets one more. EXO, both members are here. All the defenders, they're pushing through, and that is Health getting the ace.
and that with the TVs getting the kill for himself, and we are going to overtime on the first map, on the first day of the grand finale of the Esportz Premier Series, and this is just one game. अभी तो बाकी games भी नहीं देखे हमने, ये तो पहला मैप है यार. How we already in overtime? The semi-finals of the Esports Premier Series. And rightfully so, as Velocity Gaming take EXO down to the docks. Yeah. And they're like, you're not taking this one. The first map, yeah, you're not going to get that. We're going to take it to a 12-12. We're going to take it to overtime. And we'll see. तुम्हारा मैप है इसका मतलब क्या फ्री की विन मिलेगी तुम्हारे को. We're going to make you work for it. और यहाँ Oh my God. Yeah, they're not going to give it that easily. This was an amazing round played from Velocity. I mean, I feel like that starting frag that he wanted to use his ability, like really made him play way too aggressively, like he would have. Like I feel like he shouldn't have played that aggressively, like right at the start. Looking for a frag, it could have worked out, but again, he didn't need to do that. They were already in the lead, right? All right. So they would try to get a win. Yeah. Now the thing is, overtime में वहाँ है, Velocity are back on defense, and दोनों teams defense में अपने 8 rounds जीते. Majority of the rounds won by both VLT and EXO are on their defensive side. उसको दिमाग में रखते हुए VLT का defense है, अगर EXO यहाँ पर जीत गए, then they have good chances to win this overtime 14-12. लेकिन Velocity यहाँ पर again statistically they're looking stronger, but things can change. A minute on the clock. Not a single casualty has taken place, not a single gunfight has taken place. Only bullets have been fired from the guns, but on in pointless directions and on pointless objects, just hoping, pretending a wall bang may happen or something lucky will happen. But right now, what needs to happen is the execute from EXO. सारे के सारे ready हैं. Vibhor has been suppressed. He can't use his ability. EXO के members A से भी आएंगे, A से भी आएंगे, लेकिन shut down हो जाएंगे. Vibhor is going to double kill. He's got multiple people, and that's going to be a double kill. EXO are down to a single kill. Very peculiar right hand. That's the headshot of the Phantom, but health finishes things off. Vibhor gets the opening kills as the Viper, and the Astra of Hell finishes things off with a 2-kill of his own. EXO now are yet again in the disadvantage. लेकिन इस बार और ज़्यादा pressure है क्योंकि one more round and Velocity take their opponent team's map. That was a 6-round lead. Yeah. That's been completely taken over by Velocity. We didn't think it was possible, right? Velocity has shown us that it is possible. And they are capable of beating their opponents on their picked maps. And at this point, I'm just curious to see what happens on their map. This was their map. They were supposed to win this one. And let's see this one. Defending. I mean, let's see the final round of the first half. Velocity, well, they're on the attack right now. Let's make a tag on it. He's gonna get killed, but he loses his armor entirely. Velocity now, unlike EXO, जो A का push plan कर रहे थे, Velocity में B पे Spike कभी भी वहाँ है. I don't get this from Velocity. काफी time ज़ाया होता है Spike को retrieve करने में, वापस लेके आने में. Just carry it from the point forward, you know, just get it on a member who is safe, who's playing safely. But regardless, अभी के लिए Velocity map control ज़्यादा नहीं लिया, mid पे aggressive हुए थे. Spike is picked up. Fall back. The Spike has been retrieved, and they're planning for a Heading B towards take. B, yeah. And now it's a 1 minute timer that is remaining for VLT to launch the execution. They're trying to get a secure B side through mid, but it's not going to be that easy because EXO is already sitting there waiting. They know what's coming. They know that B side is going to be assaulted right now, and it's a 4v5. So EXO is looking strong, but again, just split, right? They're defending, so they split up, and there is the push. Doesn't work out. The mid push is completely thwarted. But oh, right, it's from heaven. It's gonna be big. Oh my God! Side control has been taken with Velocity. One by one, not a single refrag, not a single trade from EXO. And I'm going to get donuts in there. Velocity has 3. We know what happens in a post run when teams have time. And Velocity have plenty of time to get into good positions. This could be the end of split we're witnessing right here. We need insane pace to happen. Sai or Wim, they have to step up. At this very moment, they cannot die unsuccessful. EXO have fought their way from being down 4-8 to getting back up to securing match point. Wim will be pushing through by himself. Garage garbage keeps got a peek and even he goes. Sai, everyone, everything falls on his shoulders. He's got one, he has to shoot. That's 1 kill, 8 bullets, and a dream in his mind, and that is it. Velocity, they get the first map of their opponents, 14-12, split पे जीत गए हैं, and that means that well, they are leading this best of 3, 1-0, and now we're going to go on their own map. Insane performance. जीते 25 लाख तक के इनाम.
ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot?
तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश, ये है जोश।
ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।
है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम?
जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश।
ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? यार आयुषी, जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही हमें देखने को यहाँ पे मिला। एक अलग ही मस्त मैच, दोनों टीमों ने अपना बेस्ट दिया। बहुत ज्यादा नेक टू नेक हमें फाइट देखने को मिली, कुछ अच्छे शॉट्स भी हमें देखने को यहाँ पे मिला। हाई आईक्यू ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों टीमें इंडिया की फाइनेस्ट है। बट एक छोटा सा डेविएशन है यहाँ पे, एक छोटा सा सेगमेंट जो कि एक्सो गेमिंग पर है, उनके लिए एक वीडियो बनाया गया जो जनता के साथ अभी हम शेयर करेंगे। जनता को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस टाइप का कुछ इनसाइडर्स जब मिलता है। तो चलते हैं सीधा उस वीडियो के ऊपर। आई नो जनता, आपको बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो।
Hey everyone, my name is Sima Sethi. I'm from New Delhi, also known as Sai, and my current role in Team EXO is Initiator and IGL. Hey guys, Prabdeep Bhatia this side. I also go by the name Ghost in game, and my current role in Team EXO is Controller and Initiator. Hello, my name is Saransh and my in-game name is Wim and I play Sentinel for Team EXO. Hey guys, my name is Karan, also known as Excali, and I'm the main duelist for Team EXO. Hello guys, this is Shailesh Dalvi, also known as Blackhawk. I mainly play Controller in Team EXO. Like पहले I used to play Jet a lot. Then उसके बाद I started playing Sova because of my coach Hacker. He told me that this agent might suit you, and since I started playing it, I am addicted to it. It's really fun to play that agent. My favorite agent is Jet because I really love opping, but as I came in this team, there are already many Jet mains. So currently, I really like Astra. And in Sentinel I play Killjoy, but mostly whatever the agent is needed in my team, I play that role. My main agent is Killjoy. My favorite agents would be all of the duelists except for Yoru, Jet, Reyna, Phoenix, everyone. Mainly Jet because I can make more flashy plays with that agent. And बाकी सब भी है. For example, Reyna, so that I can get a kill and dismiss. So yeah, basically all the main duelists. Mostly मेरे favorite agents है कंट्रोलर्स, बेसिकली वाइपर, एस्ट्रा, ओमन, क्योंकि एक्चुअली मेरा गेम प्ले बहुत एग्रेसिव है, बट स्मोक्स के साथ मुझे थोड़े स्नीकी बिकी प्लेस करने मिलते हैं और मैं मेरे टीममेट्स को और हेल्प कर सकता हूँ मोस्टली. अभी के मेटा को अगर देखा जाए, एवरी टीम इज स्विचिंग टू सिंगल ड्यूलिस्ट एंड डबल इनिशिएटर, एंड हम भी उसी पे स्टिक कर रहे हैं बिकॉज आज की डेट में यूटिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन पिकिंग अप अनदर ड्यूलिस्ट. I think TSM started triple duelist and now अभी डबल कंट्रोलर वाला मेटा चालू है, and Indians are also following the same meta. टीम्स को बहुत रिएक्टिव खेलना पड़ता है कंपेरेटिव ओल्ड मेटा. अगर रिएक्टिव नहीं खेलते तो बहुत इजीली पनिश होते हैं और यूटिलिटी इज द मेन फैक्टर आज के मेटा में. मोस्ट अनोइंग पर्सन ब्लैकहॉक, डेफिनेटली ब्लैकहॉक. गंदे से गंदे लेम जोक मारता है वो, और वो खुद ही हंसता रहता है. बिल्कुल एक ढोल होता है ना, ढोल की तरह वो बजता रहता है और सिर्फ हंसता रहता है, सिर्फ पागल जैसा हंसता रहता है. Obviously, Mr. Hacker. Obviously, because जब भी सोता रहता हूँ लेक्चर्स के बाद, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है, वो आके उठाते, उठ जा, प्रैक्टिस है, ये है. रियली अनोइंग. हैकर एंड हमारा कुक दोनों ही बहुत ज़्यादा अनोइंग है, इरिटेट कर देते हैं पूरा दिन बूट कैंप पे. यूजुअली ऐसा कोई बंदा नहीं है, मैं ही हूँ जो सबको खींचता रहता हूँ पैर या ऐसा कुछ. अगर कोई ऐसा ही भी काम कर रहा रहेगा बूट कैंप पे तो भी मैं उसको आके अनोय करता हूँ. Technically, no one makes life harder for me. So my life in the boot camp is pretty chill. I don't have to worry about anything. एक प्लेयर चूज करना बहुत मुश्किल है टीम के अंदर. लाइक आई सेड, पांचों हम सेम है एंड मैं हम बाकी सबको मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ. बट अगर मैं एम के बारे में बात करूँ, जिसका मैं एम देख के बहुत खुश होता हूँ, तो पहला एक्सकाली एंड सेकंड गोस्ट. For me, the overall best player of our team is Blackhawk because basically he is the one, he is our X factor kind of, you can say. So yeah, he always performs. लाउडेस्ट साय, जो चिल्लाते कान ही फट जाते, हेडफोन के थ्रू आवाज आती है. Yeah, the highlight of the year is definitely us winning Sky Esportz Championship. पहले इतना इवेंट्स हुआ नहीं करते थे जिसमें SA एंड SCA के सब टीम्स एक साथ खेलते थे. इट ओनली यूज्ड टू बी SA वर्सेस जो भी इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब टीम्स. बट अभी के डेट पे जो भी TOs है तो सब वो लोग SCA टीम्स को इन्वाइट कर रहे हैं, बेस्ट फ्रॉम SCS. तो आई थिंक जितना वो लोग के सामने खेलेंगे उतना ही बेटर होगा इंडियन टीम्स के लिए, बिकॉज एक दूसरे का गेम स्टाइल वो लोग लर्न कर सकते हैं, कैसे कैसे खेलते हैं वो लर्न कर सकते हैं. एंड फ्यूचर में इट विल हेल्प इंडियन टीम्स इम्प्रूव. एंड आज के डेट पे दे आर ऑल ऑफ द इंडियन टीम्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे. मोस्ट डिसिप्लिन टीममेट, ये आई थिंक क्वेश्चन ही गलत पूछा है आपने. ये है तुम्हारा भाई Sima Sethi, also known as Sai, from Team EXO, and we are coming to Esports Premier Series 8, 9, 10th December. Fought against the odds, beat the heavyweights, and they are now in the grand finale. Just the kind of story we love to see in esports. We will now go for a short break before heading back to our casters for the next game.
Ayushi and Yeah. Blackbeard were back after that insane game. Oh, yeah. First match. I did not expect that, CCB. I didn't. And what I especially didn't expect was the game to swing like a seesaw. I thought it was going to go one way or the other, right? That's what everybody thought. But after the first 4 rounds going the way of EXO, They- right? And they then get destroyed to an 8-4. Coming back to a, what was it? I think 4. Yeah, 10-8, winning 6 rounds in a row. I don't know how we end with a 14-12. I don't know how we end with that. Honestly, at this point, I'm not completely. I mean, at this point, who knows what just happened? Velocity, they're going to be excels. You could see what was happening at the Velocity bootcamp. They'll be glad, absolutely, really happy with the overall performance because, well, look, in the overall context of things, let's bring up the scoreboard as well. Let's talk about the map. Let's talk about the map of Split and what all happened here. Because looking at the scoreboard, the performances we witnessed, round in and round out from all of the players. I mean, in terms of if you're talking individual performances, all 10 of the players had a pretty significant role. Or like Exact- every single one of them was playing to their best ability, but somehow it didn't work out because well, we did discuss that maybe their strategy was deciphered by Velocity and they figured out what they were doing and they broke it down. But that would have been, if that was the case, right, they wouldn't have gotten a 4 lead right at the start of the match and then win 6 rounds halfway in. If your strategy has been deciphered, then you're not going to win 6 rounds in a row. But then I don't know how they just lost the momentum. Like, it's such a strong momentum. Losing in the other team's eco round. Like, I don't understand how. They really would have stung EXO bad. That is the nature of the game, right? You can flip at any point. Boy, did Velocity really show I mean, that, they did. We can have a look at the scoreboard and just looking at the average combat scores of 2 players, It stands out pretty significantly. Health with the best average combat score. That is absolutely amazing to see. 245. As a controller, he got that. Right to ace, 233. As an initiator, he got that. Playing Sky. On the side of EXO as well, you had Excali, you had Blackhawk reaching 200s, but still not as close as 245 and 233 that Health and Right to ace got for themselves. So again, overall, great performances from all 10 players. Looking at the KDAs as well, looking at the economical ratings, like 23 kills, 20 kills, 19s, all of that was happening. Everyone has double-digit kills. That's what matters, first of all. But average combat score is also where it's at. Health and Right to ace, they tore apart. We also have Deathmaker, who had standout performances. Deathmaker wasn't the consistent, like always he was going to pop off, but when he did, well, he popped off. 4 Ks with the Bladestorm, 3 Ks with the Operator, initial kills, entry frags. He did all for his team, and then you had Vibho and Mazel for supporting roles. of the entire game. So definitely just general superior average combat score for VLT, and that was, it was pretty obvious in the game at the end, especially in the end rounds. It feels like EXO were like struggling to even take a breath at that point. VLT just had it so locked down, and the amount of times there was like a complete role reversal from these teams, right? The amount of times it just switched over because VLT went from an attacking position, planting the spikes and switching it over to defense because they knew that EXO was stronger on the defense. So they wanted to switch it over, make them attack them, right? They wanted to make them attack, and we're gonna The next map. This is very interesting. We go on over to Vine. It is Velocity's pick. I know everyone has been waiting. The players, they had their much needed break. After a 26 Round affair, such as was the case with the map of Split, we had to take the break. Now we're back. Everyone is ready. Everyone's energized. And we can start off buying. We can start off the agent selection, which is happening right now. Now, in this case, EXO, they are going to be able to choose. So since it was Velocity's map pick, EXO can choose the side, and they have opted for defense. Again, goes to show. Buying teams are a bit more favorable on defense if you look at it statistically. If you look at it from a statistical point of view, is what I'm trying to say. Velocity, they're locked and loaded. They're going for the double duelist North American composition. Well, actually, no, not necessarily. They don't have a single sentinel hand. So they don't have anyone to lock down the bomb side. They have 2 entry fraggers. Obviously, have Deathmaker playing the jet right now. And then you obviously have Mazel playing the race. And then you have Astra Viper, 2 map controllers. And finally, obviously, Right to ace playing the initiator like he always does.
And every single map. Maybe a nerf is in order, maybe, I don't know. These guys are really powerful. I mean, Astra splitting the map in half. That was the one match point where we saw in the last match where I said that there was a complete shutdown for EXO. That's where their 6th lead ended. The one where Astra was about to completely shut down B, got sniped, and that's how there was like a literal flow of VLT going through EXO's armor in the B side. But we're going to be moving on to Bind now, the first round of Bind, match number 2. This is basically a win condition for VLT. If they win this, it's over. They're in the finals. And they've got a shot at that massive prize pool. Okay, everyone, all of your favorite teams and fans, irrespective of the esports title as well, the good thing about Valorant more specifically is going to be the fact that right now looking at, even if, you know, again, in this case, let's take the hypothetical, whichever one of these teams loses, VLT or EXO, which one of them loses in the BO3, they're still going to go home with 1,25,000 rupees, and that is the same case tomorrow with Global and Enigma. Out of those two, whichever team loses, because they've made it to the grand finals, they're still going to get a lot for their values worth. It just goes to show how big esports is. Even the losers, they are going to respect the fact that you were in the top 10. You were like up there. With that? Another kill for Jet. The bomb set. It's going to be Jet vs Jet. Exciting the bomb for him, and that's the 2. How does he not get that? DM destroys, flicks back on Excali. They have the sight, they have the spike, and they can plant it However they want. Deathmaker's still there. He can peek the angle whenever he wants to. He does. That's a 4K. Is he gonna go for the ace? Come on, Deathmaker. Start off this map with the ace. He gets it! Deathmaker! He gets the ace! About like 4 headshots. How? ऐसे कैसे यार? हाँ. हरा चुके हैं और अब हमारे मैप पे देखते हैं क्या होता है. I mean, this is a complete switch. Spike plant करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. Just completely went in and cleaned up the cleanup crew, right? Crew. I mean, clueless, yeah. Exo's clueless on how to defend this. क्या करेंगे अभी तो eco advantage भी जा चुका है. And they have to defend this against SMGs, against a team जो इतना चढ़ के खेल रही है उनसे. Like. Round. You know, split के मैप पे दोनों वो अपने जीते थे. Now, well, Velocity they have the anti-eco. Marzer के पास Ghost है, full armor है. Then उसके बाद, you know, Velocity के पास they have everything. They're going to plant the spike, post plant killing है. EXO के पास guns नहीं है. I mean, look at Ghost. Look at the position he's in. Everyone is fighting. चढ़ के एक kill मिल गया उन्हें, but then everyone dies. They went for these kills, but Deathmaker helped. Oh, sorry, Deathmaker and Vibhor, they shut them down. Anti-eco, everyone knows how these go. So यहाँ पर kill मिल गया, and that was that. Absolute complete rush to B. I mean, जितना मर्जी different game ले आओ, जो मर्जी कर लो, जो region ले लो आप, rush B will never go out of style. Rushing B will be one of the oldest tricks, and why? Because it always somehow works. At least 1 or 2 rounds is gonna work, and VLT ने दिखा दिया भाई, इतना perfect rush. Just getting in there and again just switching it up. EXO is the defenders, but what happens when they've already planted the spike? The defenders become the attackers. They're completely switching it up. You're throwing them off their own game. Now we know that EXO likes to defend, but what are you gonna do sitting on A side when there's a clock ticking on the B side? So that's what VLT has figured out, that all they need to do is get in the site, lose a couple of guys, and this time they're being way more cautious. But the thing is, they are more explosive. I was going to mention the Blade Storm. Deathmaker gets the double. Alright, Deathmaker, we have to look at him. He is getting the kills. He is an absolute maniac right now, running with those blades. He is pushing anywhere. 2 kills अभी से मिल गए हैं. Refrag आता है. 1 kill मिला यहाँ पर Sai को, but even he dies by the hands of right to ace. ये जो bonus round है Velocity का, जहाँ पे उनके पास SMGs हैं and Blade Storm है, इसमें भी इनके पास man advantage है. EXO के 2 आखिरी जो member हैं, rifles हैं उन पे. Excali gets tagged. That's the 3rd headshot. That's the 4K. पहले राउंड में मिला एस, अब मिल गया. ही इज ऑन डबल डिजिट्स. इट्स बीन 3 राउंड्स. डेथमेकर के 11 किल हैं. दिस इज व्हाट प्लेयर्स गॉट. लाइक दिस इज हाफ ऑफ व्हाट प्लेयर्स गॉट ऑन द 26 राउंड के बाद. डीएम की पूरी टीम को लेके उनका पूरा स्कोर ऐड करके उसको डबल करके भी उसकी किल्स नहीं बनती. एट दिस पॉइंट ही इज solely destroying, alone he's destroying EXO, just dismantling their entire roster.
I think Exo needs some Red Bull right now. I think they're just getting a little too lethargic. They need, I mean, defend तो कर रहे हैं, but at this point तो सारे ले जाओ यार B. देखी जाएगी क्या होता है. सब B चलो because A तो कोई जा. Oh, कहते ही as if again on cue. A चले जा रहे हैं. The B push is done. They're fine. They're done with the B push, but who knows? Mid में बैठे अभी any this can go either way, and Wall's completely gonna block off. They're gonna be forced to back up. And बात तो यही है लेकिन that between Exo the gun disparity is so prominent that they can't do anything. यार पिस्टल्स इनके पास साई को देखते हैं शेरिफ है. He's against rifles, he's against bandits, phantoms. He can't do a lot. No armor on him. 60 HP. Exo के दो members alive हैं. Wind is the second one. Spike plant होगा. Wind push के U-Hall में. But even he's gone. And now Team Exo, well, everything falls on side. Oh, this is sad. This isn't looking good. This isn't looking. One can say कि हाँ यहाँ पर हारने के chances थे, but yeah, again, near flawless round, velocity की 4 round की lead है. But at the same time, CCV, we've seen teams come back, and if this is if this is anything to do with the last match, right? This is exactly what was happening with Exo, right? Yep. Who's to say that Exo doesn't just pick up now and goes and wins the next 8 rounds? Who knows? I mean, it could happen, right? But we're looking at a major buy at this point. A major buy. Exo is going to pick up the operator. Yeah, exactly. I think they've saved up a lot of credits at this point, and they're going full guns blazing. They've gone with pistols enough. Yeah. Exo right now after saving off the buying order, they are blue chip yet again. So उनको ये वाला round जीतना पड़ेगा. There is no ifs ands or buts. They have to win this. जीतना ही पड़ेगा. Otherwise ये जो investment है उनकी बहुत भारी पड़ सकती है. It can go down significantly. So Exo, they've got to get this right. They are looking for information. Trailblazers laptop ने use किया. It gets info that multiple people from Velocity are on A shore. So they are going to try and deny that as much as possible. Exo, on the other hand, well, they're still holding off. Again, operator बहुत close water है, and they get the first kill. So this is good. Velocity यहाँ पर under pressure आ रही है. They need to go for kills, and Vivor delivers in this instance. 2 kills with the Phantom. As the Viper, he gets that. And अब entry fragger के नाम पे Deathmaker भी है. He's gonna push into the bomb site. Yeah, Wimp is gonna retaliate. He has no choice. He has the support of Excali as well. And both of them deliver on this. Pushing down Velocity. Well, it was the Sova and the Jet on the side of Team Exo getting the kills. And now it is the Sova and the Jet on the side of Velocity, who are the only 2 surviving members. It's gonna be a 2-on-2 at this point. Yeah. Or Exo heading back to B. Meanwhile, Velocity thoda abhi bhi split up, and they're gonna planting the bomb at B. Wait, that is Velocity planting the spike. Yes. Standing ahead. I think with the Sova, it would be even especially more effective planting a spike because you have all the recon. You know where they're coming from. Oh, this is this was so close. Defender spawn पे कोई नहीं था. Defender got that. Deathmaker got that info that there was no one on defender spawn. So what's the next alternative for Exo to enter the bomb site? Well, obviously it's B long and B short. वही try किया and then right to ace with that perfect flick right there. Again, it just goes to show why we have seen so many aces from this man. He may play the initiator, but again, when he kills, he certainly does. So अब यहाँ पर Excali off save करेंगे. 5वां round भी Velocity को जाएगा. And this is the thing, huh? This is looking like a stomp. Yeah, because Exo I mean, this is looking like a. But एक अकेली operator क्या ही कर लेगी यार? How much can you do when your teammates are dirt poor and they can't get anything? You can barely afford armor at this point. एक op के साथ, you can't really do much. You have to. I mean, looking at that scoreboard, it's the saddest story in history right now. I feel like that's more about your teammates. I mean, even this is about the teammates. Oh, the team's letting him down. He's got the only. At least he can say that I'm the only one who survived the round, right? But tactical retreat was the only reason. I mean, he could have gone in. Died an honorable death, but true. That is, I mean, not even a risk at that point. It's just a throw. Like, सीधा फेंक रहे हो जाके एक op, कितने kills मिल जाएगी? You can't reload fast. You can't recock that weapon fast enough. They're just gonna push you. They're gonna jump on you, and not even like other games. There's 15 abilities to take you out before you even get to the objective, right? So you might end up not even seeing anybody.
And what? Right now, it looks like we've had a bit of a technical issue, so hopefully one of the teams, I think they're having an issue. I think hopefully gets resolved as soon as possible. I think it has. Okay, fine. A small pause we had there, but that's completely fine. We're going to be resuming Velocity. with round 6 very, very shortly. Pushing towards B side a little bit in the mid. They're gonna stay there. अभी decide कर रहे हैं वो कहाँ जाना है, B या A. They're still holding on. First blood will draw हुआ है. They're just waiting. And the round starts with a. Well, I mean, they're still pushing for it. You know, maybe Velocity, they're just in the initial stages of throwing the utility and then peeking angles. They're not looking for map control yet. How do map control के आएंगे since you know 15 seconds or so have been used up in the action phase. EXO की again economy अच्छी नहीं लग रही है. एक operator है and that's gotta go. Xcari right now, everyone will be looking at him and everyone will be looking at his crosshairs, trying to see how many kills he can get because he needs to get multiple kills. And already it's in the works. Velocity, do not push into the operator. Mat jao. There's no point. Go on A. A at the moment is completely. But at the same time, EXO's pushing back to A. There's a flank from Link. The flank is happening. Oh, that gets shut down. Right to was looking at Good it. effort. Good effort. It could have had potential, but it's been shut down. And now it's not full. But I don't feel like that flank delayed Velocity's push. Right? They could have pushed back to A, but at this point, A is already locked down. They do have a defender back at A, but they're going back. They're going back to B. There's nobody at B. Very smart from Velocity. I absolutely adore this play. They were like, अच्छा हमने काफी बंदे EXO के A पे मार दिए. EXO सोचेंगे हम A पे जा रहे हैं. No, we're gonna go back to A, and the side. Sorry, we're gonna go back to B. The side will be right up for taking, and that's exactly what happened. And once again, it's been swished. It's been swished now. Yeah. EXO's back on attacking and VLD is back on defending. I don't know how they pull this off, but every single round they're ending up basically defending. I love this. बंदे मर रहे हैं उनके. एक किल मिला है, दूसरा भी मिल जाएगा, and I mean Xcari yet again. He has to save your. Again, he's the last man standing. Some would say he's just too good. Some would say he's not trying hard enough. I mean, क्या कर लेगा अकेला आदमी इधर? Can Velocity get this kill, or is Xcari going to be punishment for it? He's peeking the angle. What? And okay, nothing happens. He falls back. They still have time to take him out. He gets the kill. Oof. Oh, that was a good effort. They needed to get that op. If they could take that op off EXO, right, that would completely decimate their economy. But that op is keeping them sort of in high spirits still, even though it's a 0-6. They still have that little hope that they still have an operator in their team. They're like, we're not completely poor yet. इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी भी. And by this round has to be EXO, and there are multiple factors that can contribute to that. पहली बात है EXO के पास 5 के 5 ultimates हैं. सारे ults यूज करते हैं EXO वाले. उन Astral Cosmic Divide, Brainstorm, Hunter Speed, Lockdown, the Seekers of Sky, सब कुछ. So what you're saying is it's basically impossible कि EXO ये round हारे. होना हम जीतना चाहिए. Technically speaking, right? They should not be losing this round. This is a full buy. It's a full buy for both teams. EXO ने पैसे बचाए, अब वो खरीद के राइफल्स लेके आए हैं, फुल आर्मर है उनके पास, ऑपरेटर है, 5 के 5 अल्टीमेट से. यार ये नहीं जाना चाहिए. This should not go away from your hands because you're currently down 6 rounds with nothing to show for it on the map so far. But at the same time, VLT as well as EXO does have the arsenal that EXO has, right? Yeah. They are matching the weapons, they are matching everything that they need that they could have bought. But it's all about the ultimates at this point. 44 seconds. ये जो X का मैंने देखा है on bottom right, that's Killjoy lockdown. It uses it. You know, you're smart man, it will be great. Cosmic Divide, Velocity use करेंगे, and आ गया. There it is, the defender Killjoy lockdown, wasting even more time of the attackers. Velocity को जिसने अटैक लिया, but don't destroy it using the Hunter Speed. Smart play right here. They're going to take side control. Opening kill मिलेगा EXO को. That's the second from side. His utility may have been destroyed, but his hopes certainly aren't. And EXO's hopes are only looking stronger and brighter in this round as they currently lead this 5 versus 3 scenario. So अभी के लिए retake आ गया. Technicals there in bathroom. He was there, sorry, in showers, but even he's gone thanks to the operator that has been seen the past 2 rounds. Right to HP try करेंगे. He's good for 1 kill, but that's all he'll get. Health is the only person surviving. He peeks and he dies.
Finally, the operator gets to show its true potential. Finally, Scully gets to use it. And finally, EXO win their first. So you were right. It was virtually impossible for them to lose this one. They did play it really well, but at the same time, मेरे को लगता है velocity भी इस point पे, I mean, they could have thrown the game, right? They could have just like thrown themselves at the bomb site and hoped for the best because they're so far ahead. पर एक चीज मैं रिमाइंड करना चाहूंगा सबको कि it doesn't matter तुम कितना ahead हो इस point पे, because जिस type के comeback हम already इस match, I mean इस match में देख चुके हैं. I mean, I did not expect that. That was some insane 8 round leads that people come back from. People have come back from. So don't take it for granted. You are ahead, really ahead, and just bring it home, I guess. But yeah, EXO, you said that they couldn't lose and they didn't. That's a hell of a prediction. No, that's the thing. Look, now they've used up 4 of their ult. So they don't have a lot of ult icons. They have guns and they have a bit of momentum and the slightest bit of hope. ये पहला half बच सकता है, लेकिन salvage something out of it. I'm not saying they're going to be in a good position. On the contrary, if I'm being honest, EXO के लिए in a good scenario, it's going to be an 8-4, maybe even a 9-3 split. Same as the last one. Yeah. But velocity यहाँ पर they're not going to give it away. They gave 1 round, sure, लेकिन velocity अभी भी strong लग रही है. So EXO को यहाँ पर पहले आपने जितना जीत सकते try करो. यहाँ पर try किया एक्सकारी ने काफी aggressive होने का, but it didn't pay off. And he loses an op? Wait. Once again, why are so many EXO members still on the B-bomb side? What's going on? They are now rotating over to A. लेकिन velocity को time मिल सकता है spike plant करने का. Viper split भी use हो जाएगी. Now they can plant the spike and his Viper split में it's a hell state. Sai gets a 2k again just like the previous round. This is big. If he can get consistent multiple kills, it will be amazing. The goal यहाँ पर peek करेंगे outside and he gets 1 and oh he has to stay alive. He peeks again. That's the second. The goal is doing amazing. It's now 1-4 with Sai. Okay. He gets the 4k. He gets the operator and he gets the round. That was a perfect demonstration of just complete trigger discipline from both of these teams. There was no skills there. There was just basically your aim is all that mattered. Yeah. It was a pure aim fest right there, destroying each other's faces. Like, oh, what a vanilla match, the vanilla round that was. But yeah, that's gonna bring it to a 2-6. Like I said, मैंने अभी क्या बोला था? Literally मैंने यही बोला था कि VLT needs to bring it home. 1 round गया, 10 round गए. That's how you play. You don't give 1 round, right? You do not even give a single round. They have to put an end to this if they want to. And right now, velocity में एक चीज है कि उनका upbeat होगा. If they use this round as well, उनको eco करना होगा. So they have to win. And this is a great start. Definitely it's the opening kill of the round. It's going to be against Scully pretty soon. Jet versus Jet वापस देखने को मिलेगा. Heads with home. Getting rid of Sal, the main man from EXO right now. Vim को kill मिल जाएगी. So velocity, although they are still in the man advantage, they have no map control right now. तो वापस से push कर रहे हैं इसके लिए. Showstopper भी use होगा. Ghost को 1 kill मिलेगा, but velocity are still looking strong. We are back on the Sova and Jet from EXO. They still have plenty of work to do. Post plan scenario वापस से. Man disadvantage. Before के पास snake bite है, तो spike भी होना और delay कर सकते हैं, and this is going to delay it even more. Before also help, he gets 1. Okay, Vim. He gets 2 headshots. He's peeking towards you, Halls. He's not peeking anymore. Oh, and that's going to be Vibhor getting his 3rd kill of the round. Either it could have been Vim's 3rd kill or it could have been Vibhor's. And well, we can see who was the better in that scenario. Velocity, they get their 2nd. And even in the worst case scenario from this point forward, वो अपने लिए ensure कर लेंगे कि ये half 7-5 तो होगा ही होगा. Maybe even more considering कि EXO की economy अब कैसी लग रही है. I mean, पिछली match में तो the scoreboard was sort of even. I mean, we're looking at the scoreboard this round. It's a definite tilt to one side at this point. VLT really showing why they picked this map. They practiced on this. They've been sitting on this map, and they know every single corner of this map. They're not leaving a single corner. There's not going to be any of those, nasty, dirty just takedowns from somebody that didn't check where you were. But yeah, velocity in a clear lead. But plant the spike. EXO. Here. We see someone can definitely see a single big. Excali peeks. The finger doesn't spot him yet. There goes the cloud burst. Flash bhi aayega. Excali's in the gravity well. He's got to escape that. And okay, abhi bhi very close for comfort for both of these teams. Velocity को यहाँ पर long range gunfight लेनी है. Short range नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि short range में the pistols still have a chance. They still have the potential
to get those kills. But right now, long range mein velocity, because of the rifles and everything, they can push for it. Excalis is holding the angle. Velocity, when the spike is going over to A, पहला kill उन्हें मिल जाएगा. That is great for Vibho. He gets rid of Sai. The reinforcements on the defender sides are happening on A. यहाँ पे cosmic divide भी आ जाएगा. Exo, a ghost tries to escape, but then again, frenzy के साथ everyone around him is dying. Exo down to 3 members, and well, make that 2 as the spike is going to be planted, and velocity are still 5 man strong. But you are. Spike's been planted. There's 2 versus 5. It's such a hard push right now. Exo from the defender's side, they always end up in this situation. This entire match has been happening. For some reason, they always end up in a situation where they're the ones that have to push. Outnumbered, and it's going to be even more outnumbered as the win goes down, leaving just one. I mean, should I call him a defender or an attacker? I mean, kya kar raha hai, is an attacker? He's been turned into an attacker, and that's it. Attackers win, but not him. I mean, the actual attackers win, which is going to bring it to a 2-8. It's not exactly what we saw last match. And if it goes to a 9-3, EXO can try and manage it. 8-4 is not happening. If it goes to a 10-2, I'm being honest, man. If velocity reached double digits in the first half itself, we might not be looking. I mean, at this point, a third game is पता नहीं इतना लग नहीं रहा कि third game पहुंचने वाला है. I mean, EXO needs to do something spectacular. I would love to see that. We would love to see that. I'm sure you would love to see that as well. I'm sure you would love to see a third game. This can be the final few rounds of Team EXO we may be witnessing in Esportz Premier Series throughout the year. We have seen so much of this team. They've played so many of the qualifiers. Sometimes they lost, sometimes they won. Third, second, bahut aaye. This can be the final few moments. You know, these are the final rounds they need to be playing, considering if they're losing and if they can't win. Grand finals में शायद हमें ये नहीं देखने को मिले. Definitely, oh, he just narrowly misses that. And again, one man's misfortune is another team's operator that can be retrieved. So we're still 4 man strong. He can't always be the man killing 3 people at the same, like right at the start. Can't always do that. But I think this point pe EXO needs to realize that they did win a qualifier. They did beat hundreds of people to get here. Exactly. So what's happening here? They're going to channel an older version of themselves over here? I'm not really sure whether right now they have to channel some sort of energy. He's still in the same angle. But again, his teammates are done. He's got to take action. And teammates members fall back to defender spawn. Because I think the spike is going to be planted on B. Yeah, Marcel is planting the spike by himself. Defender lockdown again. Marcel is completely surrounded. Even he dies. This is the perfect reading. Marcel was probably the most helpless he has been in this best of 3 so far. Now कोई teammate support play, पीछे से lockdown आ गया, defender है, defender कौन से defenders आ रहे हैं, you just didn't do anything, sad for him. But again, good for Team EXO. They took action and आखिरी round अभी अगर जीत गए, if it can go to an 8-4, it will be looking good. I mean, they can really make a comeback if they push for it. VLT made a comeback, why not them? Why not them? Exactly. Is it looking unlikely? Yes. But then again, it was looking the same for Velocity as well on the map of Split. And look where that ended up. So, still, a lot can happen. We don't know if EXO's like put all of their eggs in the basket. I mean, they're surely slowly getting back into the game. It was a pretty rough start, starting with bahut rounds haar gaye. And I think the whole point is that they were waiting for that round. The round where they had all their ultimates charged up. They had everything that they needed in terms of equipment. And you know what that tells me? ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को पता है ये क्या कर रहे हैं. They are understanding that they are losing this round, but they're not losing their they're not losing their hopes of winning this. Right? They know what they're doing. They know that these rounds are going, but they look like they have a plan. Hopefully they do, and for them, hopefully Velocity doesn't figure out what it is. Yeah, let's see. Well, right now, Team EXO at the moment they're just holding their guard. They don't want to do anything. Velocity are the ones who have to maintain initiative. Yes, the attackers are right here. And it is the final round of the first half. Use whatever you have, and all the ultimates are going to be utilized as well. There goes the Viper split from before. Health dies as the initial kill. So Velocity एक और casualty already आ गई है. Hunters फिर भी win use करेंगे, and more kills are just flowing in favor of Team EXO. So that is great. Velocity now are down to 2 members, and well, they do have something to show for it, but only a single kill. Ye Raze or Sova, Marcel and Right to Raze. I'm not really sure how much they can do by themselves. Until Speedy bhi aa jayega, not gonna tag anyone. Marcel is pushing, he needs this kill. He can't.
Even he's been shut down. Right to ace, the IGL is left all by himself. He needs to get an ace in order for his team to win the round. And an ace in 13 seconds, he won't get anything, and the round comes to an end. And they could have run at him in a line and it would have been a tough call with the spike, the clock running down. It's a hard choice. It's a hard situation. And that's going to be the end of the first half of the second map with a very, very decisive, clear steer towards velocity. And it's the same split that happened on. Sorry, it's the same. it's actually like the opposite of what happened last time. Exactly. And look where that ended up. I mean, if we're looking at a repeat of that one, right, we're looking for a hell of a match, right? Because we're looking at EXO coming back at least a four round in a row. So both these teams need to really evaluate how that first round went. First couple of rounds went. Didn't really work out for EXO, but I feel like they are in a strong position coming into the second half. Because it could have been worse, right? It could always be worse, but they did win 4 rounds. It's not like it's a complete loss, like a 10-2, like you were saying. That would have been devastating. This still not so much, right? But now literally Khalid just pushes and he gets 2. I'm sorry, our pistol round's just meant for Jets. Jetmaker got an ace in the first one, and now it's Excalibur with a double, and his teammates are still there. Well, they're barely alive. Vim has to use the right click on the classic to deal some damage. As both the duelists from the side of Velocity are alive, albeit with not the most amount of HP. Jetmaker, with somewhere around 13, he'll be peeking. He's got the support of Marcel as well. He dashes away, Vim ko kill milta hai, and dusra wala bhi mil jayega. And Wim's just gonna literally pick them off as they jump off. It was pretty clean picks. It's almost like he was playing an aim trainer at that point because Spike's been planted. You have to go for it. It's a pistol round. तुम और कर क्या लोगे वहाँ पे? क्या save? कुछ save करने को नहीं है. Spike plant हो चुका है, and you have to go for it. At this point. Now Velocity, they have to go for it. Again, Eco इनकी तरफ से पूरे अपने guns save करेंगे. Guns अभी sorry अपने credits save करेंगे. Guns खरीदे हैं EXO ने. They've got SMGs, they've got specters with armor. They're ready to tackle this head on. उनको पता है antis को जल्दी से निपटना है. Near flawless round होगा. Casualties ज़्यादा नहीं जाने चाहिए. And इसके बाद bonus round में देखी जाएगी जब Velocity के पास rifles आएंगी. अभी के लिए it should be an easy 6-8 score as EXO should be looking to pick this round up. Velocity, they're going to try their best, but then again, when you've got classics in hand against ghosts and all, okay, I mean, you can do stuff. Deathmaker with the sheriff, he just did something. He got the opening kill, and now he's looking for more. The killjoy is gone. So अगर post round पे EXO आ गए, तो बिना killjoy के it's going to be difficult holding down the bomb side against the retake that UAT will be planning. Yep. It's the slowest round of the entire tournament, I feel like right now. They're just holding on because the Velocity is trying to figure out where it all went wrong. And EXO's like finally finding the groove. They went from nothing to now 5, rivaling Velocity, almost back up. So inka seriously, like, ab samajh rahe, like I said, like, lag raha hai ki they have a plan. And I think yahan pe there's going to be the second kill of the match. I mean, the round. Yeah. But one of them has a rifle, one of them has a pistol. So, that's going to be a complete destruction from EXO. 30 seconds left. Spectre throws what he can't really do a lot. That's me, the least really damage. The three is going off. The यहाँ पे एक और he should be good for another, considering he's got the sheriff and considering, well, he's definitely considering that. That's all I have to say. DLT के बाकी members भी आ गए हैं halls में. They're flooding these hallways, but then again, close quarter में सारे मर जाएंगे. Oh, there's a miscommunication right there. You need to tell your teammate, I've backed off. You are not being covered from that side, sir. It's going to be the easiest kill of the map as well. Somehow this round, पूरे tournament का सबसे slow round and the easiest kill as well. That was I don't even know what to call that one. Just a freebie from. That is the case with anti-ecos and ecos. लेकिन हाँ, Deathmaker को 2 kill मिले. Currently at the top of the table, 17 kills. So still good. After the like what did he get? He got 11 kills in the first 3 rounds. उसके बाद से अगले जो 11 राउंड में he's got 6 kills, so he's still maintaining that figure. Still not the average combat score of like 1 he should be looking for as the entry fragger. But then again, अब अच्छी guns आनी है Velocity के पास.
they've got the Vandal. As you can see, Deathmaker right now, it's got the Vandal holding the side. The board is here as well. So Team X, so they're planning an A take. लेकिन B पर भी वो fake कर रहे हैं, using all of the utility, using their astral, stars and stuff. लेकिन अब execute आ गया है. Marcel is watching the enemy. He's in the corner and he gets the kill, drops the spike, and now Velocity have entire information कि हाँ A पे execute है. सारे के सारे आओ. Spike Exo यहाँ लेके आए हैं. Go for the retake, go for the backstab. We don't care. Get yourself near this bomb site as soon as possible. Right, Exo needs to move fast because Velocity already has the information that they need. They're going to round up all of their players from the entire map and close in on Exo. Exo fighting against 4 and the time limit. But they're going to get a bit of an advantage. Oh, it goes away as soon as it comes. It's going to a 2 versus 2. And the clock going down. One person remaining with the spike. Sai needs to make something happen. Doesn't. On the other side, right, gets the kill, makes it happen for his own team. They won the full buy. Bonus again GJ. This is absolutely important. Because now, full buy की तरफ से अब Exo की kill भी आएगा. But the thing is, Velocity have the necessary amount of guns, or like majorly have the necessary amount of guns to deal with that. Exo का भी buy बहुत strong नहीं लग रहा है. दो एक Spectre दिख रही है, half armor. So both the teams are on a semi buy. Full buy होगा. That's always considered as Vandals, Phantoms, full armor. Here we can see a Judge, we can see a Guardian. हमें Spectre देखने को मिल रही है. So half armor भी देखने को मिल रहा है. And then obviously you've got Excalibur right now on the Blade Storm, which can be the most deadly weapon, albeit it's not a gun. It is going to be a weapon. He can deal the most amount of damage with that. So Exo right now, they're pushing through on the B bomb side. B long target. Look at how quick Excalibur is. The Sova, the drone, it gets a lot of information about the whereabouts of Team Exo members, and uske basis pe health ko team kill milega. Excalibur is still pushing through. He still needs to dash. The execute is happening. सारे के सारे Exo के members यहीं B long पे हैं. चारों के चारों. लेकिन अब उनका plan क्या है? How exactly are they planning on executing on the bomb site? Well, they aren't. They've used up 30 seconds of the action phase. They didn't get a kill, लेकिन अब उन्हें back off करना पड़ेगा. उनके पास HP भी ज़्यादा नहीं बची है. Look at Blackhawk, no armor, 48 HP. Lucky for them, Velocity अपने positions हाँ. But I think इनका strategy अभी fix हो चुका है. They don't want to try really flashy plays. They want to sit in their positions, which is pretty much exemplified कि वो mid कितने amazing तरीके से. Oh. But at the same time, Exo. Oh my God! Deathmaker, insane, and that's right to and Deathmaker he just gets it. Flawless round win, triple kill. दोनों Jets के पास Blade Storm थे, and well, Deathmaker is the mightier one of them in this duel. Yeah, we have been hyping up Excalibur versus Deathmaker. Abhi bhi, we don't need to say anything. They are hyping themselves up, being both of the players being at the top of the table respectively in their teams. But Deathmaker is having the better performance right now. He has the more kills, albeit he has more deaths as well. But in the previous round, he has a far major impact. सिर्फ यही नहीं कि 3 kills मिले, but look what the consequences of that is. 3 kills मिले, Exo की economy वापस से धर की हो गई है, and now they've just got sheriffs. Yeah. But this point, I feel like Velocity is not going to let up. वो अपना पकड़ के बैठे हैं. Last वही. The fact they didn't push it, the fact they didn't try to pressure Exo. हाँ. के बाद बैठे हुए हैं. They're not moving. Pressure कर सकते थे. वही. They stuck to their ground. They didn't move. Okay. So that did show us sort of like what they're trying to achieve. True. And right now, well, yet again, Velocity, they're not going to waste any time. They get the opening kill, and वापस से Exo के members धीरे से आ रहे हैं, push कर रहे हैं. Excalibur slips past, but no, Marzel's there. He's watching the angle. He spots Wimp as well. Wimp may try to escape, but he can never be successful with this little HP and with the sheriff in his hand. He get another kill for Velocity. Wimp, yeah, he falls to health, and this may just be a flawless round. Sai is the only person alive, and how flawless hoga. Hearing that flawless, it's music to my ears, and honestly, there has been great music to my ears. Like, we had the opening ceremony from Justino, which again, if you haven't heard that earlier in the broadcast, make sure you do hear it in the free time. But right now, we have to hear what Velocity and all of their guns can do, which we have been seeing and hearing.
Yeah, it's just it's so disheartening. I feel like for the other team कि वो Yeah. flawless देख के द्वारा हाँ पर इतना भी बुरा नहीं फील कर सकते हम एक्सो के लिए बिकॉज़ हमने बहुत ज़्यादा उन्होंने 3 फ्लॉलेस लिए थे Exactly. So basically, velocity अभी just gave them a taste of their own medicine. True. Basically. Yeah, वही. So EXO should be used to this, right? If you can dish it out, Oh, you can take okay. it as well. And well, they are dishing it out again. They are on their way to get a flawless or at least a round win. Flawless matter नहीं करेगा क्योंकि VLT को एक और round win मिला और उनको match point मिल जाएगा यहाँ पर और map point at the very least. So इसलिए EXO को जीतना है. Velocity members, the two are live on A. They're pushing and Ghost यहाँ पे. Oh, he was the spike. He's gone with him. The spike is down. Thankfully, Wimp है यहाँ पे दिन बचाने के लिए and Wimp gets the 2K. Otherwise, this could have gone horribly wrong for EXO. Jesse was spike drop होते हुए देखा, but no, Wimp was there. He saw Ghost's dead body and he protected that. I'm not understanding the CCV. Explain to me why Velocity, the defenders, are pushing so deep into 4. Especially after they lost 2 players. I mean, I get what they were trying to do. थोड़ा सा हाँ, you know, we may try to catch our opponents off guard. एक kill मिलेगा और हम fall back करेंगे. एक kill उन्हें मिला, but then they got greedy. They saw the spike. They saw the spike and their eyes glittered. They were like, this is it. This is the most valuable piece of, this is the most valuable artifact in this round. Let's protect it. As defenders, let's not let the attackers get their hands over them. And well, that greed always leads to, well, you know how the saying goes, greed kills the cat. Could have been a pretty easy victory, but they should have backed off. Yeah. Already, and the first bird is taken out. Oh, 5 bullets. Deathmaker. 5 bullets. Aye, okay. Yeah, he can't fall back from here. Dash भी use नहीं कर सकते. Wide peek करना पड़ेगा. Cloudburst जाएगा. नहीं escape. He's still trying. He's still there. And he's trying to fake out the members of Team EXO. यही same angle खेल के. लेकिन 20 bullet है. काफी काम करना होगा. EXO, because they have the man advantage, they're still taking things slowly. वो map control के लिए आराम से जा रहे हैं. Velocity, Deathmaker still getting aggressive. Can he get the kill? Yes, he can get the kill. He can destroy the lockdown as well. It has been destroyed. Velocity get multiple kills of their own. उनकी Viper Spit अभी भी A bomb side पे है. तो EXO अब कैसे execute करेंगे यहाँ पे? Considering that the Viper Spit is alive and standing. He's just standing in it. The DK, he's on 1 HP. Yeah. Oh, this is such. I mean, either it's a complete genius play because Oh wait, Vibhor dies. There goes the Viper Spit. And now plant हो सकता है. VLT, it's a 2 versus 2. So it can happen. Deathmaker will be peeking wide. And he gets it. So does Right to Ace. 2 headshot मिल गए. And this, ladies and gentlemen, is best of 3 point. Grand finale point. Velocity are a single round away from completing their revenge on Team EXO and grand final secure करने से एक round दूर हैं. At the same time, EXO, this is, they need to win this to stop. Have to. Exactly what you just said. Exactly. If they want a shot, they want to be able to achieve. उनको अगर चाहिए कुछ chance. हाँ. That massive prize pool. 10 lakhs. Prize pool. Forget the prize pool. You know what it's all about these games. It's all Pride. about it's all about saying that they are the best. But to even get a shot at the title, they need to make sure that they secure this next round. We cannot take this home. And this round is it. Yeah, this can be the final one. This can be the final time we are seeing Team EXO, a staple in the Esports Premier Series. This can be the final time we'll be seeing them in this year's entire championship. We'll certainly see them next year, and we'll certainly see far more teams and far more Esports titles next year. But for Team EXO, everything can end here, and Marzel can end the show right now. He gets one and the second. Marzel, beauty right there. He flew and he stung like a butterfly. And he flew like a butterfly and stung like a bee. I can't speak right now. Well, neither can the members of all our viewers and all our members watching, because well, everyone's jaws are going to be dropped after that play and now in this round. Charged up right now. Everybody's putting everything they've got. There's nothing to be safe for the next round. If there is a next round, and EXO one player All on this guy. All on Wimp, and that is it. Deathmaker finishes things off. Velocity, ladies and gentlemen, are the first team to pave their way into the grand finals. The team that won the final qualifier. They were the final team to qualify for the grand finale, but they are the first to get into the grand finals. You knocked them down. Absolutely and they dominating. Come back. You knock They them did. down and they come back over and Yeah. over again.
these guys are a force to be reckoned with. I mean, They Exo said exemplary plays. बहुत अच्छा खेले Exo. काफी अच्छा And था पता है, at a certain point, I thought they had this. Like, on I split had I this did when they came back, right? I was हाँ like, ये तो repeat होने वाला जाएगा है. They're gonna जाएगा win this one. It's gonna हाँ go third, right? yeah But Velocity pulled it back, like I said. Like they did take their advantage and they held Yep. on. They didn't throw it away. That's very important. True. Like Exo did that in the first round, right? yeah split पे हो सकता था again the final rounds of split that didn't feel the best from EXO and I think that could have mentally impacted them a bit heading into bind as well काफी बड़ा break था I'm sure all 10 of the players must have been speaking to themselves their managers coaches analysts anyone that they had they would have been speaking to the players as well they had plenty of time but again it affects you as a player to some extent everyone can relate to this irrespective of if you're a professional player you just play ranked or even like me you play like Spike Rush with your friends any sort of loss affects you to some extent and I think for the side of EXO it did affect them to a pretty certain extent यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा सा affect हुए बाइंड में उसके बाद वो पिछले 6 राउंड लगातार हारते गए उसके बाद वजूद 4 राउंड उन्हें मिल गए पहले हाफ में but it still just wasn't enough unfortunately They did try their best. They did try. Absolutely. They have secured themselves. I think 1,25,000 yeah third of equal Who's equal third? If Oh there's well, no, it's going to be equal because again, it's going to be equal so they're for gonna have both to the share teams. their trophy of third place. Well, there's going to be only There be is one trophy. Yeah, I mean, yeah, they're gonna have to share the third place with the winner of. with the loser of the Global or loser of the Enigma. next one. Yes, that's tomorrow again at the same time. Yeah, And of course, all of this is brought to you by the Esports Premier League. absolutely. And we do have a surprise for you, though. Right now. Like, it's, Oh. I think we were saving this for the last day, but you know what? You like playing Valorant, you like watching Valorant, but maybe your friends play a different game. Maybe they play FreeFire. We have FreeFire as well. Oh, we do. You guys don't play either of those games. Maybe you play something else that isn't here. But guess what? Next year. More games. Oh, so many we're more. adding 4 more games, and we're gonna go with the announcement. We're gonna go to a timeout. And I'm not, I don't want to go to a timeout yet. I think this match was absolutely amazing so far. A lot of stuff happened on the map of Bind. There was just so much taking place, and every single member from the side of Velocity, just the performances they gave. I think we'll be able to have a look at the scoreboard as well as soon as possible. Let's bring that up because I want to see the performances. I want to see the KDAs and the economical ratings, and obviously we've got the average combat score. Looking at that, we can give the judgment who the best performing player was. But right now, I think there's still a bit of time because everyone is hyped up. Everyone needs a bit of rest and they're a bit tired. So right now, I think we'll be taking a very small break, but then we'll be back and we'll keep on talking about it. And then obviously, throughout the day, we have so much more planned here at the Esports Premier Series here on this broadcast. So stay tuned, keep watching, enjoy the music, and we'll be right back. क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।
जोश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot?
तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Welcome back to the Esportz Grand Finale. Esportz Yeah. Premier Series semifinals, and we just got done with the first round of the Valorant semifinals, and we did get a winner and one of our first finalists beating EXO. Yeah. It's VLT. It was great. Velocity's performance undeniably absolutely amazing. First map was far closer, 14-12. It went into overtime. The second map, well, we can have a look at the scoreboard, and it was much more of a one-sided, albeit, okay, not completely one-sided. EXO did give us a great performance, but then again, looking at the scoreboard, we can see a major difference between the amount of kills and the performances that Velocity members had compared to what, EXO were doing. And yeah. EXO did do pretty well in the second match, but I feel like the advantage that VLT picked up was Yes. way too high to like overcome. They did feel, I feel like they did think that they could, and at a certain point they were, but giving that lead was just a little too much to overcome, right? Just a few
few rounds here and there could have made the difference, but when you stack them all up, that like unclimbable mountain of points that VLT managed to just rack up, right at the end of the day, they just racked up those points. And once it's at 12, it's not even about the round, it's not even about the clock ticking down or you're alone, it's about 12. This is it. You gotta it mentally affects you, and you might want to like rush in. It might make you want to do a flashy play, take the win home for your team, get you closer. But once you hit that 12, it becomes significantly harder to focus and keep a level head, right? That is true. I mean, looking at it right now, the match point, it's a major obstacle for anyone to get over. Velocity ke saath bhi, they saw the 11-12. They still made the comeback from 10-12 to 11-12, and then they got 12-12. They were able to overcome that obstacle. Unfortunate for the side of EXO, they weren't. And now, well, we have the updated scoreboard in front of us, and Deathmaker at 331 average combat score. Great performance. 25 kills for the man, 11 deaths. मतलब 2 से ज़्यादा की KD maintain कर रहे हैं. Vibhor as well. Vibhor playing the Viper, he was Mr. Consistent in my opinion from Velocity's point of view. वो हर बार kill ले रहा था. पिछले map पे भी काफी kills थे, and utility usage काफी अच्छा था. I especially loved his Viper spits that he was. Sometimes they worked. Yeah, at times he did die and they did go down. They did extinguish. But then again, the places, the angles, and everywhere where he was using, it was all good. EXO की तरफ से भी great performance, Excali and Sai. But that concludes the scoreboard. That concludes semi-final number 1. And yeah, Velocity, they are our grand finalists. Could not have asked for a more explosive start to the semifinals. And a big thank you to Velocity and EXO, and a bigger thank you to Red Bull and Josh for making all of this happen. As we've seen in the mid segments, Josh is a brand new app for basically making and sharing videos with your friends. And while you're not playing Valorant, what else do you want to be doing than basically trying to show those plays and trying to basically just show everybody what you're doing? It's a brand new way to do it. So maybe get on that when you're not busy playing these games. And talking about these games, we are not done for the day. I mean, we are, but you're not done for the day, because you're going to be seeing some explosive, even bigger fights in FreeFire. And then after that, FIFA, Yeah, we have so much. And that's the thing, that right now, all thanks to our sponsors as well, Capital Work Media, everyone producing It's making and it possible, right? exactly, they are making it possible. They're making sure everything is right on time, making sure everything is working as flawlessly as possible, and making sure the best is delivered to you watching right now. And speaking of the best, well, we'll hand over to the hosts as well. They can take you through the entire broadcast. They will be taking you through the entire broadcast for today. But for now, this concludes Valorant. Thank you everyone for watching semi-final number 1, and we'll be back tomorrow at the same time with Global Esports versus Enigma. So make sure you don't miss that. Make sure you follow esports.in on all sorts of social media so that you don't miss that out. But for now, thank you everyone for watching, and we'll be right back.
fathers and ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. Oh,
you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you.
you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जोश प्रेजेंट्स ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज इंडियाज ईयर लॉन्ग ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एंड फाइनली अब वो टाइम आ चुका है। हमने ऑलरेडी पीसी गेम्स के बारे में बात कर ली, देख लिया कितने ज्यादा शानदार मैचेस हुए, बट फाइनली मूविंग ऑन टू द कंसोल्स, फीफा यहाँ पे होने वाला है एंड फीफा बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये वाली बात तो पक्का है। देखना है मुझे कौन फिनिश शॉट्स मारता है, बट यस चरणजोत सिंह और आदित्य चड्डा का यहाँ पे बेस्ट ऑफ 3 होने वाला है। जनता जो है यहाँ पे, और खास के मैं बोलना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स है फीफा के, फॉर श्योर आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ प्लीज वेलकम आवर कास्टर्स Selvin and Neil for the match. Neil is a Twitch streamer from Pune. He loves playing FIFA and entertaining people, which is why he started a Twitch channel where he could enjoy the best of worlds. He has been taking the audience to all the qualifiers as well as the Esportz Turns 1 celebration, and all of us are having a blast. Yeah. While Selvin is widely known for being one of the 3 winners of the MTV Lockdown Stars 2020. Now, he is a veteran gaming professional who has won multiple championships for FIFA and PES between 2006 to 2011. He is also a full-time FIFA caster and has been doing a lot of work on screen for multiple FIFA events. He was also the main caster for the Esportz Premier Series Qualifier 2 and the Esportz Turns 1 online wildcard qualifier, and has absolutely enjoyed his new role in front of the camera. So, over to you, casters. Well, good afternoon, everyone, and welcome to the Esportz Premier Series presented by Josh, brought to you by Esportz, of course. My name is Selvin, and along with me, I have Neil, which is the Super Kid. Today, we have some great games lined up for you. 4 amazing FIFA players at the peak of their powers. This is going to be insane. The Super Kid, how are you feeling about this today? Selvin, thank you so much for the introduction. I'd like to thank the host for their introduction. I think today's action is going to be great. Like you said, for the best that India has to offer. I can't wait to get started. Well, absolutely. I'm sure everybody who's watching cannot wait to get started either. And just to let you all know, we have 4 players who are remaining in the grand finale. They're the 4 warriors As we call them: Charanjot Singh, Aditya Chadha, Saransh Jain, and Salvik Banerjee. Just to give you all a recap, Charanjot Singh went on to win Qualifier 1. Saransh Jain, after an epic battle in the Qualifier 2, won that Qualifier to cement his place in the grand finale. And as we saw last week, we had Aditya Chadha and Salvik Banerjee who won the online wildcard qualifier. But right now, I think Super Keen, we're going to turn our attention to the first game of the day, which is going to be between Charanjot Singh and Aditya Chadha. This promises to be a cracker of a game. What are your thoughts about it? 2 teammates, 2 players who absolutely need no introduction to each other. This proves that this is the best that this tournament has to offer, and both these guys have more than earned their place in this final. Selvin, you can see that Charanjot and Aditya, both of them from now teammates turned rivals, are going to duke it out for a place in the upper bracket final. What do you think is going to happen in this game? When it comes to FIFA 1 versus 1, it's always about yourself. You can be a teammate, you can be a friend, you can be a brother. But when it comes to winning, it's always going to be all about yourself. And I think the prize pool of this tournament is so huge. We have a 5 lakh prize pool only for FIFA. So, they are going to be looking at that prize pool, and not just the prize pool, not just the trophy. It's also about the reputation. Both of them want to be proclaimed as the best in this tournament, and a tournament as good as Esportz Premier Series, presented by Josh and brought to us by Esportz, is possibly one of the best tournaments for any FIFA player to win. So I think this is going to be a great game. Just to let everyone know, this is going to be an home-away double elimination format, which is
Going to be very interesting because both these players will have another chance in case they go on to lose this one. The super kill, once again, as we can see on our screen, a 5 lakh prize pool. That's right, ladies and gentlemen, a 5 lakh prize pool wherein it will be divided based on who finishes first, second, third, and fourth. They're going to take away this entire prize pool just for them. Your thoughts on the prize pool and your thoughts on this tournament, Super Keel? You've been in this scene for a long time, and to see where it has grown from all those years back to now, when you got 5 lakh prize pool, the winner taking away 2.5 lakhs, and well, I still can't believe it that FIFA 22 has grown so much in the Indian subcontinent. Huge shout out to Esportz, huge shout out to Josh, huge shout out to Red Bull for supporting this event, for making sure that all these players can do what they do and get paid very handsomely for it. Aditya Chadda, Charan Jyot, reputation. Selvin, when it comes to reputation, I don't think anyone in India has a reputation as strong, as bulletproof, as legendary as Charan Jyot Singh. In the past 3 years, FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22, he has absolutely enhanced his reputation. And you can see right now that he's there alongside the best. You got Charan Jyot versus Aditya, you got Saransh versus Sagnik. The winners face off in the upper bracket final. The losers, well, they won't be knocked out of the tournament just yet. They will go to the lower bracket elimination round, Selvin, and that is set for tomorrow. Today's action is going to be Charan Jyot versus Aditya and Saransh versus Sagnik. I can't wait for it. Honestly, Neil, I think I cannot wait for it either because both these games, of course, promise to be an absolute belter of a ride. Ladies and gentlemen, make sure to fasten your seatbelts because we are going to be in for a treat out here. All these four players are at the top of their game right now, and it's going to be very tough for us to choose a winner. But if you would like to go ahead and make a prediction, feel free to go ahead and do it in the chat. The first game of the day is going to be between Charan Jyot and Aditya, and I'm getting an update that the first leg of the first quarterfinal between Charan Jyot and Aditya is going to start very, very, very soon. The game will be starting anytime soon. But before that, Super Keel, the best part about a double elimination format is that you always have that second chance. At times when it comes to FIFA, it's not just about skill, it comes down to luck. And that's when double elimination can help you a little. You may have a bad day. I'm just going to take an example of Saransh Jain. Qualifier 2, the man lost his first game, went to the lower bracket, but then went on to destroy every opponent that he faced. And two of them are also playing the grand finals, which is Aditya Chadda and Sagnik Banerjee. And that was a great story that happened in qualifier 2. So isn't that possibly one of the best things, when it comes to competitive FIFA? And they are making sure that no stones are unturned in their quest to crown the best that India has to offer. We have started, ladies and gentlemen. You have Aditya Chadda from left to right wearing that yellow Brazil kit, and you got CJ wearing that legendary, historic red Liverpool kit. Selvin, your predictions, who will win this first leg? Well, Neil, I think you've put me in a very crucial situation, a very tight situation, because I cannot really predict a winner. Once again, ladies and gentlemen, Charan Jyot Singh is playing in that red kit, whereas Aditya Chadda is playing in the yellow kit. If you have any predictions, go ahead and put your predictions in the chat and let your friends know about the finals that are happening. I mean, the Esportz the grand finale that's happening right now. But let's turn our attention once again to this game. Let's be very honest, it can be either a goal fest or it can either be a goalless draw because both these players are capable of producing FIFA of the highest quality, both in attack and defense. The first 7 minutes, of course, have been fairly quiet if you see the standards that these guys have set. Charan Jyot and Aditya will not be taking any unnecessary risk considering that there is another game to go after this one. And I think this is going to be a pretty cracker of a game, and whoever gets the first goal for me is going to be the winner of the entire leg. Selvin, there's your prediction. You think the first goal scorer will win this leg? I do think that could happen because, again, get the first goal, get momentum on your side. Right now, Aditya Chadda trying to get that first goal with his first attack, and that's the difference in play styles between these two players, Selvin. You can see that CJ a bit more composed, just moving the ball around, waiting for that perfect opportunity with that ball scoop turn. Right now he does rush it. That's the commentator's curse striking. But Aditya Chadda direct FIFA at all times. Right now caught offside. And Selvin, what do you think of this clash of matchups that we can see on the screen in front of us? Well, I think that's really interesting because the first thing that we want to see is both of them having a little different play style because
If it's very similar, it's going to clash and that's going to create a problem. But right now, it looks like there's going to be no problem for Charanjot. But what a save by Aditya Chadda. I think that was goalkeeper movement. A great build-up out there by Charanjot, but a great save. That's some great FIFA action, and we are not done yet because Aditya Chadda is now in right away with his favorite Eusebio. But I think that's nerves now coming into picture because both of them misplacing passes that we may have never seen them do before. Absolutely, that pass was miles behind, and again, both these players, experienced as they are, they're still young, and you can see that there's a bit of nerves affecting them right now. Though CJ does have a lot of space, gives it to Eusebio with a lovely roulette. Selvin, this has quickly descended into end-to-end chaos. This is going to be a brawl, it seems, and both these guys are going all for it. You said that it could be a goalless draw, but I'd be very surprised if both these guys, with their attacking prowess, are held and it finishes nil all. Well, I would be surprised as well. But then, let's be very honest, even if this game finishes 0-0, it will have a lot of excitement, a lot of drama, a lot of madness for sure. Once again, ladies and gentlemen, make sure to fasten your seatbelts because this is just the beginning. We have 4 legs of FIFA coming today. This is just the first one. And here is Charanjot trying to get that first goal. Of course, both of them right now are sticking to their favorite play style, which is rotating the ball and then trying to find that through ball at the end. And Aditya Chadda right now with the ball, making sure that he does not lose possession. I mean, Neil, I know you're a big fan of both these players, especially of Aditya Chadda, and especially when he plays with that Eusebio and the damage that his players can do. Do you think Eusebio is going to be the first person to score, which he can right now because he is in here, but he skies it. That is a goal kick, and just as I was saying, can Eusebio be the one to open the scoring? He misses a golden opportunity. That could pick up and physically place one player in that position with that opportunity to shoot, he would pick Eusebio with that deadly 5-star weak foot, with that perfect finishing. But right now, this is the final, and Eusebio has just had a catastrophic miss. Selvin, that miss could play a pivotal part in this game because right now I'm sure CJ is thinking luck is on my side, and now it's CJ's Eusebio who takes a shot, but just not enough power on it. What is that? The goalkeeper's giving the ball away. Aditya Chadda really needs to wake up here. His goalkeeper just gave the ball away right at the feet of CJ's attacker, and CJ somehow or the other just lets him get off. What's happening? How is this game still nil all? Well, I'm surprised it's still nil all, Neil. But as I was saying, when it comes to 1 versus 1 FIFA, there's no teammate, there's no friend, there's no brother. You are playing for yourself. CJ would have taken the goal even if that was not likely of him. And we've seen Eusebio 2 times, once for Aditya, once for Charanjot, miss simple chances. On any other day, that would have been a goal. And that is a beautiful through ball played in through here. He goes past everyone and puts the ball in the back of the net with Ginola. Charanjot Singh opens the lead, opens the scoring out here, takes the lead. My goodness, this is going to be some high-end game, and Aditya Chadda makes a mistake again. I think super key, these 2 players are now going to be focused on scoring as many as possible. Absolutely, Selvin. David Ginola, the MVP of this FIFA 22 season so far, has scored, and that goal was perfect. The composure to take that extra touch, to create that space, and then just lash it home. I think it hit the roof of the net, and right now you can see that now CJ is looking to establish that sphere of dominance, that control, just slowly but sure out. Aditya Chadda needs to get back in this game. He needs to create some opportunities because right now CJ might just run away with it. Well, absolutely, Neil. I think CJ is one player you do not want to run away with the game because once he starts doing that, he may run away with it by converting every chance that he gets. And right now, the best thing about this game so far, even though it's 1-0, there has been no negative FIFA at all. Both of them want to attack, both of them want to score goals, and it's very clear. It may come down to a finishing error, it may come down to a mistake from the back, but right now, everyone who's watching, we are in the first half of the first leg of the quarterfinals or the upper bracket that's going on right now between Aditya Chadda and Charanjot. Charanjot Singh with that crucial goal to put him in the lead in this first leg of the first match, and we have 45 more minutes coming up. Neil, your thoughts on the first half? Well, Selvin, as much as I like to support Aditya Chadda, I think Charanjot just did enough to warrant that 1-goal lead. He had that Ginola, he had that Eusebio, and he knew how to use them to devastating effect. Now it's a look to get back into this game. Selvin, what do you think of this new meta
wherein David Ginola, who's not quite as agile, but is still such a brutal attacking force. Well, I'll be very honest with you with regards to Ginola. I was also very surprised seeing all the pros go for him. But then he's made sure that there is a reason he's there. And here he is again trying to feed Eusebio with a tap in. But that's going to be well read by Aditya Chadha. But coming back to the question, I think Ginola has been clutch for a lot of players. We also saw it in the online wildcard qualifiers. And I have a feeling there's something wrong with Aditya Chadha's passing today, because maybe he did it once by mistake, but this is the second time he's given the ball away so cheaply, and that's so unlike him. Absolutely. And now speaking of mistakes, it is CJ who just loses the ball in a very dangerous position in his own half, and now it's up to Aditya Chadha with a perfect ball played in. David Ginola gets the goal back, and Aditya Chadha is back in business. That was Kylian Mbappe. I do apologize for that, but Kylian Mbappe, the inform card, widely regarded to be the best non-icon striker in the game, has put Aditya Chadha level with CJ, and CJ will be kicking himself for giving the ball away that cheaply. Well, absolutely. I think CJ is going to be kicking himself, but Aditya Chadha, of course, is somebody who can capitalize on every mistake that you do, and that's what he did right now. But Charanjot in on the attack again, both of them trying to do a very similar combination with regards to the final pass. But of course, both of these guys are teammates. They played each other a lot. And of course, when you get Mbappe in that position after a mistake, you are always going to score. Mbappe, of course, created a new record yesterday when he became the youngest player ever to reach 30 Champions League goals. And today, of course, for Aditya Chadha, he's coming in clutch. Is he going to score another goal just like he did yesterday? Only time will tell. But Aditya Chadha looking very confident in this game. Momentum seems to be on his side right now. And look at those through balls coming in right from his own half. And now is CJ who's going to attack. And Neil, I think you should take this over. When Aditya Chadha, like a maverick, just attacks. CJ, you can see that there is still some sort of control, but maybe Selvin, to get the edge, to get the breakthrough again, he might have to just lose some of that control and just go at it hammer and tongs like how Aditya Chadha does. You can see him right now just giving those through balls, looking for that run, looking for that opportunity. Right now, he dawdled a bit too long on the ball and dispossessed on the halfway line. You can see CJ with his Mbappe looking to hit back. Both these players have the inform Mbappe, that inform Mbappe, which again, one of the best cards in the game. Lovely ball roll scoop turn by CJ to just break through the defense, and he creates the space, and the shot is blocked by the defender. But again, what a lovely ball roll scoop turn by CJ right there, and he just chopped the defender in half. Aditya Chadha needs to be a bit careful, because right now I think CJ is creating those spaces, and once CJ gets the space, once he gets that chance, well, you expect him to put it away. Absolutely. Neil, we expect him to put every chance away, and that is a clutch tackle to save Eusebio from getting in a very dangerous position inside the box. Both these players, of course, going with a similar combination up front. Eusebio, Mbappe, Neymar, and Lionel Messi, of course. And that's something that you like to see, isn't it? Both of them are cancelling each other out in every department. And right now, they're also cancelling each other out with regards to the scoreline, because it is still 1-0 with around 70 in-game minutes left. But here is Kylian Mbappe for Charanjot trying to find Ginola once again in that attack. A very similar situation that he's been trying to do something with regards to the final ball. And I'm sure if not now, he is going to execute it perfectly before this match ends. Absolutely, Selvin. In these two legs, we can expect him to at least put it off once. Let's just see off something from this corner. Not to be. Aditya Chadha's Schmeichel collects the ball. And right now, Selvin, that Marquinhos for CJ is playing on a yellow card. And to have the belief, that conviction in your abilities to pull off that sliding tackle, well, that is the stuff of professional players. And that is the stuff of the professionals. CJ, of course, in a level of his own. Right now, though, Aditya Chadha is managing to keep him at 1-1. And now you can see, again, CJ gives the ball away with that clearance. Aditya Chadha with De Jong in the center of the park. Lots of space with Eusebio. Gives to Mbappe, but Mbappe dispossessed by the defender. And right now, it is up to CJ to score, or maybe try and, cause some damage on the counter-attack. Well, absolutely. And I think as we speak, by the time we finish our sentences, the attack actually breaks down. I think that's something that I've been noticing for a while right now. But here is Aditya Chadha. Hopefully, one of them is going to prove us wrong. And Aditya Chadha would like to be the one who does that by scoring a goal right away. But both of these players, of course, they play together when it comes to a 2 versus 2 format. So they know their games inside out. They know what the next pass would be. I mean, the anticipation levels are high. But here is Charanjot stringing in some great set of passes, one-touch passes. And now goes for that lofted through ball to Ginola, his goal scorer, of course.
Can he find someone in the center? Gets lucky with that ball. Finds Kevin De Bruyne. He is going to twist, turn, take his time, and find Sanchez, who gives it to Eusebio finally after Messi. And that is going to be a big save by Schmeichel once again for Aditya Chadha. The game still remains 1-1 with around 6 in-game minutes left. I don't know what has happened to Eusebio in this final. I don't know whether the nerves have affected him, because this is the least potent I've seen Eusebio in a long time. Schmeichel actually managed to hold on to that shot, Selvin, when I was sure that that would be CJ's second goal, a 2-1 lead in the 85th minute, which would give him that win. But right now it's up to Aditya Chadha. With 86 minutes on the clock, he's looking to score from there. That's what I love with this player, Selvin. He's willing to take those risks. He's willing to create that Hollywood moment. And right now, CJ just a bit too good defensively, but that's Aditya Chadha in a nutshell for you. He's willing to take risks, and now we have to see if those risks will pay off for him. But it pays off for CJ with that finesse shot from the edge of the box. Wow. I am sure Neil right now is lost for words. He feels speechless, just like a lot of y'all would be feeling. Aditya Chadha tries a long range of finesse with Lionel Messi on the other end. 10 seconds later, the time goes in front, and Charan Jot has a finesse of his own. I think that was Kevin De Bruyne who took that shot, and goodness me, it landed right where Charan Jot wanted, right at the right time, because this game is almost about to end. Aditya Chadha may get one final attack, but right now it is Charan Jot 2, Aditya Chadha 1. Is going to have a lot of twists. There's going to be a lot of twist right at the end, I am sure. I'll not be surprised if we see another goal, but Charan Jot wins the ball back from Aditya. This is possibly going to be the final whistle. Yes, it is the final whistle of the first. I mean, a lot of us would have expected Charan Jot to win. A lot of us would have expected Aditya Chadha to win. But let's be honest, everyone expected this to be a very close game, and that's what it has been. After the first leg, Charan Jot Singh to Aditya Chadha 1. We both are lost for words. What an amazing game of FIFA. The second leg will also start soon, but just before it does, the Super Keel, what were your thoughts about the first leg? Spectacular game of FIFA, Selvin. And to end on that note, with that spectacular strike from Kevin De Bruyne, you know what? I think I've already got my money's worth of entertainment, but we are still in just the first leg. There's still so much more FIFA to come. There's still so much more brilliance to be exhibited by these pro players. I can't wait for it, Selvin. And Aditya Chadha, he will look at that goal and he will say, you know what? That can happen. Could have happened for him with Messi. Turned out that it happened for CJ with that Kevin De Bruyne, the strike that rattled the underside of the bar and went in. We will be shifting to the second leg very soon, and it will be Aditya Chadha's time to maybe hit back, to maybe get revenge. But as things stand, CJ 2, Aditya 1. And this game was absolutely entertaining. The game was absolutely entertaining, and there is the result after the first leg. Of course, there's another leg left. Charan Jot Singh with a 2-goal-1 lead over Aditya Chadha. We still have 90 minutes, possibly maybe extra time or penalties. Just to let you know, there's not going to be a third game in case the next game ends 2-1 in the favor of Aditya Chadha, which means there's only going to be this next game, and it is going to decide a winner. It can go to extra time, it can go to penalties if needed, but we will have a winner. The first leg of the grand finale, of course, lived up to the hype, lived up to the expectation. And that's something that you want to see in Josh Presents Esports Premier Series, brought to you by Esportz, of course. And this is the level of action, the level of entertainment, and the level of excitement that we promise you throughout the 3 days of the grand finale. Now, your thoughts before we start with the second leg. So I think that game exhibited everything that's good for FIFA. You had such brilliant attacking, you had such brilliant defense. That CJ's Marquinhos on the yellow card sliding into his own box. I think that particularly highlighted just how good these players are. Ladies and gentlemen, if you are a budding FIFA player, if you have aspirations to one day make it to this big stage, I think you can learn a lot from both these players. Their game style, their composure, their knowledge, and their instincts. All of that make a very potent combination, and that is something which we are bringing to you right now. Not just today, not just tomorrow, but for the next 3 days in the Esports Premier Series, we will be bringing to you the best that Indian FIFA has to offer. Right now, I think we'll be shifting to the second leg very soon. And let's see if Aditya Chadha can bridge that gap and knock CJ out into the lower bracket. Well, absolutely, Neil. I think everyone who's watching from home must be thinking this game has to be, it needs some more spice, it needs some more drama. And which is why, as neutrals, as casters, I'm going to say,
If Aditya Chadha goes on to score the first goal in the second leg, I think it will set us up for an absolutely amazing second leg and for an absolutely amazing match of FIFA. But Charanjot Singh, of course, we all know what he's capable of, and he is somebody who can run away with these games. We are going to be starting with the second leg because the players are now ready. I do not know what's going to happen next. I don't think Super Keel knows what's going to happen next. But if you feel you do, make sure to let us know in the chat. Let us know your prediction. Once again, Charanjot Singh kicking us off in that red kit, whereas Aditya Chadha will be in that yellow and blue kit, the Brazil kit that he prefers. I am sure the first few minutes may be a little slow, but once they pick up with regards to their game styles, once they pick up with regards to understanding what the other is doing, they will go ahead and produce some magical FIFA, which is what Charanjot Singh has in mind already. Cuts it back to Eusebio, but I think that's going to be danger cleared. Well, that's not a good opening for Aditya Chadha, with CJ just running merrily down the pitch on that wing. And right now, his defender got in the way of that cutback. But if that keeps on happening, I don't see Aditya Chadha getting back into the game. I don't see him progressing to the upper bracket next round. CJ did start strong in that first leg, and he'll be looking to start strong in the second leg as well, Selvin. Well, absolutely, Neil. I think if I would be CJ, the first thing I would like to do is make sure that there is no pressure that builds up on me. The only way to avoid that is by not conceding that first goal, because as we've discussed multiple times, momentum is a very key factor when it comes to any sport, when it comes to any esport. And that's one thing you don't want to give to a player of the caliber of Aditya Chadha. You give him a little momentum, he's going to make sure to make the most of it. And Charanjot, of course, would like to take that first goal, to score the first goal, and to make sure that he gets that 2-goal cushion, which of course is going to prove vital when it comes to this level of FIFA. Absolutely, 2 goals gives you that breathing room, and right now he is looking to get that with Messi. A lovely pass into the box, and Ginola caught napping. That should have been a first-time finish. That should have been 1-0, but somehow Charanjot has let Ali Chadha off the hook, and now Ali Chadha has time to make Charanjot pay for that mistake. He has Neymar streaming down a wing, faced with Hakimi, his PSG teammate, and Hakimi with CJ does really well to dispossess Neymar without giving away a throw-in or a corner. And now, Selvin, this end-to-end game keeps on going. Well, the end-to-end game keeps on going, the drama keeps continuing, the entertainment keeps increasing, because both these players are not really sticking to their game plan to execute or try something that they may have not done before, because I think both of them know each other very well with regards to their play styles. They can anticipate what the other player is going to do, which is why we see a lot of long balls, which is why we see a lot of through balls, when we also see a lot of mistakes. And right now it is Charanjot Singh who can capitalize with that mistake, with Lionel Messi trying to go to the near post instead of the far. That's well saved by Schmeichel, who actually has made sure that Aditya Chadha remains in this game right from the first leg. Michael has been the MVP for Aditya Chadha. Despite Mbappe getting that goal, I think his goalkeeper is the person why this game is still competitive in the second leg. And right now you can see Ali Chadha with that through ball, that lofted triangle through ball, just finds his way in. He has the freedom of the box. He tries to squeeze it in. But wow, again, great defending by CJ. Does not concede a corner. And Ali Chadha might just be starting to lose hope, because all these attacks, all this brilliant play, CJ has been smothering him so far. Well, second leg has been all CJ indeed, but then this game is at times very much confusing with regards to momentum, with regards to the shift of play, with regards to favoritism as well at times. And you never know, one goal out of nowhere can just put Aditya back in this tie and can put him in that upper bracket finals as well. But that's what CJ has in mind for sure. Right now, he is leading by 2-1 on aggregate. The second leg is still 0-0, and he's given the ball away. Very unlikely of him. The last time he did that, he went on to concede, but this time he makes sure to get the possession back. Here is Ginola, the one who opened the scoring for him in the last game, has similar intention, gives it to Eusebio, but that's Schmeichel with another magical save out of nowhere. What are we witnessing right now? Schmeichel pulled off all the powers in his arsenal to get that save, to deny CJ from what seemed to be a certain goal. Brilliant play again by CJ with that Ginola. Gets in the box, passes it to Eusebio. Eusebio, for all his attacking threat, has been stopped perfectly by Schmeichel. And now CJ must just be thinking that, you know what, I need to protect this lead, because right now I don't think this Schmeichel is in any mood to concede. Well, I'll be very honest with you. No striker in the world is going to find a way through this Schmeichel.
because he has possibly he's made around 5 impossible saves in this game. Like, whenever we've been casting, these would have been 5 different goals. And this time, is that a goal? It is a goal by Ginola. As we speak, the commentator's curse goes on to Shemichael, and it's Charanjot Singh who takes the lead again. Same combination once again, same result once again. And let's just wait and watch if this leg will also have the same result as leg 1, because as it stands, it's Charanjot Singh 1-0 in this game, 3-1 on aggregate. What an incredible finish. Selvin, if that is the only goal we see in this game, that will be the best goal we could have seen. David Ginola, when I saw the net triple, I had to check again to make sure it had gone in, to shoot from there, green time or not, for it to go and to sail over the keeper's arms while he dives in despair. That was some brilliant FIFA. Charanjot, I tip my hat to you, because that is a spectacular goal worthy of winning any final. Now it is up to Ali Chadda to really pull up his socks, because 2 goals down to Charanjot with 50 minutes to go. That is a very unenviable position he finds himself in. Well, yes, indeed, Neil. It's difficult, not impossible. But right now, Charanjot Singh wants to make it impossible. But Shemichael making sure that the lead remains at 2 goals with another incredible save. But I think Charanjot Singh, of course, learned his lesson. He knew Shemichael was always prepared for the shot every time he made the save, which is why he went for that element of surprise out of nowhere, catching Shemichael off guard. But right now, it is what it is with regards to the score line. No matter how much Charanjot has attacked, it's still 1-0 and 3-1 on aggregate. And Aditya Chadda would be trying to make the most of the last chance, but I think that pass kills his chance to try and get something in this half. There's another half of FIFA left. After 1.5 halves of FIFA, we've had some mad entertainment, and right now it is 3-1 in the favor of Charanjot with 45 minutes left. The Super Keel, I'm going to ask you a very genuine question. Do you think Aditya Chadda can make a comeback? Well, Simon, you put me on the spot here, and I always believe in my boy Adi. But the way CJ is playing right now, it has taken a superhuman effort from Schmeichel, and even then, Adi Chadda is down 3-1 on aggregate. Well, Selvin, miracles do happen, and I'm counting on a miracle that in this last quarter of this tie, it is going to be Adi Chadda who gets back into it. I'm sure the neutral will want Adi Chadda to score. I'm sure the neutral will want him to get back into it. Well, I'm sure as well, Neil. I mean, as neutrals, as casters, as commentators, we want to see a lot of drama that's happening. And that's what is going to happen in this game as well, because we still have around 40 in-game minutes left. And I am pretty sure that these moments, of course, these 40 in-game minutes will have a lot of goals for us. If not a lot of goals, maybe we see Shemichael making those big saves. Maybe we see Charanjot's goalkeeper with those big saves as well. But right now, Charanjot is not looking like stop. I mean, he wants to stop at any point of time, because here's Lionel Messi, finds Ginola once again inside the box, takes the shot, and guess what? It's another save. He gets the rebound, but that is outside for a corner. And oh my goodness, I don't think Charanjot is stopping anytime soon. Well, you know what? Ali Chadda did pull off that miraculous comeback against Manu in the wildcard finals. But if it happens now, CJ will feel very hard done, because he has really played some of the most brilliant FIFA I've seen this season. And again, 3-1 up. It is by no means a safe lead, Selvin, but right now he is dominating Ali Chadda. That Ginola is dangerous. That Ginola looks like he wants to really rip apart Ali Chadda's defense. Adi now, again, almost gave the ball away there. That's the determination which CJ plays with. And a lot of people can't cope with that pressure. A lot of people can't take it. A lot of people just crack. But again, Adi Chadda is not a lot of people. And now it's up to him to somehow salvage this game, to somehow snatch victory from the jaws of defeat. It's Mbappe, but Mbappe at that point, the commentator's curse strikes again, just gives the ball away. And now you can see it is Messi for Adi Chadda, just looking to get into the box, to give to Eusebio. Eusebio, lovely turn. He had lost the defender for a second, but I think he overplayed it. Well, I mean, lost for words with regards to what's happening right now. But unfortunately for Aditya Chadda and his scam, he did overplay that a little, which has now resulted in Charanjot having an attack of his own with Kylian Mbappe once again on the flanks. He for sure looked to cut it back, and he cuts it back to his PSG teammate Lionel Messi. The Mbappe-Messi connection strikes again, and Charanjot strikes again to make it 4-1 on aggregate, 2-0 in this time. And
I think that's game, set, and match. And we need to welcome Charanjot in the upper bracket final because that was an amazing goal. And there was nothing any FIFA player in the world could have done about that. And there was nothing Michael could have done anything about that as well. Professional FIFA players, they make the game look spectacular, but Charanjot Singh, he makes the game look easy. The ease, the simplicity with which he just deconstructed that defense, with which he just tapped that ball in with Messi, I think he definitely deserves his place in the next round. Adi Chadda, great player as he is, will have absolutely no complaints about the way this game is headed. There's still 24 minutes left in which Adi Chadda somehow needs to dig out 3 goals, but I don't think that's going to happen now. Well, absolutely, Neil. It is difficult, but not impossible. We've seen Aditya Chadda in a situation like this multiple times. I think there was this one qualifier that we were casting in this series wherein he was 2-0 down in the 83rd minute. And at the end of the game, this man went on to take it to extra time and actually won that game on penalties. So he is capable of doing it. But right now, Charanjot seems to be playing his FIFA on some different level altogether. It's not a level which we have seen for a long time. And I think only Charanjot knows how he has leveled up so much. But right now he has another attack in mind, and that's going to be lost to Aditya Chadda once again with 20 in-game minutes left. Is he going to get that goal? Is that going to be offside? Is that going to be onside? That's a big save by Van der Sar, and the score still remains at 2-0 and 4-1 in favor of Charanjot. Well, Selvin, 72 minutes on the clock, and Van der Sar pulling off that save. I think if Adi Chadda had not given up by now, I think he will have to give up then, because I'm telling you, when you can create that move and it goes against you, when it does not, the ball does not ripple the back of the net, and now with 4-1 on aggregate, I think Adi Chadda needs to prepare for life in the lower bracket, where he will face off the loser of Saranch versus Sagnik. All credits to CJ, who has actually played some brilliant FIFA, who's actually really deserved his ascent into the next round. And now you can see that this game has devolved into pinball. I think both these players know that it's up, and they're going to focus on the next round. Well, absolutely. It has turned into a game of pinball because that took him only 3 passes to almost reach the goal. And it took Aditya Chadda 4 passes now to get into a very dangerous situation. That's another amazing slide tackle out there by Charanjot, making sure that he wants to go home with that clean sheet. Ladies and gentlemen, just to remind you all, Charanjot Singh, of course, was the winner of Qualifier 1. And I think well-deserved. He was a well-deserved winner, and he's showing that today as well. Right now, what he's been doing, what he is doing is absolutely incredible, and he can make it 3 with Eusebio to add wounds. To add salt to that wounds of Aditya Chadda with his favorite in-game player. That's 3-0 in the second leg, 5-1 on aggregate. Who would have expected this? At least not me, Neil. Well, Selvin, every year you think the competition has caught up to Charanjot. Every year you think, maybe this time they have found him out. Maybe this time they know what to do against him. And every year, CJ just strikes back. CJ just shows us why he is built different, why he's the one and only alien of this scene. Right now you can see, again, Adi Chadda with that opportunity, goes to ball the keeper. But right now, Selma, I'm telling you, he's playing at 80% because he has checked out of this game. And can you blame him? CJ has just been so dominant. Absolutely, Neil. I think CJ has been very much dominant. Aditya Chadda, for everything that he is capable of, for everything that he's done, is unfortunately going to head into the lower brackets, and he'll be waiting for the result between Saransh and Sagnik. But Charanjot Singh, on the other hand, makes it 4-0 in the second leg. That is right. You are listening to the right score line. 4-0 in the second leg. 6-1 on aggregate versus Aditya Chadda in the quarterfinals of the Josh Presents Esports Premier Series, brought to you by Esportz. And this has been an absolute 10-on-10 display by Charanjot Singh. Absolutely, CJ, really take it away. All the applause in the world, all the cheers need to be given to CJ because he has absolutely just shown up, and he has shown up in style for us. He has shown up in some amazing style, because it is Charanjot Singh who goes into the upper bracket finals, and believe it or not, he has just beaten Aditya Chadda by 6-1 after 2 amazing legs of FIFA. That's right. After 2 legs of FIFA, is Charanjot Singh 6, Aditya Chadda 1, 2-1 and 4-0, the respective scores for each legs. Both of them, of course, some amazing FIFA gameplay that we saw. We saw some amazing goals.
I'm sure if I have to ask you your favorite goal, you're going to tell me the goal that Challenger scored in the second leg, the first one by Ginola. But then, that was some incredible show of FIFA, isn't it? Goal is incredible when you have to look at your co-commentator and just stare, because that goal, when it went in, I could not believe it. The net rippled, the players circled away in celebration, the scoreline shifted for a second, but I still could not believe it. From that angle, this player has just done the incredible, the never before seen. And Schmeichel, we kept saying Schmeichel is so good, Schmeichel is the man of the match, but Ginola had put that goal past him, and that is Charanjot in a nutshell. Charanjot makes the spectacular look easy. He's on a different plane, and right now in this first game, Charanjot has showed us that he is still the man to beat. He is still sitting on that throne, and it's up to the competition to dethrone him. Selvin, if I could choose a game to show a person, someone who's never seen FIFA before, it would be this game, because this had everything in it. It had spectacular goalkeeping saves, it had absolutely rock solid defending, and it had some attacking moments of magic. And CJ has prevailed 4-0, and Ali Chadda really needs to do his homework for the next game, because one more loss, Selvin, and he will be eliminated from the tournament. Well, absolutely. I think first, let's congratulate Challenger reaching The next round of the Josh Presents Esports Premier Series, brought to you by Esportz. Of course, Charanjot was dominant in this one, and as we were saying, when the insane becomes the routine, that's what it is for Charanjot. For him, he makes the game look so easy that even moments of magic look like something which is very normal, because he does it day in and day out. And that's what he did versus Aditya Chadda. Of course, Aditya Chadda will have another chance in this tournament, as Neil was saying, because he will be facing the loser of the next match that's coming up between Saransh Jain and Sagnik Banerjee. Of course, the next match is going to be our last match for today when it comes to FIFA. Saransh Jain, the winner of Qualifier 2, versus Sagnik Banerjee, another wildcard entry by winning the online wildcard qualifiers that happened earlier this year. And it's going to be a crazy game once again. Saransh and Sagnik Banerjee, two of the top players in this country, not just for this season, not just for the last season, but for many seasons now. And they both are capable of going ahead and winning this entire thing, and possibly making sure that they cement their name and their reputation as the best in India by winning this tournament. Absolutely, Seven. Both these players do have a lot of experience with each other. Both of them are in the EISL. Saransh playing for Chennai FC and Sagnik playing for FC Bangalore. Both these players, again, there is no doubt, there is no excuse of nerves, because both these players are as experienced, as battle worn, as ready as you could be. And now it all needs to be seen. Who is the better man today? Both these guys have absolutely mastered the meta, and they know what it takes. On any given day, they can win any FIFA tournament in the world. It just needs to be seen. Can they show up today in this Esportz Premier Series Grand Finale? Who will be winning? This is the next quarterfinal. This is the second quarterfinal. The loser goes on to face Ali Chadda in a double elimination. So I'm so excited. And the winner goes on to face Charanjot. I can't wait for it. Well, I am sure you guys cannot wait for it either. And I'm getting an update that the game is going to be starting very soon. The players are trying to connect. And before that, if you all have any predictions for the game, make sure to let us know in the chat. The game is going to be between Saransh Jain and Sagnik Banerjee, which will be starting anytime soon. If you've just tuned in, let me just remind you, you've missed a belter of a game, a cracker of a game between Charanjot Singh and Aditya Chadda, which has finished 6-1 in the favor of Charanjot. That is right, 6-1 was the result. Charanjot is in the next round, and Aditya Chadda will have another chance, which will be tomorrow. But right now, our focus is going to be on this game between Saransh Jain and Sagnik Banerjee. Both these players right now playing the EISL for different clubs, of course. All four players are very good friends of each other. They're not rivals, so there's a healthy competition that happens between them. But as we were saying, when it comes to FIFA 1 versus 1, it's every man for himself. And Neil, of course, you know Saransh very well, you know Sagnik very well. Would you just like to talk about their game styles in general when it comes to Saransh? Let's start with Saransh first. Well, Saransh Jain has that mastery of the ball. He has that knowledge, he has that safety of assurance in his mind, that he knows that, he does not have to rush. He can just take his time. He's got that mechanical superiority, which means that the chance will always come for him, and very often it does. All it takes is for him to just put that pressure and create that opportunity. He forces mistakes from people like no one else I've ever seen. And against Sagnik, even though Sagnik is as composed as they come, he
he'll be looking to do the same. For Saransh, the playstyle never differs. The meta might change, but Saransh, that all he has to do up his pressure, keep up that suffocating and that attack seems to never stop, with the recycling of the possession, he should never stop with the runs, with the passes, and the goal comes for Saransh. Ladies and gentlemen, for 4 years in this Indian FIFA scene, there has only been one constant, and that is Saransh Jain showing up at the business end of tournaments and dominating, and with 5 lakhs on the line, all right, you can bet that there's going to be a rivalry between these players. Well, I'm pretty sure, I mean, both these players are absolutely amazing, and Saransh Jain, of course, has been consistent for a very, very, very long time. He has a lot of major titles, he has a lot of national titles, and he would be looking to add another to his collection. And just before we head into the game, Neil and all the viewers, I would just like to remind you all that this was also the finals of the qualifier 2. It was a best of 5 finals between Sagnik Banerjee and Saransh Jain, where Saransh Jain came all the way from the lower bracket, whereas Sagnik was the winner of the upper bracket. But Saransh Jain came all the way from the lower bracket to win the best of 5 by 3-0, which is what shows his dominance at the business end of every tournament. And that's what he did in qualifier 2. Can he do it again? We will find out very soon, because the game is going to be starting anytime soon. Neil, would you like to talk about Sagnik's playstyle as well? Well, Salman, I would like to talk about Sagnik's playstyle, but I don't want to have that memory going through my mind of the one time I faced Sagnik. I'm telling you right now, that man made me look like a fool. And by all accords, I am a decent FIFA player. Sagnik was just too good, and when it came to that Neymar, with the way he dribbled, with the way he was creating chances, he was cancelling elasticos, he was just having fun with him. And that's when I knew that, you know what, even when it comes to professional players, even when it comes to people who finish elite, who finish rank 1, there is still a huge disparity between Sagnik and the rest. These 3 players, Charanjot, Saransh, Adi Chadda, they have been at the top for so long. They have been so dominant. They have been so unlikely to lose to anyone. For Sagnik to be here, well, that just shows his class, that just shows his quality. And today is his opportunity to show that, you know what, he's not just their equal, but he could be the better of them. Sagnik has this huge opportunity, and I'm sure he'll be relishing the chance to take it tonight. I'm pretty sure about Neil Sagnik, of course, for all the things that you said for him. He's going to live up to the expectation for sure, because he had a great online wildcard qualifier. He was possibly the best player of that qualifier because he was very dominant. There was not one match where we felt he got lucky or he got favored by FIFA or he was the second best player in that game. Every game that he played, he was the superior player. He went on to take a comfortable lead at the start, or went on to make sure that he has his position cemented in the next round right before the game even started, because that's how amazing he was right throughout the online wildcard qualifier. Saransh, of course, did not have to play the wildcard since he qualified via qualifier 2. Both of them, of course, have played each other multiple times. I'm sure they've both beaten each other. They've both humiliated each other at times with regards to, the goals, with regards to their skills. But today is going to be a different thing altogether. You do not get a tournament as big as this very regularly. And once you do, there is a lot of things that come to play when it comes to pressure, when it comes to mentality, when it comes to momentum, when it comes to you playing or practicing for different types of tournaments. And it's going to be a test of all these things coming down, but only one can survive. Absolutely, sir. Like you said, it is that surviving power, it is that staying power, it is about who can take that pressure and who can outclass the other. And now I think the game is about to start, and we're going to see who will be progressing, who will be facing CJ in that next round. Will it be Saransh or will it be Sagnik? I can't wait for it. Well, I can't wait for it either. I'm just getting an update that the game is going to start soon. We're just waiting for the 2 players to connect. But as soon as the game starts, we will be going right into the game between Saransh Jain and Sagnik Banerjee, who are going to face off in an home and away format right now. There's going to be 2 legs of FIFA that they'll be playing. And at the end of the second game, we will figure out who the winner is based on the aggregate score. In case if the aggregate score is a draw, we go into extra time and we go into penalties if needed. But after 2 games, we will have a winner who will go on to face Charanjot Singh tomorrow in the next round. And the loser, of course, will unfortunately go on to play Aditya Chadda in the lower bracket elimination round, which means the person who loses next in that game, it will be eliminated and will have to settle for 4th place in this tournament. We're just waiting for an update with regards to the game to start. But ladies and gentlemen, if you are here right now watching, make sure to subscribe to the channel in case if you haven't already. Do follow esportz.in on Instagram for more updates. There's FIFA, there's FreeFire, there's Valorant.
There are going to be a lot and lot more games coming up as well. Make sure to let your gaming friends know. If you have anyone who plays FIFA, let them know about these tournaments, let them know about the qualifiers, because this is going to be happening once again very soon, and you do not want to miss out on an update. Let's just wait for this game to start. And before that, Neil, I think we'll just talk in general about these 4 players that are here in this tournament. Of course, now you are a player who's been playing FIFA very often. Now these guys have also been playing 2 versus 2 mode, and this is of course 1 versus 1. How much of a difference does it make if you have to explain it to a non-FIFA player? Like, a lot of people would feel 2 versus 2, 1 versus 1, FIFA 21, 22 is the same thing, is the same game. But how much of a difference do those little things make? Well, Salman, that's a very good question because you do have so many game modes in FIFA. You got 2v2, you got 1v1. A lot of these players also play pro clubs. But the difference between 2v2 and 1v1 is that very often in 2v2, you do have that insurance policy. You do have your co-caster, your teammate who can play, who can save you. Of course, my co-caster always saves me all the time. And in 1v1, it's all you, Selvin. Like I said, it's all you. There's no one to blame. There's no one to bail you out. And right now, both these players know that it is them just facing off. It is about who can impose their will. Will it be Saransh? Will it be Sagnik? I cannot wait to find out. And we have started. Selvin, let's go. Well, we have finally started. I'm sure there was some connectivity issue between these 2 players, but now that we've started, I am sure there are going to be no issues. Just to let you know, Sagnik is in that white kit and Saransh is playing in the Inter Milan black and blue kit. Sagnik with all his attacking intent right now. Leon Goretzka, out of all people, trying to make some space to find the pass. Look at the defense, how coordinated they are for Saransh. Look at them just waiting for Sagnik to try and make that final pass so that he can go ahead and defend it as he did right there. And now Saransh Jain, of course, his playstyle is not similar to Charanjot or Aditya, but then he has a playstyle of his own. And that playstyle is often very unpredictable, and he can produce moments of magic out of nowhere. But so can Sagnik, and that's what he has in mind here. Plays it back to Goretzka, has some space with Alphonso Davies, who was running riot in the online wildcard qualifier for Sagnik, scoring in almost every game that he played. And that's some great pressing out here by Neymar Jr., who may just go ahead and take a shot. Will he not? Will he try to find that extra pass? I think he's gone for that. Overdoes it a little and loses the ball to Saransh. Cautiously approaching the edge of the box, and so many players, Selvin, the pressure which he exerts with that Neymar, they just crack, but not Saransh. Saransh with ease dispossessed him, and now Saransh has an opportunity to impose his will on Sagnik. You can see right now he's making those inroads. You can see that Ginola easily, with the keeper in his sights, ball rolls him and scores, and that is Saransh Jain for a second, ladies and gentlemen. I cannot talk highly enough of this young man from Pune, India. And right now, he has just shown you why he is a level above the rest of the FIFA universe. Well, what an incredible goal, ladies and gentlemen. And once again, this game, which promised to be an absolutely entertaining game, has lived up to it, because Saransh Jain has scored the first goal within the first 15 minutes, and he has no intent of stopping, because he is on the wings again with Ginola, the one who scored so many goals. Renato Sanchez to Ginola, to Mbappe. Twisting, turning, trying to find those extra passes, gives it to Lionel Messi. Beautiful turn, trying to find the final pass, and that is brilliantly defended by Sagnik. Selvin, that offside that almost proved to be Sagnik's undoing. And again, Saransh with that nutmeg on the edge of the box, Saransh really has started strong, and now Sagnik knows that if Saransh has gotten going, once he's shifted into those upper gears, getting back into this game will be very tough. Of course, ladies and gentlemen, there are 160 minutes of FIFA left, but that is just how good Saransh is. That is just, look at him, just creating that space, just putting that pressure on. He is the FIFA South Asia champion right now. He did win that latest qualifier in the FGS series. And he is playing like that. He is playing like a man on top of his game. And Sagnik, all he can do right now is defend. And right now, he did manage to stay away that corner. But again, you can see Saransh, this is like a basketball defense. The whole pitch is being invaded by him. And Sagnik, usually so cool, usually so composed, just gives away the ball right there on the edge of his own box. And you can see that Saransh is really feeling this tie tonight. Saransh is really feeling it, and I'm sure everyone who's watching is feeling it too, because these two players are putting on a show for us. And Saransh Jain, of course, is beautifully in here with that failed offside trap for Sagnik. But unfortunately, the ball roll does not
come to as much effect as he would have expected. But the danger is still not clear. Yes, Sagnik, of course, looking a little under pressure against Saransh. I mean, everyone would, but then that is something that comes naturally when it comes to Saransh, because he's considered to be one of the best pressers when it comes to FIFA. He's been pressing intensely, and here is Sagnik trying to escape that press and making sure that he gets that final ball to Mbappe, gives it back to Dembele. Is he going to take a shot? Is he going to wait? Saransh has a lot of bodies back in defense who are very well disciplined out there, making sure that Sagnik doesn't have a way out. Treated any further, they'd be in their own goal. But you don't need to defend when you got those DMs, those defensive midfielders doing such a standout job. And now Sagnik will really be frustrated because this is not what he's used to when he plays FIFA. He is not used to playing those hidden hope passes, and he's not used to being dispossessed quite so easily. Saransh, of course, with Theo Hernandez, that marauding left back, looking to create space on the wing to maybe put a cross in, but Sagnik somehow managed to get some breathing room. He manages to make a tackle, and now you can see that he's trying to play a through ball of his own, but no go. Saransh with Atal creates that opening, and you can see Saransh, that attack and that defense working so well in transition, working so seamlessly. And now he's trying to get that ball in with Messi. A very poor pass from Saransh's standards, and again end-to-end stuff. Selvin, now these players are sitting back. End-to-end stuff indeed. Both these players have played against each other multiple times, and I think Saransh, of course, has anticipated everything that Sagnik has thrown at him in this game so far, because Sagnik has not been able to produce that final through ball in this game, which he does very often with regards to opening space with his skill moves and then making sure that he gets that easy goal or that beautiful through ball. But Sagnik, of course, defending well on his own, but losing the ball once again to Saransh. And Saransh will now regroup and just try to create some more space by making this pitch as big as possible, but then going back to the center route. That's some great defending up there by Kimpembe. I'd just like to ask you a question. A lot of people say Kimpembe is overpowered in this game. Do you feel the same? Absolutely. Selvin, when I go to sleep at night, I check into my bed for Kimpembe. That's how much of a menace he has been this FIFA 22 season. He has been absolutely the standout central defender. And you can see with Sagnik that he really trusts him. Of course, against Saranjan, you could have 3 Kimpembes in the middle of defense and you still could not do anything. That man has been so dominant. That man has been so precise. That man has been so lethal that 1-0 really does not tell you the tale of this game so far. Well, absolutely, it does not tell us the tale of this first half, and we are into the second half now. Will it be different for the first half? Only time will tell. But both these Players have been so good throughout their FIFA careers, have been very good throughout the qualifiers that they played. And if it had been not surprising if they come up with at least another goal in this tie, and then if the second leg is a goal feast, just like it was between Charanjot and Aditya. But right now, Saransh wanted to make sure that he makes the most of that kickoff, but has to settle for a corner. The second game is a goal feast. I think it'll be Saransh who will put half a dozen past Sagnik. Right now you can see the way he just walked past the defense from that corner, creates that space. Lovely FIFA. Ginola on the turn, shoots, scores, and that is brilliant from Saransh. What a goal. For a second, I thought he just ripped that net apart with that short power. I thought he's going to go for an extra pass, and I thought he actually missed, but that was not to be the case. But this time, it's a horrible shot by Kylian Mbappe. The score stays at 2-0 to Saransh. I mean, he'll be very happy that he now has breathing space, but Sagnik has to do something really quick, or else, unfortunately for him, Saransh is going to run away with this. And once Saransh runs away, I don't think even Usain Bolt can catch him. So if this does be a high scoring affair, it'll be Saransh scoring half a dozen. And when I said that, I wasn't completely serious. But right now I'm telling you that this could end up that way. There is still a third of the game to go. And now it seems that this fight in Sagnik has left. These players are still on the pitch though, and they might just end up taking the battering of this tournament these last 30 minutes. Well, I'm just hoping that is not the case, because there is another leg after this one for Sagnik. So he has a decision to make, whether he sits back and waits and attacks patiently in this leg, or whether he goes on to try and score another goal, or try and score at least one goal and put some more pressure on Saransh going into the second leg and possibly getting some momentum in his favor. But right now, Saransh looks unstoppable, and that through ball to Mbappe was almost unstoppable. But luckily for Sagnik, it is now back with him. The ball is back with him, and he can now attack with Atal.
and now gives it back to Davies in the center. Will this come to any fruit right now for him? Only time will tell. Here's Davies again in an attacking position. Neymar Jr. running down the wings, looking for that cutback. Beautifully done, but unfortunately for him, Saransh is way too strong in defense. France's defending is a work of art, Selvin. I'm telling you, when Sagnik gets into the box with Neymar, people absolutely are in tears. People are just so scared. People are just so stressed. But right now, watching this game, I think you can concur with me. Sagnik did not look like an attacking threat at all. That is Saransh Jain's superpower. That is his defending mark, where you know that Neymar is merely a few feet away from goal, but he is just not going to get a shot on target. Forget score. He is not going to cause any damage. And you can see it's the little things he does with that bridge done so well. I'm surprised that wasn't a foul right there. But again, it is Saransh Jain. He does the little things so well, and that's all it takes. You know, Salman, don't make the mistakes. Play that basic, simple FIFA, and you will eventually win. And Saransh Jain has won this game. There is 22 minutes left on the clock, and by all means and purposes, Sagnik could score, but make no mistake, he's getting his shots on target. But this game is done. Saransh Jain has just shown how dominant he is, and Sagnik will have a lot to learn for the second leg. Well, absolutely. I think Saransh has been dominant, and Sagnik is slowly and steadily getting his feet in this game right now. I mean, that this has been some good passive play for him. The last 10-15 minutes in game have been all Sagnik. I think as a FIFA player, one of the most frightening sights that you can think of is Sagnik Banerjee inside your penalty box with a 5-star skiller who has a 5-star weak foot. But then Saransh does not look to be intimidated by that. And here is Sagnik with a very clever free kick routine. But Saransh Jain once again well prepared, anticipated what he had in mind, and he has read it well. And Sagnik has to settle for a corner. Now, if he has to do anything, Sagnik, he has to try and put a goal past Saransh in the next few minutes to have any chance of coming back into this leg at least, or else he may just have to settle to go into the second leg with a big deficit. Salman, a goal will be a good foothold for the next game, but more importantly, it'll be a good moral support for Sagnik that he can score against Saransh. Right now, you can see again Mbappe with that heel to heel gets just blocked. It's embarrassing, really, the way in which Sagnik has just been stopped by Saransh. And you can see right now again, Saransh is very noticeably shifted back into second gear because now he knows, and we all know, that this man is just too good. And 2-0, well, he could make it 3-0, he could make it 4-0, but I think he'll settle for 2-0. He is safe, and it'll be nothing short of a miracle now, Selvin, if he does not make it to face CJ in the next round. Well, I will not say it will be a miracle because Sagnik is certainly capable of it. But then if Saransh has to lose this one, Sagnik will have to make sure that he gives his 100%, because even 99.99 is not going to be enough against Saransh. And right now, Sagnik, of course, for everything that he's been doing in this game, I'm sure figures out that maybe he needs to get that attack one last time, put all the pressure in the world on Saransh before he gets that ball, because he would like to score at least one goal to get some confidence, to get some moral boost, to get a boost, of course, before going into that second leg. Because at 2-0 down, a lot of us, unfortunately, will write him off, and maybe Sagnik would feel that's going to be a mountain to climb if he goes down 2-0 into the second leg. Absolutely, Salman. I don't think there's many players who, despite getting a 2-0 lead against Sagnik, you'll be confident that they'd win. But this is Saransh Jain, and he is just on another level. As a former pro yourself, Selvin, how disheartening is it when there's one person who's been around for 4 or 5 years and he's been so dominant, and no matter what you do, no matter what you try, you just can't seem to get the better of it. That's the situation which Sagnik and a lot of these other pro players in India find themselves with in regards to Saransh Jain. Well, I mean, it's a tricky situation, but then there is a reason why there are players like Saransh or Charanjot who have that reputation, because they've deserved to be there by putting in those hours, by putting in those efforts. And I think we just have to respect that amount of effort, the amount of time that they put in this game, trying to study it out. And right now, of course, I think we have to respect the fact that Saransh Jain has contained Sagnik Banerjee from scoring even one goal in the first leg. The first leg of the game between Saransh Jain and Sagnik Banerjee has ended 2-0 in the favor of Saransh Jain. Let's be very honest, it could have been more. But what a great game of FIFA we've just seen. Saransh Jain absolutely showing why he is one of the best players in this country, and not just for today. Of course, he's right now the best player in the Southern Asia region as well. And
a very dominant performance by him. Your thoughts on the game? Says head in the clouds, but his game is in another stratosphere. And one thing which you really like about this guy is that his feet are rooted firmly on the ground. You can't help but respect what he's achieved in FIFA so far. You can't help but appreciate the God-given talent that flows through this man's blood. And 2-0, well, that doesn't tell the story at all, because this has been a dominant performance. And in the second leg, I think he will just underline that dominance. Selvin, do you actually believe that Sagnik has a chance? No, we know how good he is. Okay, no disrespect to how good Sagnik is, but do you really believe that Sagnik can make his way back after the dominance displayed by Saransh right now? Well, I'll be very honest with you. There is a reason Sagnik is here, and no matter how good Saransh is, Sagnik is going to be thinking, I am not here just to participate. I'm not just here to make sure that, I'm here just to settle for 4th place. I'm sure he's going to go all out right from the start, and maybe, just maybe, if he can get that first goal, he is going to feel confident enough to score more goals against Saransh. I do not know if he'll be able to beat him, but I'm pretty sure that he'll put up a fight and make sure that Saransh has to deserve every bit of this victory in case he wins it. But only time will tell what's going to happen. I'm expecting a great show from Sagnik in the second match, because we all know he's a much better player than what he displayed in the first leg. Of course, credit where due to Saransh Jain, because he was on another level. As Neil said, his name must be head in the clouds, but then he was in a different stratosphere altogether, because right now the game that he displayed was worthy of winning any tournament. An absolute dominant display in attack, a dominant display in midfield, a dominant display in defense. Complete dominance was the word. The only thing that was lacking was more goals, which Neil feels can be the case in the second leg. We're going to go into the second leg very, very, very soon. Both of them trying to connect, and here we are. We can see Sagnik's team in front of us. Let's hope somebody from that team comes in clutch and scores the first goal for him to make this tie interesting. He's the people's champion. That's what I'm going to say. He's the people's champion. He's got gold Dembele, and he's got second form Vinicius showing up for him. Absolute respect to Sagnik for not having the most meta team, for not having the best players, for getting so far. But it seems like so far is just where he will get, because now the second leg has started and Saransh Jain has possession of the ball. He will be looking to score first. He will be looking to make sure that any hopes that Sagnik have been dashed. And right now you can see with that Mbappe on the edge of the box is dispossessed. But Sagnik knows that Saransh Jain means business, and he'll take all that he's got to somehow miraculously escape the predicament that he faces himself in. Well, absolutely. And once again, ladies and gentlemen, Sagnik, of course, is in the white kit, whereas Saransh Jain once again in the Inter Milan kit. Sagnik, with all his intent, with everything that he's got, wants to score the first goal in this game, because he knows a third goal in this tie would be game over. But that could have been a big, big, big goal for Sagnik. But somehow at the near post, it is Saransh who makes the save to make sure that he still has a 2-goal lead. Sagnik once again will be trying to attack. Well anticipated, well defended by Saransh, who now sets in Atal on the run. This is going to be a counter, 3 versus 5. Ginola not the fastest, but he still has a lot of space, not very agile, but he can still dribble past those defenders and find Atal on the wings, who gives it to Mbappe, then leaves it for Messi. And now that's well defended by Sagnik, but given away very cheaply to Renato Sanchez. Lionel Messi once again trying to pass it forward. That's some great FIFA gameplay with regards to attack and defense overall. It's up when you're facing Saransh Jain. But right now, I won't talk about the pressure exerted by his players on the pitch. I'm going to talk about the pressure that is Sagnik was under, because right now he had such a great opportunity on just in front of the keeper, and he blasted it wide out of play. And that miss might just come back to haunt him, because right now Saransh does have the ball with Ginola, with Kessie, with Mbappe. Mbappe dances, he moves, he strikes a shot with that left foot, and the defender just about gets in the way. But right now, Sagnik, it's a monumental effort for him to just escape his own half. And, well, Selvin, you can see that miss must have really affected his confidence. Well, I am pretty sure that must have affected their confidence. But these two players, of course, are the ones who leave whatever happened in the past. And I'm sure they must have forgotten about it already. Sagnik must have forgotten about the miss. Saransh must have forgotten about the missed chance. And they only look forward to what they can do instead of thinking what could have been. And that's what separates these guys from the other FIFA players, which is why they are here right now. No excuses, no regrets. They are here for a reason. And Saransh, of course, has no intention of stopping. But just as I say that,
commentator's curse. He gives the ball away to Sagnik, who somehow needs to get that first goal in this tie to make this game interesting and to make sure that everyone enjoys to see the last few minutes of this game. But right now, Saransh, if he does go ahead and gets that goal, I think that's going to be game over for sure. Absolutely. I think if you're a neutral, you're pulling for Sagnik, you're hoping that he gets a goal, you're hoping that there is some life into this tie. But let's be honest, Selman, based on the passage of play so far, based on what we have seen, it is Saransh, it is all Saransh, and it is Saransh who I believe will make his way to face CJ. What a monumental tie that will be in the next round. Well, what a monumental tie that would be, and I'll not be surprised if that game happens again, because just to let you all know, the winners of this game will go ahead and face each other, and the one who loses that game will still have another chance in this tournament. And right now, of course, Aditya Chadda is going to be waiting to see who he faces tomorrow with regards to the lower bracket elimination round, because that person, whoever loses that game, will be eliminated and will have to settle for fourth place. But right now, here is Saranjan inside the box with Mbappe, somehow cannot take a shot, and Donnarumma makes sure that he collects the ball with ease. The score remains at 2-0 on aggregate, and it is still 0-0 with 13 game minutes done. And Sagnik must be thanking his lucky stars and thinking, I just need a little more luck. The ball has to land up inside the back of the net somehow for him, so that he gets something to cheer about in this game, and that's going to be well collected by Donnarumma. Again, some great FIFA action out here, Neil. And Saran showing us that when the time calls for it, he is not afraid to go down that route one football. And he did try that lofted through ball. Ginola is 6 feet 2 inches, and for all his dexterity in the box with that 5-star skills, 5-star weak foot, he can do that. He can score those headers, a bit Ronaldo-esque. And Saranj almost pulled that out of the bag. Right now at 0-0, he's looking very comfortable. But I hope he does not take what we've been saying quite at heart. Because you know what, Selvin, he does need that one goal just to put his nerves at ease, just to put Sagnik completely out of commission. That one goal has to come, and has to come quick, because the longer it takes to not come, I think Sagnik's confidence will keep growing. Well, absolutely, and this game has a lot of things to do with regards to confidence and with regards to momentum. Of course, in the last game, we saw a failed offside trap, and Saransh unfortunately was not able to capitalize on it because Zinola could not complete the ball roll as expected. And Sagnik must be thinking, I am not going to take any unnecessary risk out here that can lead to a goal for Saransh, who is rotating the ball from left to right with ease, making sure that he waits for Sagnik to press him so that he does not have, he doesn't have to rush his attacks at any point. Here is Ginola once again, who tries to find Kylian Mbappe out there with that R1 driven pass, but ends up losing the ball to Sagnik, who can now start an attack of his own. Selvin, usually, when the defense is just stacked like that, there is no way to score. Right now, Mbappe, though, on his own, facing off against 4 defenders, almost managed to get his way through, and that would have been a spectacular solo goal. As things stand, though, this half has ended 0-0. It is still 2-0 on aggregate, and it still looks like a gargantuan effort for Sagnik to score, for Sagnik to even get back into the game. 45 minutes left. Sagnik knows that all he's got needs to be thrown at Saransh. We just need to find out if all he's got is enough to dethrone the king. Well, absolutely, Neil. I think a great half of FIFA. Unfortunately, did not have a lot of goals. It did not have any goals, but it did have some moments where we thought, okay, this is it. This is going to be a goal for Sagnik. This is going to be a goal for Saransh. This is going to be a chance. But it has been a case of almost, a series of almost that has happened. But we're going to resume with the second half. This is going to be the last half that will be played today, because this is the last game that's going to be played today. Saransh still with that 2-0 lead in this tie, and Sagnik has to do something about it if he needs to have any chance of making sure that he remains and goes into that upper bracket semi-finals, which will be happening tomorrow to face Charan Jot, who will be waiting for the winner of this game. Right now, Sagnik, for everything that he's done, finds himself offside, only to lose the ball to Saransh, who has the ball again, who would like to score at least one goal in this tie to make sure that he has a lot of breathing space, and who will then head into tomorrow with confidence, and that is going to be offside by Kylian Mbappe in an offside position, and we resume play at 0-0. And just like that, Sagnik has given the ball away again.
Selvin, I think we need to keep count of just how often he's giving the ball away. I think a lot of that has to do with his confidence. I think his confidence is shot right now. He's getting the ball back and losing it within a couple of seconds. Saransh gets the ball back. He keeps it for a while. But right now, Sagnik has found his way in. And again, what is up with this guy's defense? It is superhuman. Any other player, and I would say Neymar, lights out, he scores. But Saransh Jain, even when he gives the ball away cheaply, even when he makes an error, the recovery, it's almost as if the error is planned. It's almost as if it is scripted, because this man has decided that he will not concede, and they could play for 900 minutes, and that will still hold true. Right now, though, Ginola looking to find that through ball, but now I think Saransh has decided that, you know what, I'm going to take this passively. If the opportunity presents itself, I'll take it. Otherwise, I'm not going to rush it. Sagnik knows that he has to do all the attacking. The only issue is that he's faced the brick wall, and this wall will not budge no matter what Sagnik throws at it. Well, absolutely. And that was just not any other Neymar. That was a Neymar which is controlled by Sagnik Banerjee, who, when has a player with 5-star skills and 5-star weak foot, can destroy any defense. But at that time, Saransh Jain from behind, making sure that Neymar does not run away with the ball, to make sure that he still remains in that 2-goal lead. And credit where due, that was some incredible defending by Saransh. Had to go all out there and made sure that he did that, and still made sure that he has that clean sheet. And right now, things can change very quickly, because Mbappe is in here. He has a chance. Is he going to take a shot? I think he will. Is he going to try and run it down to some player? And that's a penalty for everything that we've seen in this game. This is high-level drama. That is a soft penalty conceded by Marquinhos. Here is Kessie, who goes down the center to beat Donnarumma and to make it 1-0 in the favor of Saransh, 3-0 on aggregate. Game, set, and match for sure. And no matter what Sagnik does now, that's only going to be a mere consolation. That was the killing blow. That was what put Sagnik finally out of his misery. And again, Mbappe in the box, twisting, turning, just making a fool out of the defender. Sagnik said, you know what, no more. He hacked him down, and then Kessie putting the ball into the middle of the goal. Now Saransh can really add some flourish to the finish. Looks to get in with Mbappe. That's a goal. Lovely FIFA from Saransh. He makes it look easy. 68 minutes on the clock, and it is 4-0 aggregate. And well, 4-0 just about seems right for the dominance displayed by Saransh today. Well, absolute dominance, and I think the scoreline now does justice to what Saransh has done. 2-0 in the first leg, 2-0 and counting in the second, with around 20 in-game minutes left. And looking at what I see right now, Sagnik wants to attack, and he is not going to think of not conceding more goals. Look at the spaces opening up in defense. Here is Lionel Messi in on the act. He's for sure going to find a pass, but unfortunately for him, it's not his own teammate. He's given the ball away to Sagnik, who for sure is thinking, you know what, I am going to lose this game, but let me make sure that I score some goals, or at least provide some mad entertainment to the players, to the viewers who are watching. And that is some great spirit. That's what we want to see as well. Absolutely. Sagnik, to his credit, is still keeping on with that attack. He's still trying, but right now it is Saransh who's barely trying with that Ginola in the box. The pass, the finish. Oh my God. A clearance off the line, and well, he's still alive and he's still fighting. And a huge credit, Sagnik. I think everyone associated him will be proud, because he has lost to a freak of nature. He has lost to a phenomenon, and he is still one of, if not in the top 4 best players in India. Well, absolutely. And I think going back, that was an amazing passage of play, amazing pass, amazing shot, amazing block. But then, unfortunately for Sagnik, everything else has not been so amazing in this game for him, because Saransh has been the amazing one throughout the 2 legs. And maybe, just maybe, he wants to get another goal to make it 5-0, to just make sure that him and Charan Jyot have the same aggregate difference of a score, because Charan Jyot won it by 6-1, and Saransh would like to win this by at least 5-0, to make sure they go into tomorrow's games level, at least with regards to the score lines. And they must be thinking, you know, that's just some internal things that happen between these players, when they always think there is the same aggregate score that we had, and if you can do something, I can do the same, or I can do better. But right now, Sagnik had a chance after a while, but unfortunately for him, it does not go very intended. And we are back with Saransh, last 6 minutes, and it looks like this is, this is just going to end with another goal for Saransh. Put the flourish on it. Saransh,
give us something for the highlight reel. All right, he says, you know what, just a basic goal. It is going to be another pass, another finish. Keep it simple, silly. And Saransh Jain has a 3-0 lead. And well, there you have it, Selvin. The difference has been matched. And now tomorrow's game against CJ will really be something to see, because both these guys have had some impressive performances on this first day of Josh Presents Esports Premier Series, the grand finale. And well, we've had some grand performances from both these players. Well, absolutely grand performances from both these players, Neil, right on the day when it mattered. At the start of the day, if anyone would have told me both these players are going to win by a margin of 5 goals after 2 legs, I would have laughed on their face. I would have said that's impossible. I would have maybe had a bet saying that's never going to happen. But these two players, Charanjot and Saransh Jain, have proved me wrong, have proved a lot of people wrong. And it's absolutely amazing to see what they've just done here today. First of all, we're going to focus on this game. Congratulations to Saransh Jain for reaching the next round. That's going to be the upper bracket finals. And that is going to be insane, because that's going to be Saransh Jain, the winner of qualifier 2, versus Charanjot Singh, the winner of qualifier 1. And of course, in the lower bracket elimination, it's going to be Aditya Chadda, the winner of the online wildcard qualifier, versus Sagnik Banerjee, the winner of the online wildcard qualifier. The two of them who qualified from the online wildcard qualifiers. As Thanos says, everything perfectly balanced, and that's how it is. The winner of the qualifier in the upper bracket, the winner of the wildcard in the lower bracket. And once again, final confirmation, 4 goals to nil in the second leg, 5 goals to nil on aggregate to Saransh Jain. What a dominant display. Neil, I just have a question for you. Going into the finals, going into the next round, without conceding a goal and without even looking like you're going to concede a goal, how much of a boost is that for your confidence? Aura of invincibility, and Saransh Jain's aura of invincibility, he has been shrouded in that aura for so long. It has not come off yet. And this season, funny enough, in the beginning of the season, people are doubting whether Saransh Jain could, make that transition, not just to the new meta, which happens every season, but also PS5. But you can see right now that Saransh Jain, well, he's just built different. And you can see that 5 goals to nil. And even though both the score lines were similar, on aggregate there's the same 5-goal difference, there was a level of mastery, a level of control, a level of just inevitability to this performance that just, anybody who was to face Saransh Jain would be worried. Even someone as accomplished as Charanjot will be worried, because on the basis of these 2 games we've seen, these 4 legs of brilliant FIFA, of mind-boggling skills and absolutely brilliant performances, Saransh Jain has been the player to watch. He gets my VIP of the day because he has shown us that he is the best. And tomorrow, when he faces off against Charanjot, it will be a clash of titans. It will be something that I want every FIFA lover to watch out for, because that is the best this subcontinent has to offer. That is the best South Asia has to offer. And if I had to put my money again on these guys against anyone in the world, I would put my money on them, because I genuinely believe that this is the highest echelons of FIFA we are getting to witness right now. And I'm just grateful that we get to commentate on it. Well, absolutely. I think what else could have been better than an opportunity to cast these amazing games of these amazing FIFA players. Incredible scenes today. We've had 4 amazing legs of FIFA. That's 2 amazing games of FIFA. The first between Charanjot and Aditya Chadda, as we saw the brackets. Charanjot winning 6 goals to 1 after 2 legs. Saransh Jain versus Sagnik Banerjee, which just finished. Saransh Jain winning 5 goals to nil after 2 legs of FIFA, which means Charanjot and Saransh will now play in the semi-finals, which is going to be the upper bracket, and Aditya Chadda and Sagnik will play in the lower bracket elimination. The one who loses between Aditya and Sagnik tomorrow will be eliminated. That means he will have to settle for 4th place. But then the winner will still stay alive in this tournament. This is going to be absolutely insane. Tomorrow is going to be an action-packed day. In case you haven't subscribed to the channel yet, make sure to do it right away, because tomorrow we'll be back with some more FIFA and the other games as well. But you do not want to miss what's in store for you tomorrow with regards to FIFA. Follow esportz.in on Instagram as well, because tomorrow there'll be some more updates with regards to Josh Presents Esports Premier Series, the grand finale, brought to you by Esportz, of course. And Neil, I think I cannot wait for tomorrow. And just before we head it over to the host, is there anything you would like to say? Say it all. I'd just like to add, ladies and gentlemen, that this is one of the best tournaments on witness in India right now. FIFA, FreeFire, Valorant, a game for every console.
And this has been the FIFA event for today, and it has been a great FIFA event. We're not done though. This is just the first day. The action builds up, the performance will be better, and the prize which looms on the horizon comes closer and closer. 5 lakhs of prize pool money up for grabs. All these 4 players, now they've had their first introductions to each other. Tomorrow they'll come back. They'll have made their changes to the game plan. They'll have studied. They'll have researched. They'll have found a flaw in their weakness, and they'll have definitely found a chink in their opponent's armor. Let's see what they can work out tomorrow. 7. Well, Great. that'll be great. I mean, Charanjot Singh, Saransh, and Aditya Chadda, Sagnik Banerjee. The way everyone would have expected this to go. Winner of Qualifier 1 versus winner of Qualifier 2. Winners of the online wildcard qualifiers facing off against each other. Lots of madness, lots of magic, lots of drama, lots of entertainment. It's going to be a firecracker of a show tomorrow for sure. We do not know what's going to happen. We only have to wait and watch. But we will be here. Me and Neil will be here. Same place, same time. We will see you here. And I think for now, we're going to head it over to the host of this event. And they are going to be taking it over from here, because that brings us to the end of the FIFA action for day 1 of Josh Presents Esports Premier Series. Brought to you by Esportz. This is me, Selvin. Along with me is Neil the Super Keel. And we will see you guys super soon. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versailles Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versailles Innovation. Red Bull gives you wings. Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश।
ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Red Bull gives you wings. Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आजा। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आजा। Josh, India's own largest short video app, launched in August 2020 by Versa Innovation. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my life, standing on rainbows, playing it cool. I don't felt this in ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You get stronger.
get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, then I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. Oh,
Do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you.
you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up, you can have it all. Watch me rip it off, I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels right. somebody more.
Rising with each beat of the music is bringing real flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart so full. I'm devoting myself to the night. There's no motive. We're just listening. We're existing. We stay when the music plays. Let's drop below and the people sway. A little bit of light, a little bit of gold. Under pressure, you start to fold like a diamond from gold. Maybe you are something I cannot define. Maybe you are the fallen kind. I lay in bed with violence, the silent side of me. We see where fire starts to breathe. When I would lay in silence, the voice inside of me made me lose my mind right. Made me lose my mind right. We're gonna burn it down. Burn it down. We're gonna burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them. Change the station with a new shit. Show them. Change the station with a new shit.
tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Just silent boulder, the wind is cold. You must return to the wild. Just silent boulder, the wind is cold. You must return to the wild.
आयुषी फाइनली यार यहाँ पे फीफा खत्म हो गया बट अब वक्त आ चुका है उस मेन गेम का जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिलते ही रहते हैं। यस आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री फायर। अगर मैं फ्री फायर की बात करूं खास के तो ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी टॉप पे इस टाइम पे बैठी हुई हैं। कुछ टीमों ने इंडिया को ऑलरेडी रिप्रेजेंट भी कर दिया है। सो या बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। केमिन ई स्पोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, राधे ठाकुर एंड उनकी टीम टीएन ब्लास्टर। हेड हंटर्स की मैं बात करूं तो ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन इंडिया राइट नाउ। गॉड लाइक में निवेश एंड गिनोत्रो ऑब्वियसली दैट डेडली डुओ। डी की मैं बात करूं तो शीनू हमें दिखेंगे। टीएसएम एफटीएक्स की अगर मैं बात करूं सो उसमें भी जय एंड इल्यूमिनाटी। टीएसजी आर्मी ऑब्वियसली लेजेंड सारे प्लेयर्स। निग्मा गैलेक्सी इन इस टीम में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट और यंगेस्ट आईजीएल आपको देखने को मिलेंगे। वसियो सीआरजे द कंप्लीट प्लेयर एंड देसी गेमर की अगर मैं बात करूं रिसेंटली इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एंड वन ऑफ द मोस्ट आई विल से एग्रेसिव टीम टोटल गेमिंग, टाइटेनियम, ई स्पोर्ट्स एंड कियोस। ये तीनों टीमें ऑलरेडी टॉप पर बैठी हुई है। तो हाँ एक चीज पक्की है यार, जनता ऑलरेडी सब इन टीमों का नाम जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ आज के दिन पे हमें एक नेक्स्ट लेवल बूम बाम फॉर शो देखने को मिलने वाला है गाइस। That's right. And to take you through this experience, we have our caster Bullet and Tarun. So आयुषी यहाँ पे अगर मैं कास्टर्स की बात करूँ जो हमारे आज के फ्री फायर के कास्टर्स है, बीरेन शर्मा एके बुलेट एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट्स एंड एक अच्छा कास्टर वो उसका प्ले बाय प्ले, उसका कलर कास्ट एंड हाइप कास्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजेदार है। उसके अलावा अगर मैं बात उसकी और करूँ रेनबो सिक्स सेज उसने बहुत ज्यादा खेला एंड एक वक्त में वो एस्पिरेंट भी था, प्रो प्लेयर बनना चाहता था। बट उसके अलावा जो हमारे दूसरे कास्टर है तरुण अग्रवाल एके आप कौन, सो ये एक ई स्पोर्ट्स ऑर्ग से जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की थी अपने चैनल को बूस्ट करने का। बट उसके बाद जिस तरीके का उनको एक रिस्पांस मिला ऑब्वियसली कास्टिंग में वन ऑफ द बेस्ट आई विल से दैट एंड उसके बाद तो सारी चीजें हिस्ट्री है यहाँ पर। Without further ado, over to the casters. एंड मैं बता दूं हमारे दर्शकों को ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज का फ्री फायर सेगमेंट एंड उसका ग्रैंड फिनाले है जो कहीं ना कहीं जनवरी से लेके चलते आ रहा है। ऑफ कोर्स इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा हमारे भाई को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। वेलकम टू द शो तरुण अग्रवाल। तो आज का जो पूरा दिन होने वाला है, बाकी जो 2 दिन होने वाले दिसंबर 8, 9 एंड 10 जो मेरे को होस्ट होने वाले हैं, मेरे साथ को कास्ट करने वाले दिस बी नन अदर देन तरुण अग्रवाल आल्सो नोन एज आपकॉन। Well, thanks a lot, Bullet. And it's been a year-long series. January से शुरुआत होने के बाद these teams they have been competing against each other and our favorite Indian esports battle royale game, the Free Fire. We are down to the top 12 teams for now. And ये top 12 teams अगले 3 दिन आपको जो है compete करते हुए देखने को मिलने वाली है in our 3 favorite maps as well. So map pool की अगर हम बात करें, Bermuda, Purgatory and Kalahari, these are going to be the maps in which these teams will be playing. Now each day 5 map and these teams अपनी टीम के लिए गैदर करे so that podium finishes को तो एटलीस्ट अपनी जगह बना ही ले, because you know the prize pool, it's $1 million INR prize pool, 10 lakhs का prize pool आपको हमारे esports premier series पे देखने को मिलने वाला है. So I mean I'm really excited, but what do you have to say? You have seen this Free Fire esports team, they have been performing at the top notch level of our country. So which team do you think you might be leaning forward when it comes to the podium finishes? बिल्कुल कहेंगे जब सेमीफाइनल सेगमेंट होता पिछले मंथ के क्वालीफायर का था, आई एम रियली रूटिंग फॉर टाइटन ई-स्पोर्ट्स, बट यहाँ पे टॉप 12 टीम्स है तरुण। आप टोटल गेमिंग ले लीजिए, आप केमिन ई-स्पोर्ट्स ले लीजिए, आप निग्मा गैलेक्सी ले लीजिए, सारे के सारे टीमों को पता है कि ये फिनाले स्टेज है। अब यहाँ पे आप आके एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज आप गलती नहीं कर सकते, बट हाँ बेस्ट ऑफ 5 सिनेरियो है, बेस्ट ऑफ 3 नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मैप्स के ऐसे सेगमेंट्स आएंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स आएंगे जहाँ पे टीम से बहुत मेजर मिस्टेक्स भी हो सकते हैं और माइनर मिस्टेक्स होंगे तो डेफिनेटली अदर टीम्स उस पे कन्वर्ट करना चाहेंगी। मैप्स बता दूं हमारे दर्शकों को, मैप्स कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द मैप टू बिगिन। एंड ऑफ कोर्स तरुण जैसा कहने कहीं आपने बताया पुर्गेटरी, बर्मुडा एंड कलहारी पे मिड टायर और लो टेरेन का जो एक एरिया है वो काफी ज्यादा मैटर करता है। पुर्गेटरी में 3 आइलैंड डिवाइडेड है, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। बट ऑन द मैप ऑफ बर्मुडा इनिशियल फाइट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले अगर होते हैं तो। जी हाँ, अगर हम बात करें हमारे व्यूअर्स से भी 5 मैप पर डे हमें विटनेस करने को मिलने वाले हैं। नाउ द डाइवर्जेंस आर सर्च कि आप देखिए 40% आप बर्मुडा देखने वाले, व्हिच इज गोना बी 2 आउट ऑफ 5 मैप। बट ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कालाहरी भी आपको 2 बार देखने को मिलने वाला है। कालाहरी बीइंग द फास्ट पेस मैप, इट्स गोना बी सम ऑफ दैट सरप्राइजिंग एलिमेंट जो टीम्स के लिए गेम चेंजिंग साबित होगी। बट एज यू टॉक्ड अबाउट द मैप विद द 3 आइलैंड, दैट्स गोना बी Purgatory, and Purgatory for you guys, it's going to be the only map with the longest power in terms of the land ratio, and definitely this could give each and every team that advantage अगर वो passive and positional खेलना चाहती है। So this is the match which they will be rooting for. That's why only 20% coverage आपको देखने को मिल जाएगा per day वो मैप पे।
बट सी जैसा हमारे दर्शकों को पता होगा, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 5 मैप्स में डिवाइड है। जैसा हमने पहले ही बताया, बरमूडा बीइंग द मैप्स जो 2 बार खेलने वाले, कलहारी भी 2 मैप खेलने वाले, तो ऑफ कोर्स कहने कहीं बरमूडा जैसा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो मैप हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे इनिशियल फाइट देखने को मिले, बट हाँ दिस कैन गो ऑल रॉन्ग कि अब हमें देखने को मिले कोई इनिशियल फाइट लेता ही नहीं है। तो लेट्स सी जैसे ही मैप स्टार्ट होगा कहने के उसी चीज पे हम जाके वापस से सीमित हो जाते हैं कि तब हमें पता चलेगा कि कैसे टीम्स प्ले करने वाली है, क्योंकि टीम का प्ले स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। फिनाले स्टेज है, जैसा मैंने बताया, टीम्स नहीं चाहेगी कि हमारी तरफ से कोई भी गलती हो। आप माइनर मिस्टेक्स भी करोगे ना, अदर टीम्स आप पे कन्वर्ट करके आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर देगी। वेल सेड बाय यू बुलेट, बिकॉज़ यहाँ पे एक गलती उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। टोटल 15 मैप्स है, तो ईच एंड एवरी मैप विल काउंट, एंड इट्स नॉट दैट दे हैव टू पुट ऑन द डोमिनेशन, इट्स दैट दे हैव टू पुट ऑन द कंसिस्टेंसी ऑन द स्कोर कार्ड। जितना यहाँ पे कंसिस्टेंटली अपने लिए वो पॉइंट्स गैदर करते रहेंगे, जितना एक बैलेंस अप्रोच रखेंगे इन टर्म्स ऑफ द मैच रिस्पेक्टिवली, कि क्या उनको पोजिशनल बायस होना चाहिए या फिर थोड़े ऑल आउट अटैक किल्स के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज़ कालारी इज समथिंग यू कैन नॉट जस्ट होल्ड ऑन टू द पोजीशंस। यहाँ पे आपको हर एक रोटेशन, हर एक पॉइंट एंड हर एक एंगल्स पे जो है आपको प्लेयर्स रोटेट करते हुए देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट इनिशियल लूट फेज समाप्त होता है, तो आई गेस सिर्फ 10 मिनट ही बचते हैं गेम को समाप्त होने के लिए भी। तो टीम्स यहाँ पे या तो अपने साइड से टोटल ऑल इन जाए अग्रेसिव, या पे थोड़ा इधर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बट विद दैट हियर वी आर द वेरी फर्स्ट मैप ऑफ बरमूडा हमारा बिगिन हो चुका है। दिस इज गोना बी द टॉप 12 teams and 48 players throughout the year. They have been competing and they are the one who will be competing once again for the rest 3 days. शुरुआत हुआ है बहुत ही हमारे decent hybrid plane path से, आपको देखने को मिल जाएगा। बुल्सआई पे टीम 2 side gamers they have dropped in, but काडा लुलिस्ता वहां पे यहाँ पे बन चुका है वो blue tier loot. It's going to be the fight between the side of team Tempest, and यहाँ पे 2 players को already गवा चुके हैं। Only one single player who might be asking for revival, VSSA उनके बाद, but that's going to be an unfortunate casualty for their team. जैसा मैंने अपने देखा वो विवेक 07 की टीम थी। ऑफ कोर्स जब विवेक 07 एक किल या अग्रेशन में जाना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है, और जैसा हम देख पाए टेम्पेस्ट की ऑलरेडी 2 मैच डाउन है। इट्स गोना बी मैडमैन एंड द अदर टीम। यहाँ पे टाइटेनियम ईस्पोर्ट्स कहना कि नोनू चंबा पुनीत एंड पॉपी क्लॉक टावर कहना कि ड्रॉप लेने का डिसीजन लिए हैं, और कहना कि बाकी एरियाज पे भी यहाँ पे फाइट स्टार्ट है। तो जैसा मैंने तरुण बताया था कि हमें इनिशियल फाइट देखने को बहुत एग्रेसिवली मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है, तो वो चीज ये हुई कि हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव फाइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और टीम से कहना कि टीम 9 दैट्स गोना बी टेम्पेस्ट फाइटी को यहाँ पे कहना कि स्पॉट ऑन कर लिया गया। स्नाइपर टाइम में छुप के बैठे रहे, मेडकिट का प्रयोग जरूर कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी उनके प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुका है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे ये जो उनका मूव था कि आप अपना लोकेशन भी दे रहे हो, आप दूसरी टीम को चैलेंज भी कर रहे हो, थोड़ा सा गलत हो सकता है। और जो टीम ने बनाई के बाकी 4 प्लेयर्स होने वाले ना, वो किस वक्त पे चार्जिंग करके कहना कहीं को किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं, और जो 4 किल पॉइंट्स है वो काफी आसानी से कहना कहीं अपनी टीम के खाते में जाती है। Well, that's an amazing start. That's the ideal start with this team. Would be looking forward for what? Team TSG यहाँ पे अभी भी आराम से बुल्सआई पे टोटली अपने लूट फेस को गैदर करेगी। अपने लिए ये 3 बैलेंसेस रखना चाहेगी। The first balance will be the loadout, जो उनके 2 वेपन्स रहेंगे। उसके बाद उनके medkits यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, because initially surviving till the last zone you need those medkits in terms whenever you get inside a fight or get engaged in any sort of out of the zone rotation as well. Zone भी यहाँ पे बड़ा खेल खेलता है, पर उसी के साथ ये बात भूलिए कि utilities is something which these teams will be rooting for, because end zones में you know the chaos and the fun which it will be beginning very soon. जैसा कि हम टोटल किल्स के विवेक के बारे में बात कर रहे थे, तो किल्स के मामले में अभी बस एक ही किल है उनके टीम के नाम पे, 1 किल पॉइंट है। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। आपने एक टीम को चैलेंज किया, उनका 1 किल भी निकाला, उसका टीम कहीं ना कहीं पूरी की तरह बैक ऑफ हो गई। ग्रेवेट के जस्ट बाजू में हमने एक और टीम को कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर किसी भी दोनों में से किसी टीम को अगर इंटेल मिलता है कि वहां पे एक और टीम कहने के रूटीन कर रही है, पोजीशन होल्ड करने के खेलना चाह रही है, तो हो सकता है दोनों टीम्स के बीच में हमें फाइट देखने को मिले। 3 मिनट कहने के खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक टीम कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट मैच से उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरह से बैकअप करने की कोशिश करती है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे टीम नंबर 2 ने आई गेस स्पॉट किया था टीम नंबर 4 का, टीम नंबर 2 ऑलरेडी कहीं ना कहीं कातुस्ता के साइड में जंप पैड का प्रयोग करके कहीं ना कहीं जाना चाहेंगे। इम्प्लांटेशन के समय एक और टीम मुझे देखने को मिली, दैट्स गोना बी टीम नंबर 12। बट लेट्स सी कि आगे चले कहने का फाइट्स किस तरह से लिए जाते हैं। इनिशियल लूटिंग कहना कि पूरी तरह से कह भी सकता हूं कुछ टीम से खत्म हो गया होगा, या फिर हो सकते हैं कुछ ऐसे टीम, बिकॉज़ अ बैटल गेम, कभी लूट्स आपको अच्छे तरीके से मिलते हैं, कभी आपको अच्छे लेवल के लूट्स नहीं मिलते हैं। व्हाट आई एम एबल टू सी कि कुछ टीम के पास यहाँ पे देख सकते हैं 2 साइड गेम के पास यहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह तो है। अगर किसी टीम को स्पॉट करते हैं, उनके कवर से उनको हटाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन ग्रेनेड्स का प्रयोग करके काफी अच्छे तरीके से उन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल, बमाश की स्ट्रिप के साइड पे आपको फिलहाल टीम एरो देखने को मिल रही है, बट टीम टीएसजी दे आर आल्सो लुकिंग टू कंटेस्ट ऑन टू देम। यहाँ पे बैलेंस मैप है, बर्मुडा का मैप, आपको पोजिशनिंग प्लस स्किल्स निकालोगे
करोगे तो आप सबसे ज्यादा एडवांटेज लाओगे अपने इनिशियल पॉइंट्स टेबल में। फर्स्ट मैप से जो टीम यहाँ पे आपको टॉप नॉच पे आते हुए देखने को मिलेगी, उनके लिए वो एक किक स्टार्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। टीम एरो, दे आर काइंड ऑफ बीइंग अनअवेयर, बट नाउ दे आर एंटिसिपेटिंग अ मूवमेंट ऑन टू द साइड ऑफ द टॉप मैच की स्ट्रिप, एंड देयर गोज द फाइट। टीम एरो अप अगेंस्ट टीम टू साइड गेमिंग। ये 4v4 का फाइट किस तरीके से इनिशिएट होगा, वो चीज तो फर्स्ट ब्लड कौन निकालेगा उसी के बाद पता चलेगा हमें। बिल्कुल, पहले ही क्रोनोशील्ड और जेलाओ की परेड का प्रयोग किया गया। टीएसजी क्या पे असॉल्ट राइफल यूज करके एक बंदे को आई गेस बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया था। ग्लू वॉल का प्रयोग करेंगे यार, तेरी टीम को बच के रहना पड़ेगा। थोड़ा सा एक हाई लेवल एडवांटेज जरूर है टीएसजी की तरफ से, ग्रेड जरूर पॉप इन किया गया है। थोड़ा सा और डैमेज करने का एरो की तरफ पूरा में किसी तरह से नॉक इन हमें देखने को मिले। 1107 को ध्यान रखना पड़ेगा, गोल्डन की 50 एचपी टाइम है, उसलिए थोड़ा फ्रंट पर जाके जरूर कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहता है। हाउस के कंपाउंड ने दिए फाइट बहुत ज्यादा क्लोज देखने को मिल रही है। मैक्स का प्रयोग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मैटर करता है। विंडो पिन का प्रयोग करके कहीं ना कहीं चार एंगल ढूंढना, बट टीएसजी किस तरह से अपने को संभाली हुई है वो कहने के अपने में काले भी तारीफ है। बट जो एक थोड़ा सा बोलेंगे ना क्लोज इन हाइट एडवांटेज है टीम नंबर 9 की तरफ से, टीम एरो की तरफ से, उसका अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं कर रहा, और जैसे ही उस तरफ नॉकआउट हो जाएगा फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा और रोशन की तरफ से, तो एक कहने के अर्ली एडवांटेज मिल चुका अपोनेंट एरो की टीम को। यहां भी सामने से कहने के नॉकआउट हो जाएगा, प्लस 2v4 का पे कहने फाइट बनते हुए दैट्स इज अ टीम वाइट कमिंग इन फ्रॉम द टीम एरो। व्हाट अ गुड स्टार्ट, 7 किल के साथ कहना कि टीम बनी हुई है, एंड this was not expected from a team like two side gamer। मेरे को लगा था कि जिस तरह से एरो जो एक थोड़ा सा बोलते हैं ना हाइट ग्राउंड एडवांटेज था कहने का तरुण बना हुआ, तो मुझे बिल्कुल यकीन था कहने के एरो उस जिसका अच्छे तरीके से मैं कहना चाहूंगा यूटिलाइज नहीं कर पाई थी। बट डेफिनेटली वीआरएस कास्टर में पता नहीं चलता है कि टीम प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, और देखते थे टू साइड गेमर्स आर eliminated from the first game itself। Well, just look at the approach of Team Arrow। यहाँ पे अपने साइड से वो कंपाउंड होल्ड कर सकते थे, rather they choose to back out, they choose to make sure कि वो totally यहाँ पे सराउंड कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को। Team Two Side Gaming they had that house, but they didn't have that intel कि यहाँ पे each and every glue wall कौन से players यहाँ पे किस glue wall के पीछे है। Utilities का प्रदर्शन that was quite phenomenal coming in from the side of Team Two Side Gamer। Damage was being dealt, but it didn't took that any sort of first opening, and opening जैसे ही निकली यहाँ पे बारी से ताज के पत्तों की तरफ बस पिछड़ते हुए नजर आई हमें हमारी टीम टू साइड गेमर। They did eliminated at the #11th position, but you talked about the 7 finishes जो already मिल चुका है हमारी टीम एरो को। I mean this is the ideal start, top 10 में अपनी जगह बना ली है, and हमारा सायरन बज चुका है, जिसका मतलब पहला प्ले जोन श्रिंक होना भी बिगिन हो चुका है। सेफ लोकेशन पे रोटेशन आपको टीम टोटल गेमिंग फिलहाल के लिए करते हुए नजर आएगी। कॉन्फिडेंस हो तो ये टीम के जैसे जो यहाँ पे व्हीकल से पूरी तरीके से पोचिनो के सदर्न मोस्ट एरिया पे जाना चाह रही है, बिकॉज़ आप जानते हो जितने भी हमारे बर्मुडा पे जोन्स बनते हैं रियली फेवर्स द सदर्न पार्ट ऑफ द फैक्ट्री, मास इलेक्ट्रिक, क्लॉक टावर एंड द पोचिनोक एरिया। बिल्कुल, कहने के एक बार बिगर मैप हमें पता चलेगा तो जरूर कहने का एक बिगर पिक्चर हम देख पाएंगे कहां पे किस तरह पे टीम और सर्कल देखे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शिफ्ट लेट हुए, तो जहां पे कोने का जो सेंटोसा का आइलैंड है उस पे कहने का थोड़ा सा फेवर होने वाला है। बट हां, सर्कल के बारे में कुछ नहीं अभी जान कह सकते हैं। एक फाइट कहने के बनते हुए जरूर नजर आ रही है। इट्स गोना बी एट टोटल गेमिंग वाली जो एक टीम को कहने का स्पॉट कर चुकी है। आई गेस दैट्स गोना बी द डीजी की टीम, देसी गेमर की टीम, जिनको कहने का स्पॉट किया गया है। बिल्कुल, देसी गेमर स्पोर्ट्स को कहने का स्पॉट ऑन कर लिया गया, बट इस तरह से कहां पे किस तरह से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। दो देखिए कवर के मामले में तो डेफिनेटली कहने का देसी गेमर स्पोर्ट्स के पास काफी अच्छे वहां पे कवर्स होने वाले हैं, बट अब टीजी की टीम कहने का उनको किस तरह से चैलेंज करती है वो कहने कहीं देखने वाली बात होगी। बट क्योंकि उनके पास दोनों हाउस का कर है, देखिए प्लेयर जो है इक्वली डिवाइडेड है, 2 प्लेयर्स इस तरफ 2 प्लेयर्स इस तरफ, थोड़ा मुश्किल होगा इस स्ट्रैट को तोड़ना। बट लेट्स सी, दिस इज द टीम ऑफ टोटल गेमिंग। फौजी एजे के पास जो चीज होनी चाहिए ऐसे स्ट्रैट्स को तोड़ने के लिए ग्रेनेड्स नहीं है, तो बाकी जैसे हम प्लेयर्स को किसके पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं पता चलेगा। तो ऑफ कोर्स माफिया वाला इनके मैंने देखा है क्वालीफायर सीरीज में उनका ग्रेनेड्स पे बहुत अच्छा होता है, पहले से ही स्टैक्ड अप रखे किए हुए हैं। इट्स गोना बी 3v4 एक्चुअली। देसी मेट्स के ऊपर आप देसी हर्ट्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट डीजी, इनसेन, एलेक्स, शॉन्टी, इनके पे कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि टोटल गेमिंग जैसी टीम को जब आप 1-on-5 पे लेने वाले हो, इट्स नॉट गोना बी इजी। अगर वो पहले से किसी चैनल होता है वहां पे एक और कहना कि टीम थर्ड पार्टी करते हुए नजर आई है, दैट्स गोना बी नॉन एज निग्मा गैलेक्सी की टीम जो माफिया वालों का एलिमिनेट कर दिया है, तो कहना कि इक्वली डिवाइडेड हो गया है। बट बहुत लंबी एक फाइट हो रही है, हमें भी पता नहीं चल पा रहा है। वासियों को वुड पेकर से कहने का नॉकआउट कर दिया गया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर निग्मा गैलेक्सी के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉकआउट हो चुके हैं। फिनिश ऑफ में देखने को नहीं मिला है, तो काफी दूर से जो एकदम कोटा टो का पीक है वहां से गन फाइट देखने को मिल रही है। और अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देसी गेमर स्पोर्ट्स इस चीज को कहना कहीं देख लेती है ना कि उनके ऑलरेडी यहाँ पे कहना कहीं गन फाइट चालू है, तो इस चीज को यूज करके कहना कहीं टीम नंबर यहाँ पे टीम नंबर 10 जो टोटल गेमिंग है उनको कंप्लीटली चार्ज करके एलिमिनेट कर सकती है। बट हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा टोटल गेमिंग को। एक बंदा आपका कहना कि माफिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट बंदा कहीं ना कहीं आपका नॉकडाउन हो चुका है। अगर आप सैंडविच होते हो तो इट्स लाइक आप कभी भी एलिमिनेट हो सकते हो।
जी हाँ, that's not just a player for them, but that's the firepower जो end zone में बहुत ज्यादा उनके लिए यहाँ पे एक एडवांटेज बन सकता था with that trio player remaining. Let's see कि वो अभी किस तरीके से अप्रोच रखते हैं अपने end zones के लिए, because normally आपको danger zone भी इसी साइड पे बनते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे 4 प्लेयर्स का क्लस्टर है. Meanwhile टीम गॉड एंड निवेश वो यहाँ पे अनस्टॉपेबल रहने वाले बारी-बारी नॉक निकाल रहे हैं. टीम टोटल गेमिंग, you either see them eliminated at the clock tower or you see them getting at least 4 to 5 kills. But now when you are seeing them with a casualty, you know this team is gonna play serious. This team is gonna play for that booyah and for their fans because they are already, just here to support them. Thank you all the ladies and gentlemen for tuning in. This is the Esports Premier Series presented by Esportz and powered by the Josh app. तो देखते हैं ये पहला मैप है, पहले मैप में जिस तरीके से बुलेट हमें 38 प्लेयर्स लाइव देखने को मिल रहे हैं. This is where the fun begins because zone देखिए, zone यहाँ पे shrink होना begin होगा and we know that the fight are just gonna be having in each and every 360 angle out there. बिल्कुल कहना कि टाइटेनियम स्पोर्ट्स में गॉड लाइक की टीम से कहना कि फाइट ऑन लेना चाहेगी एंड क्योंकि जोन का शिफ्ट दोनों टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा सारा नोनू का एक नॉकआउट जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, बट गॉड के ऑलरेडी एक प्लेयर वहां पे नॉकआउट रिवाइवल जरूर करने के दे देगा. नोनू पे फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेगा, डॉलर से हेडशॉट निकाल के नोनू को फिनिश ऑफ भी कर देगा. इट्स गोना बी 3v4 सिचुएशन राइट इन कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस. ग्लो का प्रयोग करके आप ज्यादा नहीं बच पाओगे. अब कोर्ट करने के सेकंड जोन है, सेकंड जोन ज्यादा उतना डैमेज नहीं देता, आप जोन के अगेंस्ट कहना कहीं फाइट ऑन ले सकते हो. बट टाइटेनियम पे थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने से जाएंगे, ये चैलेंज थोड़ा गलत था, उधर गोल्डन नॉक आउट कर दिया. अच्छा रिफ्लैग देखने को मिला है टाइटेनियम स्पोर्ट्स की तरफ से, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से रिफ्लैग अच्छे तरह से उन्होंने निकाला वैसे फिनिश ऑफ भी कर दिया गया. तो चंबा का जो ग्रेनेड किल्स थे और किस तरह से अपने टीम को सपोर्ट दिया वो काफी बढ़िया था, बट जिस तरह से नोनू ने वहां पे चार्जिंग किया और एक टीम को कहने के एलिमिनेट करने के लिए आप ऐसा चार्जिंग कर रहे हो एट दिस अर्ली स्टेज, मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा गलत होगा. बट क्योंकि वहां पे 2 नॉक्स भी कहने के उन्होंने 3 किल्स कहने के बटोर लिए, तो दिस वाज अ वेरी गुड स्टार्ट. एक अंतिम प्लेयर गॉड लाइक के बचे हुए हैं, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं जरूर अपनी टीम को कहने के नॉक निकालने का और फिनिश ऑफ भी करने का, बट 2v4 था कहने के पॉपी को भी एलिमिनेट कर दिया. तो चलिए बहुत अच्छी शुरुआत उनके तरफ से भी रही और बहुत अच्छा प्रयास भी उनकी तरफ से रहा. बट टाइटेनियम स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा जब आप जोन आपके अपोनेंट टीम के अगेंस्ट में, तो इस तरह का फाइट होना थोड़ा सा गलत है. एक और फाइट कहने के बनते हुए नजर आ रही है. दिस वन बी केविन स्पोर्ट्स गोइंग अप अगेंस्ट निग्मा गैलेक्सी. Well, team German Esports, let's see कि वो इस क्लस्टर को किस तरीके से आउटब्रेक करती है. एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं. It's gonna be the 2v3 scenario, but still यहाँ पे तायर आपको थोड़े ओपनिंग निकालने की तलाश करेंगे. Divine on the other hand, trying to save out his teammates. It's a 2v3 scenario, outnumbered है, but the landmine, I mean the landmine was the difference maker. ये 1v2 का scenario बन चुका है. तायर left alone in this 1v3 scenario. Let's see कि क्या वो यहाँ पे एक भी प्लेयर को डायरेक्ट नॉक फिनिश कर पाएंगे कि नहीं. Because 9th पायदान पे सिर्फ एक किल के साथ एलिमिनेट होना, that's something which is gonna be quite unfortunate, and he gets eliminated from the side of team German Esports. वास्तविक यहाँ पे 2 फ्रैग निकालेंगे और ऑलरेडी 4 फ्रैग आपको ये टीम के लिए देखने को मिल जाएगा. बिल्कुल केविन स्पोर्ट्स को मैंने जितने भी पिछले 2 महीने से मैं क्वालिफायर सीरीज इनके लिए करता और मैंने कभी नहीं देखा इतने स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट तरुण जाते हुए. बट ऑफ कोर्स कहने के मैन एडवांटेज था, उसका भरपूर प्रयोग किया गया. सर्कल का हम थोड़ा सा बात करेंगे. पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है बीच में जो सेंटोसा को कहने का डिवाइड करिए, टीम नंबर 6 और टीम नंबर 11 वहां पे जैसा मैं देख पा रहा हूं हेड एंड ट्रेस आईएस एंड वहां पे डीजी की टीम. तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सर्कल उनके अगेंस्ट जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा आगे चल के फाइट लो और कहने के अपने आप को सेफ जोन के अंदर कर लो. ऑफ कोर्स कहने के सेफ जोन रीडर उनको यूज करते हैं तो पता चल सकता है. बट टीम नंबर 6 जो कहने के ब्रिज पेट की हुई है, यहाँ पे टीम नंबर 11 भी देसी गेमर स्पोर्ट्स वो कहने के साइड के आइलैंड पेट की हुई है. तो आगे जब आप पुश ऑन करोगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टीम्स कहने के आपको गेट कीप करने के लिए तैयार रखी, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा. यू वांट टू सी द बिग सर्कल अगेन कि बीच में जो टीम्स होने वाली है, जो एक जो कोटाटोआ की तरफ जो कहने का सर्कल बनता हुआ हमें नजर आया है, उसको यूज करके किस तरह से कहीं ना कहीं आप सेंटर में जब आप जाते हो तो किस तरह से आप बुया निकालते हो. क्योंकि सेंटर पे जाना तो आसान है तरुण, बट उस चीज को आप यूटिलाइज करके किस तरह से आप प्ले आउट करते हो वो काफी ज्यादा मैटर करता है. निग्मा गैलेक्सी की टीम की बात करें, काफी ज्यादा मैंने उनको देखा था क्वालिफायर सीरीज में, पहले सेंटर में जाके थे, उसके बाद सारी टीम को एलिमिनेट करना स्टार्ट करते थे. तो कहने के हमें देख बोल सकते हैं कि फायर सर्कल भी कहने के बनते हुए नजर आ चुका है. टीम नंबर 10 टीम नंबर ऑलरेडी कहने के जा रही है एंड टीम नंबर 8 जस्ट गोना बी आई गेस द अदर टीम एंड टीम नंबर 11 ऑलरेडी वहां पे जो डीजी स्पोर्ट्स होने वाली है, उधर केविन स्पोर्ट्स भी है. तो ये कहने के सर्कल के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो गेट कीप करना चाहेंगे कुछ टीम को तो कर सकते हैं. 13 मिनट का गेम हो चुका है. आई गेस 10 मिनट ज्यादा ये मैप जाने वाला है. 27 प्लेयर्स अभी बचे हुए, 8 टीम्स कहने के भी बची हुई है. तो ये फाइट ऑन कैसी अब होती है. यहाँ से पहला मैप देखिए बरमुडा का स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज प्रेजेंटेड बाय जोश ऐप का ये पहला मैप है. तो ऑफ कोर्स मैंने ऑफ स्क्रीन भी बोला था कि जब एक पहला मैप होगा ना तरुण, तभी हमें पता लग पाएगा कि प्ले स्टाइल कैसा होने वाला है. तो ऑफ कोर्स बरमुडा पे तो कुछ टीम्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आई है, बट लेट्स सी कि ये मैप कौन लेके जाता है. अभी टीम्स यही चाह रही है कि कोई टीम अपना लोकेशन दे. आई गेस यहाँ पे इंटेल काफी ज्यादा टीम्स के पास नहीं है, इसलिए किसी तरफ से भी हमें गन शॉट्स या गन फाइट हमें नहीं देखने को मिल रहा है. जैसी वो चीज होगी तो एक आइडिया एज अ कास्टर हमें भी पता चल जाएगा कि किस टीम के पास यहाँ पे इंटेल है, किसी के पास नहीं है.
टीम केओस की मैं थोड़ा सा बात करूंगा, बहुत ज्यादा सर्कल के बाहर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, बट हाँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सेफ जोन के अंदर चले जाना चाहिए, दैट इज बेटर। बट एक फाइट करने के बनते हुए नजर आ रही है टीम नंबर 11 टीम नंबर 12 के अगेंस्ट, दैट्स गोना बी केमिन ईस्पोर्ट्स गोइंग अप अगेंस्ट देसी गेमर ईस्पोर्ट्स। एक दो फाइट्स, एक दो गनशॉट जरूर लिए गए हैं, बट वो ज्यादा कहीं ना कहीं डैमेज दिया नहीं है। देसी गेमर ईस्पोर्ट्स ऑन द अदर हैंड मैं कहना चाहूंगा काफी ज्यादा शांत नजर आ रही है, इतना शांत नजर आती है नहीं तरुण, बट लेट्स सी व्हाट गोस ऑन इन द सेकंड इन द फाइनल सर्कल, जो कहीं ना कहीं सर्कल जब श्रिंक होना स्टार्ट होता है तो। जी हाँ, यहाँ पे तीसरा प्ले जोन भी यहाँ पे श्रिंक होना बिगिन हो चुका है। टीम चेमन ईस्पोर्ट्स दे हैव स्पॉटेड ऑन टू द प्लेयर्स, बट यहाँ पे बिल्कुल भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, ओपोनेंट साइड से उनको शॉट्स फायर होगा एंड रादर टक्कर वेल ही गेट्स टेकन डाउन। टीम देसी गेमर्स की अगर हम बात करें, दो अपॉर्चुनिटी थी, पहले यहाँ पे टोनी गेमिंग को भी एलिमिनेट कर सकते थे, बट दे आर नॉट लुकिंग टू थर्ड पार्टी। यहाँ पे ऑडियो क्लूज उनको मिल चुका है, दे नो देयर इज समथिंग हैपनिंग आउट देयर अदर देन दोस टू हाउसेस जिसको वो होल्ड करके रखे, बट प्ले जोन वो भी यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। वन प्लेयर फ्रॉम द साइड ऑफ कोटा टू वो यहाँ पे रोटेट कर ले एंड दैट्स गोना बी द gatekeep scenario display. Team Chimney Sports they are not just going to capitalize, but देखिए फिफ्थ किल भी इनका नाम यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे पूरी तरीके से गेटकीप करने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, and this is going to be a bit unfortunate because यहाँ से बाहर निकलना तो मुश्किल है। बट आप बात कर रहे थे टीम देसी गेमर्स की, look at the play zone उनके ऊपर बन चुका है। What more could they ask for? Utilities का बेहतरीन प्रदर्शन, पूरी ग्रेनेड की बारिश, and that's the end for the side of Team 9, and that's going to be Team Chimney Sports जो 7वां पॉइंट भी अपने टीम कार्ड में जोड़ देंगे। 7 किल इनको मिल चुका है, टॉप 7 में इनके पास एंट्री है, 23 प्लेयर्स अलाइव एंड वी आर डाउन टू द फाइनल मिनट्स ऑफ आवर बर्मुडा मैप। ये फाइनल मिनट्स में थिंग्स आर रियली गोना गेट क्वाइट हीटेड अबाउट देयर बिकॉज़ प्ले जोन यहाँ पे आपको टोटली हाइब्रिड बनते हुए नजर आए। इट्स गोना बी द ओपन फील्ड्स एंड नो टीम इज इनसाइड द कवर। ग्लू वॉल्स इस पॉइंट ऑफ टाइम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑफ कोर्स करेंगे टीम केओस की तरफ से थोड़े बहुत गन फाइट देखने को मिले, बट यहाँ पे नॉक ऑन कर दिए जाएंगे। दैट्स गोना बी केमिन ईस्पोर्ट्स। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से केमिन ईस्पोर्ट्स ने एरो को एलिमिनेट किया, टीम एरो वो भी 8 फ्रैक्स साथ करने कहीं मौजूद थे, तो ये काफी ज्यादा काबिल तारीफ थी रहेगी उनकी तरफ से मैं कहना चाहूंगा। बट एरो की तरफ से थोड़ा सा गलत पोस्टिंग था, एक बोल्डर के पीछे आपके अगेंस्ट जोन भी जा रहा है और आप कहीं ना कहीं फाइट भी लेने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट वाज बैठे यहाँ पे। जैसा हम देख पा रहे हैं बैकबोन के पास वो एलएमजी है जो कब जब चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है और से बिल्कुल कहना कहीं काफी ज्यादा डैमेज है। बट यहाँ पे क्रोजा का प्रयोग करके कहना कि उनको नॉक ऑन कर दिया गया है। दैट्स गोना बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गोना बी केमिन ईस्पोर्ट्स वाले जो कहना कि टीम नंबर 12 पे कहने के स्पॉट पे बुक थे, वो कहना कि चैलेंज कर रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीम केओस को। 2 प्लेयर्स उनके ऑलरेडी नॉक आउट हो चुके हैं 4 किल्स के साथ, ज्यादा तो भी प्रभावशाली नहीं नजर आ रहा, बट क्योंकि जोन भी अगेंस्ट उनके जा रहा है, ये देखिए फोर्थ कहने का जोन बना हुआ है तो ये काफी ज्यादा उनको डैमेज देने वाला, बट कहीं ना कहीं बिल्कुल गेट कीप कर दिए जाएंगे। विवेक को 7 आखिरी बंदे उनके तरफ से बचने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के पास जाएंगे और उनको रिवाइवल दे पाएंगे। इसको भी हेडेड टीम जो करेंगे 3 फ्रैग के साथ अभी भी बनी हुई है, चैलेंज कर रही है। बट एक चीज जो मैंने एक पॉइंट आउट की थी तरुण की टीम लेवल है जो दैट्स भी देसी स्पोर्ट्स ज्यादा मायने रखता है कि आप सेंटर पे जा रहे हो, सर्कल के मायने रखता है आप उसको कैसे यूटिलाइज करो। हेडेड की तरफ से कॉल नॉक कहीं कहीं होते हुए देखने को मिले। दैट्स भी डीजी की टीम देसी गेमर स्पोर्ट्स जो कहीं को चैलेंज कर रहे हैं, एक और कहीं कहीं एजीज ने नॉक आउट कर दिया गया। तो टीएसएम भी देखिए जो उनकी टीम है वो भी कहने के काफी ज्यादा प्रभावशाली नजर आए। 2 फ्रैग के साथ एक जरूर करेंगे बंदा नॉक आउट, आउट ऑफ नोवेयर एक ग्रेनेड आएगा और वो नॉक ऑन कर दिए जाएंगे। केमिन ईस्पोर्ट्स को टोटली से 12 किल के साथ मौजूद है, बट डीजी की टीम करेंगे आप अगेंस्ट है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हेडर्स की तरफ से भी 2 बंदे बचे हुए हैं, टीएसएम की तरफ से भी 2 बंदे बचे हुए हैं। आई गेस हेडर्स की तरफ से एक ही बंदा बचा हुआ है, बट जिस तरह से कह रहे हैं कि केमिन ईस्पोर्ट्स अपना डोमिनेशन दिखा रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम को रोक पाएगी इन दिस एंड सर्कल। वेल टॉप 10 प्लेयर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। टीम टीएसएम वेयर दे हैड बीन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस आउट होते हुए नजर आई, 2 फ्रैग निकाला है, बट नाउ इट ऑल फॉल्स डाउन टू जय वाईटी एंड जय व्हाट हैव यू गॉट फॉर योर टीम इज द क्वेश्चन। बिकॉज़ टॉप 3 में अपनी जगह बनाने के लिए फाइट बैक जो है एंड तक उनको करते रहना पड़ेगा। इट्स वन ऑफ द 3v4 मूवमेंट्स जहां पे टीम चेमन स्पोर्ट्स दे हैव दैट बुया सिक्योर्ड ऑलरेडी। 13 फ्रैग निकाला है एंड 796 बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड और 2 प्लेयर को डाउन कर देंगे। एक प्लेयर गेट्स फिनिश्ड ऑफ एंड नाउ इट ऑल फॉल्स डाउन टू द लास्ट प्लेयर। Insane left behind the trees is just rooted for some opening, but that's not gonna happen. That's a maiden booyah from the side of Chimney Sports because not just they win it with some massive amount of kill numbers, but charo players end tak alive the. This is the domination they would want to continue throughout the map. आपने देखा बिल्कुल भी वो बैक फुट पे गए नहीं, फ्रंट फुट पे खेलना चाह हर एक टीम को यहाँ पे एलिमिनेट किया स्टार्टिंग ऑफ विद टीम टोटल गेमिंग एंड बुया इज वेयर दे आर गोना क्रॉस द फिनिश लाइन। व्हाट अ फिनोमिनल मैच एंड व्हाट अ फिनोमिनल मैच, यू नो मैप ऑफ बर्मुडा एज वेल व्हिच वी गॉट टू सी। जो किक स्टार्ट मिला है उनको यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में, आई रियली थिंक कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा उनको एंड ये कॉन्फिडेंस मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज़ अभी और 4 मैप बाकी है, तो बाकी की टीम से इधर जल्दी लड़खड़ा गई। आई डोंट थिंक दे माइट बी जस्ट गिविंग अप ऑन देयर होप्स बिकॉज़ स्टिल they have more maps remaining and Bermuda जैसे कि आप जानते हैं एक बार फिर हमें खेलते हुए देखने को मिलेगा, but imagine what's upcoming next map, it's going to be Kalahari for us। बिल्कुल
कलहारी का जैसा हमने बात किया था, थोड़ा हाई ट्रेन लो ट्रेन मैटर करता है तरुण, बट जिस तरह से केविन ई-स्पोर्ट्स ने प्ले आउट किया, अगेन मैं इसी बात पे वापस जाना चाहूंगा, जिस टीम से वो फाइट ले रहे थे वो कहने की टीम फाइट हार रही थी। आप कह सकते हैं दिन पूरा नया है, अभी ई-स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज का आज पहला दिन है, हो सकता है कल को वो टीम्स बैकअप करे, बट यहाँ पे 4 मैप्स आज के और बचने वाले हैं। इट्स गोना बी द कलहारी, इट्स गोना बी पवेट्री, वापस से बरमुडा कलहारी दोबारा से खेलने वाले हैं। बट आई स्टिल पर्सनली थिंक कि मैंने अभी तक केविन ई-स्पोर्ट्स को इतना स्ट्रांगली जाते हुए नहीं देखा किसी टॉप टीम के अगेंस्ट। टॉप 12 टीम्स कहना कि इंडिया की हमारे पास यहाँ पे एट दिस लॉबी मौजूद है, व्हिच इज गोना बी द ई-स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज पावर्ड बाय जोश ऐप। बट मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि केविन ई-स्पोर्ट्स कहना कि इतना ज्यादा स्ट्रांगली एग्रेसिवली पुश ऑन कर रही है। मैंने पहली बार देखा है एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय देयर परफॉर्मेंस। जिस तरह से वो जिस टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं उनसे एकदम कहना कहीं बोलते हैं ना, फाइट जिससे भी टीम से ले रहा फाइट निकाल रहे हो। बट यस, थोड़ा सा कहना कि डिसअपॉइंटेड जरूर हूं मैं फ्रॉम द टीम्स लाइक निग्मा गैलेक्सी, वास्लो कहना कि नॉक ऑन हमें देखने को मिले जैसे उनको मैंने फाइट देखा। बट हाँ, पहला मैप है, हो सकता है कुछ टीम एक्सपेरिमेंट्स कर रही होगी, कुछ टीम्स नहीं कर रही होगी, तो लेट्स सी कि क्या स्टोरी होती है इनटू द मैप ऑफ कलहारी। यप, स्टोरी लाइन तो जरूर यहाँ पे टीम्स को बनाना है, बिकॉज़ इट्स गोना बी अ रोलर कोस्टर राइड फॉर देम। 5 मैप, और देखिए कि 5 मैप के फिक्चर्स भी कैसे यहाँ पे भी स्टार्ट थिंग्स ऑफ फ्रॉम द बैलेंस्ड मैप जो बर्मुडा है, बट देन इज कालाहरी। नाउ कालाहरी इज द मैप फॉर टीम्स लाइक टीम टोटल गेमिंग, टीम्स जेमिनी ई-स्पोर्ट्स, जिन्होंने यहाँ पे अग्रेशन दिखाया है। Team Desi Gamers, they are gonna have a tough time, let me tell you, because they did came into the second position, but how? They were at the centric location for each and every time. And यहाँ पे जैसे कि आपने बात किया था कि आपको जोन मिलना, that's not everything. The way you then use your fire power, एक बार जब आपके players को positioning मिल चुकी है, वो positioning से अपनी fire power आपको totally दिखानी है ताकि आप अपने लिए वो defending locations रख पाओ। But because team, you know, Desi Gamers थोड़ा यहाँ पे लड़कर आते हुए नजर आई, outnumber तो थी, but I will say, you know, second position sense of achievement because they were up against Team Gemini Esports. Headhunters यहाँ पे पहले eliminate हो गए, and Team TSM they also came in the top 3 position because any which way out, 2 ही kills थे throughout the map, उनका भी presence बिल्कुल kill feed में हमें देखते हुए नहीं मिला। बिल्कुल, कहने के मैं कहना चाहूंगा हमें किल फील्ड में कोई देखने को मिली टीम तरुण, तो इट वाज केविन ई-स्पोर्ट्स ऑल ओवर। कोई और हमें टीम किल फील्ड में देखने को मिली, इनिशियल फाइट बहुत सारे देखने को मिले, ऑफ कोर्स वी मिस्ड इट। सारे टीम्स का तो पर्सपेक्टिव हम देख नहीं सकते तरुण, एक बार में 2, एक बार में 3 ही देख सकते हैं। बट हाँ, बरमुडा पे जैसा एक्सपेक्टेड था, फिनाले जैसा होना चाहिए, एकदम एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस किसी टीम से देखने को मिली, दैट्स वाज केविन ई-स्पोर्ट्स। बट हाँ, जैसा हम फिनाले एक्सपेक्ट करते हैं वैसा स्टार्ट मिला है। सेकंड मैप बता दो, इट्स गोना बी द मैप ऑफ कलहारी गाइस, एंड ऑफ कोर्स जैसा हम हमेशा बात करते आए थे, कलहारी थोड़ा सा एक हाई एडवांटेज पे आती है। बट अगेन मैं वो चीज कहना चाहूंगा, मैटर नहीं करता है कि आप पहले सेंटर में जा रहे हो, मैटर ये करता है जब आप सर्कल के सेंटर में जा रहे हो तो आप उस सेंटर का कैसे प्रयोग करते हो। आपको आपके जो 4 प्लेयर्स है उनका एकदम माइंडसेट है वो एकदम यही होना चाहिए कि 4 डायरेक्शंस आपके एक्सपोज है, आप किस तरफ से यू नो फाइट्स, आप गन शॉट्स ले सकते हो, किस तरफ से आप डैमेज ले सकते हो, कहां आपके एंगल एक्सपोज है कहां नहीं है। टोटल गेमिंग इस चीज पे कहने के काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले करती है। निग्मा गैलेक्सी को मैंने काफी बार देखा इसी प्रीमियर सीरीज से क्वालिफायर्स में बहुत अच्छे तरीके से सेंटर में जाता है, फिर टीम्स को एलिमिनेट करते हुए। बट क्योंकि यहाँ पे तरुण, दीज आर टॉप 12 टीम्स, ये एकदम अपने परफॉर्मेंस पे टॉप नॉच रहेंगे एट ऑल टाइम्स। पहला मैप कुछ टीम जरूर लड़कर आई है, बट मुझे नहीं लगता कि आगे चल के हो सकता है कि केविन ई-स्पोर्ट्स और हमें मैप डोमिनेट करने के देखने को मिलेंगे। बट वो चीज ऑफ कोर्स उल्टी हो सकती है, जैसा मैंने बोला बरमुडा में कि उल्टी हो सकती है कि यहाँ पे केविन ई-स्पोर्ट्स एक और डोमिनेशन ले, एक और बुया निकाले। किल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ टीम्स मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि किल पॉइंट्स निकाल पाए, जैसे देखिए कि मैंने ई-स्पोर्ट्स का 1-2 कहने के एंड में उन्होंने फाइट जरूर दी, टीएसएम में भी 2-3 किल देखने को मिली। ऑफ कोर्स कहने के में पता चलेगा कि किल पॉइंट्स क्या होने वाले हैं आफ्टर सम मैप्स, बट जो सेकंड मैप होने वाला है कलहारी, उसके बाद हम पगड़ी पे जाएंगे। बट या वही जो बात आ जाती है कि स्टोरी लाइन कैसे अनरैप होती है, वो कहने के पता चल गया कि केविन ई-स्पोर्ट्स आज बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पे है। अब टीम्स हो सकता है उनको जाके ड्रॉप क्रैश करे, उनको थोड़ा सा टारगेट करे, क्योंकि जब ऐसे जाके आप कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग को आप चैलेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप टीएसएम जैसी टीम को एलिमिनेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं देसी गेमर्स ई-स्पोर्ट्स को आपने जाके एलिमिनेट किया, तो ऑफ कोर्स आप उनके कहने के माइंड के एकदम टॉप पे आ गए कि अगर हम इससे फाइट लेते हैं, केविन ई-स्पोर्ट्स से फाइट लेते हैं, तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। जी हाँ, वही सिमिलर चीज आपको टीम टीएसजी के द्वारा देखने को मिली थी। टीम टू साइड गेमर, दे डिड हैड अ गुड ओपनिंग। यहाँ पे ग्रेवयार्ड के साइड पे उन्होंने शुरुआत तो किया ग्लाइडर्स यूज करके, टीम आरओ को जो उन्होंने यहाँ पे कंटेस्ट किया, दैट वाज द फर्स्ट टीम हु गॉट एलिमिनेटेड, एंड दैट इज समथिंग जो टू साइड गेमर, इट्स मोर देन दैट व्हाट वी नो देम फॉर, एंड दैट इज समथिंग जो उनको अगले मैप से जो है उसका कवरेज
देना पड़ेगा। नाउ अभी जो लीड है वो टोटली ऐसा बन चुका है कि क्या भुया के ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे हमारी टीम चेमन स्पोर्ट्स को कि किल्स के, क्योंकि आई गेस 15 किल तो उन्होंने ऐसे भी निकाला एंड आई थिंक जो पोजीशनिंग पॉइंट्स रहेगा वो भी कहीं ना कहीं क्लासिकली हमें 15 ही देखने को मिलता है। सो दिस इज समथिंग वेयर यू नो इट्स गोना बी क्वाइट सम फन टू लुक आफ्टर द नंबर्स एज वेल, बिकॉज़ नंबर्स यहाँ पे क्या कहते हैं वो तो हमें यू नो देखना ही होगा एंड वो टीम्स को भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वी स्टार्टिंग में भी टोल्ड अबाउट दिस यू नो कंसिस्टेंसी इज गोना मैटर, बिकॉज़ आप इधर किस बेस पे जज होगे इट्स गोना बी द पॉइंट्स, आपके पोजीशनिंग पॉइंट्स जो आपके फिनिशेस रहेंगे एंड डेफिनेटली योर किल्स एज वेल। तो टोटल नंबर ऑफ किल्स प्लस द पोजीशनिंग पॉइंट्स इज गोना यू नो ओवरऑल एड अप टू योर पॉइंट्स टेबल। एंड अभी तो पहला मैप है, 4 मैप वाले विद द नेक्स्ट मैप बीइंग ऑफ कालाहारी। लेट्स सी व्हाट इज गोना बी द कालाहारी एक्शन, बिकॉज़ दिस इज दैट वन मैप जो बहुत ज्यादा टेबल्स टर्न कर देते हैं। टॉप 1 से टीम थोड़ा स्लाइड डाउन होती है, बॉटम टीम्स आपको यहाँ पे बूस्टेड नजर आती है एंड ये एक बहुत अच्छा यू नो सिचुएशन है विद 2 पर्गेटरी नहीं बट 2 कालाहारी जरूर देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल कहना कहीं बरमुडा पे केमिन स्पोर्ट्स का डोमिनेशन जरूर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है, हो सकता है बाकी अदर मैप्स भी देखने को मिले, बट जैसा हमने बोला कि तरुण कि आज तो पहला दिन है, कल भी हमारे पास बेस्ट ऑफ 5 होने वाला है, उसके बाद परसों भी हमारे पास बेस्ट ऑफ 5 होने वाला है, तो आप कह नहीं सकते हो कि कौन सी टीम कब बाउंस बैक कर दे। मैंने टीम को देखा है 2 मैप से कहना कहीं 100 पॉइंट्स है, बट होते हुए एसी क्वालिफायर सीरीज में माफी चाहूंगा, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट टीम्स कभी बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ 15 मैच चलिए आप अभी बरमुडा को हटा दिए कि बेस्ट ऑफ 15 मैप्स है, तो कहना कि वो चीज है कि आपको बैलेंस बना के रखता है। आप हर मैप पर बुया निकाल रहे हो कोई बात, हर मैप पर बुया नहीं निकाल पा रहे हो कोई बात नहीं है, बट आपको किल पॉइंट्स के बेसिस पे आपको अपने माथे के पीछे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आईजीएल को पूरे टीम को देखना पड़ेगा कि अगर हम एक मैप भी हार रहे हैं तो नेक्स्ट मैप पे कैसे उसको रिकवर कर पाए। आप नहीं रिकवर कर पाओगे उस पॉइंट सेगमेंट्स को, आप नहीं ले पाओगे उस पॉइंट्स को, तो कहने आप पीछे स्कोर बोर्ड में नीचे आते जाओगे, आप गलतियां करोगे तो ऑफ कोर्स कहने की बाकी वाली टीम्स उसका पूरा फायदा उठाएगी। जैसा भाई ने बताया कलहारी बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है एंड मैं इस बात से कहना कि काफी ज्यादा स्ट्रांगली एग्री करता हूं, जितना मैंने अभी तक फ्री फायर मैप्स कास्ट किए हैं कि फ्री फायर कलहारी जैसे मैप पे व्हेन कम्स टू फ्री फायर थोड़ा सा वो एक हाई टेरेन लो टेरेन का मैटर जो एक पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। कोई भी बीआर गेम आप ले लीजिए, अब जब आप हाई ग्राउंड लेके बैठे होगे तो काफी ज्यादा मैटर करता है। वी लुक एट द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ, केमिन स्पोर्ट्स 16 किल के साथ, 1 किल पे 1 पॉइंट है तरुण भाई, प्लेसमेंट पॉइंट्स ऑफ कोर्स 12 मिलने वाले पहले पे, टोटल यहाँ पे 28 पॉइंट्स करने कहीं उन्होंने गेन कर लिए। देसी गेमर सिर्फ 2 किल्स निकाली। देखिए किल्स के मामले में इट्स गोना बी ओनली डी स्पोर्ट्स जो कहीं कहीं 7 निकाली है किल्स, अगर हम केमिन स्पोर्ट्स को बता दें, बाकी सारे टीम 2 3 4, तो कहना कि प्लेसमेंट पॉइंट्स का पता, देसी गेमर सेकंड पे है, हेड हंटर यहाँ पे थर्ड पे 3 किल पॉइंट्स, प्लेसमेंट पॉइंट्स उनके पास 7 है। डी स्पोर्ट्स कहना कि सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेसमेंट पॉइंट्स और कहना कि 7 किल पॉइंट्स निकाले। तो अब टीम जैसे निग्मा गैलेक्सी हो गई, गॉडलैक हो गई, टीएम ब्लास्टर्स एंड ऑफ कोर्स 2 साइड गेमर जो एकदम पहले एलिमिनेट हो गए थे बरमुडा के मैप पे, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब वो कैसे बाउंस बैक करते हैं। ऑफ कोर्स 3 मैच करने के 4 मैच अब बाकी हैं, बट आई स्टिल प्रेफर कि आप पूरा बैलेंस आउट करके चलो रात है कि आप स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाओ और एकदम एक गेम पर आप पे प्रेशर आ जाए कि हमें अब मान के चलिए ऑन एवरेज 50 पॉइंट्स चाहिए, आप वहां पे एक मैप पे कम बैक करो, तो इट्स बेटर कि यू जस्ट मेंटेन द बैलेंस ऑफ किल पॉइंट्स एंड प्लेसमेंट पॉइंट्स। वेल टीम हेड हंटर्स अभी भी आपको टॉप 3 पे नजर आ रही है, इवन दो टीम टीएसएम एफटीएक्स यहाँ पे 3rd पोजीशन पे एंड हुई थी। दिस रियली शोज कि जो बरमुडा का मैप है यू नीड टू कीप द बैलेंस ऑफ द किल्स एंड द प्लेसमेंट पॉइंट। एंड टॉकिंग ऑफ व्हिच हमने यहाँ पे जरूर एक क्वेश्चन उठाया था कि क्या किल पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे चेमिन स्पोर्ट्स को या फिर उनके पोजीशनिंग पॉइंट्स रहेंगे। 4 पॉइंट्स ज्यादा उनको टोटल पोजीशनिंग पॉइंट्स मिल रहे, 28 पॉइंट्स ओवरऑल। आई मीन आप डबल कीजिए दूसरे पायदान की तो भी वो क्रॉस नहीं होगा। 17 पॉइंट्स का लीड टीम को यहाँ पे देखना होगा किस तरीके से वो रिकवर कर रही है, बिकॉज़ फर्स्ट दे नीड टू कंसीडर कि बाकी के मैप्स क्या है, उसके बाद उनको ये भी देखना है कि चेमिन स्पोर्ट्स आज के दिन जिस ले में नजर आ रही है, इट सीम्स एज इफ दे हैव डन देयर होमवर्क क्वाइट राइट। दे नो ईच एंड एवरी मूव, दे हैव स्टडीड द मैप एंड दे हैव स्टडीड देयर रोटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। यू नेवर सॉ दैट टीम चेमिन स्पोर्ट्स दे हैव द सेंट्रिक पार्ट ऑफ द जोन, हर बार जोन के बाहर रही है बट जोन के अंदर आया, जोन के अंदर कंटेस्ट किया, दे फॉट फॉर देयर लोकैलिटी एंड उनके जो ग्लो वॉल्स जो यूटिलिटीज के प्रदर्शन थे, आई मीन दैट वाज क्वाइट फिनोमिनल। एंड दीस प्लेयर्स आई थिंक कालाहारी के मैप पे आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर देम बिकॉज़ दैट इज द मैप फॉर टीम्स लाइक देम एंड टीम टोटल गेमिंग। बट टोटल गेमिंग जिनकी बात कर रहे थे वो भी 8वें पायदान पे नजर आ रही है, सिर्फ 1 किल निकाला एंड 4th पोजीशनिंग पॉइंट्स यहाँ पे जो है उनके साइड से निकली है। वो 4 पॉइंट्स ओवरऑल एड अप होके 5 पॉइंट्स देती है उन्हें। 3 से 4 टीम्स आपको इधर 10 पॉइंट्स पे नजर आएगी। लाइक यू सी द डिफरेंस, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट के डिफरेंस पे आपको ऑलमोस्ट सेकंड से लेके 7वें पायदान पे सारी टीम्स यहाँ पे सिर्फ ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगी।
बिल्कुल, एक जो आपने एक दो डिफरेंस की बात की है, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को लेके चाहूंगा कि पिछले मंथ का भी टूर्नामेंट हुआ था, इसके पहले भी जो क्वालिफायर सीरीज हुए थे, बहुत सारे ऐसे टीम्स है ना तरुण जो बस 1-2 पॉइंट से चूक गए थे क्वालिफाई होने के। तो यहाँ पे जो टॉप 12 इंडिया की टीम्स है ना, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो इतना बड़ा कैश प्राइज है उसको कहीं ना कहीं मिस आउट करे। मैप हमारा कहानी का स्टार्ट हो चुका है, हम ड्रॉप लाइन देखना चाहेंगे, कहीं ना कहीं स्टोनजिट से होते हुए कहीं ना कहीं खत्म हुई है होल्ड हैपनिंग के साइड पे। फाउंडेशन की तरफ कहीं ना कहीं हमें ब्लू जोन बनते को नजर आया। ब्लू जोन का यही रूल होता है तरुण कि अगर वहां पे कोई टीम ड्रॉप लेती है तो उनको बहुत हाई लेवल हाई टायर बूट्स मिलता है, हाई टायर यहाँ पे गन्स मिलता है। टीम्स यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी स्कैटर्ड नजर जरूर आ रही है। उनको पता है कि कहना कि केमिनी Esportz का एक डोमिनेशन देखने को मिला है, तो नहीं चाह रही है किसी भी टीम को यहाँ पे चैलेंज करना। बट एक बहुत अर्ली फाइट हमें देखने को मिल सकता है ओल्ड हैम्पटन और मे बी इट गोना बी द साइड ऑफ फाउंडेशन टू। वेल इनसेन यहाँ पे फिलहाल के अपने साइड से सारे के सारे यूटिल यहाँ पे गैदर करना चाहेंगे, बट ओल्ड मॉन्क यहाँ पे वो अपने साइड से ओपनिंग निकाली, बट ही टू गेट्स टेकन डाउन। टीम टीएसएम दिस इज नॉट द ओपनिंग विद दे वांटेड। टीम केओस ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अपने साइड से आस्ट्रेलियन उनको यहाँ पे रिवाइवल दे दिया गया। बे फ्रंट के साइड पे भी थोड़े ड्रॉप क्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। विवेक ऑन द अदर हैंड इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो उस लर्कर के पोजीशन से खेल रहे हैं, एंड वो लर्किंग पोजीशन थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज़ अगर तीन प्लेयर्स एक साथ है जो फाइट में एंगेज कर रहे हैं, सो यू नीड दैट वन प्लेयर जो एक अनएक्सपेक्टेड चोक पॉइंट से उनके ओपोनेंट पे अटैक करते हैं। दैट बैकस्टैबर इज गोना बी दो डिफरेंस बना सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा ओपनिंग निकलने का प्रयास था हमारी टीम एरो के साइड से, बट वो रिवाइवल दे दिया गया। मीनवाइल टीम टेम्पेस्ट जो यहाँ पे शुरुआती दौर पे आपको जो है इधर देखने को मिली थी, देखते हैं वो किस तरीके से अपने सिनेरियोस बना रहे हैं। यहाँ पे मदान ऑन द अदर हैंड ही गेट्स डिनाइड, ही गेट्स टेकन डाउन, एंड दैट्स द अर्ली एलिमिनेशन। ऑलरेडी तीन प्लेयर्स आपको बारी-बारी डाउन होते हुए नजर आए, बट कुणाल I mean, he went quite insane coming in with those knockout back to back. अगर ऐसा मैं क्लिफिट पे अगर मैं गलत नहीं देख रहा हूं तो मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ हेड एंट्रेंस कहने के अपेगेंस्ट जाते हुए नजर आ रही केमिनी Esportz के, और केमिनी Esportz के दो बंदे कहने के मुझे नॉकऑन जरूर देखने को मिले किलफिट पे। बट लेट्स सी कि किस तरह से कहने का ये टीम जो कहने का जिन्हें अभी हम देख पाए इसमें भी टेम्पस की टीम किस तरह से कहने का आगे चल के फाइट लेती है। ऑलरेडी मैदान यहाँ पे नॉकऑन हो चुके हैं। ये गलती इनकी तरफ से हमें देखने को मिली कि एक बंदा किसी और तरफ लग कर है, बाकी उनके जो साथी है वो किसी और तरफ लग कर है। तो बहुत अच्छे तरीके से कहने के हेड एंड की टीम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम केमिनी Esportz को कहने के चैलेंज करे। एक और प्लेयर्स को कहने के नॉकऑन कर दिया गया है। चाहेंगे कि वो जो रिवेंज है कुणाल का जिसको फिनिश ऑफ कर दिया गया उसका रिवेंज पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से लें। हसीम के पास यहाँ पे एक एलएमजी जरूर कहने के मौजूद है। राजा के भी पास कहने के एक यहाँ पे स्नाइपर राइफल जिसको भी वुड पैकर वो कहने के एकदम बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट बन सकता है जब कहने के केमिनी Esportz जो चैलेंज जो हेड एंड उसको चैलेंज कर रहे हैं वो कहने के एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। केमिनी Esportz की तरफ से मैं कहना चाहूंगा यही गलती हुई है कि आप सेंटर पे गए हो, आपको पता नहीं है कि आपको किस तरफ से आप नहीं उस चीज को ध्यान में रख रहे हो कि आप किस तरह से फाइट ले रहे हो, किस तरह से फाइट आपको कहने के नहीं लिया जा रहा है, और उस चीज का पूरा करने के हेड एंड टच फायदा उठा रहे हैं। सीन कहना कि काफी ज्यादा लो है एचपी पे, एक का जरूर निकाला है। आई गेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम केमिनी Esportz को यहाँ से निकल जाना चाहिए अगर आप फाइट ले लेना चाहते हो तो। जी हाँ, बट ये देखिए कालाहारी का मैप, वी आर हियर एट द ग्रैंड फिनाले ऑफ द Esportz प्रीमियर सीरीज, एंड एक भी टीम अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई है। नाउ वेयर डू यू get this thing to see in the map of कालाहारी के मैप पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े बहुत प्लेयर्स जरूर यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर आए। टीम हेड हंटर्स जिनकी हम बात करें कि एक कैजुअलिटी के साथ उनको जो है अपनी मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना, एंड द रिफाइनरीज एरिया दैट इज समथिंग व्हिच दे आर क्वाइट एमिंग फॉरवर्ड। टीम टीएसएम एफटीएक्स वो ओल्ड मॉन्क को गवा चुकी है, बदले में एक किल जरूर यहाँ पे कंफर्म हुआ, बट इज दैट किल वर्थ इट? बिकॉज आप यहाँ पे सिर्फ इस ओल्ड हैम्पटन के फाइट को नहीं देख सकते हो, यू हैव टू वॉच आउट फॉर द रेस्ट फाइट व्हिच you are going to have at the whole map of Kalahari. Kala play zone यहाँ पे आपको 55 सेकंड में श्रिंक होना बिगिन होते हुए नजर आएगा, and this is interesting कि दो साइड्स पे ड्रॉप क्लैश हुआ, but still all the 12 teams are alive for now. बिल्कुल कहने के एक थोड़ा सा अपर शिफ्ट देखने को हमारा जोन का जरूर मिल रहा है। हो सकता है कि हमें आगे चल के फाइनल जोन शाइन्स पे देखने को मिले, और वेयर इज गोना बी द साइड ऑफ ओल्ड हैम्पटन। बट कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा केमिनी Esportz की तरफ से एक चूक हुई कि जब आप रिफाइनरी पे गए हो तो आप वहां पे फाइट नहीं ले पाए हेड हैंड। और एक वही एक जो चूक हुई कहना चाहूंगा कि जब आप सेंटर पे जाते हो तो आप चारों एंगल से आपके चारों अपने डायरेक्शन से एक्सपोज हो, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। एक बंदा आपने ऑलरेडी यहाँ पे गवा चुका है, आप नहीं चाहोगे कि आगे की फाइट्स पे भी आप कहना कि आप बंदे लूज आउट करो। एट व्हाट आई एम एबल टू सी कि जैसे हमें बिग मैप पे भी देखने को मिल रहा है, ओल्ड हैम की तरफ से यहाँ पे दो टीम है, डेफिनेटली कहने के टाइटैनियम Esportz एक और जो टीम कहने के हमें लुकआउट पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है सेमीफाइनल के स्टेजेस से जब टाइटैनियम Esportz ने एक जो डोमिनेशन बनाते हुए नजर आए, उसके बाद से जब मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था, इन्होंने ये बोला था कि हमारा माइंडसेट वही था कि हम जिस टीम से फाइट ले उनको कहने के एलिमिनेट करें। बट इट्स गोना बी द साइड ऑफ रिफाइनरी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले टेम्पस की टीम, एंड इट्स गोना बी अनदर टीम अगर उनको इट्स गोना बी टोटल गेमिंग ओनली जो कहने के अगर इसके तरफ से फाइट लेती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टेम्पस की टीम यहाँ पे सिर्फ तीन
प्लेयर्स बचे हुए हैं और टोटल गेमिंग आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे 4 मैन स्क्वाड रहेगी, तो अगर इनको इंटेल मिलता है कि टेम्पेस्ट यहाँ पे 3 मैन है, तो मुझे नहीं लगता वो कोई भी चांस छोड़ेगी इनको एलिमिनेट करने का। वेल माफिया यहाँ पे थोड़ा थर्ड पार्टी होते हुए हमें फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं, थोड़ा लो पोजीशन पे है उनके साइड से ये गेम, बट क्या वो एंटिसिपेट कर रहे कि अभी उनके ओपोनेंट्स आराम से यहाँ पे होल्ड करके रखे, रिफाइनरीज की फाइट है, सो ऑल द लोकेशंस इट्स गोना बी जस्ट सम अनएक्सपेक्टेड चोक पॉइंट जो यहाँ पे उनके ओपोनेंट आराम से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे टोटली यूटिलिटीज का यूजेज आपको देखने को मिल रहा है, 3 प्लेयर्स एक साइड कंटेस्ट करते हुए, दैट्स अ गुड प्रेडिक्टेबल ग्रेनेड, बट यहाँ पे ज्यादा लैंड नहीं करेगा वो डैमेज को। टीम टेम्पेस्ट ऑन द अदर हैंड वो यहाँ पे आराम से होल्ड करके रखिए, बट व्हाट इज दिस एडिशन, व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी हैपनिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द अदर टीम जो यहाँ पे रिफाइनरीज में हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएगी। वन एंड ओनली टीम आरो जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, टीम टीजी माफिया ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, टेम्पेस्ट के यहाँ पे ओएस आराम से होल्ड करके रखे, एक्सबॉक्स एरिया पे ज्यादा यहाँ पे खुद को एक्सपोज नहीं रखे, बट नाउ इट्स गोना बी द टाइम दैट डिलीट हैज टू गो अग्रेसिव। माफिया का यहाँ पे कैजुअलिटी हमें देखने को मिल जाएगा, डिलीट ही इज गोना सिक्योर दैट फर्स्ट ब्लड फॉर हिज साइड, बट द फाइट इज नॉट येट ओवर फॉर टीम आरो, दे आर हैविंग ऑल द साउंड क्यूज देयर। बिल्कुल कहना कहीं टोटल गेमिंग की टीम बिल्कुल अब नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि माफिया बहुत एक इंपॉर्टेंट कहने का प्लेयर रहे इस टीम के, एंड हेडर की तरफ से कहीं ना कहीं का थर्ड पार्टी जरूर आ गया है। आई गेस यहाँ पे जो तीसरी टीम यहाँ पे बहुत ही पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है, काफी ज्यादा क्लोज बैटल चल रहा है चारों तरफ। आप देखिए ग्लू वॉल का कैसे एक फॉल्ट बना हुआ है, और इस चीज को कैसे यूज करके माफिया वालों को जरूर कहने का आह्वान कर दिया गया। फौजी से 4 नॉक और 3 बंदों को यहाँ पे कहने के नॉक भी लेंगे, बट एक और रीस्टार्ट माफिया वाले पे कहने का रखा है। टीजी लीड्स ऑल डाउन अलोन 3 किल के साथ करने के बैठे हुए हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोना बी 1v2 का सिनेरियो कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आया। एक प्लेयर कहने के उनका 2 प्लेयर्स कहने के नॉक होना है, और मैं तो वाला कहने के फौजी अजय को भी कंफर्म कर लेंगे। इट्स गोना बी नॉट गोना बी 1v2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स गोना बी 1v3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और टोटल गेमिंग की तरफ से वापस से एक थोड़ा सा मैं अपने पर्सनली कह चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कहने के डिसअपॉइंटेड हूं कि एक तो आप कह सकते हो कि हाँ कहने के थर्ड पार्ट रहे, उनको आइडिया नहीं मिल पाया कि कौन सी टीम आए, पर टीम एरो अगेन बहुत अच्छी शुरुआत रही है। पहले मैप पे बहुत अच्छा शुरुआत किया था उन्होंने, 7 किल के साथ एकदम 5 मिनट भी नहीं हुए तो हमने देखा था कि उनके 7 किल्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो कलहारी जैसे भी मैप पे बहुत अच्छी शुरुआत रही है, बट टोटल गेमिंग ऑन दैट हैड इट्स ऑल कम डाउन टू द सिंगल लास्ट प्लेयर दैट्स गोना बी द अदर गाय। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं डीजी की यहाँ पे टीम करने के मौजूद है, एक और फाइट करने के बनते हुए नजर आ रही है रिफाइनरी पे, दैट्स गोना बी द टीम ऑफ टीम केओस एंड केमिन एस्पोर्ट्स। Well, Team Chaos, what have they got for us is a good question, because outnumber तो है उनके ओपोनेंट प्लेयर टीम चेमिन एस्पोर्ट्स। देखते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अपने सिनेरियोस को बना पा रहे हैं। रिफाइनरीज की ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, because जैसे कि हम जानते हैं पोचिनोक इज दैट वन लोकेशन एट द मैप ऑफ बर्मुडा जहाँ पे अगर आप अपना लोकेशन होल्ड करते हो तो पिछले 2 मैप जो आपके 2 सर्कल्स जो रोटेट बैक होंगे, जो यहाँ पे श्रिंक होंगे, उसकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट टॉकिंग अबाउट दिस रिफाइनरी एरिया, पहला प्ले जोन भी बन चुका है, दूसरा प्ले जोन भी बहुत जल्द आपको बनते हुए देखने को मिल जाएगा। पॉपी ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फिलहाल वो इधर एलिमिनेट होते हुए हमें नजर आ रहे। किल फीड में 11 टीम्स अभी भी जीवित है विद 31 प्लेयर्स, एंड द फर्स्ट जोन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू श्रिंक इन, एंड होते होते यहाँ पे दूसरा प्ले जोन भी बन चुका है। नाउ ओनली 50% ऑफ द पार्ट इज लुकिंग इनसाइड द फेवर ऑफ रिफाइनरीज। टीम टोटल गेमिंग की अगर हम बात करें, वन सोलो प्लेयर सर्वाइविंग, वो सोलो प्लेयर को यहाँ से पूरी तरीके से एक स्टेल्थ निंजा मोड पे जाना होगा, बिकॉज़ वो अगर थोड़ा भी ओपनली एक्सपोज होते रोटेशन के मामले में, देन 11th पायदान पे एलिमिनेट होना उनको और नीचे ला लेगा पॉइंट्स टेबल में। बिल्कुल लगा टीम का उसको एट दिस पॉइंट इंटेल है कि वहां पे हमारा सामने केमिन एस्पोर्ट्स मौजूद है, और टीम का उसको पता है कि केमिन एस्पोर्ट्स ने किस तरह से डोमिनेशन दिखाया है बर्मुडा के जो हमारा पहला गेम हुआ था। तो टीम केओस भी नहीं चाह रही है कि हम कोई भी अपना एक और बंदा यहाँ पे खोएं, और कहने के केमिन एस्पोर्ट्स डाउन टू 3 मैन वो भी नहीं चाह रहे, 2 किल्स करने का पॉइंट उनके पास है, वो भी नहीं चाह रहे कि हम एक और बंदा कहीं लूज आउट करें। अगर केमिन एस्पोर्ट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम किसी बंदे को लूज आउट करते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। व्हाट आई एम एबल टू सी कि नीचे के बाद उनके इट्स गोना बी डीजी की टीम जो कहने के क्लोजर आ गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गोना बी केमिन एस्पोर्ट्स ओनली जो कहने के नीचे जाके कहने के फाइट ऑन करना चाहती है। बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, माय पॉइंट ऑफ व्यू, केमिन एस्पोर्ट्स जब आप फाइट नहीं ले रहे हो, जोन कहने के थोड़ा सा अब 15 सेकंड में 16 सेकंड में श्रिंक इन करने वाला है, यू कैन यूज दैट फेवर कि आप कहना कहीं जोन के अगेंस्ट ना रहो, आप जिस टीम से चैलेंज कर रहे हो उनको जोन के अगेंस्ट रखो, और उसके बाद कहने कहीं आप उस टीम को चैलेंज करो। वही चीज हमें देखने को मिलेगी। यस, वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, रोटेशन ले रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, एंड अगर टीम नंबर 4 दैट्स गोना बी द टीम टोटल केओस उस चीज को नोटिस अगर नहीं किया है, ऑफ कोर्स नहीं किया उन्होंने, क्योंकि हमें कोई भी शॉट्स उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहे हैं, एंड इट्स गोना बी अनदर टीम जो कहने के रिफाइनरी के जस्ट बाजू में मौजूद है, इट्स गोना बी द टीम ऑफ गॉडलाइक।
वेल टीम टू साइड गेमर के लिए यहाँ पे गेट कीप का सिनेरियो बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है। टीम चिमनी स्पोर्ट्स प्लेइंग इट अ बिट स्मार्ट, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी रोटेशन दे चुके हैं। यहाँ पे गेट कीप तो नहीं करना चाह रही, बट वो सेंट्रिक लोकेशन आराम से होल्ड करके रखा है उन्होंने। मीनवाइल टीम एरो, वेल दे विल बी आल्सो स्टार्टिंग टू रोटेट। उनके सामने यहाँ पे थोड़े यूएवीज नजर आ रहे हैं, तो टीम टेम्पेस्ट के द्वारा थोड़ा भी अगर इंटेल उनका यहाँ पे लीक हो जाता है उस यूएवी की वजह से, देन थोड़ी मुश्किलें उनके लिए भी यहाँ पे हो जाएगी। बट टीम टोटल गेमिंग, वेल डिलीट बीइंग द सोलो प्लेयर रिमेनिंग फिलहाल के लिए दूसरा प्लेस होने, तो डैमेज इज गोना बी 2 डैमेज पर सेकंड जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उनकी एचपी थोड़ी बहुत यहाँ पे डिनाई तो हो रही है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेफ जोन में अपनी जगह बना पाए, बिकॉज़ लेट रोटेशन अगर वो ये पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि शायद उनको थोड़े पोजीशन पॉइंट मिल जाए, ये थोड़ी मुश्किल होगी। बट टीम टीएसजी, वेल दे गेट इनसाइड द फाइट एंड एजी के इनसेन यहाँ पे थोड़ा रिटेलिएट करना चाहेंगे। जेवाईटी ऑन द अदर हैंड टोटली गेट कीप के सिनेरियो में फर्स्ट विकेट कौशिक भी यहाँ पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट लोकेशन पे रिवाइवल को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट टीम टीएसजी, दे आर टोटली गोना कमिट इन दिस गेट कीप सिनेरियो फॉर टू टीम्स। बिल्कुल कहना कहीं टीएसएम के लिए बहुत गलत मैं कहना चाहूंगा एक तरह से उनका प्ले देखने को मिला है। एक बंदे को जरूर कार में देखेगा, उसका भी टोटल गेमिंग डिलीट किसी वक्त उनका एलिमिनेट कर सकता है, बट शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड कहना टीजी डिलीट अकेले कहीं ना कहीं निकल जाएंगे चुपचाप। बट जिस तरह से टीजी को अब एक मेंटालिटी रखनी पड़ेगी कि पहले मैप पर मेरे का बहुत जल्दी लिमिट हो गया था तरुण, वो नहीं चाहेंगे वो सेम चीज हो। बट मैं कभी भी, मैं किसी भी कोई भी आप फ्री फायर को लीजिए, मैं कभी भी लेट रोटेशन के फेवर में नहीं रहता हूं, और कहने के लेट रोटेशन की वजह से स्कॉश पे कहने का टीएसएम को 2 बंदे उनके खो चुके हैं। अब टीजी के जो आखिरी बंदे बचे हुए यहाँ पे टीजी डिलीट, वो गॉड लाइक से कहने के स्पॉट ऑन कर दिए जाएंगे, बहुत प्यारा पे शॉट्स निकालेंगे। गॉड लाइक 1 किल कहने के अपने नाम कर चुकी है, तो अच्छे गेट टीम पोजीशन में यहाँ पे गॉड लाइक मौजूद है। बट टीएसजी ऑन द अदर हैंड, उनके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एलिमिनेट हुआ था बरमूडा पे मैप पे। अगर आपको स्कोर बोर्ड पे कहने के रिटेलिएट करना है, कमबैक करना है, तो आपको ये मैप कहने के निकालना पड़ेगा। एरो कहने के चैलेंज की जा रही है ग्रेड की तरफ से, देखने को बोला कि टीम एरो के बंदे को कहने के नॉक आउट किया गया है। हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सर्च लेंगे, तो भी टीम निग्मा गैलेक्सी ओनली, जिनके वासी और डिवाइन बहुत ज्यादा कहने के पॉपुलर प्लेयर है जैसा हम जानते हैं। बट टीम एरो जो कहने के बहुत बेहतरीन शुरुआत रही है इस मैप पे भी, आखिरी मैप पे वो एक रेड मारेंगे जो रोशन का डैमेज बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है, बट अच्छे तरीके से कहने के अपने आपको डेंजर निकालने की कोशिश में। बट एरो के टीम के प्लेयर्स के 2 प्लेयर्स कहने के थोड़ा सा लॉग इन करते हुए मौजूद है, नॉकडाउन कर दिया गया। वासियों को भी कहने के ग्रेड से नॉक आउट किया गया अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और एक जो वर्टिकल ग्रेड है, व्हाट अ लवली प्ले कमिंग फ्रॉम दिस। एक और ग्रेड जाएगा, दोनों प्लेयर्स के रिकॉर्ड में चलता है, तीसरा ग्रेड, चौथा ग्रेड जाएगा। वापस से कहने के नॉक आउट देखने को मिला। ये तो रिवाइवल का गेम हो रहा है, ज्यादा नहीं चल पाएगा। लवली प्ले मैन, ये वर्टिकल प्ले, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स करूं, आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स। ये वर्टिकल ग्रेड मैंने एक और बार क्वालिफाई में देखा था, बट दैट वाज नॉट टीम एरो। बट ये बताता है कि इस बंदे ने कितना टाइम दिया है गेम को। ऐसे आप वर्टिकल डिसएडवांटेज पे आप ग्रेड्स ऐसा एकदम लगातार पॉप इन नहीं कर सकते हो। दिस टेल्स की वहां पे उनके पास साउंड भी था, कहने के पूरा इंटेल भी था। इट्स कम्स डाउन टू अ 2v2 सिचुएशन राइट नाउ। एरो के पास यहाँ पे कहने का 6 किल मौजूद है, रोशन वहां पे कहने का बहुत ज्यादा एक बेहतरीन मोमेंटम में होने वाले जिससे से किल निकाला है। जोन थोड़ा सा फेवर में जरूर है, बट एरो आरएस थोड़ा सा कहने के चार्ज अप कर रहे हैं, वो गलत कर देंगे। प्ले जोन से कहने के सीएजी के एक बंदे कहने के नॉक आउट हो चुके हैं। बट आप ऐसे जाके थोड़ा सा कहने के आप लोग अग्रेसिव हो रहे हो जब आपको पता है कि आपके पास जोन का फेवर है, तो इट वाज रियली बैड। एरो रोशन टीम एरो की तरफ से अकेले बचे हुए हैं, एंड कहने के मुझे लगता है निवा गैलेक्सी के भी प्लेयर्स नॉकआउट है, तो कहीं ना कहीं सोहम भी अकेले बचे हुए, तो हो सकता है कि रोशन इस तरह से शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें, मिस आउट जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे सोहम कहते हैं एक जिगजैग मोमेंट करके अपने आपको बचा जरूर रहे हैं, बट क्योंकि जोन उनके फेवर में थोड़ा सा नहीं है, अगर जोन थोड़ा सा भी अगर उन पे आता है तो बहुत ज्यादा डैमेज दे पाएंगे। हेल्थ किल का प्रयोग करके जब ज्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने एचपी को बढ़ा लो। बट टेकिंग अ लुक एट डीजी, आगे वापस से जोन के अंदर पहले गए हैं, बट इस जोन के अंदर जाके कितना ज्यादा कहीं ना कहीं आप उस चीज को यूटिलाइज करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। हमेशा से मैं बोलता हूं रहा था कि आप जोन के अंदर मौजूद रहो पहले से। जी हाँ, यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ एक ऐसी टीम है जिनकी नंबर्स एडवांटेज कायम रहेगी, वो रहेगी टीम गॉड लाइक की। टीम गॉड लाइक प्लेइंग लाइक गॉड्स, मेकिंग श्योर कि फाउंडेशन के कॉर्नर एरिया पे आराम से होल्ड करके रखे। बट टीम कौशिक की अगर हम बात करें, वेल टीम टीएसएम के प्लेयर है, सोलो प्लेयर है जो सर्वाइव कर रहे हैं। टीम केओस उनको टोटली फाइट बैक करेगी, एंड दैट्स गोना बी टीम केओस जो अपने साइड से वो किल तो कैपिटलाइज कर लिया, पर उसी के साथ साथ स्कैरी को भी एलिमिनेट होते हुए देखने को मिला। उनके खुद के टीममेट back to home was not able to capitalize on this current scenario. Now this leaves us with the top 5 teams and top 12 players currently alive with us. This map of Kalahari, it's already shown us some of the most dominating actions coming in from the side of team TC, but still वो अभी फिलहाल के लिए एक सोलो प्लेयर पे सर्वाइव नजर आ रहे हैं। टीम गॉड लाइक यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट ऑन तो कर चुके हैं, बट जितनी मुश्किलों में उनको यहाँ पे पुश किया जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम से, जोन के अंदर आने के लिए इस प्लेयर को सिर्फ 13 मीटर चाहिए, बट वो 13 मीटर उनके
और एलिमिनेशन के बहुत ज्यादा नजदीक रहेगा। बिल्कुल, मैं केविन ईस्पोर्ट्स के विजिट को देखा भी प्ले जोन से, जैसा मैं देख पाया कहीं ना कहीं फाइट हाउस जरूर ले रखा है। जिसका भी ना दैन टाइटनियम ईस्पोर्ट्स की टीम जो कहीं कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है फ्रॉम द हैंड्स ऑफ केविन ईस्पोर्ट्स। विजिट अकेले जरूर बचे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं रिवाइवल देना, डाउन पड़े हुए थे उनको रिवाइवल देना पड़ेगा और रिवाइवल सक्सेसफुल हो जाएगा 3 सेकंड में। विजा वापस से करेंगे, नॉक ऑन किया दे जाएंगे। आई गेस गोना बी गॉडलाइक की टीम जो उनको स्पॉट ऑन की हुई है। यस, विजिट ने एसीटी के अप्रोच से बहुत बेहतरीन प्यारा शॉट निकाला है, क्योंकि जोन भी उनके फेवर में है। एंड केविन ईस्पोर्ट्स कहना कहीं उनके आखिरी प्लेयर जो स्वातिक बचे वो कहना कि जोन से भी डैमेज दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब वो किस तरह से फाइनल अपने जोन में कहने की जगह बनाते हैं। टीम के पास के जो आखिरी प्लेयर जैसा आपने बताया, गॉडलाइक के पास मैन पावर एडवांटेज है, एक बंदा पूरा बाइक पे सामने से भी डी शॉट की टीम उधर केविन ईस्पोर्ट्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं। बताया हुआ है तीसरे पायदान पे डीजी एस के भी 2 प्लेयर्स करके नॉक आउट कर चुके हैं। तो डीजी शॉन्टी क्या करना चाह रहे हैं मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, बाइक से धक्का जरूर मारा गिरता रखा, जोन के बाहर चले गए थे बट अपने आप को सक्सेसफुली अंदर आ गए। फिनिश ऑफ करना पड़ेगा गॉडलाइक को, अगर पता है कि 2 प्लेयर्स के लिए उनके डाउन है तो ऐसा बेटर रहेगा कि आप उनको कहीं ना कहीं बिलो नॉक ऑन कर फिनिश ऑफ करके आप पॉइंट सिक्योर कर लो। बट डीजी शॉन्टी यहाँ से उन्होंने कहना चाहूंगा कि सलमान भाई गेम प्ले दिखाने की कोशिश कर रहा है। Well, it's a 1v4 scenario. 8 player knockdown. And that's gonna be it. It's gonna be one and only team Godlike taking it home. आज के दिन के 2 मैप, 2 बुया and 2 बुया, एक मेडन बुया बनते हैं, क्योंकि चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव रहना एक काला अभी के मैप पे इट्स समथिंग व्हिच यू गेट टू सी क्वाइट रेयरली। ज्यादा पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे आपको 7 पॉइंट जरूर गैदर करते हुए देखने को मिल जाएगी, बट गिनोत्रा being the most valuable player for a match number 2, this guy has shown some amazing firepower and वो जिस लोकेशन पे थे, compare that with team देसी गेमर्स जो आपको बर्मुडा पे देखने को मिल रहे थे, with that comparison just see कि वो यहाँ पे किस तरीके से वो 360 एंगल पे हर एक एंगल को मोस्टली वहाँ पे देखे जा रहे थे, शॉट्स भी फायर किया एंड एक प्लेयर को नॉक होने भी नहीं दिया अपनी टीम में से। Not even a single player from the Godlike got knocked off in the whole map, especially in the in circles, and that's gonna be a maiden boya for them as well. 2 मैप 2 अलग-अलग टीम, बट हाँ कंसिस्टेंसी के मामले में टीम केविन ईस्पोर्ट्स डिड मेड इट टिल टॉप 4। इवन मैं कहना चाहूंगा अगर किल पॉइंट्स की बात करें तो टीम एरो एंड केविन ईस्पोर्ट्स काफी ज्यादा कहने के किल पॉइंट्स निकाल पा रहे हैं। जब भी हम देख पा रहे हैं तो उनके पास 4-5 किल्स ऑलरेडी होते हैं बिफोर हम उनको देख पा रहे हैं। तो हाँ, मैं कहना चाहूंगा किल्स के मामले में कोई टीम्स 2 टीम्स कहने के आगे है तो इट्स गोना बी एरो की टीम एरो एंड ऑफ कोर्स द टीम जो कहने के आखिरी मैप पे बुया निकाली, इट्स गोना बी केविन ईस्पोर्ट्स। एक प्ले स्टाइल जो कहना कहीं मैं ऑब्जर्व करने को मिला है कि पहले चाह रहे हैं कि टीम्स यहाँ पे फाइट नहीं ले, इट्स गोना बी गॉडलाइक एंड इट्स गोना बी डीजी ईस्पोर्ट्स। पहले चाह रहे कि जोन में जाए, ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेट रोटेशन कहीं ना कहीं देखने को मिला गॉडलाइक की तरफ से, जिसके मैं हमेशा कहीं ना कहीं क्वालिफायर स्टेज से मैं फेवर में नहीं रहता हूं। आपको जब पता है कि आप जोन के बाहर हो तो इट्स बेटर कि आप पहले जोन के अंदर उसके बाद फाइट लो। बाहर फाइट लोगे आपके ज्यादा कहीं ना कहीं गेट कीप करने के आपके ज्यादा चांसेस है। तो लेट्स सी कि किस तरह से कहने के आगे चल के यहाँ पे इनको तो बी द मैप ऑफ पर्गेटरी जो हमारा तीसरा मैप होना है, इट्स गोना बी द मैप ऑफ पर्गेटरी, उस पे कैसे फाइट ऑन लेते हैं। ऑफ कोर्स इससे पहले हम किल पॉइंट्स देखने वाले हैं, अब 2 मैप्स का किस तरह से टीम यहाँ पे स्टैंडिंग करने वाली है। बट जिस तरीके से कहना कि कुछ टीम्स थोड़ा सा एकदम निचले स्तर में देखने को मिला, इट्स गोना बी द वासियों की टीम निग्मा गैलेक्सी कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। इवन टोटल गेमिंग जब भी किसी से फाइट ऑन ले रहे हैं तो कुछ खास यहाँ पे उनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब कहने के 2 मैच फिनिश ऑफ होने के बाद उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब वो स्कोरबोर्ड पे कैसे कम करते हैं। Well, let's see. It's the map of Kalahari which has given us some of the amazing, shocking results. We didn't expect a team godlike to be alive with no kill points until the very 5th zone. 5th zone तक यहाँ पे alive रहा. We didn't even expect it कि Kalahari के map पे आप vehicle से भी end zone में rotate कर सकते हो. What would you say to Shanti out there just roaming? I mean, वो अगर motorbike पे शायद rotate नहीं करते तो वो second position पे आना it would have not been possible for his team. 2 players यहाँ पे knocked down थे. Team केविन ईस्पोर्ट्स वो भी अंदर आना चाह रहे थे. अगर आप आनंद की बात करें, रिफाइनरीज के साइड से थोड़ा एलिवेटेड एंगल्स पे आ रहे थे वो, बट द फॉल डैमेज इज आल्सो समथिंग जो यहाँ पे आपने बात की थी कालारी के मैप पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मैप इज एज सच कि इट्स क्वाइट ब्यूटीफुली मेड, बट विद दैट इट्स गोना बी द मैप ऑफ पर्गेटरी, द मैप विद 3 आइलैंड्स, एंड दैट्स द मैप व्हिच इज गोना बी फॉर ऑल ऑफ दीस टीम्स. हर एक टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, बिकॉज़ इट्स अ पोजीशनिंग बेस्ड मैप. इन पोजीशनिंग बेस्ड मैप पे अगर ये टीम जिस तरीके से हमने बर्मुडा पे देखा 13 मिनट हो चुके थे, बट वी हैड टॉप 8 टीम्स अलाइव. सिर्फ 4 टीम एलिमिनेट होते हुए तो आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, अगर देखने को मिलती है सो द लॉबी इज सीरियस, द लॉबी इज प्लेइंग फॉर दैट जोन एंड फॉर बुया. एंड जोन की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इन प्लेयर्स के लिए आते हैं जो गोल्फ कोर्स आइलैंड एंड सेंट्रल आइलैंड पे जाते हैं, बिकॉज़ 3 आइलैंड के बीच में वो जोन तीनों को तो फेवर करता है, बट एंड में इट इज गोना बी द जोन फॉर 1 आइलैंड. जब वो एक आइलैंड पे शिफ्ट हो जाएगा तो या तो आपको ब्रिज के रोटेशंस देने और एल्स यू यूज योर ग्लाइडर्स और द वाटरवेज, एंड वो 2 ऑप्शंस एक बहुत बड़ा गैम्बल नजर आता है बहुत बार.
बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रोगेटरी पे आई गेस अगर हम पूरे फ्री फायर एज अ गेम की बात करें, चाहे वो रैंक्ड हो, चाहे आपके कैजुअल हो, या पे प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स की बात करें इन द फ्री फायर सर्किट, तो सेकंड जोन बनते बनते में पता चल जाता है तरुण जी कि हाँ। कहाँ पे कौन से आइलैंड पे कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज होने वाला है। ऑफ कोर्स गोना बी द मैप और ब्राजीलिया 90% ऑफ द टाइम बहुत कम होता है कि बाकी वाले डोलैंड्स पे गेम हमें देखने को मिले, तो इट्स बेटर फॉर द टीम जो कहना कि बाहर के सर्कल के जोन है, जैसे मैंने कहा नेवर इन द फेवर ऑफ लेट रोटेशंस। आप सही टाइम पे रोटेशन लो, सही टाइम पे कहना कि गेट कीप जो भी आपको टीम कर रही है उसको एलिमिनेट करो, उसके बाद अपना रास्ता बनाओ, क्योंकि आप लेट रोटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं एक जो टीम है जो आपको गेट कीप कर रही है तरुण, दूसरा आप जोन से ऑलरेडी डैमेज दे रहे हो, तो मैं उसके फेवर में कभी नहीं रहता एज अ प्लेयर आल्सो एज अ कास्टर एज अ व्यूअर कि आप लेट रोटेशन ना हो। बात करेंगे थोड़ा सा प्रोगेटरी की, ऑफ कोर्स जो एक वाटर बॉडी है, कभी काफी मैंने सर्किट्स में देखा है, काफी सारे मैचेस में देखा वाटर बॉडी पे कहीं एंड सर्कल बनते हुए नजर आता है, वो बनता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहीं भी बनता है तो ऑफ कोर्स गोना बी द एरिया ऑफ ब्राजीलिया और उसके सराउंडिंग एरिया, वहां पे एक रिज भी है जो हाइट है, थोड़ा सा एक हाई लेवल एडवांटेज देती है, वहां पे कहने के हमें एंड सर्कल देखने को मिल सकता है। बट जिस तरह से यहाँ पे गॉडलाइक के परफॉर्मेंस की हम बात करें, टीम काफी बेहतरीन खेली, उनका भी यही स्टार्ट था कि हम पहले पैसिव खेलेंगे, हम अपने आप को 4 मैन एकदम सिक्योर्ड रखेंगे, हम कोई भी अपना बंदा लूज आउट नहीं करेंगे, अंत में जाके कहने के खेलेंगे। ये बहुत ज्यादा कॉमन स्टार्ट है, काफी बीआर गेम्स में हम देखते हैं ऐसा स्टार्ट यूज होते हुए, बट लेट्स सी कि ये स्टार्ट्स आगे के मैप्स पे कैसे वर्कआउट करने वाला है। पहला दिन है, टीम्स हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें एक्सपेरिमेंट करें, बट वही चीज आ जाती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते करते आप बंदे लूज कर देते हो, आप फाइट्स नहीं जीत पाते हो, बाकी टीम उस पे कैपिटलाइज कर पाती है। दो टीम्स यहाँ पे जो कहने कि उस चीज को बहुत अच्छी तरह से कैपिटलाइज करता है, गोना बी द पहली टीम जो कहने कि खेमिनी स्पोर्ट्स ने बरबड़ा पे बुया निकाला, दूसरे पे गॉडलाइक, तो ये टीम के पास एक अच्छा कहने कि स्कोरबोर्ड पे पॉइंट्स होने वाले हैं। बट लेट्स सी, जैसा मैंने बोला निग्मा गैलेक्सी हो गए, टोटल गेमिंग हो गए, देन टू साइड गेमर्स हो गए, बहुत अच्छे फाइट्स यहाँ पे मुझे तरफ से देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो हम खड़े हैं बिट डिसअपॉइंटेड, बट अभी मैं कहना चाहूंगा ओवरऑल 10 मैप्स बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, आखिरी दिन में भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिल सकता है। तो आई वुड रियली एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि आप बैलेंस बनाते चलो, पहले एलिमिनेट हो जा रहे हो ना, तो थोड़ा कोशिश करो कि 4-5 किल्स अपने खाते में आप लेते रहो। जी हाँ, अभी से जो 3 मैप्स फिलहाल के लिए बाकी है, these 3 maps are going to be completely different map. First Purgatory, then again Kalahari, and before we end the day, it's going to be Bermuda once again. तो ये सारे मैप्स जो है इसमें एक बहुत ही ज्यादा versatility in terms of the gameplay वो आपको देखने को मिल जाएगी। And for all the teams out there जो हमारे साथ जुड़ी भी है, शुरुआती 2 मैप तो खत्म हो चुके हैं, but now we have 3 more map remaining। जिस कमबैक की आप बात कर रहे थे आखिरी दिन पे, वो इन आखिरी पलों में भी बन सकते हैं, because day 1 में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो स्टडी है वो हमें टीम चेवन ई-स्पोर्ट्स के साइड से बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिला। आई डिड नॉट क्वाइट एक्सपेक्टेड कि टीम 2 साइड गेमर, टीम टोटल गेमिंग इन सारी ई-स्पोर्ट्स को यहाँ पे ओवरटेक करके टीम चेवन ई-स्पोर्ट्स दे वुड ओवरटेक। बट फिलहाल मैप वाइज स्कोर कार्ड पे अगर हम जाए तो गॉड लाइक दे विन टुडेस फर्स्ट सेकंड मैप, दे विन विद भैया 20 टोटल पॉइंट्स, यहाँ पे 12 पॉइंट्स प्लेसमेंट करेंगे एंड सिर्फ 8 पॉइंट जो है यहाँ पे उनको मिलेंगे किल्स के लिए। 2 स्क्वाड को टोटली एलिमिनेट किया, बट they are followed by team chaos जो यहाँ पे टीम टीसी लेगी। I mean that was a big gamble जो वो end zone में कर रहे थे, somehow surviving with those rotations। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है शॉन्टी को खेलते हुए, मैंने देखा है, मुझे लगता है स्टिल रायथन रोमिंग और विद द बाइक आप ट्राई कर सकते थे, एक फिनिश तो आप जरूर कहने के निकाल रहे थे। गोइंग आउट विद जस्ट द प्लेसमेंट पॉइंट था उनके तरफ से, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मैं कभी प्लेयर अगेंस्ट नहीं बोलना चाहूंगा, बट हाँ वो कोशिश जरूर कर सकते थे। शॉन्टे जिस तरह से प्लेयर्स दिखाते हैं, मैंने उनको 1v3 क्लच निकालते हुए देखा है, 1v2 क्लचेस भी निकालते हुए देखे हैं। आई स्टिल प्रेफर ऑन द साइड ऑफ बीइंग लाइक कि आप चैलेंज कर रहे थे कि आप बाइक पे घूम रहे थे, बट ऑफ कोर्स पॉइंट है उसकी बात करें, मेरे स्क्रीन पे आ चुका है, गॉडलैक के बारे में बताया, 8 किल्स उन्होंने निकाली है, 12 प्लेसमेंट पॉइंट्स टोटल, ओवरऑल ट्रेन है 20, टीम के सिर्फ और सिर्फ कहने के 4 किल्स निकाल पाए, 8 प्लेसमेंट पॉइंट देखिए टोटल ऑफ 12। खेमिनी स्पोर्ट्स 4 किल्स निकाले उन्होंने, 7 कहने के प्लेसमेंट पॉइंट्स, दैट्स मेक्स ऑफ 11। तो वापस एक निग्मा गैलेक्सी की तरफ से थोड़ा सा 10 पॉइंट्स का एक लीड उनके स्कोर पे जरूर आएगा, बट टीएसजी आर्मी हो गए, टोटल गेमिंग हो गए, टीएसएम हो गया, अनकॉट टीएम मास्टर्स, ये वापस से कहने के निचले ही एकदम स्कोर कार्ड पे मौजूद है। 2 मैप्स हो चुके हैं तरुण, जैसा हमें पता है, तो इनके तरफ से अगर एक एक थोड़ा सा एक डोमिनेशन देखने को मिले तभी बेहतर रहेगा, स्कोर कार्ड में कभी कमबैक कर पाएंगे, नहीं तो डेफिनेटली कहने के जो तीसरा दिन भी जब पहला दिन जब हमारे खत्म होगा ना, बाकी मैच भी खत्म होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा सेम परफॉर्मेंस रखे तो इनके खाते में ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। जी हाँ, डे 1 का प्रेशर तो यहाँ पे बना हुआ इन टीम्स पे, एंड वो प्रेशर से थोड़ा उभर के आना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके अगेंस्ट में देखिए आप कौन सी टीम्स को देख रहे हो। टीम चेवन ई-स्पोर्ट्स कंसिस्टेंसी बीट्स देम बिकॉज़ दे आर स्टिल इन दैट टॉप 3 पोडियम फिनिशेस,
बात करें टीम देसी गेमर्स की, 6वें स्थान पे आपको देखने को मिल रही है, बट नो किल्स बिकॉज दे हैव केम सेकंड टुडे एंड दैट सेकंड पोजीशन गिव्स देम 9 पोजीशनिंग पॉइंट। एंड वो चीज आपको पहले मैप पे भी देखने को मिला, बर्मुडा के मैप पे भी टीम देसी गेमर्स वर द वन जो #2 पे आई थी, एंड दूसरे मैप पे भी #2 पे तो एंड हुई, बट टॉप 5 में कोई भी जगह नहीं मिली उनको, कॉज स्किल्स इज समथिंग जिनको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ पोजीशनिंग पॉइंट्स पे अगर आप टोटली अपना गेम प्ले डिपेंड रखते हो तो आपके लिए वो हर बार काम नहीं करेगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स अगेंस्ट इट, इट्स द प्ले जोन, इट्स योर ओपोनेंट्स, इट्स टीम चेमिन esports and godlike who are already number 1 and 2 for today's points table, and अगर if they happen to you in terms of any sort of fight तो उसको आउटप्ले कर पाने के लिए फायर पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ होल्ड करके खेलना या फिर उस लक फैक्टर पे डिपेंड करना कि मे बी आई एम प्रेडिक्टिंग द जोन टू बी कमिंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ अ पीक एरिया, वो आई थिंक एक गैम्बल है जो ये टीम खेलने वाली है अपने साइड से, अगर वो वैसा खेलती है तो। बिल्कुल इट वाज द साइड ऑफ डी स्पोर्ट्स और मे बी डीसी गेम स्पोर्ट्स, सॉरी इफ आई एम कट मी इफ आई एम रॉन्ग करूं, जो कह रहे हैं कि पिछले 2 मैच से यही प्ले स्टाइल करते हुए नजर आई है कि पहले हम सर्कल पे रहेंगे फिर फाइट लेंगे। गॉडलाइक ने ये चीज की, थोड़ा सा कहना चाहूंगा लक फेवर उनका जरूर था कि बाकी द प्लेयर्स, बाकी कोई टीम उनके पीछे नहीं थी या फिर उनके लेफ्ट या राइट हैंड साइड नहीं थी, सारी टीम उनके सामने थी, आपस में उनके बस 2 टीम अंत में उनके सामने बची। बट जो चीज करेंगे डी स्पोर्ट्स और देसी गेमर से देखने को मिल रही है कि हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सर्कल के बावजूद खेल रहे हैं, प्लेसमेंट पॉइंट तब भी आपके पास कुछ खास नहीं है, तो ये एक अलार्म होना चाहिए उनके लिए कि 2 मैप्स खत्म हो चुके, कुछ खास ना आपके पास स्किल पॉइंट्स है ना कुछ खास आपके पास प्लेसमेंट पॉइंट्स है। तो तीसरा मैप जो पगड़ी होने वाला है उस पे आप कैसे प्ले आउट करते हो वो काफी ज्यादा मैटर करने वाला है, एंड ऑफ कोर्स इट्स एन अलार्म फॉर बाकी अदर टीम जो टीएसजीआर में हो गया, हेडेड रन्स हो गया, टीम ब्लास्टर्स की, आप कमबैक करो। फिनाले स्टेज है, आप इतनी मैंने साल भर जैसा सभी को पता है स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज का एक ये ईयर लॉन्ग एकदम चैंपियनशिप रहा है, साल भर से टीम्स करके बैटर आउट करते आए इस फ्री फायर सर्किट में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी जो साल भर की मेहनत है वो कहीं ना कहीं पानी में ना जाए, आपको 100% दे। कुछ टीम्स जिनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट रह रहे हैं, इट्स गोना बी टोटल गेमिंग, इट्स गोना बी टीएसएम, टीएसजी आर्मी हो गया, थोड़ा सा कहने का अनफॉर्चुनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं ड्रॉप ले रहे हैं, तो ड्रॉप क्लैशेस हो रहे हैं इनके अपोनेंट के टीम की तरफ से। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स कभी किसी टीम से फाइट लिए थोड़ा सा यूटिलिटी और थोड़े से ग्रेनेड्स उनके पास नहीं रह रहे, माफिया वाला के पास 8-9 ग्रेनेड जरूर रहते हैं बट वो अच्छे तरह से उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे, तो हाँ अनफॉर्चुनेट रहे, बट ऑफ कोर्स कहने के अभी भी 3 मैच बाकी है, कमबैक हो सकता है तरुण, एंड लेट्स सी व्हाट द स्टोरी लाइन गोस इन द मैप ऑफ पगेट्री। जी हाँ, लाइक हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज्यादा अलग टीम उभर के आई, टीम गॉड लाइक आई डिड नॉट सॉ देम कमिंग इनटू द टॉप पोजीशन विद 4 प्लेयर्स रिमेनिंग। काला हरी का मैप कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, बट टॉकिंग ऑफ व्हिच हमारा तीसरा मैप जो है वो तीसरा मैप रहने वाला द अमेजिंग मैप ऑफ पर्गेटरी। अब व्हाट इज पर्गेटरी गोना बी शोइंग अस इज अ क्वेश्चन। मैप विद 3 आइलैंड एंड द ओनली मैप जो आपको दिन में एक ही बार खेलने का मौका मिलेगा। अब जब वो मैप आपको एक ही बार खेलने का मिलता है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा इधर एक फॉर्म अप करती है एक सिचुएशन कि अगर आपका बहुत अच्छा मास्टर्ड है वो मैप तो आप सिर्फ वो एक ही बार खेल रहे हैं, वो एक ही बार में यू हैव टू एस इट। इफ यू कैन नॉट एस इट, इफ यू कैन नॉट कैपिटलाइज ऑन इट, तब थोड़ी ज्यादा जो है पूरे दिन में आपकी पूरी टीममेट्स का जो यहाँ पे एक मोमेंटम रहता है, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, ऑल द इमोशंस व्हिच यू गो थ्रू एट द सेम टाइम बिकॉज़ दिस इज द फिनाले स्टेज, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड एज यू टॉक्ड अबाउट द ईयर लॉन्ग सीरीज, ये ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज जो है हमारा टोटल एक ईयर लॉन्ग सीरीज रहा है। We have the top 12 teams because they did compete and they fought for each and every slots which they are sitting at. Now is the time where they have to give their best skills, they have to showcase what they are capable of, and मोटिवेशंस भी यहाँ पे बहुत सारे। यहाँ पे 1 मिलियन इंडियन रुपीस का प्राइस पूल है। आई मीन पोडियम फिनिशेस पे आने के लिए इट्स जस्ट एन आइडियल थिंग फॉर ईच एंड एवरी टीम्स आउट देयर को 6 डिजिट में प्राइस पूल हर टॉप 3 टीम्स को मिलने वाला है। बिल्कुल पैसा तो मिलेगा ऑफ कोर्स, बट जो ईयर लॉन्ग का जो एक है कि जनवरी में से आप कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को देखते आ रहे हो तरुण, उसके बाद ईयर लॉन्ग पे आके कहीं ना कहीं आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कहना कि पूरी मेहनत कहीं ना कहीं आपकी पूरी कहते हैं ना पानी में चली जाएगी। बट लेट्स सी कि यहाँ पे कौन सी टीम्स कहना कि देखने को मिलते हैं। अभी 2 दिन का हमारे पास सफर बाकी है, बट हाँ कहने के जो टीम्स आज के दिन बहुत अच्छे एक मोमेंटम में नजर आई है, इसको भी गॉडलाइक esports, वन भी केमिन esports थोड़ा सा कहने उनका मोमेंटम अभी तक कहने के मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अब देखते हैं तीसरे मैप पे किस तरफ से वो खेलने उनके तरफ से प्ले स्टाइल देखने को मिला है। थर्ड मैप अपना स्टार्ट हो चुका है, बहुत एक यूनिक ड्रॉप लाइन देखने को मिला है। इट्स गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रॉसरोड, जो कहने के खत्म होने वाला है टू द साइड ऑफ लंबा मिल। हो सकता है यहाँ पे टीम डिसाइड ले पहले से ब्राजीलिया पे कन्वर्ज करने का, हो सकता है यहाँ पे टीम जो है वो फील्ड पे पहले यहाँ पे डिसीजन ले। ज्यादा मुझे टीम्स अभी तक ड्रॉप करने को नहीं देखने को मिले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तीसरा सबसे छोटा आइलैंड फायर ब्रिगेड का और मे बी कैंप साइड के यहाँ पे टीम्स हैं
कोई भी टीम यहाँ पे स्किलॉस पे हमें देखने को मिल रही है, क्रॉसरोड्स पे यहाँ पे जरूर कहने के टोटल गेमिंग की टीम ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है। एक अर्ली फाइट जरूर हमें देखने को मिल सकता है ऑन द साइड ऑफ माबा वर्क्स, इट्स गोना बी केमिन Esportz and if I'm not wrong it's gonna be टाइटनियम Esportz जो कहने के वहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ड्रॉप किया है। वेल टीम लंबू माइल यहाँ पे हेड हंटर्स ने जरूर कंटेस्ट किया था, बट टेम्पेस्ट क्वाइट अ स्मार्ट डिसीजन, डायरेक्टली वहां से फॉल अपार्ट हो चुके टुवर्ड्स द साइड ऑफ कैंप साइड। जानते हैं कि इन अर्ली फाइट पे एंगेज होना इज इट वर्थ इट, इज व्हाट यू नो टीम्स आर गोना आस्क फॉर देमसेल्फ, बिकॉज़ पर्गेटरी का मैप है, सिर्फ एक बार खेलने का मौका मिलेगा एंड वो एक बार में आप नहीं चाहोगे कि बस एक ड्रॉप क्लैश की वजह से जो है थोड़े सिचुएशंस अनफॉर्चुनेट हो जाए आपके। मीनवाइल 2 minutes 30 seconds विल बी लेफ्ट फॉर द फर्स्ट प्ले जोन टू जस्ट अपीयर। तो ये जो शुरुआती 150 seconds है, ईच एंड एवरी seconds counts because see the clock is ticking and जितना हो सके आप अपने लूट फेज को कैपिटलाइज करना चाहोगे, बट यहाँ पे हमें जो है लूट भी देखने को मिल रहा है। उसको कंटेस्ट करने के लिए इट्स गोना बी टीम निग्मा गैलेक्सी एंड आई मीन स्काई लॉन्च इज वन ऑफ माय फेवरेट लोकेशंस एज वेल, जहां पे अगर वो लूट करते हैं सो जस्ट इमेजिन व्हाट लेवल ऑफ लूट विद दीस प्लेयर्स विल बी हैविंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मैप। उनके लोड आउट, उनके मेड किट्स एंड उनके आर्मरी, तीनों का जो बैलेंस होगा अलॉन्ग विद सम यूटिलिटीज, इट्स जस्ट गोना बी क्वाइट फिनोमिनल इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी 4v4 फाइट विद दे विल बी एंगेजिंग इन। बिल्कुल, मैं इस चीज का मैं कहना चाहूंगा, आई माइट बी रॉन्ग, ये करेक्टली कॉल लिया गया डिवाइन की तरफ से, वासियो की तरफ से, कि वासियो एक ऐसा प्लेयर बहुत ज्यादा स्नाइपर राइफल्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कहने के तारीख, बहुत ज्यादा एग्रेसिव कहने के प्ले आउट करते हैं, तो उनका ये पक्का से पक्का कॉल होगा कि पहले हम ब्लू जोन में जाते हैं, पहले हम गन्स वगैरह पे ध्यान देते हैं रादर देन कि हम पहले फाइट्स लें। तो लेट्स सी कहने के आगे चल के कैसे जो ब्लू जोन में गए अच्छे यहाँ पे गन्स मिलेंगे, पूरा एकदम स्टैक अप आर्मर भी इनको हेड लेवल मिलने वाला है, बट वही बात आ जाती है कि जब आपके पास उस चीज का एडवांटेज है तो आप उस चीज को कैसे फायर पावर को यूज करते हो, बट जैसा मैं देख पा रहा हूँ कोई भी इनिशियल फाइट हमें देखने को तारुक नहीं मिला है। जी हाँ, दैट इज समथिंग जो सिर्फ और सिर्फ आपको पर्गेटरी के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बर्मुडा में भी वी सॉ दैट थोड़े क्लॉक टावर्स के एरिया पे जो है हमें थोड़े यहाँ पे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस देखने को मिल रहा था, बट टॉकिंग ऑफ व्हिच टीम एरो भी यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें नजर आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे रोटेशन जरूर देंगे। टीम आरएनएस ट्राइंग टू कंटेस्ट फॉर द टॉप पीक एरिया। टीम टोटल गेमिंग की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे आराम से अपने साइड से क्रॉस रोड के साइड पे अपने लोकेशंस को जरूर ड्रॉप इन किया था, बट नाउ वी हैव द 4 players alive, none of the players from each and every team have been still eliminated। 2 मिनट यहाँ पे समाप्त होते हुए आपको नजर आ जाएंगे 48 प्लेयर्स यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं अभी भी 11। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। 30 सेकंड्स के अंदर हमारा पहला प्ले जोन यहाँ पे आपको अपीयर होते हुए नजर आएगा एंड टॉकिंग ऑफ व्हिच यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी टीम रहेगी जिनको टोटली वो जो है प्ले जोन फेवर करते हुए नजर आएगा। टॉकिंग ऑफ व्हिच यहाँ पे ब्राजीलिया का जो एक साइड आता है, दिस इज दैट वन साइड जहाँ पे नो मैटर व्हाट हैपेंस अगले 2 जोन आपको इसी साइड के फेवर में नजर आने वाले हैं। नाउ व्हेन यू नो यू हैव द गुड लोकेशन, व्हेन यू नो दैट यू डोंट इवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ ड्रॉप क्लैश, सब वो आपके लिए बहुत अच्छी आइडियल शुरुआत हो सकती है। इनसेन यहाँ पे आराम से माउड हाउस के साइड पे होल्ड करके रखे। टीम देसी के मस्त पिछले 2 मैप से हर बार आपको टॉप 2 में अपनी जगह बनाती हुई नजर आई थी, बिकॉज़ बर्मुडा के मैप पे भी उनके ऊपर टोटली वो जोन फेवर किया। इन द लास्ट मैप शॉन्टी ने जिस तरीके से यहाँ पे अपना गेम प्ले दिखाया, आई मीन दिस गाय इज ऑलरेडी एट द पीक ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड यहाँ पे आपको अपने प्रदर्शन के भी एकदम टॉप पीक पे आना पड़ेगा, बिकॉज आप थोड़े भी यहाँ पे लड़खड़ाते हुए नजर आते हो तो वो ना सिर्फ आपके बट आपके पूरे टीम के लिए बहुत ज्यादा अनफायदेमंद हो सकता है एंड आपके ओपोनेंट टीम इस बात का जरूर प्रेशर भी बनाएंगे आप पे एंड उस चीज को रिटेलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 minute लेफ्ट फॉर द फर्स्ट प्ले जोन टू श्रिंक इन एंड पहला प्ले जोन आपको यहाँ पे मैप्स के सामने देखने को मिल जाएगा। टीम टेम्पेस्ट फॉर नाउ holding the Brazilian angle of not trying to overcome it to any sort of fight coming in and overcome it na karna, it's going to be something which is very important. All the 4 players they are just holding their situation off. Spidey के पास यहाँ पे आपको फिलहाल 4 glue walls देखने को मिल रहे हैं, एक grenade भी है in terms of the utility and 5 first aids as well. Now when you play at the map of purgatory, you know for a fact कि end zones में वो healers बहुत ज्यादा important होने वाले हैं। हर बार आपको वो zone favor नहीं करेगा तो आपको थोड़े late rotations भी देने होंगे, but it's going to be quite unfortunate because सामने से आपको टीम 2 साइड गेमिंग का भी रोटेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर इनका फाइट एंगेज होता है टीम 2 साइड गेमर के साथ तो इट्स गोना बी या तो आर या तो पार वाला मामला है। उसके पीछे देखिए, उसके पीछे एक और एक टीम यहाँ पे रोटेट करते हुए देखने को मिल रही है। टीम गॉडलाइक दे हैव आल्सो एंटर्ड द पार्टी एंड टीम गॉडलाइक वर जस्ट मिसिंग दिस एक्शन। पिछले 2 मैप पे तो उनका आपको बिल्कुल भी यहाँ पे अपीयरेंस स्किल फीड के मामले में तो देखने को मिलेगा ही नहीं, बट नाउ इट्स गोना बी द टाइम द क्लस्टर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द टॉप 3 टीम्स। These 3 teams are going to be something which is
is going to be quite unfortunate to see. Team 2 साइड गेमर जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आराम से वो फिलहाल के लिए होल्ड करके रखे. They are trying to make sure that वो जितना हो सके अपने साइड से वो एक बहुत ही अच्छा पैसिव अप्रोच रखे. इस करंट मैप पे टीम 2 साइड गेमर के लिए ये बहुत ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर बनेगा कि कैन दे कम अप टू द पॉइंट टेबल. अबे यहाँ पे फिलहाल के लिए नॉकआउट निकाल चुके हैं. चामा ऑन द अदर हैंड अबे वे रिटेलिएट करेंगे एंड टीम गॉड लाइक दे आर जस्ट डाउन टू 3 प्लेयर्स लेफ्ट. अब ये 3 प्लेयर्स क्या पहले रिवाइवल के फेवर में जाएंगे या फिर फाइट बैक करेंगे? बिकॉज़ वंस यू लूज आउट टू द प्लेयर थोड़ी आपकी लायबल सिचुएशंस बनना चालू हो जाती है. धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा कि प्लेयर्स जस्ट कीप फॉलिंग अपार्ट बिकॉज़ दे ईदर गो ऑन फॉर दैट रिवाइवल और दे ईदर गो आउट ऑल एन अटैक विदाउट द नंबर्स डिसएडवांटेज. एंड ये नंबर्स डिसएडवांटेज होना पर्गेटरी के मैप पे बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाला है. गोल्फ कोर्स इट्स गोना बी टीम हेडहंटर्स. बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग यहां पे निकाला है. पहला किल अपने साइड से कंफर्म कर लेंगे. राजा लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग विद द शॉटगन. रेड जोन जो हम बोलते हैं डेंजर जोन वो भी फिलहाल के लिए बनते हुए इधर हमें नजर आ रहा है. कुणाल एंड हर्ष ऑन द अदर हैंड वो यहां पे आराम से इस कंपाउंड की तरफ होल्ड करके रखे. टीम टर्मिनेटर्स दे आर ऑलरेडी हियर एंड इफ दैट्स नॉट इनफ तो टीम गॉडेल is slowly steadily entering this party. Now team Godel, they know that there is some momentum happening, there is some movement towards the side. Team Gemini Esports wo bhi yahan pe, but look at that grenade. That grenade could have been the most difference making scenario, but because wo gatekeep scenario pe thode glue walls present nahi the, that gatekeep did that grenade did enter the window and it did exit from the side of the door area as well. But team Headhunters wo ek bahut hi bade durghatna wale स्थान पे and उसके ऊपर जो प्रेशर यहाँ पे बना रही है वो बहुत ज्यादा मैसिव है. लेजेंड ऑफ द यहाँ पे शॉटगन से फिलहाल के लिए एक प्लेयर को डाउन करेंगे. दूसरा किल यहाँ पे कंफर्म करने का प्रयास, बट टीम टेम्पेस्ट दे लूज द फर्स्ट प्लेयर. नाउ टीम 2 साइड गेमर दे हैव ऑलरेडी द 2 किल्स. यहाँ पे क्रोनोस शील्ड का यूज आपको देखने को मिल जाएगा. जंप एंड फायर लुक क्वाइट फिनोमिनल. ओजस वी गेट्स टेकन डाउन एंड ओजस वी यहाँ पे इंस्टेंट एलिमिनेशन भी देखने को मिल जाएगा. देखते देखते यहाँ पे लेजेंड भी फिलहाल किल डाउन हो चुके हैं. लेजेंड इज गोना बी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड. विहान बीइंग द सोलो प्लेयर रिमेनिंग. सुजुकी 64 वो भी यहाँ पे रिवाइवल की मांग कर रहे हैं, बट दिस इज सच अ स्ट्रांग होल्ड coming in from the side of Team Arrow. Totally overcommit किया इस फाइट पे. थोड़े अपने साइड से जो रिवेंज फाइट बैक थे उसको भी यहाँ पे टोटली कैपिटलाइज करके यहाँ पे टीम 2 साइड गेमर्स उनको मजबूर कर चुके कि वो यहां से अपने रोटेशंस को यहां तय कर ले. बट रोटेशन करने के लिए देखिए हु इज वेटिंग फॉर हिम ऑन द अदर साइड. इट्स गोना बी वन एंड ओनली टीम टोटल गेमिंग जो यहां पे जस्ट रोटेशन दी. बट जे वाईटी इट सीम्स एज इफ ही वाज नॉट इवन एंटिसिपेटिंग दैट. पुनीत ऑन द अदर हैंड वो यहां पे एक किल निकालेंगे. टीम जेमिनी स्पोर्ट्स बारी-बारी फ्रैग निकाल के यहां पे 5 किल अपने साइड से टोटली सिक्योर कर चुके. दिस गोल्फ कोर्स आइलैंड हैज टर्न्ड इनटू अ ब्लडबाथ आफ्टर ऑल दीस टीम्स आर जस्ट कमिंग इन, जस्ट हियरिंग the sound cues. Godel भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. टीम गॉडलाइक यहाँ पे आराम से फिलहाल के लिए होल्ड करके रखी है. राधे टक्कर and Swastik on the other hand, well they are looking a bit phenomenal with their numbers advantage, but seems as if यहाँ पे Godel versus Gemini Sports, top 2 teams competing against each other for that #1 position, and it's gonna be team Gemini Sports जो यहाँ पे Godlike के 2 प्लेयर्स को यहाँ से एलिमिनेट कर चुकी है. बिल्कुल कहना है 9 मिनट का गेम हो चुका है. 9 टीम्स बाकी है यहाँ पे. देखिए 9 मिनट के गेम होने के बाद कुछ टीम्स यहाँ पे बिल्कुल केमिनी स्पोर्ट 6 के साथ मौजूद है. 2 प्लेयर्स सिर्फ उनके सिर्फ बचे हुए. उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर वो किसी 4-मैन स्क्वाड से फाइट लेती है इट्स गोना बी अ टीम के जो वो कहने के चैलेंज करे. एक प्लेयर को कहने के जरूर नॉक कर दिया. सॉफ्ट यहाँ पे जरूर कहने के अपना मैच निकालना चाहेंगे. नॉक कर दिया गया. राजा के बचने प्लेयर वाले और पूरा जो 3-मैन का स्क्वाड है उन पे कन्वर्ज करते हुए नजर आ रहा है. ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे बट ऑफ कोर्स गोना बी अ 2v4 राइट नाउ जो कहने के क्लोजिंग पे जो है टीसी टाटो को सामने से नॉक कर दिया. बट टीसी कैरी कोई भी चांस नहीं देंगे केमिनी स्पोर्ट्स के आखिरी बंदे को. 7 किल होने के बावजूद यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट ऑफ एलिमिनेट हो चुका है. केओस अबे बहुत अच्छे परफॉर्म मोमेंटम में नजर आ रही है. टीम नंबर 8 गोना बी अदर टीम जो कहने पे एक उनको चैलेंज उनके पोजीशन पे कन्वर्ट करते हुए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नजर आ रही है. इट्स गोना बी टोटल गेमिंग एंड टोटल गेमिंग जो कहने पे चैलेंज पोजीशन पे कन्वर्ट करते हुए नजर आ रही है. यहाँ पे एक और टीम कहने की मौजूद है. इट्स गोना बी टीएसएम जो कहने कहीं टीम केओस के यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई है. चाहेंगे ग्रेनेड्स का प्रयोग करना ताकि उनको उनके कवर से निकाल पाए. और ऑफ कोर्स यहाँ पे सही तरह से ग्रेनेड किसी भी एंगल से लगता है टीम का किसी प्लेयर को तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है. एक ग्रेनेड जरूर जाएगा. अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया. ज्यादा कुछ डैमेज नहीं देगा. बाकी मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ कौशिक मलिक को मैं देख पा रहा हूँ. इट्स बेटर कि वो दूसरे प्लेयर्स को अपने कॉल दे दे. थोड़ा सा दूरी मेंटेन किए हुए है ताकि वो कहना कहीं ये जो पूरी की पूरी जो टीम केओस है ना वो कैसे किसी तरह से सीमित है हाउस में उनको चारों डायरेक्शन से पकड़ ले और उसके बाद कहने के उन पे फाइट लेने की कोशिश करें.
वेल यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए टीम टीएसएम आपको देखने को मिल जाएगी। ज्यादा फाइट में अभी तक उन्होंने एंगेज ही नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक के लिए। बट नाउ आफ्टर दिस पर्गेटरी मैप एंड द गोल्फ कोर्स आइलैंड टोटली टर्निंग इनटू अ ब्लड बाथ, दिस इज गोइंग टू बी टीम टीएसएम जो यहाँ पे एक बार फिर अपने साइड से आपको अग्रेसिव होते हुए देखने को मिलेगी। देयर गोस द किल एंड दैट्स एन एलिमिनेशन, टोटल स्क्वाड वाइड बीइंग सीन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम टीएसएम एंड टीएक्स एंड व्हाट अ फिनोमिनल अग्रेसिव प्ले। हमने अभी जस्ट थोड़ा सा कहा कि टीम टीएसएम बहुत ज्यादा पैसिव खेलते हुए नजर आ रही है, सिर्फ एक ही खेले हैं। एंड देखिए उन्होंने कितने किल जोड़े, किसके किल जोड़े वो भी मैटर करते हैं। टीम गॉट लाइक द सीएम बीइंग द सोलो प्लेयर सर्वाइविंग, इट्स सो अनफॉर्चुनेट फॉर हिम दैट आफ्टर बीइंग इनसाइड टॉप 7 उनकी टीम सिर्फ ताज के पत्तों की तरह यहाँ पे बिखरते हुए हमें नजर आ गए फ्रॉम द साइड ऑफ टीम टीएसएम। बिल्कुल कहना कि गॉडलाइक के तरफ से एक अच्छा प्लेयर देखने को नहीं मिला है। क्या चाहूंगा एक सिर्फ अकेला प्लेयर बचा है जिसको विद द सीएम इंटेल शायद नहीं है उनका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपोनेंट टीम जो यहाँ पे क्या करेंगे होने वाली है, साइड का प्रयोग करके अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कौशिक मलिक नॉक ऑन कर दिए जाएंगे, फिर शॉट भी कर दिए जाएंगे। एक किल जरूर कहना कहीं यहाँ पे गॉडलाइक का पैसा है, टोटल ऑफ 4 किल्स बाय द वे। बट जिस तरीके से कहना कि अपना इंटेल दे दिया है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गॉडलाइक के आखिरी जो सीएम बचे वो ज्यादा देर टिक पाएंगे। ग्लोबल का प्रयोग, क्रोनोशीट का प्रयोग, सब कुछ भी आप प्रयोग कर लोगे तो 1v4 इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एजीन से 9 टीएसएम के जो प्लेयर थे वो कहने को कंफर्म किल कर लेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ कहना कहीं मैं कहना चाहूंगा 6 या 4 किल्स पे थे उससे को लेके कहने के एलिमिनेट हो जाएंगे। 12 मिनट का गेम हो चुका है, 16 प्लेयर्स अभी भी लॉबी में मौजूद है, 5 टीम्स अभी भी मौजूद है। देखना चाहूंगा कि बाकी दो टीम्स किस तरफ से फाइट ऑन लेते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए गोल्फोर्स का एरिया कहना है फाइनल सर्कल में जरूर आ चुका है। इट्स गोना बी टीम एरो डी स्पोर्ट जो कहना है यहाँ पे बहुत अच्छे कहने के मोमेंटम है रही है व्हेन वी टॉक अबाउट द किल्स। बट कहीं ना कहीं प्लेसमेंट पॉइंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। किल पॉइंट्स का आपके पास बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन है, बट उसी तरह से आप कहने के अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट्स भी निकालो वो भी ज्यादा बेहतरीन होता है। मावबस के थोड़ा सा एज पे कहने के खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे डीजी की टीम, डीजी इंसेंट, डीजी एलास एंड डीजी शॉन्टी जो कहने के पिछले मैप पे सेकंड पायदान पे आए थे, तो कोशिश करेंगे कि और किल्स निकालें और कहने के बुया भी निकाल पाए। वेल 3 प्लेयर्स अभी फिलहाल के लिए टीम डीसी गेमर्स के साइड से आपको अलाइव देखने को मिल जाएंगे। दिस इज दैट वन टीम हु बीट्स कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आप टीम चेमिनी स्पोर्ट्स को भी नहीं बोल सकते बिकॉज़ वो फर्स्ट और थर्ड आई, बट ये टीम दोनों मैप पे आपको जो है सेकंड पोजीशन पे ही आते हुए देखने को मिली थी। टीम टीएसएम दे लूज वन प्लेयर हु इज गोइंग टू बी क्वाइट एन इंपॉर्टेंट फायर पावर, बट नाउ दे आर अप अगेंस्ट द साइड ऑफ टीम डी स्पोर्ट्स। टीम आरो दे हैव बीन वेटिंग फॉर दीस फाइट्स। टॉप 5 में अपने जगह बनाने के बाद वो यहाँ पे तीसरे प्ले जोन पे एक बहुत ही अच्छे गेटकीप के सिनेरियो पे नजर आ रहे हैं, but top 16 players are also alive with us. Now these 16 players are going to make sure that no matter what it takes, they are going to committing to that top 3 position. यहाँ से आपको अभी positioning points and positioning निकालना भी बहुत ज्यादा important है। थोड़ा मिस आउट कर दिया अपने अपॉर्चुनिटी को from that AWM, but still Mr. J वो अपने kill and अपने opening की तलाश अपनी भी जारी रखेंगे, even though they don't have the numbers advantage, but look at that one taps। यहाँ पे बहुत बेहतरीन one taps यहाँ पे फिलहाल के आपको देखने को मिल रहे थे। Old Monks coming in, but well he did not quite he wasn't just able to get that opening which he was looking for। बिल्कुल कह रहे हैं कि जेआईटी थोड़ा सा ज्यादा कहीं ना कहीं अपने बाकी दो टीममेट से दूर पे मौजूद है, तो अगर वो कहीं ना किसी बात नॉक ऑन कर दिए जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टीम डी स्पोर्ट्स तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे एंगल जरूर ढूंढने की कोशिश की जा रही है ओल्ड मॉन्क की तरफ से, बट वो करेक्ट उल्टा कर रहा है। 18 सेल को बहुत बेहतरीन तरीके से कहने का नॉक ऑन कर दिया गया है। आई गेस इट वाज द साइड ऑफ कहने का रॉसी और ऐसे इनसे पे भी किल निकाल लेंगे तो पूरी की पूरी जो पत्ताज का जो पत्ता एक तो बोलते हैं ना कि एक प्ले था वो टेबल टर्न हो गया है। टीम एरो कहना कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी कहने आ चुका है फ्रॉम द साइड ऑफ टोटल गेमिंग। एक कहने के जेवाटी जरूर कहने के बचे हुए रहेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ टीएसएम। अपना लोकेशन ना दे, अपना लोकेशन का इंटेल ना दे वो ज्यादा बेहतर होगा। बट टीजी क्योंकि यहाँ पे इंडिया की वन ऑफ द टॉप टीम मानी जाती है, टीजी लीड को यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज जरूर दिया है रोशन ने, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करके कहीं ना कहीं प्ले आउट करना टोटल गेमिंग के वो ज्यादा बेटर होगा। मिताला ने स्पॉट ऑन जरूर कर लिया गया है मिस्टर जेवाटी को, दोनों कहने के शॉट का प्रयोग करके चाहेंगे कहने के किसी वक्त मिशन लेना, बट आपने इसको सामने से नॉक आउट कर दिया गया। एक और कहने के नॉक आउट ले सकते हैं अमित वाला बटॉल के रन एक्शन का प्रयोग करके कि डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से किल कंफर्म करेंगे। इट्स गोना बी लास्ट 14,000 सेकंड। टीजी लीड को सामने से और नॉक ऑन कर दिया गया। फिनिश अभी किसी वक्त हमें देखने को मिल सकता है, बट क्योंकि एंगल नहीं मिल पाया और पीछे से एक दो टीसी के बंदे और आ चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि इसी वक्त उनका फिनिश ऑफ में देखने को मिल सकता है। ऑन द अदर आरओएनएस एंड अमित वाला भी कहना कि टूल शीट का प्रयोग किया जो एज पे जो बैटल्स रहे वो ज्यादा इंटेंस और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेहतरीन चल रही है सभी टीमों की तरफ के वजह से। बट टोटल गेमिंग ऑन द हैंड थर्ड पार्टी किया है, इट्स बेटर कि आप एकदम पूरा एग्रेसिव जाओ रहते हैं आप एक बंदा आपका नॉक ऑन हो रहा है फिर आप कहने के रिवाइव दे रहे हो, वो थोड़ा सा कहना कि बाकी टीम्स को ज्यादा फेवर दे सकती है। माफिया कहने के नॉक आउट जरूर हो गए टीम के साथ से और किल कंफर्म कर टीम में
की तरफ से एरो कहने के सामने मौजूद है। अगर ये करेक्ट ग्लू वॉल टूटती है तो एरो का नो रोशन का किल हमें देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे ग्रेट कॉपिंग कर दिया गया, डैमेज नहीं हुआ, बट आई गेस दैट वाज द ग्रेट फ्रॉम देयर टीम ओनली, बट एरो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं केमिस्ट्री मौजूद है कि इस बार नॉकआउट में देखने को मिल सकता है। और पूरी की पूरी एस्पोर्ट्स टीम कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है फ्रॉम द हैंड्स ऑफ टोटल गेमिंग। टोटल कहीं ना कहीं 3 बंदे उनके अभी भी मौजूद है, टीजी डिलीट, माफिया रोहित कहने के माफिया बाला सॉरी मौजूद है, माफिया कहने के एलिमिनेट हो चुके हैं, 5 किल के साथ भी मौजूद है। तो उनका लेफ्ट साइड हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसमें भी 2 साइड की जो कहने के उनको चैलेंज करने आने वाली है। काफी ज्यादा ओपन में दोनों प्लेयर्स मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरफ भी सरवाइव कर पाएंगे और वही चीज होगी। माफिया वाला भी कहने कहीं ग्रोजा के हाथ, माफिया वाला के हाथों में कहने कहीं एलिमिनेट हो जाएंगे, उसमें भी 2 साइड गेमर्स और विलन भी किसी वक्त मुझे देखने को एलिमिनेट होने को देखने को मिल सकता है। बिहान इसको दी हुआ जो टीजी रोहित की तरफ से, तो एक बहुत अच्छा कहना कहीं कमबैक आ चुका है किल्स के मामले टोटल गेमिंग की तरफ से। मैं तो ये बात पक्के से पक्के बोल सकता हूं। और आगे एक टीम मौजूद होने वाली है, इसको भी देसी गेमर जो कहने के सामने होने वाली है, यस गोना बी शॉन्टी एलेक्स इसे टोटली ऑन द अदर साइड। तो दोनों टीम्स को कहने के अपने अपोनेंट टीम का इंटेल नहीं है, बट जोन देखिए फेवर में जाते हुए टोटल गेमिंग के, और अब आपको जैसे तैसे कहीं ना कहीं जोन में जाना ही जाना है, तो हो सकता है कि वो जोन को फेवर में लेके ये मैप जो है टोटल गेमिंग अपने इस मैप पे बुआ निकाले। जी स्टोरी लाइन भी देखिए किस तरीके से लिखा जा रहा है। एक बार फिर शॉन्टी देखिए वही मोटर वही किल से रोटेट करते हुए बार-बार 2 मैप से तो दूसरे पायदान पे आ रही थी टीम देसी गेमर्स। वंस अगेन क्या यहाँ पे दूसरे पायदान पे आएगी मीनवाइल टीम टोटल गेमिंग की अगर हम बात करें, उनके पास वो नंबर्स एडवांटेजेस, वन ऑफ द 3v3 सिचुएशन जहां पे जोन के अंदर जो प्रवेश किया है, यू नीड सम कॉन्फिडेंस टू डू दिस अगेंस्ट टोटल गेमिंग। यहाँ पे डायरेक्टली जोन के अंदर ऑन देयर फेस दे गो द शॉटगन, बट इट डज नॉट लैंड क्वाइट वेल। ग्लू वॉल के द्वारा थोड़ा यहाँ पे अपने साइड से प्रयास कर रहे हैं, डिलीट्स गेट डिलीटेड। अब दैट्स गोना बी द ओपनिंग विद टीम देसी गेमर्स फॉर लुकिंग फॉर। यहाँ पे दूसरे पायदान पे रहना समथिंग दे डू नॉट वांट। बहुत डेस्परेट नंबर 1 पोजीशन के लिए, बट दे आर अप अगेंस्ट टीम टोटल गेमिंग। टोटल गेमिंग दिस इज देयर चांस टू। यहाँ पे माफिया वाला भी फिलहाल क्लियर आउट हो चुके हैं और 1v3 सिनेरियो टीम देसी गेमर्स विल दे गेट दैट फोर्थ बुया? इज इट गोना बी टीम टोटल गेमिंग जो यहाँ पे 1v3 निकालेगी? वेल दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज़ वी आर गोना बी प्रूवन रॉन्ग एंड टीम देसी गेमर्स वी डिड टोल्ड consistency beats team Desi Gamers and they are the one who is just gonna rotate it. Not just they are being consistent, but हर बार top 2 पे होना, अभी number 1 पायदान पे आके they are gonna show some phenomenal setback, but setback total gaming ने भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। Purgatory का मैप था, जोन टोटल गेमिंग के फेवर में था, but what's that one thing which went all south for the side of team total gaming? बारी से just पिछड़ते हुए नजर आ गए and out of nowhere we didn't even expected कि शायद यहाँ पे 3v3 होने के बावजूद शायद देसी गेमर they do stand a chance to win today. I just personally think it was a lack of communication, क्योंकि देखिए दोनों टीम्स एकदम सर्कल के दूसरे दोनों एंड पे थी एंड टोटल गेमिंग ने रशन नहीं किया, देसी गेमर्स ने वहां पे डिसाइड किया कि हम उनके तरफ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स उनको साउंड वहां पे आ चुके थे। आई गेस जो भी टीम ने पहले साउंड क्यू पहले सुना कि हाँ इस तरफ से बंदा आ रहा है या फिर हमारे लेफ्ट साइड से आ रहा है, ऑफ कोर्स उनके तरफ से थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, तभी कहने के देसी गेमर्स इनके तरफ पे कन्वर्ट करके बुया निकाल पाए। जो हमने प्लेसमेंट पॉइंट से कंसिस्टेंसी की बात की, ऑफ कोर्स वो कहने के पूरा का पूरा फेवर रहा है। कभी आप टॉप 3 में आ रहे हो, कभी आप टॉप 2 में आ रहे हो, और देखिए आते के आते देर आए दुरुस्त है कहना चाहूंगा, बट हाँ प्रोगेटिव मैप पे यहाँ पे बहुत बेहतरीन बुया निकालते हुए। बट ऑफ कोर्स कहने के टोटल गेमिंग सेकंड पायदान पे जरूर आई है, उनके तरफ से 7-6 गेम्स हमें देखने को जरूर मिले, बट आई स्टिल थिंक मेरी मैच उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आई स्टिल थिंक कि अभी भी स्कोर पार्ट पे टॉप 5 या टॉप 6 में देखने को नहीं मिलने वाले तरुण। वेल दिल्ली बहुत दूर है टोटल गेमिंग, उनको मेक श्योर करना है कि जितना हो सके वो इसी लेवल का गेम प्ले बताए, बिकॉज़ दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। यहाँ पे दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको एट द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज प्रेजेंट करके दिखा रहे अपने आप को, अपने गेम प्ले को। ऑलरेडी 3 मैप समाप्त हो चुके हैं, 3 अलग अलग मैप के बाद वी fall down to the map of Bermuda, which is going to be the up next map. ये मैप एक बार फिर वही सेम अप्रोच दिखाएगा पर्गेटरी के जैसे ही, थोड़ा बहुत आपको जो अपीयरेंस है, जो मोमेंटम है, वो थोड़ा कैरी ऑन होते हुए देखने को मिल सकता है। जस्ट वन डिफरेंस दैट थोड़ी पोजीशनिंग पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ के आपको किल्स के लिए भी जाना पड़ेगा एट टाइम्स। देखिए बरमुडा दूसरी बार प्ले आउट होने वाला है आज के दिन में, बाकी जो 2 दिन होने वाला है कल का और हमारा परसों का, उस पे भी होगा। मुझे बस लग रहा है कि या तो कोई टीम एकदम ऑल अग्रेसिव जाने वाली, हो सकता है कि हमें esports यहाँ पे एक और हमें बुया देखने को मिले, और आइदर इज गोना बी सम अदर टीम जो कहने के टोटल गेमिंग जिस तरह से कहने के सेकंड पायदान पे आउट हो गई, डीजी esports कहना कहीं देखिए पहले पोजीशन पे पिछले प्रोगेटिव मैप पे बुया निकाला, हो सकता है ये 3-4 टीम जो जिस पे लुकआउट रहे, पर बाकी वाली टीम जैसे हम किल पॉइंट्स पे जाएंगे, मुझे बस लग रहा है कि थोड़ा सा बाकी वाली टीम्स के लिए मुश्किल होने वाला है जो स्कोर कार्ड पे अच्छे पोजीशन पे नहीं है। फिनाले स्टेज है, ईयर लॉन्ग, देखिए हम सब जानते हैं पूरे साल भर का जो स्टोरी लाइन रहा है कि आप साल भर मेहनत कर रहे हो, उसके बाद फाइनल में आप जाके कहने के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करो, हाँ आप 1-2 पॉइंट से चूक रहे हो, वो तो अपने में दिल में जरूर कहने के आपके जरूर चुभेगा, बट हाँ आप एक अच्छी फाइट दो,
बहुत सारी ऐसी टीम्स को मैं देख रहा हूँ कि जब वो फाइट ले रहे हैं तो फाइट ज्यादा कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए टू साइड गेमर्स की बात करूंगा, उनके आखिरी के 2 प्लेयर्स कहने के बचे हुए थे, लेट रोटेशन ले रहे थे और टोटल गेम में स्पॉट ऑन कर लिया, उनको एलिमिनेट कर दिया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें ना कि आप लेट रोटेशन ले रहे हो या फिर आप अगले बंदे खोल रहे हो, ये अब टीम्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आखिरी के 2 मैच है, मैच बचे, इट्स गोना बी बरमुडा, उसके बाद जो हमारा आखिरी मैच होने वाला है इट्स गोना बी कलहारी। तो बाकी अगर आप 2 मैच पे भी आप बुया नहीं निकालते हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और आप किल पॉइंट भी नहीं निकाल पाते हो, बैलेंस बना के नहीं चलोगे तब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स यानी कि 2 दिन का और गेम बाकी है, तुम कुछ कह नहीं सकते कौन सी टीम का भगवान, मैं कह रहा था भगवान मोड एक आ जाता है, भगवान गेम प्ले कहीं ना कहीं आ गया तो वो एक अलग बात हो जाती है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट यस, जो कहने की केमिन स्पोर्ट्स हो गए, देसी डीजी स्पोर्ट्स हो गए, बाकी जो टीम्स कहने की बुया निकाले, उनके पास एक स्कोरबोर्ड पे ऑफ कोर्स लीड जो है वो मेंटेन रहेगी, और वो चाहेंगे कि बाकी 2 मैच भी इस लीड को मेंटेन करके रखे और आगे चल के अपना डे 1 जो है फिनिश हो बहुत अच्छे नोट पे करें। जी हाँ, उसी नोट पे थैंक यू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आप सभी नए हो, सो लेट मी रिमाइंड यू हैव ट्यून्ड इनटू द Esportz Premier Series. Throughout the year we have seen these teams competing against each other, not just at the game of Free Fire but even Valorant and FIFA, जो आपका पसंदीदा PC गेम भी है, जो आपका पसंदीदा मोबाइल बैटल रॉयल गेम है, and your favorite console game which we cannot even miss. We started off our gaming journey with console games and then it was all PC and lockdowns which got us here, but definitely FIFA is that one thing जो अगर आप यहाँ पे बहुत पसंद कर सकते हो, you can definitely tune in with us. Upcoming year भी हमारा बहुत ज्यादा इधर it's going to be full of events. Definitely huge announcement also on the way. So अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए हमारे esports.in को। यहाँ पे सोशल हैंडल्स आपको हमारे देखने को मिल जाएंगे, एंड हॉप इनटू आवर डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल इन केस यू वांट टू बी वन ऑफ दीस टीम्स जो यहाँ पे इधर अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर रही है, who have been given that platform to showcase their skills and to showcase what they are capable of. तो आप भी इनमें से एक टीम बन सकते हो। Registration will be opening quite soon. Upcoming year is also going to be something which is going to be up with many announcement, and if you guys have not yet subscribed our channel, do turn that red button gray and जरूर लाइक बटन भी प्रेस कीजिए ताकि हमें पता रहे दैट आज के दिन हमें कितना हमें रिस्पांस देखने को मिल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ आवर व्यूअर्स। हाउ आर दे लाइकिंग इट? डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन, एंड इट्स गोना बी द नेक्स्ट मैप ऑफ बर्मुडा। सिर्फ 2 मैप बाकी है, एंड आई गेस थोड़ा यहाँ से हमारे मैप्स इधर मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे। 20% गेम प्ले जो है वो देख लिया हमने पूरे टूर्नामेंट का। 15 मैप में से 3 मैप तो हो चुके हैं, बाकी के 12 मैप अभी किस तरीके से खेला जाएगा वो चीज बहुत ज्यादा डिटरमाइन करेगी हमारी मैप स्टैंडिंग्स। यहाँ पे मैप स्टैंडिंग्स भी एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा हमें जैसे कि आपने बोला 1-2 पॉइंट से चूकते हुए नजर आती है टीम्स को। सो टीम्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीस थिंग्स, एंड जस्ट टू टेल यू वन लास्ट थिंग, दिस टूर्नामेंट इज पावर्ड बाय जोश ऐप, एंड फ्री फायर itself holds a massive prize pool of 10 lakh Indian rupees. So teams, they got their motivations. Of course, कहीं ना कहीं 2 मैच बचे हैं फ्रॉम एन कास्टर्स पर्सपेक्टिव कि मैं चाहूं कि एकदम एक्सप्लोसिव एक्शन में बाकी 2 दिन भी देखने को मिले। मैं चाहूंगा कि जो टीम्स कहने के स्कोर बोर्ड के नहीं एकदम निचले पायदान पे वो बैठी हुई है वो अपना कमबैक करे। आखिरी बरमुडा मैप होने वाला है, सबसे आखिरी हमारा कालहारी होने वाला है। मैं चाहूंगा कि बाकी जो टीम्स कहने कहीं नीचे एकदम स्कोर बोर्ड पे मौजूद है वो कमबैक करे। वॉइस गोना बी द टीम ऑफ टीएसएम। अगर मेरी मैच सही जाती है, मेरे कैलकुलेशन सही जाते हैं, थोड़ा बहुत निचले हो मैं देखने को मिलेगी। 2 साइड गेमर्स हमें हो सकता है डेफिनेटली कहने के एकदम बॉटम 5 में देखने को मिले। बट हाँ, मैं चाहूंगा कि जो टीम बॉटम 5 में वो अब कहने के कमबैक करे, क्योंकि आखिरी 2 मैच पे भी आप कमबैक नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स बाकी के 2 दिन पे आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। जैसा तरुण भाई ने बताया कि पूरा जो ई-स्पोर्ट का सेगमेंट है, वी हैव द बेस्ट बैटल गेम राइट नाउ, फ्री फायर जिस पे ई-स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज के सेगमेंट में मौजूद है। वी हैव फीफा 22 जिस पर बैटल हुआ अभी हमने देखा, हमारे आपके साथ फ्री फायर कास्टर जुड़े थे। तो एक जो पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, कंसोल आपका इंक्लूडेड है, जो ईयर पैक जो परफॉर्मेंस रहा उसका कोई ना कोई क्रेडिट जाता है तो ऑफ कोर्स हमारे स्पॉन्सर्स को जाता है, ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन टीम जो कहना है अभी ईयर लॉन्ग जो मेहनत कर रही है इस ई-स्पोर्ट प्रीमियर को पॉसिबल करने के लिए। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है स्ट्रीम को, तो मेक श्योर टू प्रेस दैट लाइक बटन। इट्स लाइक अ पैट ऑन आवर बैक की जो भी हमारी मेहनत जा रही है प्रोडक्शन टीम की उसको अप्रिशिएट करे हो। बात हम करेंगे पॉइंट्स टेबल की ऑन टू द मैप ऑफ पुगेट्री। देखिए देसी गेमर्स ने यहाँ पे बुया निकाला 12 प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ एंड 7 किल्स के साथ, दैट मेक्स एन ओवरऑल ऑफ 19। टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे सिर्फ 7 किल्स निकाले हैं, 9 प्लेसमेंट पॉइंट्स ऑफ, दैट मेक्स एन ओवरऑल ऑफ 16। डी ई-स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 5 किल्स निकाले, बट क्योंकि यहाँ पे 7 उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट है, दैट मेक्स एन ओवरऑल ऑफ 12।
TSG आर्मी, चलिए इनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक कमबैक हमें देखने को मिला है। तरुण चौथे पायदान पे 4 किल्स के साथ, दैट मेक्स एन ओवरऑल ऑफ 12 पॉइंट्स। TSM FTX हो गए, खेमनी स्पोर्ट्स इस बार थोड़ा सा छठे पायदान पे है, गॉड लाइक। अगर मैं बात करता हूं उस टाइम कहना कि जो निचले हिस्से में टीम मौजूद है, तो ऑफ कोर्स टीम केओस थोड़ा सा कहने पहले 2 मैच में जरूर कहने के अच्छा नजर आ रहे थे, बट अब मुझे नहीं लगता है कि उनके तरफ से जाने वाले। बट हाँ, जो टीम हमें बिल्कुल एकदम कहते हैं ना लाइमलाइट में नहीं नजर आ रही है, दैट्स गोना बी हेडहंटर्स, दैट्स गोना बी टाइटेनियम ईस्पोर्ट्स एंड टीम ब्लास्ट की तरफ उनका तो मुझे लगता खाता खुला है किल्स के मामले या फिर प्लेसमेंट पॉइंट्स के मामले। निग्मा गैलेक्सी मुझे लग रहा है बाकी डे में कमबैक करे, दे हैव प्लेयर्स लाइक ओसियो, दे हैव प्लेयर्स लाइक डिवाइन, तो उनके तरफ से कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, टाइटेनियम ईस्पोर्ट्स की बात करूं, जब मैंने इंटरव्यू लिया था सेमीफाइनल के स्टेज में जो पिछले 2 महीने के टूर्नामेंट्स हुए, उनके तरफ से बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर दिखाता है। ऑफ कैमरा मैंने बोला था कि टाइटेनियम ईस्पोर्ट्स कुड बी वन टीम टू लुक फॉर, बट उनके तरफ से पहले दिन में ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि हमें बाकी अदर 2 दिन में हमें उनकी तरफ से कमबैक देखने को मिले। जी हाँ, बट छलांग देखिए किस तरीके से मारा है। 8th पायदान पे आए, फर्स्ट मैप पे 9th पोजीशन पे एलिमिनेट हुई थी काला हरी के मैप पे, बट वो सेकंड पोजीशन जो सिक्योर किया बस चूक गए हैं वो नंबर 1 आने से। बट देसी गेमर्स, दे आर द वन हु हैव प्रूवन देमसेल्फ, नॉट ओनली कि वो बार-बार 2 मैप में टॉप 2 पे आए, बट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन भी ग्रैब कर ही लिया। ईच एंड एवरी मैप बस थोड़े से चूक जा रहे थे, बट फाइनली उस कमी को पूरी तरीके से पूरा करते हुए यहाँ पे शॉन्टी द वे वंस अगेन, ही डिड that heroic gameplay of going with that motor vehicle. It's something which you don't ever get to see from any sort of player in this grand finale stage where you know it's gonna be many things on stake. यहाँ पे एक गलती आपने बोला था 1-2 पॉइंट की कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट कर सकती है प्लेयर, बिगर उसको सोचते हुए had that confidence, was a bait for his teammate to make sure कि वो इनिशिएटर बन के इनिशिएट करा रहे प्ले जोन के अंदर, and it was just team total gaming जिनको आउटप्ले करके टीम देसी गेमर्स they made it happen. They won that booyah, and that was what we are really quite happy about them, because number two के बाद number 1 बनना, it's something which is quite deserving for them as well. But now we have the 2 maps remaining. 2 maps की अगर हम बात करें, बर्मुडा का मैप रहेगा once again, and then it's going to be कालाहारी। दोनों ही मैप 2 अलग-अलग situations आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो कौन सी टीम यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगी इन 2 मैप पे बुइया जीतते हुए? Do let us know in the chat section। अगर आप सभी नए हो तो जरूर हमें बताइए that which team is going to be the one जिनको आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए हो। So when we know that which यहाँ पे टीम्स को भी कितना प्रेशर रहता है, because from our perspective we know what a team will be playing with, we know the map, we know where the opponent players are situated, but not these players already have that pressure कि year long के बाद वो इस स्टेज पे आए ग्रैंड फिनाले में। it's stakes are pretty much high, and so are the expectation of our fans as well। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो 12 टीम्स है ना, टॉप 12 की यहाँ पे जो इंडिया की टीम्स है, ये ऑलरेडी यहाँ पे कहने के फीफा सर्किट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो एक फैन का प्रेशर, उसके बाद आप एक किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका प्रेशर, ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है, तो प्रेशर तो कहने के एकदम कहने के मेंटेन्ड है उनपे। अब वो एकदम कम नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स जो चीज कम करेगी ऑफ कोर्स होने वाली है उनके, वो अपनी टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब सी जो आखिरी के 2 मैप्स होने वाले हैं उनपे कैसा प्ले आउट करता है। मैं जैसा बोला एज अ कास्टर्स पर्सपेक्टिव मैं चाहूंगा कि जो बॉटम 5 की टीम्स है ना तरुण, वो कहीं ना कहीं कमबैक करे, वो आगे बढ़ चल के एग्रेसिव खेले, और ऐसे जो टॉप 5 के जो स्कोरबोर्ड पे अभी भी मेंटेन है उन टीम्स को एलिमिनेट करे, रादर देन कि वो सेम स्टोरी हो कि केबिन स्पोर्ट्स कहने का बुया निकाले, या फिर देसी गेमर स्पोर्ट्स यहाँ पे बुया निकाले, या फिर हमने देखने को टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स बुया निकाले। ऑफ कोर्स टोटल गेमिंग की बात करेंगे तो रजोन की तरफ से पॉइंट्स के मामले में जरूर कमबैक देखने को मिला है, बट लेट्स सी कि आगे चल के मैप पे कैसा होता है। बर्मुडा का मैप हमारा जो 4th मैप है, गेम नंबर 4, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ड्रॉप लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रेंज शिफ्ट यहाँ पे लिया, स्टार्ट करेगी कहीं ना कहीं देखिए एकदम लेफ्ट हैंड साइड में एकदम खत्म होने वाला है शिफ्टार की तरफ से, तो ज्यादा कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड करने के कैरेट टीम के यहाँ पे कोटा 2 पे थोड़ा सा ज्यादा टीम के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैप एकदम लेफ्ट हैंड साइड से एकदम कोने से एकदम स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा टीम कहने की स्कैटर्ड होने वाली है एकदम सेंटर पे ही इनटू द इनिशियल गेम। बट या हो सकता है आगे चल के कहने के ब्लू जोन जो एकदम मैप के एकदम राइट हैंड कोने में बना है उस तरफ कहने की टीम जा सकती है। सेंटर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी की टीम गई है, थोड़ा सा कहने के निचले हिस्से पे वी कैन सी टीम वर्सेस हेडहंटर्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे TSM थोड़ा सा क्लोज पॉसिबिलिटी में है, तो अगर कहीं ना कहीं इनके पास गन वगैरह मिलता है तो हमें एक अर्ली फाइट हमें इन दोनों टीम्स के बीच में मास सेलेक्टिव पे देखने को मिल सकता है। वेल पोचिनॉक के एरिया पे भी टीम देसी गेमर्स का आपको फिलहाल एक ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। मीनवाइल टीम TSM दे आर हियर टुवर्ड्स द साइड ऑफ द मास इलेक्ट्रिक एरिया। लूट फेज है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लूट फेज को टोटली अपने साइड से कैपिटलाइज करे, एंड जितना हो सके उतना अपने लिए सारे के सारे यूटिलिटीज एंड आर्मरीज लोड आउट को गैदर कर पाए। बट टॉकिंग ऑफ विच, निग्मा
Galaxy, you do keep your expectation on these team, and ये ही एक ऐसी टीम है हमारे बॉटम 5 से जिनके ऊपर एक शायद उम्मीद रख सकते हैं आप दैट वो इस मैप पे वो सेटबैक देख पाए, नॉट ओनली बिकॉज दे आर अ गुड टीम बट डेफिनेटली लुक एट द प्लेयर्स एज वेल जो यहाँ पे खेल रहे हैं। ग्लाइडर से थोड़ा जल्दी ग्लाइड आउट कर लिया, हेडहंटर्स ऑन द अदर हैंड कमिटिंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ द संतोष आइलैंड, एंड संतोष आइलैंड पे जाना शायद उनके लिए एक फायदेमंद सिनेरियो बन सकता है बिकॉज अभी भी उनके पास थोड़े 1 मिनट 45 सेकंड्स है रूट करने के लिए, एंड जितना लूट यहाँ पे सिक्योर करेंगे जो हमारा जोन है वो तो फिर अपीयर होने वाला है, अपीयर होने के बाद श्रिंक होने तक का जो टाइम रहेगा उसमें टोटली ऑल ऑफ these 4 players not only they will be securing themselves in a very safe location but also will be securing quite some loot। देखिए बिल्कुल एक बात तो पक्की है, जिस तरह से एक्सप्लोसिव एक्शन में पहले मैप पे बरमूडा पे देखने को मिला था वैसा हमें इनिशियल फाइट्स में कुछ भी अभी देखने को मिल रहा है। सारी टीम कहने के पैसिव खेल रही है, इवन टीम लाइक हमें टीएसएम वो भी कहने के मास सेलेक्टिव पे एकदम दूसरी तरफ चली गई कि हम पहले फाइट नहीं लेंगे, हम पहले लूटिंग पे कहने के फोकस करेंगे ऑन द साइड ऑफ क्लॉक टावर जो कहने के हीट जोन बना रहता है हमेशा एंड फाइट्स में। अगर वो कहने के सर्कल आती है इट्स गोना बी टाइटेनियम ई-स्पोर्ट्स की टीम जो कहने के उधर तरफ लूटिंग कर रही है, इट्स गोना बी टीम नंबर 9, इट्स गोना बी डी ई-स्पोर्ट्स ऑन यहाँ पे एरो की टीम जो कहने के चाहती है शायद भीमा से रोटेशन ले टाइटेनियम ई-स्पोर्ट्स की तरफ। 2 प्लेयर्स उनके किसी और तरफ भीमा के स्ट्रिप पे मौजूद है, 2 प्लेयर्स किसी और तरफ मौजूद है, तो ये गलत साबित हो जाता है अगर आप किसी यहाँ पे प्लेयर से फाइट ऑन लेते हो तो, क्योंकि ग्रुपिंग करके चलना फाइनल स्टेज पे ज्यादा बेटर है रादर देन एकदम स्कैटर्ड करके लूटिंग करना। जी हाँ, यहाँ पे ये चीज आपने बहुत ज्यादा सही कही है, बर्मुडा का मैप है, सो यू नो दिस इज दैट लास्ट मैप व्हिच यू विल बी प्लेइंग इन इफ यू लाइक बर्मुडा। इसके बाद काला एरिया एंड इट्स समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डिपेंड ऑन, दैट इज नॉट अ डिपेंडेबल मैप, दैट्स अ डोमिनेटिव मैप एंड आपको अपना डोमिनेशन जरूर उधर लाके दिखाना होगा। पहला प्ले जोन बहुत ही जल्द आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, बट जो प्लेन पाथ है इधर वो तो आपको टोटली वेस्टर्न साइड पे फेवर होते हुए नजर आया, बट कैंप साइड पे बन चुका हमारा ब्लू टियर लूट वाला जोन। अब ये जो हाई टियर लूट मिलेगा आपको इन ब्लू जोन्स में, उसको कंटेस्ट करने के लिए भी टीम जो है थोड़ा यहाँ पे अपने साइड से अग्रेसिव जा रही है, फ्रंट फुट पे खेलना चाह रही है टू मेक श्योर दैट दे डोंट मिस ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी इन केस उनका ड्रॉप लोकेशन उसके बहुत ज्यादा नजदीक रहता है एंड दे नो कि बाकी की सारी टीम्स का यहाँ पे क्या क्या पसंदीदा ड्रॉप क्लैश है, तो उस चीज को टोटली डिनाई कर रहे हैं वो। बट टीम टोटल गेमिंग आर दे गोना गिव दैट सेटबैक कंसिस्टेंटली? पर्गेटरी पे तो सेटबैक किया उन्होंने, बट उसके बावजूद अभी भी जैसे कि हमने कहा था दिल्ली बहुत दूर है, बिकॉज उनको और बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ना है अपने पॉइंट्स टेबल में, एंड जो शुरुआती लीड निकाल चुकी है टीम गॉड लाइक एंड वन एंड ओनली टीम चेमिन ई-स्पोर्ट्स। चेमिन ई-स्पोर्ट्स को भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वेयर हैव दे बीन। सेकंड मैप पे थोड़ी कंसिस्टेंट थी, तो यहाँ पे चौथे मैप पे वो आपको देखने को मिल रही है शिपयार्ड के साइड पे, बट दिस इज दैट मैप जिसपे वो बुइया जीती, तो सो विल दे डिफेंड दैट बुइया अगेन और इज इट गोना बी सम अदर टीम इज अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल कह रहे हैं कि इवेंट टीम क्योस की बात करूंगा था मैं, तो कुछ खास इनके तरफ से प्लेसमेंट पॉइंट्स नहीं है इनके पास। ऑफ कोर्स स्किल पॉइंट्स बहुत काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं पिछले क्वालिफायर स्टेजेस की बात करूं, विवेक हो गए, बैक टू होम अरिस्तास करी, बैक टू होम शायद मुझे सब्स्टिट्यूट में जरूर मुझे लग रहा है लाए गए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फिनाले स्टेज आज के दिन पे। बैक टू होम को मैं पहली बार खेलते हुए देख रहा हूं फ्रॉम माय क्लासेस एक्सपीरियंस, बट हाँ विवेक हो गया, स्थान हो गया, स्कैर हो गया, ये सारे क्लच पोटेंशियल टीम से बात की हमने। आपने बोला दिल्ली बहुत दूर है, ऑफ कोर्स टोटल गेमिंग ऐसी टीम है कि कभी भी कमबैक कर सकती हो सकता है। तो कल का दिन हो हमारा, तो उसके बाद एक क्वार्टर फाइनल डे होगा, उस पे कहने कमबैक देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तो डेफिनेटली मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एक बुया जरूर निकाला है, बट लेट्स सी कि अभी जो हमारा बर्मुडा का मैप ऑलमोस्ट कहने के 20% खत्म हो चुका है और नेक्स्ट मैप जो होने वाला है इट्स गोना बी द मैप ऑफ करी, उस पे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। राइट नाउ व्हाट आई एम एबल टू सी इसके यहाँ पे ब्लू जोन में कहीं लूटिंग करते हुए नजर आ रही है निग्मा गैलेक्सी की टीम, एंड इस तरफ हमें देखने को मिल रहा है टीम डी ई-स्पोर्ट्स गोइंग अप अगेंस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गोना बी द टीम गॉड लाइक। एक मैप पे बुया जरूर निकाला है, थोड़ा सा यहाँ पे स्कैटर्ड जरूर नजर आ रहा है यहाँ पे डी ई-स्पोर्ट्स, बट ये स्कैटर्ड ना कितना ज्यादा फायदेमंद होगा वो आने वाले हमें चंद सेकंड में पता चल पाएगा। थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया है गॉड लाइक के कुछ प्लेयर्स को, बट गॉड लाइक के भी चारों प्लेयर्स चारों अलग डायरेक्शन में मौजूद है, ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है अगर एक भी नॉक वो अपोनेंट टीम के अगेंस्ट में निकालते हैं तो। वेल यहाँ पे आरो शीरो फिलहाल के लिए नीग्रो पहुंच जाएंगे, बट नो ही गेट्स एलिमिनेटेड। यहाँ पे टीम आरो के साइड से आरएनएस फिलहाल के लिए हमें टेक डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, बट दैट ब्लीडिंग, लुक एट दैट माइक्रो ब्लीडिंग जिसपे वो बचे हुए हैं, पूरी तरीके से रिवाइवल दे दिया गया, बट दैट्स गोना बी इनफ फॉर टीम गॉड लाइक टू कम अप अग्रेसिव एंड मेक श्योर कि वो उस
किल पे कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। 4v4 का ये फाइट एंड टीम गॉड लाइट अप अगेंस्ट द साइड ऑफ टीम डी स्पोर्ट्स। देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे जीत के जाएगी इस 4v4 के फाइट पे। बट रिमनम विलेज पे एक बार नजर डालो आप बुलेट, तो देखोगे कि एक और एक टीम है जो धीरे धीरे यहाँ पे एंटिसिपेट कर रही है सब मूवमेंट एंड दे डेफिनेटली वांट टू गेट इनसाइड एंड गेट एंगेज एज वेल। टीम टीएसएम वेलकम टू द पार्टी बिकॉज़ वो भी इन दो टीम के अंदर आ चुके हैं। लुक एट ओल्ड मॉन्ग ऑलरेडी यूजिंग ऑल ऑफ द यूटिलिटीज। वुड पीकर से यहाँ पे गिनात्रा तो डाउन हो चुके हैं। टीम टीएसएम पीछे से इनसे पूरी तरीके से कवर देने वाले टीम टी स्पोर्ट्स पूरी तरीके से यहाँ पे जो है लड़खड़ाते हुए नजर आएगी। एंड देखते देखते कवर की तलाश तो है बट कवर इनसे उनको जाने नहीं दे रहे हैं। टीम टीएसएम 2 किल ऑलरेडी आ गया, तीसरा किल पे भी यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। कौशिक को रिवाइवल देना भी बड़ा ज्यादा अनिवार्य होगा इस टाइम पे। तो पार्टी में धमाका थोड़ा लेट जरूर मचा रहे बट जेवाटी एक और नॉक निकालेंगे डी स्पोर्ट्स को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे कहने के पूरे 3 बंदों को एलिमिनेट कर दिया अपने हाथों। जेवाटी की तरफ पे कहने के एक ही किल मौजूद है बट वहां पे नॉक हमें जरूर देखने को मिला था। 3 किल्स के साथ कहने के एक और चौथा किल कहने के जेवाटी कंफर्म करेंगे और डी स्पोर्ट्स कहने का अकेले बचने वाली है। उधर टेम्पस ये जरूर कहने के मौजूद है। इफ गोना बी टीम नंबर 1 जो कहने के एक्सप्लोसिव में जरूर उनको कहने के साउंड आया होगा बट इस चीज को इग्नोर करते हुए ऐसा बोला आपने टीएसएम वेलकम टू पार्टी और पार्टी के एकदम कहना के एमवीपी बन जाएंगे। 5 किल के साथ कहने के इस और फाइट को भी जीता बट एट द कॉस्ट ऑफ कौशिक मलिक। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। टीम नंबर पे हम देख सकते हैं 11 इट्स गोना बी देसी गेमर्स ई-स्पोर्ट्स जो कहने के उन पे तरफ है पोजीशन पे कन्वर्ज करते नजर आ रही है। हो सकता है वो कोई और टीम भी हो बट कहने के डेफिनेटली वहां पे साउंड जरूर आया है। इट्स गोना बी द टीम ऑफ जैसे हमें पर्सपेक्टिव मिल जाएगा वैसे मैं कंफर्म कर दूंगा बट जेवाईटी थोड़ा सा कहने के किसी और टीम से कहने के हमें शॉट देखने नजर आ रहा है। इट्स गोना बी देसी गेमर्स ओनली जो कहने के टीएसएम का पूरी जो फाइट थी उसकी साउंड सुने करेंगे इन पे चार्जिंग करते हुए नजर आए। क्लियर 4v3 का सिचुएशन सामने से जरूर बनते हुए नजर आ रहा है। उधर टेम्पस की भी टीम कहने के उन पे चार्जिंग कर सकती है बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डीजी और टीएसएम बहुत ज्यादा क्लोज पार्टी की तरफ से जरूर एक प्लेयर को कहने के नॉक आउट कर दिया गया है। एक ग्रेनेड जाएगा जेवाईटी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फ्रॉम द टीम ऑफ टीएसएम वो करेंगे नॉक आउट कर दिया। ग्रेनेड से फिनिश ऑफ भी कर दिया गया है। नेक्स्ट सिचुएशन 4v2 डीजी की तरफ से बहुत अच्छा एक फेनोमेनल परफॉर्मेंस हम देखने को मिल रहा है। एक और ग्रेनेड जाएगा, एक और प्लेयर करेंगे नॉक आउट होगा तो ये ग्रेनेड के बाद जो करेंगे नॉक आउट में देखने को मिला वो काफी स्ट्रांग था और डीजी पूरी की पूरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीएसएम टीम को एलिमिनेट कर चुकी है। 3 किल अपने नाम पे करते हैं बट जो ग्रेनेड प्लेस थे इतने लंबे रेंज पे मारना वो करेक्ट बताता है कि इन्होंने कितना गेम पे टाइम दिया और ये कितने ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब आगे चल के इट्स गोना बी सम अदर टीम इफ आई एम नॉट गोना बी टेम्पस की जो टीम जो कहना कि इनको चैलेंज कर सकती है। इट्स गोना बी अ 4v3 सिचुएशन। नॉकडाउन पहले हमें देखने को मिला टेम्पस धीरे तरह से पीएसजी के रखे इस प्ले में आ चुकी है तो एक थर्ड पार्टी हमें देखने को शायद मिला या फिर हो सकता है वो प्लेयर कहीं और तीसरा एंगल पे कहने के लॉक इन कर रहा था। Well, हर्ष के लिए यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती थी बट somehow he tries to manage him out and यहाँ पे उसी के साथ साथ यहाँ पे फिलहाल के लिए एक अच्छा अग्रेशन हमें इंसेन के द्वारा देखने को मिलने वाला है। इंसेन ऑलरेडी डेड टुवर्ड्स दिस लोअर रीच एरिया वो यहाँ पे एक टोटल इंटेल जो है गैदर कर सकते हैं। 4v2 का सिनेरियो टीम हमारी जो देसी गेमर्स है they have already outplayed some of the amazing team। 11 पायदान पे यहाँ पे टीम गॉड लाइक एलिमिनेट हो गई। 10वें पायदान पे यहाँ पे हमारे साथ टीम टीएसएम they also got eliminated leaving टीम देसी गेमर्स with 5 kills already। ये जो kill points है उनके वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं। यहाँ पे okay that was a quite sneaking position coming in but he gets punished and he gets denied। That was an overcommitment which wasn't quite required। Rimnam village already थोड़ा bloodbath तो बन ही चुका है। इसी के साथ साथ अभी भी टीम टेम्पेस्ट अपने प्लेयर्स एडवांटेज को लूज आउट करने के बाद बिल्कुल भी होप्स नहीं गवा रहे cause आखिरी 2 वहां पे हर एक किल और हर एक पोजिशनिंग पॉइंट उनके लिए एक बढ़त बनेगा पॉइंट्स टेबल में। बिल्कुल कहने के मैं कहना चाहूंगा टीएम ब्लास्टर की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। एक आध 2 किल्स निकाल पाते हैं तो खाता कहने का जरूर खुल चुका है। अब इस खाते में कितने किल्स ऐड होते हैं तो आने वाले दिन ही बताया क्योंकि आखिरी मैप बचा है हमारा दैट्स गोना बी द मैप ऑफ कलारी। उस पे भी मुझे नहीं लगता जिस तरह से मोमेंटम रहा है इस पूरे दिन में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एट दिस स्टेज जो करेंगे हैंगार पे मुझे एक टीम कहने के यहाँ पे जंप करने वाली है। इट्स गोना बी द टोटल गेमिंग की टीम कहने के केविन स्पोर्ट्स को यहाँ पे स्पॉट कर चुके। केविन स्पोर्ट्स एक्चुअली टोटल गेमिंग को स्पॉट कर चुके। एक टीम से कहने के टोटल गेमिंग फाइट ले रही है। एक प्लेयर भी उनका कहने के नॉक आउट हो चुका है। स्वास्तिक चाहेंगे स्नाइपर राइफल से एलएमजी से कहने के कनेक्ट करना बट ब्लू सॉरी कहने का हील गन का कहने के प्रयोग करके अपने आप को सारे प्लेयर्स कहने के अपने आप को हील मैक्सिमम पे रखने वाले हैं। And if I'm not wrong, it's going to be team number 4 जो कहने के एंगल बना के कहने के उनको चैलेंज कर रही है बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि कौन सी टीम ने फाइट लिया था जहां पे कहने के टोटल गेमिंग के एक प्लेयर्स कहने को नॉकआउट हो चुके थे। पूरी इंडिया की कहने के सबसे वन ऑफ द फेवरेट टीम है ये टोटल गेमिंग वो कहने के इस पूरे
दिन के कहने की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से कहने के फाइट ऑन रही है। स्वास्थ्य को कहने के नॉकआउट कर दिया गया जरूर, बट वापस रिवाइव देखने को जरूर मिलेगा। पर टोटल गेमिंग की तरफ से चार्जअप नहीं, एक अच्छा रोटेशन में करना चाहूंगा, बोल सकते हैं थोड़ा सा हट के पीछे जाना चाह रही है। जो कवर और जो हाउसेस बने हुए एंगार्स बने उस चीज का यूज करना चाह रही है, बट क्योंकि एक्सपोज्ड है, ग्लू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डैमेज भी जरूर केमिन एस्पोर्ट्स की तरफ से उनको मिल रहा है। Well, team Total Gaming, this is not that time for choke. अगर इस पॉइंट पे चोक कर दी तो बिल्कुल भी टीम केमिन एस्पोर्ट्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करेगी। ऑलरेडी थोड़ी मिस आउट कर रही है अपने ओन पोडियम फिनिशेस के स्थान से। धीरे धीरे आगे आने का प्रयास आपको जरूर देखने को मिल जाएगा टीम केमिन एस्पोर्ट्स पे। हैंगर के साइड पे ऑलरेडी कॉर्नर्ड हो चुकी है टीम टोटल गेमिंग। दे आर नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम, टीम केओस भी यहाँ पे एंटिसिपेट कर रही है इन सारे मूवमेंट्स को। एंड एक टीम आपको अंदर आते हुए नजर आ जाएगी। आई मीन दूसरा प्ले जोन यहाँ पे श्रिंक हो रहा है एंड ऑलरेडी 3 टीम्स रिमनम विलेज पे फाइट कर रही है। 3 टीम्स का क्लस्टर, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, this is 6 teams out there which I'm looking forward to. I mean, this is a war zone already. What are we even witnessing? Southern side पे आपको टीम chaos देखने को मिल जाएगी। उनके just right hand side पे टीम केमिन एस्पोर्ट्स जो यहाँ पे टीम टोटल गेमिंग को यहाँ पे टोटली अग्रेसिव कर रही है। बट who look who has joined the party, हेड हंटर्स भी यहाँ पे जो है टीम निग्मा गैलेक्सी एंड देसी गेमर्स को कंटेस्ट करने एंड पेशेंटली फैक्ट्री के साइड पे जो है आपको टीम टीएमएक्स देखने को मिलने वाली है। ऐसे पोजीशन में मैं बहुत क्लियर हूँ, कोई जो टीम विजेता निकलेगी, अगर हम बेसिक जेनरिक सिनेरियो की बात करें, वो टीम वही निकलेगी जिनके पास अच्छा सबसे ज्यादा मैक्सिमम कवर होगा। आप पोपर में लॉक इन करोगे, जितने टीम्स आपके सराउंडिंग में रहेंगे उनको स्पॉट ऑन करेंगे, कभी भी किसी को फिनिश ऑफ कर सकते हैं। और जो टीम कहने के कवर पे इसका वक्त मौजूद है, इट्स गोना बी द टीम टाइटेनियम एस्पोर्ट्स। देखिए अपने आप को चारों प्लेयर्स को सिक्योर करके हाउस में रखा हुआ है और थोड़ा सा एज में आ चुके हैं क्योंकि जोन जो है उनके अगेंस्ट पे थोड़ा सा जा सकता है। तो इट्स गोना बी अनदर टीम जो बहुत अच्छे कवर पे मौजूद है, इट्स गोना बी केमिन एस्पोर्ट्स एंड टोटल गेमिंग, बट दोनों बहुत ज्यादा कहीं कहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी है में आ चुके। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे हेड हंटर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे गन फाइट चालू कर दिया है अगेंस्ट टोटल गेमिंग। हेड हंटर्स भी मैं कहना चाहूंगा, एक दो प्लेयर्स को मैं ऑफ कोर्स पर्सनली जानता हूं, बट उनकी तरफ से उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। स्कोरबोर्ड के मुकाबले करने के निचले हिस्से पे मौजूद है। यहाँ पे टोटल गेमिंग के एक प्लेयर को जरूर करने का किल फील्ड में जैसा मैं देखता हूं नॉकआउट जरूर कर दिया गया है। 2 प्लेयर किसी और तरफ मौजूद है, 2 प्लेयर किसी और तरफ मौजूद है। तो ये थोड़ा सा कहने के केमिन एस्पोर्ट्स के काउंटर, उनके स्टैट को काउंटर करने के लिए बेहतरीन हो सकता है। ओनली इफ कहने के नॉकडाउन की तरफ से देखने को मिले, क्योंकि केमिन एस्पोर्ट्स थोड़ा सा एकदम हाई ग्राउंड पे अभी भी है। उनको निचले हिस्से में जो भी टीम्स होने वाली उनका डेफिनेटली इंटेल एकदम सटीक होने वाला है और अगर वो शॉट्स लेते हैं तो डेफिनेटली वो लैंड कर पाएंगे। बट स्टिल टोटल गेमिंग भी वो ट्रिगर डिसिप्लिन को मेंटेन कर रही है कि अगर हमारे पास अच्छा एंगल नहीं होता है, हमारे पास वो एंगल नहीं होता है कि हम शॉट नहीं उसके बाद तुरंत से फिनिश ऑफ कर पाए, तो वो चीज वो बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए। एक जो प्लेयर कहना कि नॉकडाउन उनको रिवाइवल जरूर दिया गया है बहुत ही एंड टाइम पे, करंटली अभी भी 4 मैन करके टोटल गेमिंग मौजूद है, बट जो ट्रिगर डिसिप्लिन मेंटेन है उनकी तरफ से वो अभी भी मेंटेन है। बाकी टीम्स भी हेड हंटर्स वापस से राइट हैंड साइड गए थे, सर्कल के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में रोटेशन लिया है, चाहेंगे जो आखिरी बंदे करेंगे टीम ब्लास्टर्स के बच्चे में उनको एलिमिनेट करना। बट जो एक फोकस जो हमारा कहीं कहीं बना हुआ है वो वापस से करेंगे टोटल गेमिंग का अगेंस्ट जो केमिन एस्पोर्ट्स के सामने वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि केमिन एस्पोर्ट्स पूरे दिन के कहने के एकदम स्ट्रांग परफॉर्मर रहे हैं। टोटल गेमिंग एस्पोर्ट्स भी एक कमबैक जरूर उनकी तरफ से देखने को मिला है। बट हेड हंटर्स की टीम को कहने के टोटल गेमिंग ने स्पॉट कर लिया, गाड़ी का यूज यहाँ पे व्हीकल का प्रयोग करके कहने के रोटेशन करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि व्हीकल ज्यादा शॉट्स आपने सह नहीं कर पाती है एंड क्योंकि वहां पे व्हीकल डैमेज हो जाएगा। कवर है नहीं बिल्कुल, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई माफिया और अभी तक डिलीट उस चीज को ध्यान में रखते हुए बाकी जो 2 प्लेयर्स कहने के हेडर्स के उन पे कैपिटलाइज नहीं कर रही है। दे स्टिल मेंटेन ट्रिगर डिसिप्लिन कि अगर हमारे पास बेहतरीन सबसे सही एंगल नहीं है उन पे शॉट करेंगे। वो व्हाट अ शॉट कमिंग इन फ्रॉम माफिया, स्कोप इन एंड फिनिश ऑफ। विजार्ड हो चुके हैं केमिन एस्पोर्ट्स से नॉक, एक फ्रेम को जरूर करेंगे रिवाइव लगा आउट ऑफ ग्रेट खाता है। Wow, that is the opening which they were looking forward for. Team Total Gaming, they had their opportunity there. They thought that no matter what happens, they will be putting that pressure. But Mafia somehow gets denied. UAV को बहुत बेहतरीन टाइम पे निकाला गया। यहाँ पे Mafia वाला ऑन दिया था, वो अपनी टीम को टोटली सर्वाइवल फैक्टर पे स्टेल्थ रखना चाह रहे हैं। बट यही स्टेल्थ गेम प्ले टीम टोटल गेमिंग के लिए पनिशेबल साबित होती है। और जोन भी उनके फेवरेट बारी बारी सारे ताज के पत्तों की तरह यहाँ पे बिखरते हुए नजर आएंगे। टीम हेड हंटर्स फाइनली just punishing them at the right point when they have to, and यहाँ पे 2 किल निकालने के साथ साथ अभी it's the turn of team केमिन एस्पोर्ट्स। But look at this opportunity, डिवाइन यहाँ पे बैक टू बैक 2 फ्रैग निकालेंगे। बट निग्मा गैलेक्सी के सोहम वेल टॉप 8 में अपनी जगह बना चुके 8 किल्स है। एंड जैसे कि आपने बोला था टीम के लिए आप रूट कर रहे थे, चारों प्लेयर्स को अभी तक अलाइव रखा है इन टीमों ने। बिल्कुल कहने डिवाइन और जैसा मैंने बोला था इनको अपना एकदम बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाता है। हेड ऑन द नेट गोल जरूर निकाले मंगलवार करेंगे कहीं मैं मुद्दा कहने के अभी भी नॉकडाउन पड़ा है। डीजा लोग की एबिलिटी को प्रोड्यूस करके अपने आप को हिलप करना चाहेंगे, बट ऐसे हम से आई एम 1-4 से आई करके उनको एलिमिनेट कर दिया, नॉकआउट जरूर कर दिया गया। आखिरी प्लेयर जो कहने के आश बचे हुए हैं
वो कहीं ना कहीं अपने लिए टीम के सरदार बने हुए, वो किसी अगर आउट हो जाता, बाकी दो प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं इसी वजह एलिमिनेट हो जाएंगे। टाइटेनियम एस्पोर्ट्स अराउंड दिया जाए, एक और करेंगे 4-1 स्क्वाड अभी बची कुछ खास स्किल्स नहीं है, बट स्टिल एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे डीजी गेमर्स की यहाँ पे टीम पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट पे नहीं है, बट हाँ किल पॉइंट्स करेंगे मेंटेन्ड है। तो एक जो चीज थी कहने की पूरी टीम एक एक सन पे आके मेंटेन्ड है, वो एकदम से एंड जोन बन चुका है। तो जैसा वहां पे यहाँ पे बिग में आपको मिस आउट कर दिया, तो ये जो एंड जोन बना हुआ है 1 2 3 4 टीम्स कहने के मौजूद है, एक करेंगे टीम ला सके सिंगल टाइनिंग एस्पोर्ट्स के एक सिंगल प्लेयर करेंगे पॉपी मौजूद है, बट आई स्टिल थिंक कि जो टीम यहाँ पे कहने की सबसे मैक्सिमम कवर रखने वाली है आई गेस इट्स गोना बी वासियो की टीम राइट नाउ। निग्मा गैलेक्सी वो के जिस तरह से करेंगे नॉकआउट निकाल रही है, हो सकता है उनकी तरफ से एक कमबैक देखने को मिले, बट स्टिल व्हाट आई एम एबल टू सी कि हेडर्स के जो दो आखिरी 3 पे बचे वो अभी भी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली फाइट ले रहे हैं, गन शॉट्स दे रहे हैं और डैमेज भी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। मगर मेरे को वापस से कहने के नॉकआउट कर दिया गया है, रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा, बट अगर रिवाइवल सही तरीके से नहीं देंगे, एंगल्स एक्सपोज रहेंगे, तो टीजी के जो बाकी दो प्लेयर्स है वो कहने के उनका एंगल बना के कहने के नॉकआउट कर सकते हैं। डिवाइन हो गए, ताहिर हो गए, इवन वासियो तीनों के तीनों प्लेयर्स, चारों के चारों प्लेयर्स एक्चुअली स्नाइपर खेल रहे हैं। टीजी हो को कहने के नॉकआउट कर दिया गया है, नोनो को भी कहने के नॉकआउट कर दिया गया है। इट्स गोना बी टाइटेनियम एस्पोर्ट्स अप अगेंस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गोना बी टीम एनिग्मा गैलेक्सी जो कहने के फाइट ऑन देखने को नजर आ रही है। टीम चाओस भी जिंदा है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी टीम जो है ना टॉप 5 की बहुत ज्यादा यहाँ पे कहने के ब्रॉल देखने को मिल रहा है कि सारी टीम्स इस एंड सर्कल में मौजूद है, बट वहां पे मैं देखने को जैसा मैं देख पा रहा हूँ किल फीड में निग्मा गैलेक्सी टीम कहने के एक प्लेयर कहने के जरूर कहने के नॉकआउट कर दिया गया है। हेडर्स के भी आखिरी 3 प्लेयर्स कहने के चार्ज इन कर रहे हैं टीम केओस की तरफ, बट एक तरफ टीम केओस है तो एक तरफ कहना कहीं टोटल गेमिंग की टीम मौजूद है। वेल टोटल गेमिंग की हम बात कर ही रहे थे, सोलो प्लेयर सर्वाइविंग बट ही गेट्स एलिमिनेटेड एट द 5th पोजीशन। मीनवाइल टॉप 4 टीम्स की अगर हम बात करें तो बॉटम की बहुत सारी टीम्स है अभी भी जो आपको फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है लोकेशन पे। बर्मुडा का ये आखिरी जोन, दिस इज गोना बी द डेड जोन, जिसके बाद आपको कोई भी सेफ जोन मिलने ही नहीं वाला है। यू गो आउट देयर, यू एलिमिनेट योर ओपोनेंट्स और एल्स यू गो ऑन फॉर अ डॉक्टर गेम प्ले व्हिच इज द हीलिंग बैटल। एक और एक टीम यहाँ पे देखते ही देखते एलिमिनेट हो जाएगी, लीविंग अस विद ओनली टॉप 3 टीम्स एंड 8 प्लेयर्स। अब इन 8 प्लेयर्स में से किस तरीके से टीम हेडहंटर्स अपने मोमेंटम को बनाते हैं वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम केओस के साइड से सिर्फ 1 सोलो प्लेयर सर्वाइविंग एंड देयर इज द डेड जोन। डेड जोन यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। टीम केओस के ये सोलो प्लेयर ऑलरेडी हीलिंग बैटल पे रूट करना चाहते हैं, बट नो, ही चेंजेस हिज माइंड एंड टीम हेडहंटर इज गोना बी द वन जो यहाँ पे गेट कीप करेगी। टोटली यूटिलिटीज का प्रदर्शन, बट व्हाट, ही गेट्स अ 3 फ्राई आउट ऑफ द Lovely. he gets another 3 kill. And team headhunters out of nowhere, they are going to be the one who will get that booyah. Awesome with no clue out there, just plays on a 200 IQ and that IQ level brings the booyah home for his team. हेड हंटर नहीं करने के निग्मा गैलेक्सी को इन्होंने पूरा हंट किया है एंड व्हाट अ लवली प्ले कमिंग इन। जैसा मैंने बोला था उस टाइम कि हेड हंटर के कुछ प्लेयर्स को जानता हूं बट उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तभी लगता है इनका भगवान मोड का जो स्विच है वो ऑन हो गया, उसके बाद एक के बाद एक इन्होंने फाइट किए। बट एक जो कहने के हाईलाइट में डेफिनेटली जाने वाला है कि जो आखिरी गेट्स के उन्होंने निकाले, दैट इज गोइंग इनटू द हाईलाइट फॉर श्योर। बस जिस तरीके से वहां पे 4 टीम कहने की मौजूद थी, हेडहंटर्स पहले राइट हैंड साइड गए, फिर उसके बाद कहने के सर्कल के एकदम से कहने के एकदम साउदर्न शिफ्ट में गए, क्योंकि उनको पता था कि टोटल गेमिंग से शायद कुछ फाइट लेते तो ज्यादा उतना सक्सेसफुली नहीं निकाल पाएंगे, तो दे बेटर वेटेड आउट कि बाकी अदर टीम्स बैटल करके एक साथ आपस में मर जाए, 2 की लड़ाई में तीसरे की जीत वाली बात हो और बाकी जो टीम बच रहेगी उन पे कहने के कन्वर्ट करें। निग्मा गैलेक्सी ऑन द हैंड उनकी तरफ से एक और कहने के बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला, सेकंड पायदान पे जरूर आए, बट हेड हंटर्स बावजूद होने के बाद वहां पे क्योंकि जिस भी स्ट्रांग टीम मौजूद थी, दे हैड टीम केओस उस सर्कल में थे, इस सर्कल्स में वी हैड टोटल गेमिंग, वी हैड टीएसएम की टीम, तो जो एकदम स्ट्रांग टीम्स थी एंड हेड हंटर्स बीइंग ऑन कि आज के पूरे दिन में कुछ खास परफॉर्मेंस था, बॉटम 5 में बिल्कुल कहने के मौजूद थे, उसके बाद आके बुया निकाला। तो मेरा एक जो मैं जिसके लिए कहना कि स्टार्टिंग में बोला था कि कोई टॉप 5 की टीम अच्छा पोजीशन नहीं करे राजस्थान की, कोई बॉटम 5 की टीम एक कमबैक करे, वो चीज हो चुकी है और मैं बिल्कुल खुश हूं। वेल वो चीज ना सिर्फ हो चुकी है बट भुइया जीत के जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। निग्मा गैलेक्सी ने भी 7 किल निकाले, 7 किल के साथ साथ टॉप 3 में अपनी जगह बना के रखे थे। टीम केओस ऑन द अदर हैंड प्लेइंग अ बिट स्टेल्थ, मेकिंग श्योर कि वो थोड़े ज्यादा यहाँ पे फर्स्ट हिट्स पॉप इन कर ले, अनलेस ही मेड श्योर कि उनके पास यहाँ पे बूस्टर्स थे नहीं। बूस्टर्स होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बूस्टर्स के साथ ही साथ जो एक माइक्रो हेल्थ जो आपको मिल जाता है व्हाइल पॉपिंग इन योर फर्स्ट एड, दैट हैपेंस टू बी योर सर्वाइविंग चोक पॉइंट, एंड वो चोक
चोक पॉइंट टोटली यहाँ पे मिस आउट हो गया। आई गेस थोड़ा थर्ड पोजीशन पे तो वो आ चुके, बट विद दैट निग्मा गैलेक्सी टोटली गॉट गेट कीप्ड एंड आस्क्ड हिम यू नीड टू हैव सच सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके यहाँ पे बोलते ना एक जोन आप पे बन चुका है, यू नीड टू मेक श्योर दैट गन्स आपके हाथ में, ताकि आप ट्रेड ले सको। अगर आप बैक एंड फोर्थ ट्रेड लेते हो तो आपके टीममेट को डाउन होने के बाद भी वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं बनेगा दैट यू हैव टू गिव द रिवाइवल, मीनवाइल योर ओपोनेंट्स आर जस्ट रशिंग ऑन टू यू गाइस। मीनवाइल बर्मुडा भी हमारा फिलहाल के लिए समाप्त हो चुका है। दैट वन मैप व्हिच वी रियली थॉट कि कोई नई टीम जीत के आनी चाहिए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इट इवन केम अप विद देयर हंटर्स। कांग्रेचुलेशंस टू देम। लेट्स सी कि उनके पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं कितने होने वाले, बिकॉज़ जिस तरीके से एक अकेले प्लेयर ने 6 किल निकाला, आई मीन पूरी टीम के इमेजिन कीजिए फिर कितने किल्स होंगे। आई एम रियली नॉट श्योर, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मैंने मिस आउट कर दिया। तो ऑफ कोर्स कहने के जब वहां पर मैप स्कोरबोर्ड आएगा तो कहने के उस चीज में हमें क्लियर इमेज देख पाएंगे कि किस तरह से कहने का टीम्स कहने का खासे पायदान पे मौजूद है फॉर द मैप ऑफ बर्मुडा। इसके बाद हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक मैप बचा, दैट्स गोना बी द लास्ट मैप ऑफ कलहारी। एंड पूरे का पूरा आज पहला दिन खत्म हो चुका है फ्री फायर का भी, और बाकी जो अदर गेम्स है वो तो उनके पास इवेंट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो गाइस सेम टाइम पे हम कल भी शुरुआत करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू esports.in चैनल। आई गेस 27 के 29 के हो चुके थे, तो आज हम एक एम रखते हैं कि फाइनल मैप होते होते हुए 30 के पे हमें करा दो, तो हो सकता है यहाँ पे मैनेजमेंट जो आपके लिए कुछ गिव अवे वगैरह करे। बट लेट्स सी कि आखिरी मैप पे कौन सी टीम करने के कमबैक करती है। बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि कोई नई टीम कमबैक करे। आइदर टू साइड गेमर्स को तो हमने अभी तक नहीं देखा है, टीम केओस को भी हमने अभी तक एक भी बुया निकालते नहीं देखा। तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों टीम में से कोई बुया निकाले, तो जो डे 1 फिनिश ऑफ हो ना वो काफी ज्यादा हैप्पीली हो सारे टीम्स टॉप परफॉर्मिंग टीम्स के लिए। Well, I would really keep my predictions to those teams जो यहाँ already बुया जीत चुके। We started things off with Chemen Esports, then we went for Team Godlike, then it was Team Desi Gamers if I'm not wrong, and now with having our one and only Headhunters, winning that buya was in style. You see यहाँ पे 3 फ्रैग, एक ग्रेनेड से 3 नॉक, एक दूसरे ग्रेनेड से ऑल फिनिश। It's something which is such a high IQ level gameplay। तो इन चारों टीम में से I would really be expecting कि ये टीम शायद एक बार फिर वो बुया जीत के अपने लिए वो फाइनल पॉइंट्स जो है वो एड अप कर ले। डे 1 पे उनका जो एक अच्छा बूस्ट रहेगा, वो बाकी के 2 दिन पे प्रेशर मिनिमाइज करेगी, and then they will have one job, and that job will be to defend that position, to be consistent and not to do an outperforming gameplay जो अभी उनको करके दिखाना पड़ रहा है, because already they have lost the lead to teams like Chemen Esports and Team Godlike. Luckily they are not quite consistent, and consistency में हम टीम देसी गेमर्स को टोटली देख रहे थे, but this map they were not even in top 7 position for today। बिल्कुल कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के मामले Chemen Esports उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाई है। कुछ टीम्स कहना चाहूंगा टीजी पहले मैप के बाद टोटल गेमिंग ऑफ कोर्स कहना कि टॉप 5 टॉप 4 में भी देखने को मिली है, सिवाय आई गेस इट वाज द मैप ऑफ प्रोगेटिव जहां पे उन्होंने कुछ कामों में नहीं किया। बट बाकी अदर मैप से मैंने देखा प्लेसमेंट पॉइंट्स ठीक उनके मिले, किल पॉइंट्स का थोड़ा तो कहना कि चूक जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हो सकता है सेकंड डे और जब फिनाले डे होगा उस पे कहने के उनकी तरफ से कमबैक देखने को मिले। देखिए कमबैक बहुत ज्यादा कहने कि महत्वपूर्ण होने वाला है सारी अदर टीम्स के लिए, क्योंकि ये फिनाले स्टेज है, ईयर लॉन्ग चैंपियनशिप रहा है स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ना दिखा और कहना कहीं एकदम बॉटम 5 में कहने का। ऑफ कोर्स इट्स गोना बी इट्स अ गेम, कोई हारता है कोई जीतता है। टॉप 10 यहाँ पे देश की पूरी टीम्स कहने के मौजूद है, तो डेफिनेटली मैं तो ये करूंगा मे द बेस्ट टीम विंस। बट हाँ मैं इस चीज के लिए भी रूटिंग करूंगा कि हमें एक और कोई नई टीम जो आज कहने के बुया नहीं निकाली है, वो कहने के कलहारी का जो हमारा आखिरी मैच होने वाला है उस पर बुया निकाले, तो एंड द डे ऑन अ हैप्पी नोट। Well, yes, it is, because we really want to see some talents as well, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा underrated हमें देखने को मिलता है, and वो अभी ही चांस है कि वो अपने साइड से टोटली अपना एक पीक लेवल परफॉर्मेंस दिखा पाए। एंड डे 1 में नहीं तो बाकी के और 2 दिन भी रहेंगे। चौथा मैप यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आखिरी मैप आज का जो है गाइस वो रहने वाला है द मैप ऑफ कालाहारी। दिस लास्ट मैप इज समथिंग व्हिच इज गोना बी क्वाइट अ गेम चेंजिंग सिनेरियो इन द पॉइंट्स टेबल, एंड पॉइंट्स टेबल जिसकी हम बात कर रहे थे, इट्स ऑन योर स्क्रीन। हेडहंटर्स 23 total points, 11 kills, followed by Team Nigma Galaxy with 10 kills. I mean, are you even serious? Look, after all the teams below them, 10 kill, 11 kill, bottom teams coming on top directly. बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि ये 2 टीम्स ने आधे की पूरी लॉबी खा गए। एक टीम कहने के 11 किल पे मौजूद, एक टीम कहने के 10 किल के मौजूद, तो कुछ बचा ही नहीं बाकी के टीम्स के लिए। यहाँ पे टीम कॉस्ट ने 3 किल जरूर निकाले हैं, इवेंट टाइटेनियम एस्पोर्ट्स ने 3 किल जरूर निकाले, टोटल गेमिंग के पास 2, टीएम राष्ट्र का खाता जरूर खुला कहना चाहूंगा। बट कहना कहीं गॉडलाइक हो गए जो कहने के एक मैप पे बुया जरूर निकाले, उनके तरफ से बहुत ज्यादा कहने के डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। डी स्पोर्ट्स कहने के जो एरो की टीम थी वो कहने का सिर्फ 3 किल्स निकाल पाए।
टाइटेनियम स्पोर्ट्स की मैं बात करूंगा थोड़ा सा बाकी पिछले 2 महीने के क्वालिफायर्स में एक कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा कमबैक परफॉर्मेंस देखने को मिला था। कहीं ना कहीं बाकी क्वालिफायर स्टेज में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था, बट स्पोर्ट्स चैनल जो हमारा कहीं कि लास्ट अभी मंथ हुआ उस पर बहुत अच्छा कमबैक इनके तरफ से देखने को मिला था। सेमीफाइनल के स्टेज से आते हुए कहीं ना कहीं जो ऊपर चढ़े थे वो काफी ज्यादा फेनोमेनल था। मैंने इनसे पूछा भी था कि भाई ऐसा क्या किया, तो इन्होंने ये बोला था कि हमारा बस यही था कि जोन हमारे फेवर में रहे। तो हाँ, मैं इनसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, एक भी बुया नहीं निकला है। तो आइदर आई वांट टाइटेनियम स्पोर्ट्स की वो फाइनल मैप पे बुया निकाले, या आइदर कोई भी टीम जो अभी तक बुया नहीं निकाले। इवन टीएसजी अभी टू साइड गेमर्स की तरफ से भी कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है आज के दिन में। बात ये आ जाए कि जब आप बैलेंस गेम प्ले नहीं रखोगे तो बाकी अदर 2 दिन में आप पे बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा। आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऑलरेडी जो यहाँ पे टीम जो कहीं ना कहीं मेंटेन्ड है बहुत अच्छे किल पॉइंट्स में और प्लेसमेंट पॉइंट्स में, वो कहीं ना कहीं आपको ओवरकम कर लेगी और कहीं ना कहीं बॉटम 5 में ही रह जाओगे इस फिनाले स्टेज के दौरान। एंड ये जो आपने बात बोली कि प्रेशर जिस तरीके से बनेगा, वो प्रेशर इन टीमों को ही गलतियां करने पे मजबूर करेगा। अभी शुरुआती दिनों पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। चारों के चारों मैप जो हमने अभी तक विटनेस किए तो उसमें आपने देखा स्टार्टिंग ऑफ विद कालाहरी, फर्स्ट टाइम वी सॉ कि 4 मिनट हो चुके लेकिन एक भी टीम यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुई, इवन दो 2 लोकेशन पे ड्रॉप क्लैश थे। देन वी वेंट टू पर्गेटरी पे तो टीम नहीं प्लेयर भी एलिमिनेट नहीं हुए थे। तो यू सी दिस इज समथिंग व्हिच यू वोंट गेट टू सी इन द नेक्स्ट 2 डेज। यहाँ पे गलतियां करने पे मजबूर हो जाएगी एंड टीम्स आल्सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी कि उनके ओपोनेंट थोड़ा फ्रंट फुट पे आए एंड दे डेफिनेटली विद दैट एडवांटेज ऑफ द टीपीपी एंगल दे कम अप विद दैट ओपनिंग। एंड ओपनिंग निकालने के बाद जिस तरीके से हमने टीम को अग्रेसिव होते देखा है, दैट इज समथिंग जो पर्गेटरी पे आपको गोल्फ कोर्स आइलैंड पे एक ब्लड बाथ देखने को मिला था एंड बर्मुडा पे भी आपने देखा कि वो जो हमारे रिमनिम विलेज थे, अ लोकेशन अ विलेज में ओनली मिनिमम टू मिनिमम 1 टीम गोज, कम से कम 6 टीम यहाँ पे जा रही थी। गॉड लाइक सबसे पहले ही एलिमिनेट हो गई टीम डी esports, वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। देखते देखते टीम टीएसएम दे डिड कैपिटलाइज ऑन ईच एंड एवरी फाइट, बट वहां पे जो एक प्लेयर का अग्रेशन था टुवर्ड्स टीम टेम्पेस्ट वो भी बहुत ज्यादा पनिशेबल एंड निराशाजनक रहा उनके टीममेट्स के लिए, बिकॉज़ वो अकेले ऑल इन अग्रेसिव चले गए। लूजिंग हिज लाइफ वाज जस्ट अ बिग लायबिलिटी टू हिज टीम, क्योंकि वो नंबर्स डिसएडवांटेज के साथ कैरी ऑन करना, आपको पता है आपके पास 7 किल्स है, 7 किल के पास आइडियली यू जस्ट वांट सम पोजीशनिंग पॉइंट, बट बिकॉज़ यू डिडंट इवन मेड इट टिल टॉप 6 पोजीशन, यहाँ पे आपको पॉइंट्स टेबल पे भी इतनी बढ़त आते हुए नहीं देखने को मिली उनके साइड से। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वही चीज आ जाती है कि अगर आप कहीं ना कहीं पहले दिन पे एक भी मैप पे आप बुरा नहीं निकालोगे, बॉटम 5 में मेंटेन होगा, तो बाकी 2 दिन पे बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा तरुण। और ऐसे प्रेशर में फ्रॉम लाइक अगर मैं प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव बात करूं, मैं ज्यादा तो फ्री फायर प्लेयर्स से इंटरेक्ट नहीं किया हूं, बट एज अ ई-स्पोर्ट्स कास्टर मैं इतना चीज रहा हूं कि आप नहीं चाहोगे कि आप उस प्रेशर पे रहो। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप उसी पे फोकस ना करो कि हम जीते रहे टूर्नामेंट को डायरेक्ट एंड वी गेट इन द लाइमलाइट बाय टेकिंग दोस बेहतरीन शॉट्स एंड फिनोमिनल हेडशॉट्स एंड ऑफ कोर्स कहने क्या फाइट्स निकालो। बट हाँ, जो कहने के एक तो हेड हंटर्स की तरफ से जो आपने एक बात करी कि आप ओपनिंग निकाले कहने के उसका किल्स निकालो, तो हेड हंटर्स का जिस तरह से कहने का पिछले मैच में परफॉर्मेंस रहा वो यही था कि पहले उन्होंने राइट हैंड साइड को चीजों को एनालाइज किया कि कौन सी टीम किस तरह मौजूद है, उसके बाद कहने के लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने रेड किया और उसके बाद से कहने के अपने बुया निकालने का खेल निकाला। ई-स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज प्रेजेंटेड बाय जोश का आज के पहले दिन का पहला आखिरी मैच होने वाला है आज के ग्रैंड फाइनल का, गेम नंबर 5 ऑफ 5। पूरी टीम्स के लिए स्कैटर्ड नजर आ रही है, 12 टीम्स है यहाँ पे, कोई भी टीम पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं है, बट ऑन द साइड ऑफ फ्रीफायर इज गोइंग टू बी केमिन ई-स्पोर्ट्स गोइंग अप अगेंस्ट हेड हंटर्स। दोनों टीम्स कह रहे देखिए हेड हंटर्स अभी एकदम स्ट्रांग मोमेंटम पे रहने वाली है, लास्ट मैच पे बुरा निकाला है उन्होंने। केमिन ई-स्पोर्ट्स की अदर हैंड बात ही मत करिए, मतलब जिस टीम से जा रहे हैं तो उनसे कहना कहीं फाइट ऑन लेते हुए जीतते हुए नजर आते पहले मैच पे। टीएम लास्टा के वापस से कहना कि एक टीम को एक प्लेयर को कहने के नॉकआउट कर दिया गया है, इसको भी निग्मा गैलेक्सी जिन्होंने थॉमसन का प्रयोग करके कहने का टीएम लास्टा के एक प्लेयर को नॉकआउट जरूर किया है, जैसा हम किल फील्ड में देख पाए। बट ऑन टुवर्ड्स द साइड ऑफ हेड हंटर्स कुछ प्लेयर्स के यहाँ पे गन मौजूद नहीं है, तो बेटर रहेगा कि आप पहले गन निकाल लो, उसके बाद कहने क्या फाइट ऑन किए जाओ। वेल टीम चेमिन ई-स्पोर्ट्स अप अगेंस्ट टीम हेड हंटर्स। मैंने एक चीज का जरूर यहाँ पे प्रेडिक्शन रखा था, जो टीम अभी तक भुया जीती है चारों मैप पे, पांचवें मैप पे भी वही शायद भुया जीत सकता है। मीनवाइल यू आर रियली रूटिंग ऑन फॉर सम टीम जो अभी तक टॉप 5 में देखने को नहीं मिल रही, बट निग्मा गैलेक्सी व्हाट अ फिनोमिनल स्टार्ट, यहाँ पे शुरुआत किया, 2 किल यहाँ पे अपने साइड से सिक्योर कर चुके हैं एंड देखते देखते टीम टेम्पेस्ट दे वर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेटेड एंड दे डिड गॉट एलिमिनेटेड एट द 12th पोजीशन। 11 टीम
44 players, still a full stack lobby, missing with only one team, जो रहेगी हमारी टीम टेम्पेस्ट। काउंसिल हॉल के साइड पे आपको टीम निग्मा गैलेक्सी आराम से पूरे इस लूट को कैपिटलाइज करते हुए देखने को मिलेगी। रिवॉर्ड में वो क्योंकि उन्होंने जो एक लक फैक्टर बनता है जब भी आपका ड्रॉप क्लैश होता है, स्पेशली एट अ मैप लाइक कालारी, वो ये रहता है कि क्या आपको वो वेपन मिल रहा है, क्या आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है, दैट वे योर ओपोनेंट आर स्टैंडिंग, दैट पोजीशनिंग, एंड दैट इज समथिंग जो टोटली निग्मा गैलेक्सी के फेवर में गया। दे डिड गॉट द 4K, दे आल्सो गॉट दोस लूट जो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योर्ड हुआ रहेगा उनके ओपोनेंट टीम के द्वारा, एंड दिस इज जस्ट अ गुड स्टार्टिंग जैकपॉट जो उनको मिल चुका है। टीम हेडहंटर्स राजा यहाँ पे फिलहाल के लिए डाउन हो चुके हैं। टीम जेमिनी स्पोर्ट्स, दिस इज दैट वन अपॉर्चुनिटी वे डू नॉट वांट टू मिस ऑन टू दिस, बिकॉज़ अभी से ही अगर वो ऑल इन अग्रेसिव हो जाएंगे तभी अपॉर्चुनिटी बनेगा, वरना कुछ समय रुकिए। यहाँ पे एक और एक टीम आपको थर्ड पार्टी करते हुए देखने को मिलेगी। एंड हेडहंटर्स के गुनाह यहाँ पे एमटीबी से यहाँ पे कहने का स्नाइपर शॉट लिया गया, यहाँ पे आईसी में गलत यहाँ पे कॉल नहीं कि एक तो ड्रॉप डैमेज भी ले लिया, उसके बाद पे आप एक और प्ले उनका नॉकआउट हो चुका है भी हेडहंटर्स राजा। तो एक बहुत अच्छा कहने का शुरुआत मिल चुका और ओपनिंग मिल चुकी है केमिन स्पोर्ट्स को इस तरह से कैपिटलाइज करने का। ऑन द अदर हैंड असीम के पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके पास यहाँ पे मिडकिट्स नहीं होने वाले। अगर मिडकिट्स होते किसी वक्त हमें देखने को मिल सकता था कि वो अपना एचपी कहीं ना कहीं रिवाइवल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास मिडकिट नहीं है। 34 के 34 एचपी बचने वाले हैं। अर्श कहने का सिंगल हैंडली बचे, तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर कुणाल को रिवाइवल नहीं मिलता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो केमिन स्पोर्ट्स के अगेंस्ट यहाँ पे 2v4 का सिचुएशन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीन प्लेयर्स कहने के सामने से देखते हैं अर्शी पे यहाँ पे नॉकआउट करते हुए, चार्जिंग करते हुए M14 के तरह यूज करके केमिन स्पोर्ट्स एक और प्लेयर हेड यहाँ पे नॉकआउट कर देंगे। तो जैसा यहाँ पे तनु भाई ने बोला कि जो टीम कहने के एक बैलेंस परफॉर्मेंस पे थी सारे मैप से, वो कहने के यहाँ पे फाइट को जीतेगी, वही चीज हमें देखने को मिला। असीम अकेले प्लेयर बचने वाले हैं इस पूरे कलारी मैप के लिए फ्रॉम द साइड ऑफ हेडहंटर्स। अब सिंगल हैंडेडली आगे जाके कहना कहीं टॉप 3 में भी जगह बना ले तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। I mean, being a solo player surviving, he is totally gonna be hunted down from the side of team Cayman Esports. वो ना सिर्फ उस आखिरी किल को अपने लिए फेवर करना चाहेगी, but वो आखिरी पॉइंट भी जोड़ना चाहेगी। Each and every point counts, and this is the time where these teams are gonna realize that wow, Shinu gets taken down by that phenomenal grenade coming in. Scary के side से जो opening है, he is not gonna stop. Goes in again for another one. This could have landed quite well, but जो toss किया उन्होंने वो थोड़ा ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, एंड उनका किल यहाँ पे फिलहाल के लिए कंफर्म होते हुए है। टीम हमारी यार जो हमारी डी स्पोर्ट्स है वो ऑलरेडी थोड़ा बैकफुट में हमें खेलते हुए देखने को मिल रही है, बट टीम केओस दे आर नॉट गोना लूज ऑन टू एनी चांस having that numbers advantage, but this is where things just went south. Back to home just got backed off, and now this turns us into a 3v3 scenario. बिल्कुल कहने के एक बहुत बेहतरीन ग्रेड आया विवेक की तरफ, बट वो ग्रेड ज्यादा डैमेज दे रहा है क्योंकि मैच में मौजूद थे। यहाँ पे डी स्पोर्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे लूज आउट किया। विवेक की तरफ से गलत चार्जिंग देखने को मिलेगा। स्टेयर्स की लॉबी पे कहने के जाना चाह रहे थे, मैक्स का प्रयोग करके डेफिनेटली हमें कॉर्नर पे किल निकालेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन 3v2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे प्लेयर्स बचे हैं टीम के उसके तरफ से। विवेक को सैन को जब भी मैंने देखा क्वालीफायर सीन में नॉक ऑन होते हैं तो बाकी टीम्स कुछ खास, बाकी उनके प्लेयर्स कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। अगर कहना कि एडजस्ट पॉइंट पर 2v4 निकाल पाते सक्सेसफुली तो पहली बार होगा शायद कि विवेक सर के ना होने पे भी टीम बहुत अच्छे तरीके से कहने के कैपिटलाइज करती है। अर्शदन भी कहने के नॉक ऑन हो जाएंगे। इमोट किया गया है डी स्पोर्ट्स के तरफ से, तो एक जो बेहतरीन ओपनिंग मिली थी टीम केओस को उसका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रयोग नहीं कर पाया और डी स्पोर्ट्स कंप्लीटली वाइप आउट करते हुए टीम केओस को। सेलिब्रेशन इज समथिंग जो यहाँ पे अपने साइड से जरूर करना चाहेंगे, बिकॉज ओपनिंग मिल चुकी है, टॉप 10 में जगह भी बना लिया उन्होंने। यहाँ से जो भी टीम एलिमिनेट होगी उनको एटलीस्ट वो पोजिशनल पॉइंट तो मिलेंगे। 11th एंड 12वें स्थान पे एलिमिनेट होने के लिए आपको 0 पोजिशनल पॉइंट्स दिया जाता है। टीम सीई जो हमारी जेमिनी स्पोर्ट्स रहेगी वो अभी भी उस आखिरी प्लेयर को ढूंढने को मजबूर कर रही है। देयर वी गो, स्वास्तिंग, ओ माय गॉड, ही डिड स्पॉट हिम आउट, बट यहाँ पे थोड़ा एंटिसिपेट करने से छोड़ गए। बट उसी के साथ साथ आसिम उनको फिलहाल के लिए डाउन कर लेंगे। चौथा किल एंड वो चौथा अंक अपने पॉइंट्स टेबल में जोड़ते हुए टीम टोटल गेमिंग दे आर आल्सो हियर टुवर्ड्स द साइड ऑफ बे फ्रंट एरिया। टीम आरो अभी जस्ट उन्होंने एक टीम को 3v4 किया है। आउट नंबर होने के बावजूद जो फाइट बैक दिया उस चीज की दाद उनको देनी पड़ेगी, बट वो अभी टोटल गेमिंग के अगेंस्ट में भी देना होगा। बिकॉज़ टोटल गेमिंग दे नो काला हरी के मैप पे इट्स देयर मैप, इट्स देयर डोमिनेशन एंड दे नीड टू टेक हिम फॉर देमसेल्फ और एल्स कोई दूसरी टीम यहाँ पे वो टॉप पोजीशन उनसे स्टील अवे करते हुए नजर आएगी। टीम टीएसएम यूजिंग ग्लाइडर्स अपनी ट्रूप के साथ जरूर जुड़ जाएंगे हमारे इंसेन, एंड पहला प्ले जोन भी देखते देखते श्रिंक होना बिगिन हो चुका है। बिल्कुल कहने के टीएसएम की तरफ से कुछ परफॉर्मेंस आज के दिन में नहीं देखने को मिला है। एक आध फाइट जरूर टीएम ब्लास्टर्स से टीम के अगेंस्ट जीते हैं, बट उनके तरफ से कुछ परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। जो फाइट बनते नजर आई इस गोना बी डी स्पोर्ट्स अगेंस्ट टोटल गेमिंग की टीम। डी स्पोर्ट्स ऑन द अदर हैंड कुछ का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। ऑफ कोर्स कह रहे हैं कुछ मैप्स पे बहुत अच्छे किल पॉइंट्स निकाले हैं,
बट अभी भी हमें एक कोई भी बूया किसी मैप पे उन्होंने निकाला है। टोटल गेमिंग के पास दोनों के प्लेयर्स का यहाँ पे इंटेल होने वाला है, रोशन का भी यहाँ पे इंटेल है, बाकी यहाँ पे अमित वाला भी उनका भी कहने का इंटेल मौजूद है। दो प्लेयर्स करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने आप को, दो प्लेयर्स एक बंदे पे, दो प्लेयर्स एक बंदे पे, बट यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखिए कहने के रोशन मौजूद है, बट स्टिल कहने के रोहित और बाकी उनके जो साथी यहाँ पे जिस बाजू में मौजूद माफिया उन पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। कोने बच्चों की लोहा का प्रयोग किया जाएगा, दोनों डायरेक्शन से कहने के आप शॉट लेने वाले, थोड़ा शॉट जरूर मिस ऑफ करेंगे। एंड टीएसपी और बाउटर बुट पे कैसे कहने के क्रिकेट में देखने को नॉक मिलेगा, बट एरो किस बात हमें नॉक देखने को मिल सकता है। अवश्य का प्रयोग करके टीम रोहित निकाल लेंगे, रोशन पे फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर्स कहने के बचने वाले हैं फ्रॉम दिस, अकेला सिंगल प्लेयर बचने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ डी स्पोर्ट्स। व्हीकल का प्रयोग करके चाहेंगे कि चुपचाप से कहने के किसी और तरफ निकल जाए। It's going to be TSM up against going the team of, if I'm not wrong, it's the team of AG, जो कहने के यहाँ पे कहने के फाइट ऑन लिए जा रहे, दो प्लेयर्स कहने के TSM के यहाँ पे कहने नॉकआउट हो चुके हैं। It's going to be two side game, जो कहने के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस और कमबैक में नजर आ रही है। मिस्टर जेवाइटी के साथ भी सेम स्टोरी हुआ है कि वो भी अकेले बचेंगे, और कहना गलत नहीं होगा कि टीएसजी को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है ऑन टू द लास्ट मैप ऑफ द डे, जो है हमारा कलहारी का मैप। Well, Team TSM once again an unfortunate scenario that they did lose the numbers disadvantage. Being a solo player surviving, वो अकेले नहीं है, उनके साथ यहाँ पे जो है आपको टीम डी स्पोर्ट्स के साइड से हमारे अमित वाला भी देखने को मिलने वाले हैं। Mr. J from the side, oh my God, I just say him and he gets eliminated onto the 9th position. Top 8 teams हमें already देखने को मिल रही है, but numbers advantage की अगर हम बात करें तो आपको अभी भी इन 6 टीम्स के साथ वो numbers advantage कायम नजर आएगा। टीम टोटल गेमिंग still rooting for those advantage, still wanting to get that initial भैया आखिरी मैप है। तो आखिरी मैप पे अगर हम याद करें हमारी गॉड लाइक स्पोर्ट्स, वो यहाँ पे काला हरी पे जो है अपने साइड से भैया जीत के गई थी। फिलहाल के लिए only 38 seconds left and this is what काला हरी मैप is all about. It pushes team to their limits, यहाँ पे अपने लिमिट से भी पुश करते हैं वो, क्योंकि देखिए अभी जस्ट प्ले जोन बना है, प्ले जोन के अंदर भी नहीं हो एंड आपको आपका टाइमर ये बोलते हैं कि 20 सेकंड में जाइए और else we are once again starting to shrink it. बिल्कुल कहने के ध्यान में रखना पड़ता है। मैं एकदम से पहले मैं आपसे बोलता हूँ, बाकी अगर 2 दिन पे बोलते आऊंगा, मैं अपने पूरे फ्री फायर कास्टिंग करे बोलता आऊंगा, आई एम नेवर इन द फेवर ऑफ लेट रोटेशन। आपको पता है आपके पास काउंटडाउन मौजूद है, आप फाइट से घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पे टॉप 12 टीम मौजूद है, टॉप 12 टीम चाहिए, इसमें से कोई भी टीम किसी भी टीम को कहने का चैलेंज कर सकती है। वो तो मैं चाहूंगा कि आप लेट रोटेशन ना हो, ला लो टाइम पे अपने टीम के साथ कॉम्बिनेट करो कि हाँ either we go on to this हम पर्टिकुलर टीम ए को चैलेंज करें या फिर हम टीम बी को चैलेंज करें। राइट नाउ व्हाट आई एम एबल टू सी इज की गॉडलाई की टीम के 2 प्लेयर्स किसी और तरफ मौजूद है, 2 प्लेयर्स किसी और तरफ मौजूद है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डीजी और यहाँ पे देखिए कैमन स्पोर्ट्स का इंटर जरूर होने वाला है। अब इनके लिए डिसाइड करना है कि वो किस तरह पे कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि थोड़ा जोन इनके फेवर में नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जोन की तरफ कहीं ना कहीं शिंगिंग करने वाला, तो इनको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर दे गो टुवर्ड द साइड ऑफ FreeFire और केविन स्पोर्ट्स को चैलेंज करे, या फिर देखिए पीछे से एक टीम का लेट रोटेशन ले रही है, दैट्स गोना बी द टीम ऑफ 2 साइड गेमर्स। अगर उनको पता लगता है कि गॉड लाइक के किसी भी 2 प्लेयर उनके किसी भी आइदर साइड पे मौजूद है, तो हो सकता है यहाँ पे 4v2 और 3v2 का यहाँ पे सिनेरियो बने और गॉड लाइक के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दे वो। जी हाँ, यहाँ पे रिफाइनरीज के साइड पे तो हमें फाइट देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। टीम टीएसजी दे आर ऑलरेडी गेटिंग गेटकीप फ्रॉम द साइड ऑफ टीम गॉड लाइक, बट ये जो 2v2 का स्प्लिट है, 2 टीम यहाँ पे आपको जरूर इधर नजर आएगी। टीम देसी गेमर्स वो तो गॉड लाइक को यहाँ पे नॉर्दर्न साइड से थोड़ा प्रेशराइज करेगी, बट जिसको टीम हमारी गॉड लाइक प्रेशराइज कर रही है, टीम 2 साइड गेमर, वो इधर क्या उस फाइट बैक एक्शन में रिटेलिएट करने में सक्षम हो पाएंगे कि नहीं, दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर टू बी कंक्लूडेड। टीम टोटल गेमिंग दे आर आल्सो ट्राइंग टू रोटेट टीम गॉड लाइक, जिन्होंने इसी मैप पे अपनी ओपनिंग निकाले था, अपना सेटबैक दिया था, क्या वो सेटबैक एक बार फिर दे पाएंगे? मीनवाइल 2 साइड गेमर दे गिव अप ऑन गॉड लाइक, दे मेक श्योर दैट वो आउट ऑफ द जोन रोटेशन दे, दैट्स गोना वर्क आउट cuz 2 HP का पर सेकंड डैमेज मिलने वाला है, बट आफ्टर श्रिंकिंस इट डबल्स टू 4 HP per second। बिल्कुल कहने का देखिए जोन के अगेन जा रहे हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है बाकी के सारे प्लेयर्स कहने का सक्सेसफुली सेफ जोन में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मैं कहना देखना चाह रहा हूं कि डैमेज नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज द थर्ड जोन, वेरी सरप्राइज टू सी दैट, बट हां वी कैन बी रॉन्ग, बट देख सकते हैं यहाँ पे टोटल गेमिंग के एक प्लेयर्स कहना कहीं यहाँ पे एक प्लेयर नॉक इन कर दिया गया फ्रॉम द साइड ऑफ टीम स्पोर्ट्स। एक और टीम है जिसके लिए मैं रूटीन कर रहा था ऑफ कैमरा भी, क्योंकि मैंने इनको देखा क्लाइंब अप करते हुए, क्वालिफाई होते हुए सीरीज के लिए। देख सकते हैं कहना कि एक प्लेयर अभी भी कहना कि उनको रिवाइवल नहीं दिया गया, क्योंकि एंगल्स एक्सपोजर टी0 के बावजूद उसके पॉप यहाँ पे किल कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि देखिए जोन अगेन जा रहा है टीजी के, तो नहीं तो आगे जाए और उनको जाके कहने के चैलेंज करें। जोन के अंदर जाना चाहेंगे, छोड़ दिया टोटल गेमिंग पर अपना फोकस की भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के जब चले जाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज है कि आप पहले सेफ जोन में जाओ, उसके बाद कहने के आप फाइट कंटिन्यू करो अपनी। बिग मैप जैसे हमारे स्क्रीन पे आएगा वैसे हमें पता चल जाए कि ये जो जोन है एग्जैक्टली किस तरफ हमारा बनते हुए नजर आ रहा है। इट्स गोना बी एनजीएक्स की भी टीम जो कहने के 4 मैन ऑलरेडी मौजूद है, हो सकता है यहाँ पे टीम नंबर 10 और टीम नंबर 5 को कंप्लीटली गेट कीप कर दे, और आइदर इज गोना बी डी स्पोर्ट जो वापस से पहली बार सेंटर में गए हैं, बट ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तरुण की कितना ज्यादा किल्स निकाल पाते हैं और कितना ज्यादा वो बूया निकाल पाते हैं। Yeah, team Chairman Esports, team godlike team, one and only हमारी जो head hunters है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस आउट हो चुके हैं, बट हाँ still all the 3 teams are surviving, जिनको शायद मैं इधर प्रेडिक्ट कर सकूं कि वो इस मैप पे बुया जीत के जाए। We are currently down to the top 8 teams and 27 players। यहाँ विहान जरूर आपको डाउन होते हुए नजर आ रहे थे, बट टीम 2 Side Gaming they are gonna give priority to their numbers advantage, but zone को priority ना देना क्या वो चीज उनके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं, पूरी तरीके से टेल किया जा रहा है। टीम गोडल के यहाँ पे निवेश हमें देखने को मिल जाएंगे, only gets the opening and team 2 Side Gamer not respecting the zone, it's what you know, it's getting return for them। godlike से बारी बारी प्लेयर्स जरूर डाउन हो रहे हैं, 1 player remaining and what am I even seeing, यहाँ पे टीम 2 Side Gamers तो एलिमिनेट हो चुकी है, but at what cost to टीम गोडल, 2 प्लेयर्स को लूज आउट किया, 1 प्लेयर ऑलरेडी ब्लीड आउट होते जा रहे हैं, and टीम godlike who did win this map is completely on the verge of elimination। बिल्कुल करेगा, टीजी ने 2 सक्सेसफुल किल्स जरूर निकाले थे, बट यहाँ पे टाइटेनियम के एक बंदे कहने के इनपुट, एनजी के 2 बंदे कहने के जो टॉप पे एकदम सर्कल पे मौजूद है उनको स्पॉट कर लिया 9 किल के साथ। निग्मा गैलेक्सी यहाँ पे बहुत ही काफी बेहतरीन तरीके से जो हाइट एडवांटेज जो उनके पास कहने के मौजूद है, एक जो कहने के टीम एरो जो इज गोना बी द टीम ऑफ डी स्पोर्ट्स वो कहने के मौजूद है, 4 मैन स्क्वाड यहाँ पे केविन स्पोर्ट्स भी है, डी स्पोर्ट्स भी है, नॉकआउट कर दिया। बहुत अच्छी ओपनिंग मिल चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे केविन स्पोर्ट्स को, ग्लू वॉल का यहाँ पे प्रयोग जरूर किया जाएगा। स्वास्तिक अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, आई गेस यहाँ पे देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन कि वहां पे कहां पे एग्जैक्टली यहाँ पे टीम मौजूद है, बट एक और बंदा जो राधे ठाकुर वाला उनके पास हाइट एडवांटेज जरूर है, एक बंदे को जरूर करने के स्पॉट ऑन किया गया, क्लोज प्रॉक्सिमिटी फाइट चल रही है, डीजी को यहाँ पे P90 का प्रयोग करके कहने के नॉक ऑन जरूर कर दिया गया, फ्रेश ऑन अभी तक नहीं मिला है, तो कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी केविन स्पोर्ट्स कंफ्यूज है। देखते हैं 2 नॉक्स भी हमें देखने को मिलेंगे, तीसरा भी नॉक हमें देखने को मिलेगा। If I'm not wrong, जोन में निग्मा गैलेक्सी जो बहुत लॉन्ग रेंज फाइट ले रही है, तो हो सकता है हमें जोन के में वापस से तीसरे की जीत हो। दी शॉट जो हमें देखने को मिलेंगे, नॉक एक रीप्राइज जरूर आएगा सियानंद की तरफ से, पर राधे का भी ओजी शॉट की तरफ से कहने के नॉक ऑन कर दिए जाएंगे। राधे का किल भी कंफर्म करेंगे ओजी हर्ष पे, एंड इट्स गोना बी अ 2v4 क्लियर सिचुएशन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे जो कहने के मैन पावर एडवांटेज पे है, इट्स गोना बी निग्मा गैलेक्सी, और वो वेट आउट करे कि ये दोनों टीम लड़े और टेक द एंड लास्ट टेक द बुया टुवर्ड्स अस। वेल आखिरी दिन के फिनाले मैप के फिनाले जोन पे आ चुका है, देखते हैं कि ये किस तरीके से कन्वर्जन क्रिएट होता है। वेल टीम हमारी देसी गेमर्स दे जस्ट गॉट एलिमिनेटेड 5वें पायदान पे, दे हैड दैट अपॉर्चुनिटी, सोलो प्लेयर सर्वाइविंग थे, स्टेल्थ मोड पे जा सकते थे, बट इट्स गोना बी जेविन ईस्पोर्ट्स जो यहाँ पे उनको टेक डाउन करेगी, बट टीम गॉडलाइक अभी भी वो सोलो प्लेयर यहाँ पे बहुत आराम से होल्ड करके रखे। गैलेक्सी somehow they are the only team with that numbers advantage, 4 प्लेयर उनके खुद, बाकी के 4 कि अगेंस्ट पे देखने को मिल जाएगा। इट्स नथिंग बट अ 4v2v1v1 सिनेरियो। दोनों सोलो प्लेयर्स यहाँ पे टॉप 3 में आना चाहिए, दोनों जो हमारे प्लेयर्स है फ्रॉम ओनली वन सिंगल टीम, दे वांट टू विन द बुया, बट द टीम विद 4 मैन एडवांटेज, दे आर निग्मा गैलेक्सी, दे हैव दैट ग्रैब इट, बट यहाँ पे सोहम को देखिए बहुत अच्छा डैमेज डील किया था, यहाँ पे ओपनिंग निकाल चुके हैं, दैट्स द ओपनिंग, नो इट्स अ 4v1v1 सिनेरियो एंड तीनों सोलो प्लेयर्स, गुड शॉट। He's so good. See that coming on himself, and he got eliminated. He wins the Galaxy. अभी भी वो सोलो प्लेयर समझ लीजिए, but can they do it is the question. अगर निग्मा गैलेक्सी 4 different team, but that MP7, that grenade the difference maker, and 2 player को एक ही grenade के द्वारा डाउन करके totally eliminate कर चुके हैं। Team निग्मा गैलेक्सी, they are the one with that 1v1v1v1 scenario, and the team with 4 players advantage, they just lose out. Team Godlike is up against the side of one and only solo player who is gonna be Team 12. Let's see that what's gonna happen. He goes eliminated. Chairman Esports coming with a phenomenal 1 shot 1 kill, no luck pure skill. It's gonna be they टक्कर एक बार फिर फर्स्ट मैप एंड आखिरी मैप पे अपने साइड से वो विनिंग मोमेंट जीत के जाएंगे। बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, जैसा तरुण भाई ने बोला था कि जो टीम करेगी कैपिटलाइज किया पहले 4 मैप से वो करेंगे बुया निकालेगी, बट
जिस तरह से गॉडलाइक ने वहाँ पे 2 kills निकाले, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस का वो स्टेप था कि आप आगे चले गए rather than focusing on towards the height and वहाँ पे देखा था सोम कोशिश कर रहे थे rather than focusing on that finishing kill कि हम इसको फोकस ना करें, बट वहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ कि किस तरफ पुश ऑन करना है, किस तरफ नहीं पुश ऑन कर रहा है। आई गेस उनको इस बात का इंटेल नहीं था कि यहाँ पे बाकी जो 4 प्लेयर्स मौजूद है वो डिफरेंट टीम्स के, हो सकता है उनको लग रहा होगा कि ये जो 4 प्लेयर्स है वो सेम टीम में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ और चीज पे डेफिनेटली कैपिटलाइज करते हुए नजर आए। मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि केमिन स्पोर्ट्स के जो आखिरी आए थे बंदे हैं उनको नहीं पता है कि यहाँ पे गॉडलाइक मौजूद है, बट जैसे ही स्पॉट किया स्नाइपर से कंफर्म शॉट लिया और गॉडलाइक यहाँ पे केमिन स्पोर्ट्स, सॉरी मैं कहना चाहूंगा केमिन स्पोर्ट्स एक और बुया निकालते हो अपने नाम पे, तो 2 मैच पे सिक्योर करते हुए 24 पॉइंट और यहाँ पे सिक्योर है, तो कहना चाहूंगा बहुत अच्छी लीड स्कोरबोर्ड पे उनकी होने वाली है अप अगेंस्ट अदर टीम्स। I'm just, feeling very bad at this current time. 4v1v1 is the last time I was happy, and then it all completely changed. Cause एक टीम के पास 4 प्लेयर्स का एडवांटेज है, बाकी 3 टीम के पास सिर्फ एक प्लेयर है, बट जो वो एक प्लेयर अपने साइड से सिर्फ किल को स्टील किया, किल यहाँ पे नॉक होने के बाद डायरेक्ट कैपिटलाइज नहीं कर पाई हमारी टीम गॉडलाइक, उनका किल यहाँ पे स्टील हुआ, एंड दैट स्टील किल इज समथिंग व्हिच टोटली पनिश्ड निग्मा गैलेक्सी, नॉट ओनली फर्स्ट, नॉट ओनली सेकंड, नॉट इवन थर्ड, 4th पोजीशन पे एक ऐसी टीम एलिमिनेट होती है जो एक 4v1v1 के सिनेरियो पे टीम गॉडलाइक दे वर सोलो प्लेयर सर्वाइविंग टिल टॉप 7 पोजीशन, वो सोलो प्लेयर आपको एंड जोन के सेंटर पे नजर आ रहा था, अनलेस रादर ठक्कर हैपेंड एंड दैट वन शॉट वन किल, आई मीन दैट वाज द फिनोमिनल क्लिप ऑफ द डे ऑलरेडी, जो यहाँ पे एंडिंग की है टीम चेमनी स्पोर्ट्स, दे डू डिजर्व दैट विन एंड दे डू डिजर्व दोस टॉप पॉइंट्स जो उन्होंने यहाँ पे ऐड किया, बट आई मीन इट्स रियली बीन दैट रोलर कोस्टर राइड व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं केमिन स्पोर्ट्स 2 मैच से कैपिटलाइज कर पाई है, जो टीम्स कहने के रहने वाली जिससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, इट्स गोना बी टू साइड गेमर्स, कुछ मैच से टॉप 4 हमें जरूर देखने को मिली, बट एक जो होता है ना कि आप आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, वो चीज नहीं हुआ, काफी लेट रोटेशन, 2-3 मैच मैंने देखा जब भी हम उनको स्पॉट ऑन कर रहे थे तो लेट रोटेशन ले रहे थे, कभी टोटल गेमिंग को टारगेट करके निकाल दिए तो कभी केमिन स्पोर्ट्स आपको स्पॉट ऑन करके निकाल दिए, तो डेफिनेटली हमारा जो पहला दिन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं कहना चाहूंगा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, 5 मैच खत्म हो चुके हैं, पहले हम इस मैप के लीडर बोर्ड पे डेफिनेटली नजर डालने वाले हैं गाइस, और उसके बाद में दर्शकों को बताओ कि पूरा जो दिन का सेगमेंट रहा है, टोटल जो 5 मैप्स है उसके कहना कि हम स्कोर बोर्ड पे नजर डालने वाले हैं, तो एक चीज तो कहने के कंफर्म है कि हमें केमिन स्पोर्ट टॉप 2 में टॉप 3 में तो देखने को मिल सकती है, बट ड्यू टू 2 बुया जो कहने के उनको प्लेसमेंट पॉइंट का एडवांटेज होने वाला, दैट्स कंफर्म दैट कि वो पहला स्लॉट जो है वो उनके नाम पे बुक है, अब सेकंड थर्ड पे हो सकता है मैं आइदर इज गोना बी गॉडलाइक, आइदर इज गोना बी निग्मा गैलेक्सी का पिछले 2 मैप का जरूर कमबैक देखने को मिला किल पॉइंट्स के हिसाब से, बट 1-2 मैप से डेफिनेटली प्लेसमेंट पॉइंट्स के मददगार होते हुए हो सकता है मैं टॉप 3 में देखने को मिले, बट ऑफ कोर्स क्लियर इमेज हमें पता चलेगा स्कोर कार्ड का तभी जब हमारे स्क्रीन पे आएगा। जी हाँ, देखते हैं अब स्कोर कार्ड क्या होता है। सो फार तो हम अपनी सिर्फ प्रेडिक्शंस रख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे कौन सी टीम्स आ रही है, बिकॉज़ नंबर 1 पोजीशन जिस तरीके से 2-2 भैया जीता है, इट्स क्वाइट फिनोमिनल टू सी देयर कंसिस्टेंसी, 5 में से 3 मैप पे कंसिस्टेंट थी, एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंड विद ऑल द टीम्स आउट देयर। टीम देसी गेमर्स आपने देखा वो भी शुरुआती 2 मैप पे सेकंड आई, एक भैया जीता, बट देन दे जस्ट डिसअपीयर्ड, 11वें स्थान पे एलिमिनेट हुई हमारे 4th मैप पे, 5वें मैप पे दे डिडंट मेड अप टिल द टॉप 6 पोजीशन, एंड दीस आर क्वाइट अनफॉर्चुनेट movement. Total gaming they did played quite well. Team Arrow जो हमारी D Esportz है, they also got some phenomenal setback, but थोड़ा यहाँ पे जो हमारी सिर्फ 2 टीम रिमेनिंग है जिनको अपना सेटबैक देना है, वो चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, बिकॉज होप्स अभी भी 1 2 3 नहीं 10 टीमों के लिए अलाइव है, क्योंकि 10 टीम ने यहाँ पे आउटप्ले दिखाया है, सिर्फ 2 टीम जो यहाँ पे मिस आउट कर रही है, they are definitely gonna be our terminators, and team 2 साइड गेमर जो थोड़ा यहाँ पे अपने साइड से कुछ खास मेरे को परफॉर्मेंस देखने को मिला, कुछ मैच में तो खाता ही नहीं खुला उनका, जब खुला तो 2-3 किल्स पे स्टैंड है, इसी रह गए, बाकी के 2 दिन मौजूद है। ऑफ कोर्स स्कोरबोर्ड पे हमें और क्लियर इमेज मिल पाएगी किस टीम को कमबैक करना है, या फिर कोई टीम कहीं ना कहीं जिनके पास एडवांटेज है बस वो लीड को मेंटेन करते रहना है, एक आध बुया भी कहीं ना कहीं कल के दिन में भी एक बुया और अगले के दिन में भी एक बुया निकालेंगे तो कहीं के टॉप पे रहने वाले हैं, किल्स आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करके रखने हैं, बट जो टीम्स कहीं ना कहीं टॉप बॉटम 5 में एक्सट्रीमली सॉरी जो कहीं ना कहीं क्वालीफाई नहीं कर पा रही है, वो कैश प्राइजेस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यू हैव टू गो ऑल आउट एग्रेसिव on the last 2 days. Well, you have to go all out attack because that is going to be the finale 2 days. पहले मैप पे आपको तो देखने को मिल चुका है कि ये टीम्स कितना पैसिवली खेल सकती है। This teams have already told that अगर उनको वो पैसिव अप्रोच पे जाना है तो how like extremely passive they could go. But along with that आखिरी मैप पे हमने जरूर देखा कि जो हमारा काला हरी का मैप था, we didn't saw some passive gameplay, we did saw some rotational plays जो बहुत ज्यादा आते हुए देखने को मिला। Team 2 side gamers who were just getting gatekept by
गॉडलाइक टोटली ओवर कमिट किया, उन्होंने टोटली यहाँ पे लीव आउट कर दिया। एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देके वो फिर आ चुकी थी टोटल गेमिंग के साइड से, जो ईस्टर्न साइड का उनका एंट्रेंस था। बट उधर आने के बावजूद यहाँ पे टोटल गेमिंग एंड टीएसजी गेमर्स दोनों एक ऐसे सिचुएशन पे थे, गेट कीप आप उसको बोल भी नहीं सकते बिकॉज़ टीम टोटल गेमिंग वाज नॉट इनसाइड द जोन। यहाँ पे अगर आप एक टीम को आप टोटली एलिमिनेट कर रहे हो तो गेट कीप तब है जब आप गेट के अंदर हो, बट गेट के बाहर हो के यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा मिस आउट कर दिया अपने अपॉर्चुनिटी को। किल पॉइंट्स तो मिले बट जो यहाँ पे डैमेज दिया बाद में जोन ने, आई मीन दैट डैमेज वाज फिनोमिनल, दैट डैमेज वाज समथिंग जो राधे टक्कर को भी मिल रहा था। फॉल डैमेज प्लस जोन डैमेज एंड देन यू डोंट इवन हैव द लोकेशन। एग्जैक्टली, उसके बावजूद आपने आपको आप जिंदा रखे, आप ट्रिगर डिसिप्लिन मेंटेन कर रखे कि मैं कोई भी शॉट्स नहीं लूंगा, आई विल जस्ट स्टे प्ले स्टेल प्ले साइलेंट, एकदम साइलेंट मोड में होता है ना कहीं कि आप चले जाते हो। आई लाइक कि हाँ मैं देखता हूँ कि क्या होता है। हो सकता है डेफिनेटली उनके पास भी इंटेल नहीं था कि जो आखिरी के जो कहीं ना कहीं 7 टीम प्लेयर्स मौजूद है वो एक टीम के है या फिर वो डिफरेंट टीम्स के है। तो वहाँ पे केविन ईस्पोर्ट्स ने वेट किया कि एकदम ज्यादा तक वेट किया केविन ईस्पोर्ट्स की तरफ से कि मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पे सिचुएशन बनता है। जैसा होगा 1v3 होगा तो मैं अपना 100% दूंगा, 1v2 होगा तो तभी मैं अपना 100% दूंगा। 1v1 हुआ, स्पॉट किया एंड में जो शॉट लिया डेफिनेटली हायर टीम में जा सकता है और मे भी नहीं जाता है, वो तो प्रोडक्शन के हाथ में। बट जिस तरीके से यहाँ पे सेकंड बुया सिक्योर किया तो एक बहुत बड़ी प्लेसमेंट पॉइंट्स की लीड मिल चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे केविन ईस्पोर्ट्स को। वेल टीम केविन ईस्पोर्ट्स एंड में तो दोनों हमारी विनिंग टीम ही थी। गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने तो जीता भी था हमारा काला हरी का मैप, बट इस मैप पे भी सोचिए एक सोलो प्लेयर कितना डिफरेंस बनाता है। बट दिस इज समथिंग व्हिच वी कुड रियली टॉक अबाउट कि किस तरीके से वी स्टार्टेड सीइंग हमारी टीम हेड हंटर्स, दे जस्ट स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। द Booyah was for themselves. They did have the numbers advantage, but it all started from that opening 4v2v 1v1 का सिनेरियो था। ग्रेनेड से ओपनिंग भी उनके फेवर में निकला, but then it just didn't work on their favor. बिल्कुल, आई गेस निग्मा गैलेक्सी की तरफ से एक थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमें देखने को मिला। ऑफ कोर्स यानी कि उनको भी नॉलेज नहीं था कि ये 4 जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट टीम्स के मौजूद है। बट आपने देखा यहाँ पे जो नॉक्स मिले उसके बाद तो कहने के उनको कंफर्म था कि दोनों आपने स्क्रीन में देख लिया, आपके पास किल फीड आ जाता है कि कौन सा टीम कौन, आपको दोनों एब्रिविएशन स्टार्ट में लिखा होता है, जैसे हमें भी पता चलता है कौन सी टीम कौन सी टीम। तो डेफिनेटली उनको भी पता था कि यहाँ पे 2 सिंगल हैंडली 2 टीम्स यहाँ पे या 3 टीम्स होने वाली है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बट हाँ यही कहना चाहूंगा कि जो पूरा ग्रैंड फिनाले का स्टेज है वो भी खत्म नहीं हुआ, अभी 10 मैप पूरे के पूरे बाकी हैं, पूरे का पूरा 10 मैप का सफर हमें तय करना है तरुण। तो ऑफ कोर्स जो चीज होने वाली है वही होने वाली है कि आपके पास 10 मैप बाकी है, उसके बाद कैसे आप प्ले आउट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट्स लेवल हम देखने वाले फॉर द लास्ट मैप ऑफ कलाड़ी। क्या मैंने ईस्पोर्ट्स पे 9 किल्स के साथ making it their way onto the first podium, 12 प्लेस पे पहुंच गया। टोटल अगेन 20 मार्क का कहने के क्रॉस कर रखा है, 21 पॉइंट्स आ चुके हैं। निग्मा गैलेक्सी 18 पॉइंट्स का सेकंड पोजीशन पे, किल्स के मामले में वो भी 11 किल्स निकाले। तो डेफिनेटली निग्मा गैलेक्सी की तरफ से एक कमबैक आ चुका था, देर आए दुरुस्त है। बट हाँ जब ओवरऑल स्कोर कार्ड आएगा तभी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो देर आए दुरुस्त है वाला में जो मैंने फ्रेज यूज किया वो कितना ज्यादा सही होता है। गॉडलाइक की बात करेंगे वापस से कहने के तीसरे पायदान पे आते हुए, दैट मेक्स एन ओवरऑल ऑफ 13 पॉइंट्स के साथ डी स्पोर्ट्स। और जैसे कि मैं ईस्पोर्ट्स थोड़ा सा कमबैक जरूर किया है बट वो कमबैक नहीं है कि आप जैसे कहने के टॉप पे आ पाओ। अब कहीं ना कहीं देखने वाले हैं वापस से ओवरऑल पॉइंट्स टेबल जो कहने का मैं स्क्रीन पे कहने के थोड़ी देर में आने वाला, बट आई एम स्टिल प्रीटी श्योर कि केविन ईस्पोर्ट्स एकदम टॉप पे होने वाली है कंपेयर टू व्हाट टोटल गेमिंग इज राइट नाउ एट द बॉटम 5। यार आप जरूर अपने प्रेडिक्शन गाइस अभी से चैट पे हमें दिखाइए कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे आपको ओवरऑल स्टैंडिंग के टॉप 3 पोडियम फिनिशेस पे तो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही सकती है। डू कीप योर सपोर्ट टू शावर योर लव एज वेल टू ऑल योर टीम्स सो दैट दे गेट दोस मोटिवेशन, दे डेफिनेटली कीप्स देयर होप अलाइव टू गिव द सेटबैक। कॉज आज के दिन का पहला दिन हमारा समाप्त हो चुका है, अभी और 2 दिन बाकी है, 10 मैप और बाकी रहेंगे। सो दीस 10 मैप आर समथिंग व्हिच इज डिटरमाइंड and will give us the results of the final standings of all the teams out there. But let's see यहाँ पे केविन ईस्पोर्ट्स once again पहले मैप पे 29 points, आखिरी मैप पे 21 points। मतलब जो टीम यहाँ पे कंसिस्टेंट रह के 4 मैप में टोटली कंट्रीब्यूट करती है, इन टीम ने तो 2 ही मैप पे कहीं ना कहीं कर दिया। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग फ्रॉम देयर साइड। लेट्स सी कि बाकी के स्टैंडिंग्स क्या होती है। दूसरे पायदान पे भी टीम गॉडलाइक इज लुकिंग क्वाइट फेवरेबल, बट यू डिड टॉक अबाउट टीम निग्मा गैलेक्सी दूसरे स्थान पे देखने को मिली आफ्टर गेटिंग एलिमिनेटेड एट द 4th पोजीशन। यू हैव नेवर सीन टुडे इन एनी मैप की कोई टीम यहाँ पे बुया जीत रही है एंड वो थोड़ा भी नंबर 2 पे पोजीशन हो रही है बिकॉज़ दे हैड इनफ किल्स, दे मेड श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग ऑल पैसिव। एंड जो ऑल इन पैसिव जा भी रहा था, दे डिडंट गॉट द बुया ओनली, नो दे गॉट द नंबर 1 पोजीशन। पहले जा रहे हैं, जोन में जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं रखे हो कि आपकी तरफ से कौन सी टीम पुश ऑन करने वाली है, एलिमिनेट हो जाते हो। जैसा मैंने बोला
मैटर नहीं करता। ऑफ कोर्स लेट रोटेशन मत लो, मैं उसके अगेंस्ट वापस से नहीं बोलना चाहूंगा, नॉट गोना क्रॉस माय वर्ड्स। आप सही टाइम पे रोटेशन लो, सही टाइम पे आप करने के चैलेंज करने की कोशिश करो, बट जब आप पहले सर्कल में जा रहे हो, मैंने देखा है क्वालीफायर में वासियों की टीम को ऐसा करते हुए कि जब वो पहले सेंटर में जा रहे थे उसके बाद कहने कहीं टीम को चैलेंज कर रहे थे। बहुत सारी ये बहुत ज्यादा कॉमन स्ट्रैट है कि पहले आप सेंटर में जा रहे हो उसके बाद कहने के प्ले आउट कर रहे हो, बट हाँ जो कॉमन स्ट्रैट है वो कहने के फाइनल स्टेज पे डी स्पोर्ट्स के लिए काम नहीं आ पा रहा है, देसी गेम डी स्पोर्ट्स के लिए काम नहीं आ पा रहा है। पहले जा रहे हैं दो टीम्स कहने के, पहले जाती है इवन टीम केओस, पहले जाती है सेफ जोन के अंदर एकदम सेंटर में, उसके बाद कहने किसी टीम से चैलेंज होकर एलिमिनेट हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन सम अदर स्ट्रैट, यू हैव टू वर्क ऑन सम अदर ओपनिंग कि आप कैसे बाकी अदर टीम्स को चैलेंज करते हो, क्योंकि ये लॉबी जो है इस प्रीमियर सीरीज का जो ग्रैंड फाइनल स्टेजेस में देश के टॉप 12 टीम्स कहने का मौजूद है। बात थोड़ी सी करना चाहूंगा एक और टीम की, दैट्स गोना बी टाइटन एस्पोर्ट्स। आखिरी के तो कुछ ना उस मैप से जरूर किल पॉइंट्स निकाले, बट दीस आर स्टिल नॉट एनफ टू गेट देम इनटू top 5 for the end of the day one. Definitely, we have to see that what is the overall standing, gonna have for us, because already this day we have had enough, we have had enough of the amazing map, and here we go, the overall points team Esportz leading, but what we did told that consistency beats Desi Gamers, and Desi Gamers number 2 unka favorite number बनने वाला, but what am I seeing? Nigma Galaxy on the 3rd position. Exactly, जो किल पॉइंट जो कहने के पर्गेटरी से निकालते हुए आ रहे थे, 6-7 किल्स उधर भी लास्ट दो मैप पे इन्होंने आई गेस 25 प्लस कहने के किल पॉइंट्स निकाल लिए थे, मेकिंग देयर वे थ्रू द बाय द किल पॉइंट्स। वो कहने के 56 पायदान पे 56 का कहने के ये पॉइंट्स ओवरऑल बटोरते हुए सेकंड पायदान पे आ चुके हैं। निग्मा गैलेक्सी आ चुके थर्ड पायदान पे, देसी गेमर्स सॉरी कहने के 56 ओवरऑल पॉइंट्स का सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। डी ई-स्पोर्ट्स कहने के देखिए मैं कहना चाहूँ कुछ खास परफॉर्मेंस तो था नहीं, डेफिनेटली प्लेसमेंट पॉइंट्स के बदौलत 47 ओवरऑल पॉइंट्स इनके हो चुके हैं। गॉड लाइक एक मैप पे जरूर कहने के बुया निकाला, बट स्टिल वाज नॉट एनफ टू गेट देम इनटू टॉप 3 और लाइक टॉप 4। पांचवें पायदान पे गॉड लाइक होने वाली मिक्स एट ओवरऑल ऑफ 45। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स जो डेफिनेटली हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा एकदम शेयर डोमिनेशन की तरफ से देखने मिले, बट चले कोई बात नहीं, अभी भी पूरे के पूरे 2 दिन बाकी है, पूरे के पूरे कहीं ना कहीं 10 मैच बाकी है, कुछ भी हो सकता है। बात करेंगे टीएम ब्लास्टर्स की, सिर्फ 7 पॉइंट्स, भाई डबल डिजिट भी इन्होंने क्रॉस नहीं किया, सिंगल डिजिट पे कहने के बैठे हुए हैं। टीएसजी आर्मी चलिए कहने के अपना रेपुटेशन आपने रखा है, बट मैं वही कहना चाहूंगा कि अभी भी टीएसएम फीएटेक्स हो गया, टीएसएम हो गया, टाइटेनियम ई-स्पोर्ट्स हो गया, टीएसजी आर्मी के लिए अभी भी जो फिनाले से खत्म नहीं हुआ है, 10 मैच बाकी हैं। इट्स कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, वो वाली बात आ जाती है, 10 मैच बाकी रहेंगे, देखते हैं कि आखिरी के 2 दिन में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं तरुण। Well, 75, नॉर्मली सेंचुरी की अगर हम बात करें, या बट इधर 75 काफी क्रॉस के है। कल के दिन तो सेंचुरी बनती है चेवन ई-स्पोर्ट्स की, लगता है, क्योंकि 2 मैप पे भैया जीत गए, ये जो है ये कॉन्फिडेंट बड़ी यहाँ पे उनके लिए फायदेमंद होगा। बट लीड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट उनके पास 18 अंकों की लीड है फ्रॉम दैट टॉप 2 पोजीशन। अगर हम वो क्यूमुलेटिव सिचुएशंस की बात करें, उनसे जस्ट 3 पॉइंट नीचे आपको निग्मा गैलेक्सी नजर आ रही है, फिर 6 पॉइंट का डिफरेंस, फिर 2, 3, 1 एंड डायरेक्ट 4। तो यहाँ पे जो बॉटम की 3rd टू हमारी 9th टीम है, दे जस्ट लाई बिटवीन दोस 15 पॉइंट्स, 1 मैप 1 बुया, एंड यू विल सी द 9th पोजीशन टीम कमिंग इनटू द टॉप 5 पोजीशन। एंड टॉप 5 पे टॉप 4 पे आना भी बहुत ज्यादा डुएबल है, बट टॉप 1 पे आने का अब क्या होगा, वो चीज टीम चेवन ई-स्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ बाकी सारी टीम पे। बिकॉज़ जब आपके पास एक 18 पॉइंट्स का लीड है, तब आप एक मैप मत खेलिए, शायद कोई टीम जीत जाए एंड अपने लिए अच्छे किल्स लाए, तो शायद वो भी फिर इवनाइज होता है। बट आई मीन दिस इज व्हाट it's been a roller coaster and it's been quite amazing. Our top 12 teams competing against each other. Our favorite maps, not only Bermuda but twice we got to see Kalahari. आपको twice सिर्फ Purgatory देखने को मिलता है, बस this is such a turning point कि ये तो टीम्स ने भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा। Only one Purgatory, उस Purgatory पे आपने देखा टीम देसी गेमर्स एंड टोटल गेमिंग ने अपना सेटबैक भी दिया, देसी गेमर ने अपना पहला बुया जीता, but that was just once. बाकी के 4 मैप, it's something where you have to make a storylines. बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं तो वही रूटीन करूंगा कि वापस से जो बॉटम 5 की टीम है ना, कल एकदम बेहतरीन शानदार किल पॉइंट्स निकाले, सारे टीम्स को कहने के चैलेंज करे और हमें कल एकदम डिफरेंट बुया देखने को मिले, क्योंकि एक जो लीड है, बहुत मैसिव लीड आ चुकी है। मतलब हम एक अब देखिए टीएनएम बादशाह ने डबल लीड भी स्कोर लिए हैं, और अगर जो टॉप पे टीम है ऑलरेडी यहाँ पे 74 78 का मार्क क्रॉस कर चुकी है। एक मैप पे बहुत अच्छा डोमिनेंस दिखाएंगे, बुया निकाल लेंगे, 10 किल्स अपने हाथ में कर लेंगे, ऑलरेडी वहां पे सेंचुरी मार लेंगे। बट हाँ, बात तो यह आ जाती है कि यहाँ पे इस लॉबी में इंडिया के सबसे बेस्ट टीम्स मौजूद हैं,
तो हाँ, वो कहते हैं ना किसी दिन आपका दिन नहीं रहता, बहुत कॉमन जी फेज हाँ। है, वो चीज भी हो सकती है बहुत सारी टीम्स के लिए। और जो परफेक्टली बैठने वाले किसी के दैट्स गोना बी टोटल गेमिंग। बहुत अच्छी तरीके से तो कहीं ना कहीं किल्स नहीं निकाल पाए, फाइट आउट नहीं कर पाए, बट हाँ जिस तरीके से आपने को मेंटेन रखा, बैलेंस आउट कर रखा, अभी भी उनका चांस है कि वो कल के दिन में जब हम कल का बेस्ट ऑफ 5 खेलेंगे उस पे आते हुए भी वो कमबैक कर सकते हैं, मेकिंग देयर वे टू इवन टॉप 1 में भी आ सकते हैं वो। जी हाँ, टोटल गेमिंग है यहाँ पे। टोटल गेमिंग भी अपने साइड से उन्होंने एक ही मैप पे अपना एक कमबैक दिखा। वो एक मैप ऐसा था दैट वी थॉट इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। जोन भी चाहता था कि शायद वही जीते क्योंकि जोन उनको यहाँ पे फेवर करते हुए नजर आया था। बट दिस इज जस्ट द डे 1, अभी भी 2 दिन बाकी है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्री फायर, इट्स ऑल्सो दैट वी हैव वैलोरेंट। आज के दिन वेलोसिटी गेमिंग, व्हाट अ फेनोमेनल विक्ट्री अगेंस्ट टीम एक्सो। यहाँ पे फीफा पे भी जो हमें एक वन साइडेड डोमिनेशन देखने को मिला। I mean, all your favorite games in different devices is here at the Esportz Premier Series. शुरुआत year long series रह चुका है हमारा, and December is that one end stage जहाँ पे top teams will be competing against each other for those final movements and make sure that they are able to put all of their efforts, all of their skills into the right way, into the right platform. So thank you all the guys once again for tuning in, and we would just like to tune off. Before that, let's thank our sponsors. Thank you team हमारी Esportz Premier League की all the production team who made sure this they made this all possible. We would even like to thank our sponsor जो रहेंगे हमारे जोश ऐप। जोश ऐप is someone who is going to be powering the Esportz Premier Series. This is brought to you by Esportz. So if you guys are new to the channel, do not forget to hit that like and sub button. बिल्कुल, कहने के एक और जो मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ कि Esportz एंथम आने वाला है, प्रोड्यूस्ड बाय स्लेज एंड द होल टीम ऑफ गली गैंग। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई साहब, गली गैंग करण कंजर जो बीट्स बनाते हैं भाई साहब, सत्या का जो बीट दिया है उन्होंने, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। स्टे ट्यून फॉर दैट। उसका जो फिनाले है वो न्यूज़ है कि कब किस तारीख को आने वाला है, वो कहने के esports.in के सोशल्स पे आ जाएगा। तो आपने अभी तक फॉलो अप नहीं किया है esports.in को फेसबुक पे, इवन सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पे आप अभी स्ट्रीम देखिए यूट्यूब पे। मेक श्योर टू फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम esports.in। कभी भी अनाउंसमेंट आ सकती है, बट हाँ I'm really excited for the dope track, man. Well, so am I. And once again, just to match up to the energy level of all, these players and the casters as well, Red Bull has always been there for us. So thank you, Red Bull, as well. And with that, it's going to be the amazing, day 1 हमारा आज के दिन पूरा हो चुका है. This was just day 1, which we like to call 2 दिन और बाकी. I'm really excited to see that what more do these teams have for us, and so are you guys as well. आप भी अपनी, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए अपनी टीम्स को, and definitely do tune in tomorrow as well with us. 10 PM को आप हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए अपडेट आपको करते हुए देखने को मिल जाएंगे जो भी हमारे सोशल हैंडल्स है उस पे। एंड कल के दिन भी 10 AM you guys can tune in to our stream, starting off with Valorant, then your favorite console game FIFA, and nothing but not the least, it's going to be FreeFire. And if you want to be one of these teams जो यहाँ पे actually अपने skills को enhance कर सकती है, they can definitely get a chance to make sure that they are giving their opportunity, they have been given a platform. So do hop inside our Discord server and हमारे social handles को भी follow कर लीजिए, because next year it's going to be a bang year for esports. It's going to be 2022 जो अब से बस कुछ हफ्ते दूर है, and then you will definitely be one of these teams. If you want to start your esports journey, do make your team and enter your favorite game, rather it be console or your mobile or battle royale or even PC game of Valorant. बिल्कुल, कहना है कि जाते जाते ये बोलना चाहूंगा तो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट टू द Esportz Premier Series. एंड ऑफ कोर्स और आप चाहते हो कि ऐसे ही टूर्नामेंट्स होते रहे अगले साल का, तो भाई ने टीज जरूर कर दिया। मैं चाहूंगा कि और उस पे डिटेल जल्दी जल्दी Esportz डाल दे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो मेक श्योर जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। तो गाइस तब तक एज ऑलवेज आज के हमारे बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रेनिंग। कल मिलते हैं आपसे डायरेक्ट 10 बजे। थैंक यू सो मच एंड पीस आउट। Well, have a great evening ahead. सो फाइनली आयुषी हम लोग ऑलमोस्ट अपने लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं जो कि है कंक्लूजन। एंड जिस तरीके से आज का दिन रहा, एक्शन पैक गेम प्ले, हाई आईक्यू, वो क्विक डिसीजन मेकिंग सब हमें देखने को मिला Esportz प्रीमियर सीरीज में प्रेजेंटेड बाय जोश। बट उसके अलावा जो एंडिंग हुई है ना अभी फ्री फायर के साथ, वैलोरेंट, फीफा एंड देन फ्री फायर की जो एंडिंग है, जिस तरीके से सारे प्लेयर्स ने खेला, टीमों ने खेला, मुझे लगता है कि जब डे 2 और डे 3 आएगा आपका जो कि ग्रैंड फिनाले का लास्ट डे, उस दिन तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे ये हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, उसके बाद तो आप सोच ही नहीं सकते।
That's right, man. There's lot more in store for us, including Gully Gang का जो title हमने anthem बनाया है by Karan Kanchan and Sledge. But this is me, Ayushi and Blackbeard signing off on day 1 of India's year-long Esports Championship. Josh Esports Premier Series brought to you by Esportz. Our official energy drink partner is Red Bull and is produced by Gigwork. See you guys tomorrow. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my love life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to